Good morning to day 4 of the Pakistan versus England first test match from Old Trafford. It is squeaky bum time, it is nervous, it is anxiety, and the first ball's been taken away for a single from Yasir Shah into mid-wicket. They're coming back quickly for 2. The impetus in the innings has been quick. Pakistan are 139 for 8 after 44.1 overs. And overnight, I don't know if any of you have gotten any sleep. I know I haven't. It's been dangerous. It's been suspenseful, anxious, and with me, I've got AZ Khwaja. AZ, how you feeling, man? Assalamu alaikum, Musad, and change of pacers. Can we have a minute silence for my team getting humiliated in Champions League last night? No, we cannot, because it's Pakistan Day. What a shot by Damien Shah. He smashed it through mid-wicket. Here we go. The chase is on. What a shot, यार. यासिर शाह, जोफ्रा आर्चर, उसने बॉल कराई और शपैट करके उसने मिड-विकेट पे slapped it. And the lead is 250 now, folks. अच्छा दिन are here. Look at that. This man is a centurion in Australia against Cummins, Hazelwood and Stark. Archer उनके सामने क्या है, bro? Easy peasy. हमारे 300-350 lead बन रही है. Gorgeous shot that from Yasir Shah. Look at that. And we just tweeted out that he is a batsman today. He needs to believe. तेरे को मालूम नहीं है, लेकिन तू है. And it can sail all the way for another boundary. Pakistan are off to a flyer. 10 runs off the first 3 deliveries of the morning. Jafra Archer can only smile back. The lead is over 250. Pakistan lead by 254. Yasir Shah 22 off 18. Look at that. Look at the shadow batting that he's doing right now. What a shot by Sachin Ramesh Shah. Unbelievable stuff. Just flipped it over the keeper. And we are in presence of some Arsenal greatness. Achha. Chief Doozy joining us. Oh, welcome back. And he's brought the FA Cup with him. The little shit. It's coming home. And Joe Roots looking a disappointed figure, cutting the start. 10 figure. runs off the first 3 balls. Unbelievable stuff. Yahi chahiye tha hame. Oh, and another hoik to square leg, and he'll Hoik and take a single. Mohammad Abbas, can he bat at all? He damn better well today. VVS Abbas is gonna get it done. Ab dekh lena abhi. VVS Abbas. 148 for 8. थोड़ा कंट्रोल में आ जाओ यार. पहले ओवर में आप इतने एक्साइटेड हो गए हो यार. उसने बैटिंग ही ऐसी शुरू की है. A lot of comments to go through. आज तो मैं सुबह उठ के मैंने चैट लगाई. कमेंट्स पहले से आए हुए थे. वही लोग वही ना सो ही नहीं पाए. There is nothing more nerve-wracking than being on the edge of winning a test match. People are doing the cross on their heart. 2 नफल पढ़े सर आप. Jesus, Buddha, जो भी है, जिस तरफ भी हैं आप, जिसके फेवर. Ghost of Kagawa ने आपके लिए कमेंट छोड़ा है. लास्ट कल तो आपने Ghost of ख्वाजा बना दिया था उसको. नहीं मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ. साथ ही मरवा दिया मुझे. हाँ जी बोलिए क्या कह रहे हैं. आपकी यूवे के लिए कमेंट है. We'll speak about it between overs. Mohammad Abbas now facing Jafra. What flicked it. VVS Abbas, unbelievable shot. He absolutely crushed it, but straight to mid-wicket. I mean, square leg. हाँ जी क्या कह रहे थे Ghost of Kagawa? Ghost of Kagawa. I'm gonna miss the morning today, but what a disappointing night last night as a Chelsea fan with Pep Guardiola, Juve advancing, with Zidane crashing, and the fact that we are not abandoning the game against Munich tonight. I feel for Khwaja with a poor penalty call for यार Leon. वो आपने penalty देखी है. मतलब it's not even यार बंदा कुछ कह भी नहीं सकता यार. Nice resolute defense from Mohammad Abbas. Already we've had 11 runs, 90 miles per hour. Now Jofra को वो नसीम शाह effect पड़ गया. कहता यार I'd have to bend my back this morning. And Stuart Broad, interestingly उन्होंने James Anderson को सुबह lift नहीं कराई. It's going to be Broad and Jofra. So they're not wasting time. Some chat in the England camp that one of the fast bowlers is going to have to be dropped, and it's between Archer and Anderson. 100% has to be. Archer ने तो विकेट लिए. मुझे But तो लगता है दोनों ड्रॉप हो जाएंगे. Archer has apparently an elbow injury. अच्छा. WinViz. वो quote unquote elbow injuries आनी शुरू हो गई. WinViz says 69% chance for Pakistan. 69. Dilviz क्या कह रहे हैं? यार Change of pace, Dilviz. Dilviz तो 30% में पाकिस्तान की तरफ. I will never be sure about a Pakistani victory. लेकिन मैं zoom out करके सोच रहा था यार, the rhythm that Yasir Shah was in yesterday after tea, यार मुझे नहीं लगता वो तो खा जाएगा इनको easily. And they already fear him. He's destroyed them in England. He's destroyed them in the UAE. He did it once again. It's Maho Billy's birthday, so happy birthday, Maho, one of our die-hard fans.
She's always been really generous. Is she on with the her chat right praise. now? I don't know, लेकिन सुहेल का मैंने अभी मैसेज पढ़ा है on the chat और माजिद कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? Only England can screw up a talent like Jofra. यार ये बात I do agree with you, but definitely यार his performances have not been as expected. 148 for 8. Yasser Shah, 23 off 19. Oh, he pulled this away into the left side. Mid-on is clear. He's going to get another boundary for that. High back lift. He doesn't care who it is. It's Jofra Look Archer. at the swag. Broad. Oh, Look at the tushin. Look at the attitude. The attitude era is That's back called with Damien Shah. Pakhtun passion. That's what it's all about. Unbelievable, yaar. No respect, just on a length outside off, and he slaps it through mid-wicket, and it runs with Jofra ka chhadi yaar. That is unbelievable. Unbelievable batting yaar. 152 for 8. Yunus Khan, The legend. सब उनकी वजह से हो रहा है. सिखाया है कि इस तरह मारना है ब्रॉड को, कोई रिस्पेक्ट नहीं दिखानी. अच्छे खासे Work a dung. बतीसियां निकल आई हैं सुबह सुबह पाकिस्तानी मैनेजमेंट की. But England under pressure straight away. 150 up for Pakistan. After यार वैसे सोचा जाए तो कल बहुत ही हमने गंदी बैटिंग की है. To be quite frank, पिच जैसा भी था हमने सारी विकेटें आधी तो हमने गिफ्ट की हैं. Oh, this could be taken. No, it falls short. Just short of mid off. अब थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा यासर शाह. वो तो अब टांग निकाल के सीधी हिटें मारने के चक्कर में है. 140 kph from Stuart Broad. So pace versus fire वाला सिचुएशन चल रहा है. एंड जो रूट अभी से उसने हाथ ऊपर खड़े कर दिए कि भाई आई गिव अप. माजिद हुसैन कह रहे हैं बिग मिस्टेक बाय रूट टू एडमिट एनीथिंग बिलो 260 दे कैन चेस thereby putting a huge amount of pressure on the whole team if lead exceeds that. Definitely I think this is already beyond what they can chase. Broad this time. What a shot this is! Yasser Shah clears the front leg and he might just go all the way for 4. Is this really happening? No, it's 6. It's been single. What a six. shot! Oh, I swear you've never seen anything like it before. Yasser Shah is taking Stuart Broad to the cleaners. Unbelievable. इसने एक चौका मारा था ना शहीन शाह अफरीदी को. Look at that. ब्रॉड ने एक चौका मारा था ना शहीन शाह अफरीदी को. Unbelievable shot. Just a flick of the wrist. कलाइयों का mega उपयोग and it sails into the square leg boundary. Fetch that, son. Just fetch that. Look at that. Naseem Shah get it. Wait. Huge six. Root is like, what the What bloody is hell? happening here, mate? ये डेरी गर्ल्स का कब से हो गया जो फुट आपका I don't know what you're talking about, mate. वो जो स्कॉट्समैन नहीं है सिम्पसन्स में. Oh my God, what an accent fail there from Musad Afzal. 158 for 8. Yasser Shah 33 off 22. It's been an explosive morning, and not just because he had KFC last night. यार मेंटली कितने वो डेंट कर रहे हैं इंग्लैंड के प्रीमियर बॉलर को जो 20-30 विकेटें ले चुका है इन दिस समर. ही इज जस्ट बीन फ्लिक्ड ओवर स्क्वायर लेग फॉर 6. यासर शाह 33 ऑफ 22. Unbelievable batting. He has a strike rate of about what 166 or something like that. No, 150 ka strike rate in fact. Brought to Yasser this time. Beautifully defended outside of off stump. He's got class, technique, power. He's got everything. Damien Mahendra Singh Shah. Unbelievable stuff. And Joe Root hands on hips. Already those tears of blood coming out. Keh rahe yaar. I'm going to take the L tonight. Pakistani management relax. टांगे खोल के बैठ गए जी. हाँ जी होन दसो होन की होना है. But of course, जितना भी आप lead ले लो, the bowlers have to get it done if you have to win a test match. Do you think it will be wrapped up today itself, Musad Afzal? Yeah, I think we're looking at the last day of the test match probably. So you're expecting a fight, the England batsman to show some spine. Yeah. Fair enough. I think openers इतनी जल्दी हर दफा नहीं जाएंगे, especially Dominic Sibley भाई, who's The been in prime Sibster. form. Edge and taken. Yasser Shah dangerously living and dangerously perishes, but he's done his job. 33 off 23 deliveries, 24 deliveries, apologies, and he slashed at his hard wide outside off. He didn't really need to do that because he was getting the. He lost his shape on that one. And that's a tail ender dismissal for you. But a valuable cameo here from Damien Shah. Look at that. He was pitched up slightly outside off, and he gave it his all. But just a thickish edge straight to Jos Butler, who will be relieved to finally take a catch. But a lead of 265. I think Pakistan will feel relatively good about themselves too. Oh, they still got a wicket here. They still got a partnership on Shaheen Shah, Muhammad Abbas. नसीम शाह भी है. नसीम उनका भी शॉट्स देख के हम एनालाइज करेंगे कौन से बैट्समैन को वो एम्यूलेट करें. बट VVS अब्बास इज स्टिल देयर, सो अभी भी कुछ भी हो सकता है.
Yeah, 21 runs added this morning by Pakistan. Gopi Mia just Kawal 2 कह रहे overs. one more boundary needed. Chief Druzy कह रहे it's a lot of runs. So हाँ score तो अच्छा खासा है. Like if this was like a one day match, you'd back Pakistan to win, let alone a wearing pitch on day 4 with Yasira. अब उसका confidence इतना high. He's got 4 wickets. He's got runs behind his back. Runs. And Naseem Shah हमने देखा था. He considers himself a batsman. जब उसका edge लगा था, he immediately took a review. I'm not gonna give my wicket just like that. I'm gonna make them earn it. So 158 for an action-packed morning on day 4. Naseem Shah, best of 7 versus Australia. आज इसको 17 कर दे तो फिर क्या ही बात है. Only his 5th test match, averaging 3. But he has the Uzi, a Uzi written on his bat. तो उसको Uzi की तरह इस्तेमाल करे and pepper some boundaries. तो फिर मज़ा ही आ जाएगा. Broad once again among the wickets, good ball. Usne backed himself to get the edge and Naseem versus Jofra. Indeed, Jofra बड़ी बातें कर रहा था Naseem Shah के खिलाफ. Another boundary needed, says Gopi Mia. Naseem Shah now. What a shot! Unbelievable! Virender Naseem has smashed this down the ground. First ball. Fetch that, son. Fetch that. Unbelievable. Touching gloves on the number 10 and 11 for Pakistan. This is sublime batting from Naseem Shah. First ball, full in the slot, and he just drives this over the What bowler's a head for 4. shot. Unbelievable shot. 14 runs off this over already. So VVS Abbas and Virender Naseem एक partnership लगा रहे for the ages. And Yunus Look at Khan Yunus like what the hell, cheeky bro? little smile. What's he gonna write in his notebook for that? It's a perfect shot. Unbelievable stuff, yaar. And that's, I think that's the best way to deal with the tailenders. Let them go, यार तुम full freedom के साथ खेलो. अगर तुम्हें ball, if it's in within your range, play your shot. ये नहीं कि आप रोकने के चक्करों में वैसे ही आपका edge लग ही जाना है. तो sometimes it's just good to unleash them on the opposition. 162 for 9 after 46 overs. The lead is now 269 runs. You are listening to Change of Pace Live. 280 का हमने कहा था कि यार हमें दे दे उनको target. Yeah. So 75 sounds like a big fat number that is hard to chase. Slashed hard. VVS Abbas has smashed this over mid off, just trickling away. उसकी रुख mid wicket की तरफ थी लेकिन ball mid off की तरफ से गई. Whatever works, bro. Whatever works. VVS Abbas भी कह रहा हाँ भाई नसीम shot देखिए मेरी. Look at that. His body is all the way to the leg side. His head is to the leg side. And the ball is ending up somewhere over cover. Jafra is like, whoa, man. What the hell is going on here? But back of a length. भाई आप length ball दोगे तो definitely बल्ला घुमाएंगे. Either you bowl it short or you bowl it right up there in the block hold. Jofra beautifully flicked away. It's coming back for a single. Good running there. और ये runs will be killing England's spirit. Virender Naseem Shah. Unbelievable stuff. But look at that straight drive down the ground. One bounce into the fence. And Abbas, Kalayon ka mega upyog, just flicks it to mid-wicket. Naseem Shah's strike rate currently 400. Let Yasir Hamid know that. Here, Jofra Archer now going to run in to the number 11 Pakistani batsman who's just taken England's best bowler for a boundary off his first delivery. Wasn't an outside edge. It was a straight full frontal drive. And this time a bouncer that'll go for 5. It's gonna run away for 4. A calculated top edge. Oh, and that's gonna be leg buys, in fact. Just a little shoulder nudge over the wicketkeeper for 4. Once again, and Jofra, he looks like a defeated man. He's like, man, I can't believe this is happening. Runs are coming. Runs are coming. Ooh, look at that. But he middled that elbow, that shoulder. तमीज नहीं है वैसे आर्चर को 17 साल के बच्चे को मार रहा है. सही बात है यार. वो तो है बालिग भी नहीं और आप ऐसे बाउंसर करा रहे हो बेचारे को. But Joe Root is like, bloody hell, man. Joe Root has aged 10 years in this test match. He'll end up looking like Gandalf when he's done. Oh! And that's the end of the innings for Pakistan. Archer will get his first wicket of the innings. Pakistan bowled out for 169 runs. 69. England need 277 runs to win. क्या कह रहा है दिलविज? यार अब तो I feel quite confident that we should get it done. Of course, the new ball spell of Shaheen and Abbas will be very, very crucial to decide this game. But I think we're in the box seat. I think we're going to get it done. Looking forward. और अच्छा जल्दी हो गया. ज़्यादा suspense नहीं था. We didn't drag it out. Hopefully we can get a result tonight. Bit of a leg cutter there from Jofra Archer. Beat him in the flight. Beat him with the slower pace. And Naseem with the full-blooded shot, but completely missed. Only hit air. So 169 all out. Yunus Khan clapping off his troops. Okay, well done, boys. You've given us enough runs to be content with. And 277 is the target. We're going to play some Jazba Janoon.
लगा दो, Take लगा a दो. look at it, and before the innings changes, we'll be back before the first ball.
And we're going to start off England's chase with some beautiful Nazia Hassan tweets. Tweets, no music, sorry. England are 0 for 0. Opening the bowling is going to be the line of the Lahore Qalandars. Oh, yes. Shaheen Shah Afridi. He's pumped. He's ready to go. Here we go. First ball. England chasing 277. Ooh, a lot of movement, a lot of lateral movement for Shaheen Afridi. Left alone well by Dom Sibbers. नहीं ये वो है Rory Burns, sorry. जो हमारे टूटी हुई मुर्गी as described by अहमद हसन. वाकई यार इसका जो नेक जाता है फुल साइड पे जैसे पता नहीं क्या कहता है आजा ऐसे आजा. But a good start by Shaheen Shah Afridi hitting the line. कल मैं उतरा कमेंट्री से और मैं सुना था कि आप और अहमद हसन मेरे मिडिल क्लास क्रिकेटर्स का मजाक उड़ा रहे थे. यार अब आप मिडिल क्लास क्रिकेटर्स ही आप इतने फारिग किस्म के आपने पसंद किए तो हमें तो मजाक उड़ाना ही था. बट रोरी बर्न्स इज डेफिनेटली वन ऑफ दोस मिडिल क्लासियाज जो हम चाहते हैं कि भाई. And by the way, if anybody's new on the commentary, middle class cricketer doesn't mean the income level, just means that their skill talent level. Yeah. Oh, good defense from Burns, this time to the offside. You are listening to ChangeOfPaceLive.com/matchday, your home of Pakistani cricket commentary. We'll be with you for the rest of the day and to see if Pakistan can wrap up a famous, historic, massive win. Have Pakistan ever won a test match at Old Trafford? Yes, we won one in 2001 when that controversial game जो बहुत सारे no balls हो गए थे. उन्होंने थोड़ी सी उसकी footage भी दिखाई थी. When David Shepherd बेचारा totally lost it and missed so many no balls and Pakistan got cleaned up England in a famous win. But that was a pure thriller. Hopefully इतना thrilling नहीं होगा. Straightforward dub for Pakistan this time. Getting behind the line well there. Burns defended away, no run, 3 deliveries gone. England still 0 for 0. What's going to be, we've talked a lot about Pakistan. Obviously, the game plan's very open. There's 3 world-class pacers, I'd say, and Yasir Shah and Shadab Khan to go with. But what's going to be England's plan? Because, again, they're not completely out of this game yet. Win-win is giving them a 30% chance. I would say it's 60-40 right now. यार एक अच्छी पार्टनरशिप लगी ना 70-80 की तो पाकिस्तान भी टेंशन में आ जाएंगे. तो these two are very capable. They showed some form in the last test versus the West Indies in the second innings. So they do bat well on an older pitch. ऐसी कोई बात नहीं कि ये capable नहीं है. Shaheen to Burns this time again. Just a slight movement around that off-stump channel, that corridor of uncertainty, as the bowlologist calls it, and another dot delivery. Burns, important innings for him. Absolutely failed in the first innings. Dom Sibley चलो at least hundreds मार रहा है तो उस पर इतना pressure नहीं है. हमने देखा इंग्लैंड के काफ़ी सारे प्लेयर्स जो इस 11 में अंडर प्रेशर हैं. यू कैन से जोफ्रा आर्चर इज़ अंडर प्रेशर, जिमी एंडरसन इज़ अंडर प्रेशर अनबिलीवेबली, और जॉस बटलर पे तो शदीद तनकीद हो रही है और उस पर दबाव है कि भाई प्रॉपर कीपर लाएं, इसको क्यों आप इतना चांस दे रहे हैं. एंड सो ऑफ कोर्स प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस need to be answered by England and hopefully they can do that with the bat. Oh, this time a bit more room and Burns does well getting to the line of the delivery. And he'll pick up a couple runs. England off the mark. Rory Burns off the mark. 2 for 0 after 0.5. Notice that shot, AZ Khwaja, that in the earlier innings that we saw with Rory Burns, when he was moving forward to play that shot, there was too much of a gap between his bat and his body. Bilkul. But this time, his entire torso, his entire existence moved forward with the bat. ज़करिया खालिद ने एक ज़बरदस्त कमेंट दिया. इनके दोनों ओपनर्स ऐसे खेलें जैसे मिर्गी का दौरा पड़ रहा हो. यार बस उनके स्टाइल ही ऐसे हैं, क्या कर सकते हैं. कभी कभी हमारे भी कुछ बैट्समैन ऐसे ही होते हैं when they're touring England. So far we have them on the ropes. Let's hope we can get the wickets. This is a much better delivery from Shaheen Shah, straightening a bit. Rory Burns does well. Good first over for England. Rory Burns looking well organized. And like that last ball is not innings. particularly hooping a lot or going off the pitch. So it looks like the track has lost its juice. But अब्बास के ओवर से पता लगेगा कि इस पिच में अभी भी कुछ है ही नहीं. कुछ भी हो इस पे कोई पिच में, he is so good with his sieve movement and his line. He can extract some movement on any surface. I would say, Khwaja, that if Pakistan need to win today or tomorrow, 6 of the wickets need to come between the spinners. बिल्कुल यासिर शाह का key role होगा on this pitch. Especially we saw how Dom Best was turning it once again in the second innings, and Yasir Shah was all over them. Bowling yesterday after tea. So he got 4 wickets. That was a big boost for his confidence. काफ़ी देर से उसकी form down थी, उसका rhythm भी ठीक नहीं था, but एकदम he just flipped a switch and then he was all over them, getting 4 quick wickets and then he was the top scorer in our second innings. Yeah, 33 valuable runs. Discussing this off air between innings as Mohammad Abbas to continue and getting a little shape outside to the right-hander. Dom Sibley needs to get something in this innings. He's really struggling for test match form.
And Mohammad Abbas is not one to struggle. He's been in phenomenal form. इसका जो अब्बास ने कल स्पेल कराया था सुबह में, like 8-9 overs on the trot, that was absolutely and again that stuff. first hour for Pakistan yielded just one wicket. But I tweeted about this late into the night as I couldn't get any rest considering the anxiety for this game. But I haven't seen 3 fast bowlers from Pakistan bowl this well in tandem since Mohammad Asif and Mohammad Amir. Definitely. In 2010, I think. Getting behind the line well again. Just Dom Sibley defended away. But yeah, you're right. I mean, it's just been 2 deliveries from Abbas, but it's not as spicy as it was from the first innings, which just puts the onus more on the... Overhead bhi hum dekh rahe hain, it's clear blue skies. It looks like a batting day, but look at the wear and tear on that pitch. Yasir Shah will be looking at it and saying, yes, I'm definitely in business. और मुझे भी लग रहा है शदाब का भी एक रोल होगा with the ball. We were forgetting Shadab got 2 wickets in that last innings, and despite that drop catch, I should have had Yasir Shah with the fifer. Mohammad Abbas this time outside of off, left alone by Dom Sibley. England 2 for no loss. If you're joining us now, we just want to let you know there's a blitz this morning from Yasir Shah and Pakistan getting 24 runs in their first 2 overs and then 2 wickets. That propelled the target for England to 277. That's what they'll be chasing today. And they've knocked off a couple of those runs in the first 1.3 overs. Messi summer में सिर्फ cricket खेलता है. That makes sense. You've never seen Lionel Messi and Yasir Shah in the same place. That's a fair point. That is a fair point. Bobby Prince कह रहे सोचो we had Wahab Riaz bowling short balls and यार वो भी कुछ वक्त है. Wahab Riaz our World Cup merchant जो भी हो वो World Cups में हमेशा he used to deliver for us. Well, I mean, also Wahab Riaz, the second or third change pacer in the UAE as a test. यार England के खिलाफ he's done very well in tests. Surprisingly, he got his first test fifer against them on debut. फिर हमने देखा था 2015 में उसने सीरीज जिताई थी. 2016 में भी he was very crucial. Dead wickets was the UAE man. He would come and literally break his back. सही बात है. Bowling on them, and he did really well. And it was just sheer pace and those. इतना उसने जोर लगाया कि गंज हो गई उसकी बेचारे की in the process. LeBron James hairline for Wahab Riaz, Mohammad Abbas. Much better this time, making Dom Sibley play. And there's a short leg immediately in place for Sibs. I would say one thing कि Abbas he's getting prematurely on the front foot a lot. आप थोड़ा सा कोशिश करो कि उसको back foot लेके जाओ. एक शायद make a properly well placed bouncer. शायद it will surprise him. Yeah. वो देखें काफी चढ़ के उसको खेल रहा है. He's not stepping out of the crease like Stokes did, but that definitely needs to be a ball that Abbas should think about. Get it right because he's so accurate. उसका bouncer भी if he gets it outside off, maybe make him pull across, get a top edge or something like that. और ये भी यार एक Gray Nichols ही है यार एक और. It's a beautiful bat. Beautiful ensemble with the pads and everything. Mohammad Abbas this time much better, and just like you said, push it up slightly more to make Sibley play. Gets the leading edge. सीधी बॉल है बहुत अजीब तरीके से ये रोकता है. He gets like probably 2 across like Azhar Ali does, but so far it's working for him. Very good over maiden from Mohammad Abbas, spot on. Which is basically normal for him. Standard stuff for him. I feel like he doesn't go to bed well if he lets in more than a maiden. Zainab Rizvi has described Wahab quite well. Wahab is a bowler of great spells, but not a great bowler, basically. Doesn't it make sense? Yeah, I think even वो spell जिसने अभी तक नाक में दम किया हुआ है हमारे यार. spells of World Cup history. 2 for no I loss. think Australian सिर्फ 2 चीजें जानते हैं. बाबर आजम के बारे का नाम जानते होंगे. Baba, and of course that spell in that. Wahab Riaz. Yes. What 2 for no loss after 2 overs gone. Jonathan Trott. I think he might need to pad up today. Come out of retirement. I mean, he needs to be a little bit introspective about his work considering the first innings performance from England. But let's see how the second inning goes. Another good defense from Rory Burns, walking across the line, getting close to the pitch of delivery, covering that line so the edge doesn't is not. वैसे आप देखें, it must be quite distracting for a bowler कि यार ये बंदा क्या खिचिक लगा है जब when I'm running into ball. So sometimes they should just pull up कह रहे हैं तुम कर क्या रहे हो. एक दो बीमरे मारो सेट हो जाएगा. बीमरजात करा दे बीमरजें. 2 for no loss. Shaheen Shah, Afridi, and Mohammad Abbas opening the bowling for Pakistan. Naseem Shah will likely be. It's not Pakistan. It's Pakistan. Pakistan. जब हम जीते then we're Pakistan. जब हम हारे तो Pakistan. Shaheen Shah, Afridi now. This is good bowling, but credit to Burns. Right now he looks very organized. यार I want to keep reminding people this kid is 21, 22 years old. यार टेस्ट मैच में इतनी accurate bowling उसने एक भी लूज डिलीवरी नहीं दी. बर्न्स को बिल्कुल फंसा के रखा हुआ है. Testing him with his technique, testing him with his defense, testing him with his temperament. Every single ball. It's a good early battle. इतनी maturity और accuracy एक 21 साला bowler में यार it's unheard of.
Honestly, चलो वसीम Only भाई in वसीम भाई खुद Pakistan. कहते हैं यार मुझे बॉलिंग नहीं आती थी जब मैं आया था. I was just used to bowl my natural stuff. Yeah. But this guy is 20 years old and he has such amazing control. And और वसीम Shah- भाई के पास जो थे वो इमरान खान Exactly, mentors भी आप and देखो the कैसे like थे. and the likes. ये बेचारा तो अजहर महमूद के नीचे आया था. इस तरह ना करो यार अजहर के साथ. Oh, beautiful shot. shot from Rory Burns. Just a check drive over the point region. Sean Masood, who's not really tired after his duck, will do the fielding there, and they'll get a couple more for that. ये एक बात है रोरी बर्न्स की, he's a sweet timer of the ball. जब वो शॉट मारता है तो Look at that backlift. crazy stuff. Yes. Such an awkward backlift, and even the way he holds the bat. But when the bat does meet the ball, it does look quite pretty. It does, yeah. और of course ये जो इनके variety V for Vendetta वाले That's what he facial does hair in है. his evenings. He's an activist. QAnon यही चला रहा है Yeah, basically. yeah. Oh my God. Infowars. Infowars. Moderator. Julian Asand Jama Bilotegar. Anyways, 4 for no loss after 2.3 overs. Shaheen Shah Afridi bowling to Rory Burns. Rory Burns is just straightening a bit. Good defense. Freddie Wild on the Twitter saying Shaheen is a great matchup to Burns, whose tendency to plant his front foot makes him vulnerable to the very full length Shaheen targets early on. It's a good point from Freddie. Umar Naeem कह रहे हैं कि it won't be easy for Pakistan to win. Definitely Pakistan never do anything easy, and that's a no ball from Shaheen. That's He's थोड़ा bowled सा problem आ रहा है quite a इसको. few no balls this test match. हाँ, I think at least 3-4 तो उसने definitely डाली. Even Abbas हमने देखा है वो overstepping a 217 bit. शुरू में तो आसान लगता है. सेशन जब खत्म होता है तो बैटिंग को नानी याद आ जाती है. 5 for no loss. Burns now. Well, left alone. I have to say, Burns looking a lot more organized in this innings than he did in the first. I know it's early signs right now, but it should be encouraging for England. Definitely, but Wasim Bhai in the commentary box there for Sky, transmitting his positive energy, his wrists, his कलाइयों का. बस आज अभी रिस्ट ना दिखाए वसीम भाई की हम पागल हो जाएंगे. कल जो पूर्व हमने कोई आधे घंटे हमने वसीम भाई की रिस्ट के बारे में बात यार की. क्या wrists हैं यार वसीम भाई की यार. उफ. That wrist won you a World Cup, Musaad Afzal. कभी मत भूलना. That wrist or Imran Khan? That wrist. जन्म पे जाए इमरान खान. 5 for no loss. As Rory Burns, this time poor delivery from Shaheen Shah. The first gift of the morning from Pakistan, and the class of Burns will not miss out. He's just Shaheen guided Shah, that. I think he was trying to bowl that inducker to him, but slightly got his wrist and line wrong, and just went down And the that'll fine just- leg boundary. The first boundary of the morning for England. I think he'll be disappointed because he'd been setting him up for like 10-11 deliveries. बार outswing करा रहा था. Yeah. उसको off stump के बाहर घसीट रहा था, and then when he had that chance to bowl that big booming and swinger, line खराब हो गया and he just kicked it away. Burns now 8 off 12. England 9 for no loss after 2.5 overs. Shaheen Shah into his second, giving away 9 runs. Pretty tight so far, except for that gift in the last one down the leg side. यार सब कह रहे हैं पैक हो जाएगी. क्यों पैक हो जाएगी यार? हम जीत जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है. 277 is a target. Good ball. Much once better from again, Shaheen. यार. But Pakistan do need to remember, as 3 overs have completed in England, 9 for no loss. Pakistan do need to remember that England are not chasing 400. So if they start leaking runs, this target will become a lot more accessible. It is important to keep it tight, and Mohammad Abbas will surely help. But I'm slightly worried about Yasir Shah's bowling today. Not because he's not going to get wickets, I'm sure he will, but if he starts bowling those overs where he's leaking at 5 or 6 and over, this target's going to deteriorate very quickly. यार वो बात आपकी सही है, लेकिन अगर हम जूम आउट करके ज़रा थोड़ा सा सोचें, स्टुअर्ट ब्रॉड ने कितने एंड में मारे थे? 20-30 रन मारे थे. Besides that, we had England wrapped up in for how much? Less than 200 easily. Mohammad 160, Abbas's 170. So again in that channel outside they off. did get it done when the pitch was fresher. That's a good point, yeah. और especially हमने देखा था at this ground, this will be the second highest chase after the 290 that England got. Atherton also talking about what we just spoke, compared to the first innings and the first ball this innings. He's not moving across as well. हाँ, बहुत ज़्यादा बाहर आ गया था उस Yeah, वक्त. yeah. So यार ये वैसे छोटी adjustments. Maybe होती Azhar हैं. Ali should take a look at this as well, because that's a very Definitely, यार. similar problem. And it's not the position of his back foot, it's just that the difference between the front foot and the back foot are less. So he's not really pivoting from a different position. सही It's बात just he's है. walking across, sliding across a bit more. Ooh, bowled Abbas. it on the pads. Middle stump line. It's just clipped यार away. ये 2 रन नहीं देने Oh, चाहिए थे. poor यार. fielding at mid wicket. Who is that? I think that's Naseem Naseem Shah, Shah maybe. doing the fielding there. No, Shaheen Shah. So Sibley also off the mark, 2 of 8. Burns 8 of 13, 11 for no loss after 3.2. A target of 277.
Pakistan hunting for wickets. A bit of a casual misfield there from Shaheen. He'll be disappointed the most out of that. But so far, the England openers have started relatively confidently. Relatively ठीक खेले हैं अभी तक. The ball hasn't quite beaten the edge or anything like that. Much better starts for the first innings. Confidently रोक रहे हैं. Important to remember that England were 12 for 3 in the first innings. So. We need to expose Joe Root and Ben Stokes to the new ball as soon as possible because they are the anchors of this batting unit. Mohammad Abbas again, this time Good on ball. that fifth stump line. Well left from Dom Sibley. What about any changes for Pakistan if we win this test? I think Fawad Alam for Asad Shafiq. Interesting. That's a conversation we need to have. लेकिन अजहर ने भी रन्स नहीं किए, असद ने भी रन्स नहीं किए, रिजवान ने भी रन्स नहीं किए, बाबर आजम ने भी सेकंड इनिंग्स में रन्स नहीं किए. फवाद आलम को ले आओ, बाबर आजम को. मतलब आप क्या चाहते हैं? तो यानी you are done with Asad Shafiq. I'm not. The thing is that I'll tell you what. To be very उसकी slip fielding भी valuable and है. to be very honest, he's looked a lot better than Azhar actually. ये है. So that's unfortunate for Pakistan, but. Leading edge from Sibley, and it just falls short of cover. Let's ask our change of paces. Would they like to see any changes made? Changes for the next test match? Mr. Arts ने कह रहे हैं बर्न्स बहुत अर्ली टाइम करता है बॉल को, इस पे अब्बास लगाओ. वो हम चाह तो ये रहे हैं लेकिन वो स्ट्राइक ही नहीं रोटेट कर रहे. वो कह रहे तू 6 उधर खेल, मैं 6 इधर खेलता हूँ. 6-6 खेल रहे हैं. And those that too against the guys who got them out. So you know, let's see how it goes. 11 for no loss England after 3.4, chasing 277 after an early morning Yasser Shah blitz. Oh, what a delivery that is from Mohammad Abbas. And Sibley doing well to get his bat out of the line of the delivery, or else it would have been. He would have done well to even touch that. What a ball there from Abbas. VVS Abbas, look at that off in middle and then just kicks away off the pitch. Holds its line. Beautiful delivery. Look at that. You're not going to touch that, buddy. Well, if you do, you'll be out. But Abbas finally in his... यार क्या bowler है यार, automatic. He's automatic. He's like a bowling machine. Might as well. जबरदस्त यार, unbelievable. For no loss, 3.5 gone. Abbas has just given away the 2 runs in his 2 overs so far. I feel like a wicket is coming here for Pakistan. A bit wider this time from Mohammad Abbas. Interesting to see. Very clever bowler, yeah. How diverse he is. He really uses the crease well as well. 4 overs gone. England 11 for no loss. It's testing times. Testing times. And one of the key attributes of that very successful Misbah side in the UAE that was number 1 for a while is patience. If you remember in Abu Dhabi and Dubai and even abroad, there would be sessions, not days but entire sessions. Pakistan would not get any wickets and then they would tumble all together. Yeah, it was such a slow burn in those tests. पहले 3 दिन कुछ नहीं होता था, batting होती थी. Then day 4 and day 5, immediately the game would kickstart and everything would happen in a hurry. So this is exactly the approach Pakistan will need to take here. They're in the box seat. Just keep your lines, maintain your discipline. Let the 4th day pitch misbehave and just take your catches. That's the most important thing. हमने देखा था इंग्लैंड ने catches छोड़े थे and it cost them very dearly. We cannot afford that at all. Shaheen now, good bouncer to start off with. Rizwan came out with a good carry too. Rizwan collected it around his shoulders. We're now into the 5th over of the innings. England 11 for no loss. They haven't really gotten away, but they haven't really looked in trouble at all. Burns is looking solid. Even Sibley is getting right behind the ball, not really allowing Abbas to trouble him that much. But it's a tense moment of the game. Who's the best? Both sides are on edge. Who's the best pacer of the first innings for you for Pakistan? यार I think definitely Abbas ने जो bowling कराई थी यार, that was sensational. That ball to Stokes, I think that was the ball of the summer, to be quite honest. Shaheen this time again. Burns walking across to this one, so that problem's still existing. 8 off 15, 4.2 overs gone. Let's see some of the comments now coming in. इमरान नज़ीर एंड तौफीक उमर. यार हम 5 मिनट कमेंट्स नहीं पढ़ते तो इमरान नज़ीर आ जाता है. मतलब कमेंट्स पे इतनी सख्त नजर रखनी पड़ती है. हम एक प्लगइन लगाना पड़ेगा कि अलर्ट आ जाए जब इमरान नज़ीर का नाम आता है. तो बैन करना पड़ेगा जो वर्ड है ना. हमने जब आपको याद है पीएसएल ड्राफ्ट की टेलीकास्ट की थी यूट्यूब यार पे, उस पे कोई 30,000 व्यूज आ गए थे. 35,000 और उस पे मतलब हर दूसरा तीसरा कमेंट जो था ना वो इमरान नज़ीर के बारे में था. और वो और संदीप सारे जो नेपाल के यूट्यूब से. हाँ, संदीप और इमरान नज़ीर. Oh, beautiful shot from Rory Burns. And there's another misfield at point. Shan Masood. You don't expect that from Shan. He's a supreme athlete for Pakistan. And they'll get another easy 2. And you have to remember, England are not chasing 400. 277, you got to keep the runs tight.
मतलब ये थोड़े से कैजुअल काम हो रहा है फील्ड में. वाज इट इवन वाज ही स्टॉप? यार ये देखो यार, गलत बात है. Poor technique there from Shan Masood. In fact, didn't get his lower Body leg behind the line, ball. yeah. Fawad in for Asad, Sohail in for Naseem. Wow. यार ये कौन है? ये Arsalan. सोहेल खान खुद तो नहीं आया वो change of pace पे. No, but I think Arslan's talking about workload management here. हाँ. And Naseem is very So young. Shadab is secure in everybody's mind to No, play? he's Ibad is saying not sure if we'll need 2 spinners in the next match. Southampton काफी flat pitch लग रहा था the way the ODIs were Shaheen going. Shah this time edged, and it's not going to hit the carry. I think it was a ground. bump ball. I think it was a bump ball. एवं excitement हो गई थी यार, जिस तरीके से वो bat face खोल रहा था. 87 miles per hour. Now Shaheen really getting into his work. Only 11 runs given away. Dom Bess is 2.4 padded overs. up. Looks like Bess will bat at 3 and Rutan strokes later. नहीं ऐसा I तो don't नहीं think हो that'll सकता. happen. I don't think that might. उनको पता है वैसे ही हम जल्दी आउट हो जाएंगे. बेसी को भी पैट करा लो. Omer is saying I think we'll go with the. I think we should go with the same team if we win this game. Makes sense. And Arsalan saying you cannot play Naseem 3 tests in a row. He's not ready for that level of stress on his body. Very good point too. लेकिन bench पे कौन है? शिनवारी और वहाब रियाज और सोहेल खान. I'm not sure कि I want those guys in the 11. Shaheen this time full outside off. Good resolute defense from Rory Burns. He's been well. I mean, you have to also admire the comeback that Burns has had in this innings. He's only 10 off 18, but he's just looked a different batsman, a much better batsman. Not the jinx saying Asad babyface Shafiq will stay. I think realistically वो किसी को भी ऐसे change नहीं करेंगे unless there's a disastrous performance in this 4th innings. Well, I mean, Misbah is all about picking the team according to conditions. So let's see what happens. That's important to note that. Good ball and good stubborn defense from Rory Burns once again. 13 for no loss after 5 are England. Burns 10 of 19. Sibley 2 of 12. एक तरफ बर्न्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली शाहीन को खेलने की, दूसरी तरफ अब्बास एंड सिबली का एक ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा है. बट दे जस्ट शोइंग हाउ सिबली इज़ गेटिंग अ स्ट्राइड इन दैट ही डिडंट इन द फर्स्ट इनिंग्स. तो ऑफ कोर्स इट मेक्स सेंस टू द लेसर पेस ऑफ अब्बास, बट व्हेन द बॉल इज़ निपिंग अराउंड, स्टोक्स भी बड़ा आगे बढ़ चढ़ के खेल रहा था, बट व्हेन ही मिस्ड इट एंड दैट बॉल जस्ट क्लिप्ड हिज बेल्स, द डेथ रैटल एज दे से जो आवाज़ आई थी. सो सिबली हैज़ टू बी वेरी केयरफुल कि भाई अगर अब्बास की बॉल मुझे बैट पे नहीं लगी या पैड पे या मैं बीट हो गया, then it might be all over very soon. And here we go, Abbas once again to Sibley. Good defended ball once well. again, right on off. ज़बरदस्त accuracy यार इस बंदे की. Really a top bowler. And look at that record यार, he has like 70 odd wickets in 21 test match, 19 test matches or something ridiculous like that. How soon do you want to bring on a spinner? I think 15 that's a overs? fair shout. I think ज़्यादा देर वेट नहीं करना चाहिए. थोड़ा न्यूइश बॉल भी दो, Bounce भी होता है बाउंस ज़्यादा. मिल जाएगा, थोड़ा वेरिएशन के ज़्यादा इफेक्ट्स होंगे when you have the spinner on. So your first change bowler might be a leg spinner. Let's see. I think क्योंकि हमें अब्बास तो एक लंबा स्पेल देगा 6-7 ओवर का एटलीस्ट. Beautiful has he got him? delivery, and it just misses the outside edge. Dom Sibley looking basically a deer in headlights against Abbas so far. Burns been a lot more confident than him. थोड़ी सी लेंथ पीछे खींच ली थी अब्बास ने, तो फ्रंट फुट और वाली अब्बास नहीं थी. अब फिर से देखिए तीसरे ओवर में सिर्फ 2 रन दिए. उसकी इकोनॉमी जो है, Wow, that was so close to the edge. यार unbelievable खेल bowling. लो यार तुम. But again, just like Shan Masood and just like Abid Ali and just dragged his bat in at the last moment. luck favoring the English batsmen so far. And this test match, Pakistan have not been too lucky, to be honest. Besides Shan Masood, who's I feel like has sucked up all the luck for the Pakistan side. Soaked up, not sucked up. 13 for no loss. Average by seam direction. He only averages 21 when it's seaming inwards. Beautiful delivery. Another one from Mohammad Abbas. He's looking What a slightly bowler, frustrated again. He knows that he's got Sibley on the ropes here. What a वैसे, contest. I would love to know the numbers of a touring bowler in England who has played like minimum 5 tests. What are the numbers? Average wise, I believe Abbas definitely has to be right up there. I think he's probably averaging like below 20 against England. इतने वो sensational bowling उनके खिलाफ कर रहा होता है. By the time he's done in this test, he'll have at least 5 tests played in England. So Zainab Razvi saying, I'm still upset about umpire's call versus Rizwan. Umpire's call rule needs to be changed. I agree with Michael Holding. यार अब चेंज करें, लेकिन किस चीज पे चेंज करें? क्या व्हाट्स द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन भी नहीं है ना, मसला ये है. Abbas to Sibley, another good one. This time defended away onto the offside. Sibley finally getting some bat on ball.
So let's have a bit of an analysis here from CricViz. Dom Sibley is batting 70 centimeters further down the track against Mohammad Abbas in this innings compared to the first. Setting up out of his crease, Sibley's average contact point is 2.5 meters from his stumps. Yeah. On day 2, it was 1.8 meters. So definitely he's made some adjustments कि भैया बास को कैसे खेलना है, क्रीज में रहूँगा तो फिर मैं पकड़ा जाऊँगा. Mahabali Singh, can we have the second day of the test again? ये नहीं देखा जा रहा मुझसे. That's the thing. You got to be a little bit patient. Remember, this is Test cricket, folks. It is only for the patient. Sabar ka phal, I think, will be meetha. Good ball once again. Abbas giving him absolutely no room. No loose deliveries. England 13 for no loss after 5.5. Ali Imran back on the chat. It's been a while, Ali. Abbas is the new Asif. Wow, that is a compliment if there ever was one. I think he's surpassed his numbers, has he not? ये तो 20-22 test खेल गया. Numbers is different, but the quality of bowling is another conversation. No doubt. Omar Naeem saying Yar Abbas deserves 5 for every time. And honestly, I was done with him when he was touring Australia. मैंने कहा यार, this guy has lost what he had. But credit to him, he's regained his 100% accuracy and zip that he used to have before that. Abbas straying in line the first time. It's been a bit of a freebie, and there's finally a strike rotate हो गई है. And now Shaheen Shah will bowl to versus Sibley. will be That'll be interesting. But 3 runs off of Abbas's 3 overs. England 14 for no loss. Bobby Prince is analyzing us. He's saying मैंने नोट किया है जब मुसाद और एजी होते हैं तो सीरियस कमेंट्री होती है, जब अहमद और एजी होते हैं तो जुगत सेशन लगता है. यार ये लोग भूल जाते हैं कि मैच भी हो रहा है, इनको बताना पड़ता है. स्कोर भी बताओ. 14 for no loss after 6 overs. हाँ सही बात है. मतलब they were still providing a service here. changeofpacelive.com/match day. Ball by ball audio commentary of Pakistan cricket. यार वैसे I would like to ask our change of paces if they could share any videos or photos of them listening to us or you know watching us. We'd like to make a montage of them. एक दो लोगों ने भेजी है वो अपने ट्विटर पे अपना सेटअप दिखा के. आप लोग अब सब हमें भेजें, हमें या तो ट्विटर पे टैग करें या कुछ करें. We'd really like that feedback and you know it makes us feel good कि we do have a small but growing fan base कि यार जो लोग हमारे साथ मैचेस देखते हैं तो यार थोड़ा सा हमारा भी ईगो बूस्ट हो जाएगा, थोड़े हमें रीट्वीट्स भी मिल जाएंगे, थोड़े यार हमारे यू नो दिल भी बड़ा हो जाएगा कि यार हम कुछ गार्डन जो लोग एंजॉय कर रहे हैं. To make up Mickey Arthur's tweets this morning, he's quite confident that Pakistan will win by 30 runs. So Mickey Chacha fully invested in this side and that's a good sign. यार अच्छी बात है. Ex coach कितनी दफ़ा acrimonious departure होते हैं, वो गालियाँ देते हुए जाते हैं, वो sack होके निकल जाते हैं. And again, Sarfraz and his boys, along with Mickey Arthur, that was a good camp. It was a positive camp. बिल्कुल सही. How many Pakistani coaches have left that way? मतलब 3 साल हमने साथ अच्छे गुजारे. Okay, now we're going in a different direction. Fair no enough. hard feelings. Fair enough. And that's the way it should be. यार आप किसी को मौका दो, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है पूरे 3 साल उसको करने दिया है और उसके बाद हमने कहा thank you so much, we want to move on. Hamid no Nasser and Asiya Sumro on YouTube. Come over to changeofpacelive.com/matchday. That's where the real chat is. That's where a ton of our listeners are at the moment. As left alone by Sibley. Wow. Walking across. 83 miles per hour from Shaheen Shah. 6.2 overs gone. England 14 for no loss. Ali is saying, I am so happy that you guys are doing test match commentary. It's been a different experience, Khwaja, because there's been, like day 2, there's been explosions of action, and then sessions like these, which are a lot more circumspect and quiet. And we're usually doing T20 cricket commentary, which is just action after action and explosion after explosion. और memes आ रही होती हैं और ये हो रहा होता है और सलमान इकबाल पे ऊपर कैमरा जा रहा होता है और मतलब it's just everything. This is a lot more calm and collected and strategy and Dalek side this time. I feel like personally, and I'd like to get your thoughts on this. I feel like I've had to up my game for this match in terms of observation and analysis and what we're talking about. You get इसमें सिर्फ मतलब you cannot in test match commentary you cannot just get by with जुगते and मजाक and वो edge के चौके and all of that. Definitely it's a more well-rounded discussion जब टेस्ट मैच पे बैठते हैं. थोड़ा सुकून भी होता है, थोड़ा सोचने का टाइम भी होता है और साथ में एक जो अनसर्टेनिटी होती है वो भी उसका एक अलग मज़ा होता है. But thank God Pakistan are winning. It would be a tough situation if it was England 630 for 4 and we're declared and then we're batting at 80 for 5. So you know, Shaheen Shah this time around that off stump and again he's switched up to that angle, that left arm over the wicket to the right-hander, an angle that I'm yet to understand. वैसे इंग्लिश जो बैट्समैन उनका सही इम्तिहान हुआ इस समर. First they had Roach, Holder and then Shannon Gabriel, top class quality bowlers. I feel like you know how in A levels you have mocks and actual exams. Those were the mocks. These are the actual exams. Yeah, लेकिन Shannon Gabriel भी अच्छा खासा दरिंदा है. Alzari Joseph वो भी top bowlers हैं. Mushtaq Ahmed looking good, looking like he's just coming out of a James Bond movie. Bond.
Mushy Bond. Thomas Bond, 14 for no loss after 6.4. Sibley 3 off 22. He's Good definitely ball, यार. definitely Testing his pads, lovely. बट यार जब भी मैं शाहीन शाह को देखता हूँ उसकी ग्रोथ और उसकी क्वालिटी देख के ऑनेस्टली ठीक है, लाहौर का बॉलर है, लाहौर का लड़का है, सपूत है, लाहौर है, वो सब बातें अपनी जगह हैं. बट यार दिस इज़ ट्रूली रिमार्केबल. हम लोग रियलाइज़ नहीं करें कि कितना बड़ा टैलेंट है ये लड़का, जो इतनी एक्यूरेसी और इतनी कंट्रोल के साथ 20-21 साल की उम्र में बॉलिंग करता है. यार कोई वसीम शसीम, नो बडी, नो डैम वे ओवर दिस गुड. इवन आमिर को बड़ी गीली गीली पिचेस मिल रही थी जहाँ बॉल इतनी इतनी स्विंग हो रही थी. वो भी इतना अच्छा नहीं था 19 साल 18 साल में जाके ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह बॉलिंग कराई थी. विकेटें आप छोड़ें, जो बॉलिंग इसने कराई थी लाइन एंड लेंथ के साथ. You gotta respect, and I've always said, Khwaja, whenever you talk about Shaheen, I always said that in Pakistan में आपको पता है शोएब अख्तर कहते हैं टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, but it's the he is a rare gem यार. ऐसे टैलेंट दुनिया में कहीं नहीं. No, but it's the maturity, it's the calmness, it's the discipline that Shaheen brings with him that is quite spectacular and quite rare. 14 for no loss after 6.5. Shaheen Shah Afridi is making the batsman play a lot more early on this innings. Early on in this innings, leave percentage is only 16%. हम देख रहे हैं रोरी बर्न्स हर बॉल अपने आंख के नीचे रोक रहा है. It's been a good battle. रोरी बर्न्स भी बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं. Yeah, Burns 10 off 19, Sibley 3 off 24, England 14 for no loss after 7 overs. They're going well so far. Oh, the wrists are here. The Kalai God is here. वसीम भाई नहीं वसीम भाई लेफ्ट हैंड की हमने देखनी है. रिंग फिंगर, ये यस, देयर इट इज वसीम भाई. और मुशी भी यार, मुशी भी कह रहा है हाँ जी लगे रहो जवाना, लगे रहो. Mr. Arsa saying Pakistan Disney era 2016-2019 Goofy, Mickey और सरफराज डोनाल्ड. यार आपको इस एरा ने वाकई यार डिज्नी प्लस एरा था वो हमारा. Muhammad Usman, Hamid Nasir saying, I prefer to listen with you guys rather than watching on the TV. Listening from Australia. You're listening from Australia, mate. 14 for no loss. साजी तुम्हारे इनर कंगारू बाहर आ गया. तुम्हें क्या हो गया मुस्कान? We're in Australia, mate. You're from Tasmania. मजे की बात है, हम अपने एनालिटिक्स देख रहे थे and last year during PSL we had listeners from Israel. We had 15 listeners from Israel. तो मोसाद के एजेंट भी सारे सुन रहे हैं हमारे. ये कौन है शाहीन शाह अफरीदी? उस पे फाइल खोल लो. 14 for no loss after 7. But guys, if you're listening, यार अगर आपने VPN लगाना है तो इजराइल का क्यों लगाया आपने हमें सुनने के लिए? Unbelievable stuff. Mohammad Abbas now continuing here, and he's finally going to get a bowl to the left-hander. Rory Burns, who's looked a lot more resolute against Shaheen Shah. Muhammad Usman, who's saying, Khwaja, he's been following you on Twitter since 2015 for the World Cup, और आपने वापस follow back नहीं किया, आपको अल्लाह पूछेगा. अच्छा, आप अपना handle drop your handle and he'll follow you now. आप अपना handle दे देना, फिर मैं follow back कर दूंगा. ऐसी क्या बात है? But folks, if you're listening over on the YouTube stream, come over to changeofpacelife.com/matchday. आपका data भी कम use होगा, chat भी सारी वहीं है. दाता. And it's just and you can keep it on the background. You don't need a whole app. आप अपना फोन भी लॉक करके सुकून से पीछे से चलता रहेगा. David Louisa की जियाली जो है वो Louisa भी आ गई हमारे साथ and played off the back foot for no run. Louisa, that was a great match. That was a great match. Yeah. And she was supporting Zalmi, I remember, in that game. उसने शर्त लगाई थी अगर वीजा मैच ले गया तो मैं अपना नाम Louisa रख दूंगी. That was a great match यार. Lahore Qalandars and PSL 2020 was ridiculous. क्या करें? Israel trying to let some wrister. The nuclear wrists of Wasim Akram. Let's see some comments coming on. Ali Imran saying, guys, you guys should have something similar to a YouTube Patreon account so the fans can support. Yeah, we're working on that. We'll get around to it. Umar Naeem saying, Mickey ko dobara naukri chahiye. He's with Sri Lanka. It's a pretty good gig. Another side that needs a lot of work from the ground up. Yaar, how many coaches can say on the CV, I coached South Africa, I coached Australia, I coached Pakistan, and I coached Sri Lanka, yaar. Yeah, ridiculous. But I only won with Pakistan. Very fair point. Yeah. Faizan saying, currently I have one AirPod on with your commentary on. I can't put you on high because my father wants to listen to Wasim Akram. We won't argue that. Wasim Akram, Wasim Bhai, kuch nahi keh sakte. But Faizan, you have AirPods? Are you... Wasim Bhai is basically who's that guy from Tibet, the monk? What's his name? The Dalai Lama of cricket, basically. Unki wisdom हमें garnish करनी पड़ती. Hey there, Dalai Lama. I just did this and I won the World Cup. Straightening this time from Abbas to mid-on for no loss. There is still a game on here, folks. Quiet amongst the cricket right now. Abbas has kept it rather straight. लेकिन बहुत ठीक है, विकेट नहीं निकल रही, बट द इकोनॉमी रेट, द रन रेट इज़ बिलो 2. हमने वही जो प्रेशर और टाइट बॉलिंग करे यार. इट्स वेरी रेयर कि पाकिस्तान इंग्लैंड में आके either we blast them out or we get completely smacked. But
ब्लास्ट देम We आउट ना, blast them मतलब बोल देम आउट ना कि हमने Right, उड़ा दिया जी, 30 पे 3 हो गए, ऐसा कुछ हो गया, हम स्विंग कर रहे हैं क्रेजी Adil Momin is very concise in his comments. Good morning, weekday low. Burns 10 off 23. Abbas, oh, that's coming into the left-hander, and that's a dangerous leave. I think he left that more on length than he did on line. Yep. 14 for no loss after 7.5. और मैं अपनी पॉइंट वही समझा रहा था कि वी आर बॉलिंग, प्रेशर बॉलिंग करें, जो वो बॉल ड्राइव वाला टैक्टिक है जो मिस यू एरा के हमने अपने प्राइम में करते थे, बट डूइंग दैट विद द पेस बॉलिंग इज़ अनदर केटल ऑफ फिश, क्योंकि हमारे पास तो उस वक्त सिर्फ स्पिनर्स ही होते थे. नसीम शाह वार्मिंग अप, आई थिंक वील सी हिम इन द अटैक वेरी वेरी सून. ये इनका अच्छा टैक्टिक है, ये अब्बास को कंटिन्यू रखते हैं और शाहीन को 5 ओवर और नसीम को 5 ओवर, सो ही बॉल्स अगेंस्ट देम. इट्स अ That's the नाइस way to go. टैंडम. That's the way to go. How fit is Naseem Shah? As asking Bobby Prince, I'm not sure. He's only 17, to be honest. यार वैसे फर्स्ट इनिंग्स में उसने बहुत ज़्यादा बॉलिंग तो नहीं कराई थी, Yeah. आई बिलीव. सो थैंकफुली यासिर शाह गॉट देम आउट relatively Hassan quickly. Khan over on YouTube. We batted very poorly. Asad and Azhar do not deserve to be in the 11. My goodness. The Yeah, knives baat are to- out for the senior Pakistani batsman. I mean, बात तो सही है, लेकिन वही है ना, क्या करें फिर. Naseem Shah only bowled how many overs? He bowled 16 overs, which is fair enough. He bowled more than Abbas, in fact. That's quite remarkable. और शाहीन शाह ने 18 ओवर कराए थे, so his fitness seems to be fine, no issues there. यार मैं तो हैरान हूँ ये सुन के कि अब्बास ने सिर्फ 15 ओवर कराए थे in the last I think two innings. spells. I mean, दो बड़े स्पेल कराए भाई थे. उनकी सिर्फ 17 ओवर की इनिंग्स थी. हाँ, 70 ओवर की 70 इनिंग्स ओवर थी. की इनिंग थी, सही बात है. तो मतलब उसमें कितनी ओवरें करेगा वो? ओवरें. ओवरात. That's moving away from the right-hander this time is Muhammad Abbas. Oh, Shaheen Afridi. Afridi now into his 5th over. It's probably going to be the last of the spell for him. maybe. We might see Naseem Shah come on. We've seen him warm up on the sides. Why is this square leg wearing pads? Oh, because he comes in as short leg. in the short second leg में over. आ जाता है. But not going for runs. ठीक है, there haven't been any Runs. big movement off the pitch. There haven't been any edges coming out so far, but they haven't given away runs. So But that's both teams the won't best way mind to build that. pressure. हाँ Because England, these two batsmen are not really. हाँ, ये वो बॉल desperate चेस for करने वाले runs, किस्म yeah. के बैट्समैन. Yeah, but Wokes के साथ या Stokes के साथ हो रहा होता. हाँ. We would have seen probably. शॉट खेल देंगे, सही बात है. इवन जो रूट हमने देखा था 50 की पार्टनरशिप सुकून से खेला था, फिर एक ही लूज शॉट. Nice defense, nice confident defense from Sibbers. 3 off 26 लेकिन deliveries. इसको कहते हैं ना #proper cricket. वो वाली Yeah, सिचुएशन you चल gotta रही dig है. in there. You gotta spin your time at the यार crease. फिर आपका वो सिम्पसन्स वाला स्कॉट बाहर आ गया. आपको होता क्या है, आपको करना पड़ता कोई है. आपका कोई तीसरी पर्सनैलिटी है आपके अंदर, मल्टीपल पर्सनैलिटी का कोई चक्कर है आप में, मुझे करना लग रहा पड़ता है. यार, करना पड़ता है. But 14 for no loss after 8.2. Yasir Shah studying the pitch. He'd be itching to get a ball on. And good यार, लोग अपने Ibad is sending a gorgeous photo of his जबरदस्त setup. यार. Ibad, I'm a sucker for your TV bench. हाँ, उसका कैबिनेट बड़ा खूबसूरत है Quite यार. like the. डू विजल पे लगा दो, हमें चाहिए. अच्छा, PS4 भी पर्पल कंट्रोलर रखा हुआ है, क्या बात है भाई. Nice little tinky winky action, little Teletubbies action. टेलीटब वैसे आप देखते थे बचपन में टेलीटबीज में. Of course. आप तो अभी भी टेलीटबी लगते हो यार वैसे. ऐसे आप क्या करो. असद सिंह दिलेर विकेटें चाहिए. जहरीली बॉलिंग चाहिए हमें, जहरीली. 14 for no loss after 8.3. Sibley 3 of 27 really digging in. Burns 10 of 25. So पाकिस्तान ने बिल्कुल एक जाल बिछाया हुआ है उनके कि भाई जाल. तुमने रन ज़ात तो हम तुम्हें सवाल ही नहीं पैदा होता करने देंगे. But Shaheen 14 for round no the loss. wicket, is he? I think he is. 18.3 overs gone. नहीं, over the wicket ही अभी तक. Ooh, just ball. moving away from that is Sibbers. 3 off 28 now. Good bowling this. 86 miles per hour from Shaheen. He's अजहर थोड़ा सा टेंस लग रहे हैं कि यार अभी तक हम विकेटों में नहीं घुस पाए. yeah. बट आई थिंक जो हमने रिवर्स स्विंग देखा था इंग्लैंड कर रहे थे आफ्टर कंप्लेनिंग अबाउट द बॉल, फनीली हम भी शुरू कर देते हैं. वो एक्चुअली डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक था कि भाई हम बॉल को स्क्रैच करें. आप देखो ओजी ख़राब हो गया है, इसलिए वो ये भी एक 9D लेवल चेस खेल रहे हैं. Yeah, तो yeah. आपको समझना पड़ती है. 14 for no loss after 8.4. Shaheen Shah Afridi now coming in to bowl to Dom Sibley, who's been frustrated for runs, but he's been confident in उदास ही defense. लगता है हमेशा बैटिंग. परेशान, हर वक्त परेशान लगता है ये. Oh, This going is for the the big first time. drive. First time this morning we've seen Sibley play a loose, not a loose shot, but at least open up his arms, free his arms a bit. And it doesn't really go anywhere. It gets the inside edge and falls on the pitch for no run. Let's see some of the अरे comments. क्या टेक्निक है ये, अपने बाजू बाहर निकालता है फिर अंदर लाता है जैसे पता नहीं क्या. Maho Billy कह रही है, hi, so fit is Naseem. Maho ji, Naseem is less than 18 years old. आपको बताते जाएं.
तो यार please नसीम है तो बहुत खूबसूरत बच्चा, ये तो मानना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है. ही हैज़ अ वेरी जनाब आ जाए. ब्यूटीफुल फेस. ख्वाजा साहब, you're- हर्ज नहीं है कहने में. Khwaja Saab, your Indian follower, we were mutuals in the old ID. Please follow back. अच्छा अच्छा, ये सब आप यार अपना अपने Twitter दे drop दें. करते हम करें. Good Good drive drive. again. This time from Sibley. First time he's going to get a boundary this morning. What a timing on that shot. रोक ले अजहर, रोक ले. ये रोक लेगा, रोक Yeah, लेगा. yeah, that is Oh, what a phenomenal effort. There, अगला टेस्ट मैच पक्का है अजहर का. सिर्फ स्प्रिंट पे. Sprint could have been a run out chance. Good stuff there from the captain. I think they'll get 2 runs for it. 9 overs gone, 17 for no loss. England are chasing 277 after that blitz from Yasir Shah this morning. छक्का मारा था यार उसने ब्रॉड को. लेकिन आई थिंक अब हम ये नहीं कह सकते कि जी हमने टारगेट कम दिया था. दैट विल नॉट बी एन एप्लीकेबल That's not an एक्सक्यूज. excuse this morning. we- ज़ैनब कह रही है यार वो तो शानी की बैटिंग ने बचा लिया. 169 ऑल आउट. अब्बास और बॉबी ओनली फर्स्ट इनिंग. सबकी बैटिंग मेजर डिसअपॉइंटमेंट. There are definitely some issues. What do you think about the baggy caps the boys are wearing, Faizan? I mentioned on day one that I love them. I'm a sucker for the old school cricketing caps. What do you think Naseem's real age is? Yaar, I think 18 लगा लो या 17 लगा लो. I'm not sure how it works in Pakistan. Bobby Prince saying नहीं यार अभी बच्चा है, उसकी मूछें नहीं आई अभी तक. Fair enough. हसन बट कह रहे हैं हेलो बॉयज, करंटली सिटिंग इन मरी विद नो टीवी एंड हॉरिबल मोबाइल इंटरनेट बिकॉज ऑफ रेन, सो कांट स्ट्रीम ईदर. यू गाइस आर माय ओनली होप. वी वर योर ओनली होप इन द फर्स्ट प्लेस ब्रो. Change of pace is gonna save you. Pacers. Here we go. Mohammad Abbas now coming into bowl to Dom Sibley gets the inside edge, falls over to mid on for no run. Score now 17 for no loss after 9.1 for everybody from Australia to all the way from Murray, Australia. from Kashmir to Tashkent. You are listening to ChangeOfPaceLive.com. ताशकंद में भी बैठे हुए चेंज ऑफ पेसर्स होंगे यार. यार, एक तो क्या कह सकते हैं. Reza भाई Ali. अगर तेल अवीव में बैठे हैं तो ताशकंद में भी बैठे Exactly. होंगे. Reza Ali joining us on the YouTube stream. He's saying England openers have so many moving parts in their techniques, suiting them because the ball isn't swinging. Yeah, good point. हाँ वाकई यार. Very सही बात है. complex batting techniques that we're seeing on display. कॉम्प्लेक्स बैटिंग टेक्निक, और वो बैटिंग में भी कॉम्प्लेक्स में भी आ गए हैं बेचारे, जो इतनी एक्यूरेट बॉलिंग हो रही है शाहीन और अब्बास Yeah. की. Hassan Khan is saying, I'm from Naseem's village. He was in our school. अच्छा, सो ये दीर के हैं, अपर दीर के हैं आई Yeah. बिलीव. क्या We बात batted है very यार. poorly, and Azhar and Asad don't deserve to be in the 11. We already read that out. Yeah. यार इतनी यार ज्यादती तो ना करो यार. Abbas will continue here कौमी into his हीरो हैं यार. fifth over. Edge! And it falls between यार. Gully and Slip. It'll run down to the boundary for 4. Shadab Khan diving forward, and now he's posing like one of his French girls. Whoa. बट यार थिकिश एज गोइंग थ्रू द स्लिप कॉर्डन. वही मैं कह रहा हूँ, सिर्फ 2 स्लिप आपने क्यों रखे हुए हैं यार. और आप थोड़े attract स्लिप आपने पहले इनिंग में भी बात और वो की देखो थी. कितना दूर खड़ा है थोड़ा बाबर आजम आगे आ से जाएं यार. आप. मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि आप कहते हैं यार तू थोड़ा फैल जा, तो एक और बंदा एक्स्ट्रा है उधर खड़ा कर लो. Yeah. बट क्या करें, थिकिश एज. What about this pose from Shadab? यार ये तो बहुत ही खूबसूरत पोज है वाकई. 21 for no loss, folks. If you स्क्रीनशॉट are बना के लगा दो, मीम्स बन जाएंगी 20-30. जो Shadab हमारे will- फेसबुक ही हैं पाकिस्तानी जो है, देयर सो फास्ट. हमने देखा था वो जो हमने एक मीम लगाया था उसका. Yeah. तेरे को मालूम नहीं है तू ही है. that truly made me laugh. 21 for no loss after 9.2. Ooh, Inside good edge. ball. And what is that position? Is that short extra cover? What is that? That's basically like a silly point दे उसको कहते हैं. Well, silly point would be a little bit more square, wouldn't हाँ, silly cover कह लो it? फिर. Silly cover, huh? There's silly cover in place for a boss. I'm not really sure what that's for. A very short extra cover Yeah, basically. yeah. But Rizwan got a very excellent beard game going from a Riz. Pakistan. ये भी disappointing था Pakistan यार. overall beard game. Shadab Khan, Mohammad Rizwan, Very Azhar nice, Ali. very good stuff. Good stuff. Misbah Haq. वो तो straight away सूफी हो गया वो तो. Sakleen Mushtaq. इंजी भाई तो फिर वो क्या तो बात मतलब है. OG beard है. Played away onto the leg side. मार It दो was just यार. the 90s team of Pakistan didn't really have beards, did they? हाँ थोड़ा मूंछ एरा था वो, थोड़ा Yeah. बहुत. रमीज राजा had a very solid mooch. Ijaz Ahmed also had a solid mooch. अच्छा, there's an old school thinking because when I go back, like मैंने भी थोड़ी दाढ़ी तो होती है, मेरी हमेशा ही हाँ. होती है. When I go back to Pakistan, जी. my nana always gives me a very hard time because he अच्छा. goes like तुमने दाढ़ी रखनी है तो मजबी रखो वरना शेव करो. अच्छा, style ये वाली क्या नहीं तरीका रखो. है? ये स्टाइल वाली दाढ़ी क्या चीज होती है? And I'm just like, this is how it flow, bro. What you doing? And so maybe that's the transition now in the thinking because the new boys all have beards. I quite like them. 22 for no loss after 9.4 overs, chasing 277. Yeah, Sarkil actually is silly mid off. That's a good point. Goofy cover, Mr. Aslan कह रहे हैं.
फिजान नसीम को लाओ, मारे इनके मुंह पे इनकी टेक्निक से इसकी काबिल वाकई है। यार हमने बहुत फ्रंट फुट चेक कर लिया, अब इनके बतीसियों पे बॉल टारगेट करो, सही कह रहा है। आई एग्री विद दैट Just gotta be मेंटालिटी। careful. Just gotta be careful not to get away from ourselves here. And Mohamed Abbas ball. moving away from the left-hander. Burns leaving it alone. Some credit. The first 10 overs have been negotiated fairly comfortably by these two, Burns and Sibley. No real chance given to the Pakistanis at all. No real edge being produced either. 22 for no loss after 9.5 overs, target of 277, run rate not out of control, but they're batting Yeah. with a lot of control. भाई हसन खान ने सारी नसीम की जो एज के बारे में जो बातें हैं ना, he's put them to rest. He's like he is surely 18 because I am 20 now and he was younger than me then. चलो खत्म हो गया इशू। Change of pace, straight to the source, as we like to say. Good ball once again, right on off, and Rory Burns solidly behind that 22 for no loss. Dijing has sent us a video. Yeah! Oh my God! Look at that, yeah! That is cricketing porn right there. Oh my God, Wasim bhai, that flick, oof, yaar, लगाओ, foreign share करो यार. Maybe Oh my Junior God. can put this on our chat. 5x rated कलाइयों का उपयोग कर रहे हैं वसीम भाई यार, unbelievable. और वो भी फुल सूटेड बूटेड सनग्लासेस में। बॉबी प्रिंस कह रहे हैं इस तरह की बातें उस वक्त नेशनल असेंबली में हुई थी मुसाद। 90s में फाइन था शेव बढ़ाने पर। ओह रियली? क्या कह रहे हैं? 90s में फाइन मिलता था शेव बढ़ाने पर। अच्छा पता नहीं यार। I don't know, this is Zakaria Khalid. Old school facts. And not Dijing is saying Maulvi 11. I don't think any of these gents are Maulvis, folks. These are very fashionable daddies. Time for plan B, death by spin. I think that's going to be the inevitable conclusion for this innings. The TID 11 बनाया था ना PSL में. TID League, TID Champions League. TPL, the TID League. Naseem Shah into the attack. 5 matches, 14 wickets. The young 18-year-old from northern Pakistan. Up north, as Wasim bhai likes to say. Yeah, I had a chat with him, and he was from up north. And youngster, a very good fielder, I moved reckon. my wrist around a little here or there. And Assad on the comments saying Maulvis can be fashionable. No doubt about it. आजकल के मौलवी तो हैं ही ऐसे. Left alone this time by Sibbers. Wayward start from Naseem Shah. कोई बात Very नहीं wide. यार, लेकिन look at the pace, 85 miles per hour straight away. और आपको पता है थोड़ी सी ठंड भी होती, चिली वेदर हो जाता है, थोड़ा गर्म होने में Bit time nippy लगता है. out. Bit nippy out, as we say. in Bit nippy Manchester. out, Yeah. बिल्कुल. You're listening to ChangeOfPaceLive.com, ball by ball audio commentary of the Pakistan versus England Test series. You are in the midst of the home of Pakistani cricket commentary. And if you are listening over on our YouTube, which I see a few of you are, you can always move हाँ, over to हमारी our वेबसाइट पे आ जाए ना, फिर वो सुकून से आप No, उसको मिनिमाइज भी कर सकते minimize हैं, करते YouTube हैं, खुला नहीं बैटरी रखना कम पड़ेगा. ज़्यादा यूज़ होती है, डेटा कम हाँ. यूज़ होता है. Naseem this time outside off, left alone by Sibley. What's his pace right now? 84 miles per hour, so not maximum capacity at the moment, just warming up. थोड़ा सा परेशान लग रहा है अजहर कि यार कोई चांसेस नहीं क्रिएट हो रहे, बट क्रेडिट टू द इंग्लैंड ओपनर्स, बहुत सॉलिडली खेल रहे हैं, कोई एजेस नहीं मार रहे, दे आर वेरी सिक्योर. Oh, look at that shot from Naseem Shah to Stuart Broad. वीरेंद्र नसीम, अनबिलीवेबल शॉट यार, शॉट मजा आ गया देख के. It's also important for Misbah to remain in Azhar Ali's ear because Misbah has the session by session patience. Yes, कभी-कभार आपको एक सेशन में विकेट नहीं मिलती, अगले सेशन में 4-5 मिल जाती है. यही बात है, यही Just बात gotta है. hang in there. Left alone. और बल्कि ये ही हुआ था कि सुबह हमने इतनी बेहतरीन बॉलिंग कराई थी, लेकिन विकेट नहीं मिली. एक ही वो नसीम की मिली थी. फिर हम आए हैं फ़ौरन लंच के बाद और टी के बाद, तो उड़ा के रख दिया हमने स्ट्रेट अवे. He's running in, bending his back, as Wasim Akram would say. उसमें फैजान क्या लिख रही है माहोगर जो लिख रही है मैं पढ़ भी नहीं सकते. अच्छा, मैं खुद पढ़ लेता हूँ. The Lady 11 with Shoaib Akhtar captain. Easy should make a कलाई 11. वाह यार, ये तो वाकई बात Kalai है. 11 में Let's हाशिम make a आमला, कलाई. वसीम अकरम, VVS Lakshman. VVS Lakshman, Brian Lara. ओए bro. Left alone this time. I think even Virat Kohli with his short jab नहीं over यार, mid छोड़ wicket. यार, Yeah, क्या मेरे कलाई 11 है, तुम क्या उपयोग 11 बना रहे हो? Is it the right time to start panicking? Is asking Asia. No, Asia, it's a little early. I would say नहीं, let's panic after lunch together. फिर स्ट्रेस ईटिंग करेंगे लंच Yes, में. yes. Order some pizza burger and then we'll stress eat पिज़्ज़ों बर्गरों all the way to tea. What a game cricket is. Tea break होती है इस game में सही यार. बात है यार. Unbelievable. हर गेम में होनी चाहिए. मैं तो Unbelievable कहता sport that we're not. The amateurs like चादी break. हूँ. और मजे की बात है, आप अगर पुरानी फुटेज देखो 30s 20s, फुल एक ट्रॉली आती थी, एक बटलर सा आता था, फुल टी सेट आता था सफेद वाला. उस दिन मजर रशीद ने फोटो डाली. डॉन ब्रैडमैन पिकनिक बास्केट, कितनी खूबसूरत बास्केट लाया.
like something my grandmother would have woven with straw. यार honestly ऐसे ही होना चाहिए. We need a throwback to picnic baskets in cricket. Yeah. Hashtag आप देखिए bring back picnic सरफराज baskets. अहमद बैटिंग कर रहे हैं तो बीच में पेस्ट्रियां आ रही है, चिकन पफ आ रहे हैं, केक रस खा रहा है, केक रस खा रहा गोरमे है, के चिकन ब्रेड आ रहा है. Why not यार? कौन परफॉर्म नहीं करेगा? निम्को आ रहा है. For sure यार. 22 for no loss. Good ball. Oh! Has he got a glove? नहीं. No, I don't think so. But that real carry for Naseem Shah this over. Good start for him. Maiden to start off his spell here. And I think Rizwan has been hit on the... नहीं वो helmet मांग रहा है. I think keeper... He's going to come up to Abbas. Or maybe the spin is coming on. यासिर शाह लग तो रहे हैं determined कि मैंने bowling करानी है. दुआएं पढ़ने लगता है. अच्छी बात है यार, पढ़नी भी चाहिए यार. 22 for no loss after 11 overs, a target of 277. Burns 10 not out of 27. Sibley 11 of 40. He's taken the majority of the strike, really battling hard. Adil Momin is saying he's stressing now, a bit early. Abdullah Amin के lunch के बाद panic नहीं करना. हमने लंच के बाद ही गेम मैं आपको गारंटी देता हूँ जब विकेटें आएंगी तो they'll come in bunches. So एक बस हमें बस break through चाहिए, फिर देखना they'll fall like a house of cards. Right then, here we go. I think Muhammad Abbas has an opportunity here. Ooh. Big appeal should be given. This is struck him in front. Give him. He's got the wicket, Abbas. What a delivery that is. I thought it was slightly high, but the umpire being a little bit generous to Pakistan. It's a massive wicket. Burns was looking dangerous. 10 off 28. He's reviewed that and might be a little high, but it might just be umpire's call. England 22 for 1, chasing 277. First blow of the morning. यार वैसे मुझे किसी भी एंगल से आउट नहीं लग रहा था, to be quite frank. But let me take a look at the replay. Really ball, look at that, seamed in profusely. Oh यार ये तो out है यार. I reckon it might just that is PLUMB, plum baby, that's done. छोटा सा तो है रोरी बर्न्स, कौन सा वो लंबा चौड़ा. वैसे आजकल प्लम भी अच्छा है मार्केट में. It's good fruit. मैं तो कहता हूँ फ्रूट मार्केट जाके आप शॉपिंग किया करो. But that's the first wicket for VVS Abbas with the Kalai 11 का हमारा न्यू बॉल बॉलर है भाई. Beautiful. Yeah, let's take a look at this pitching. Outside off, impact in line. No, it's umpire's call, ladies and gentlemen. यार ये कहाँ से umpire's call है? Plum hitting red था यार. ये क्या ड्रामे चल रहे हैं? But Richard Kettleborough, we got the wicket. Kettleborough. And 9 more to go for Pakistan to win this first test. Oh, a little bit of action between Yasser and Sibley. भाई अब तुम फेल हो गए टेस्ट में तो तुम किस लिए चैटर कर रहे हो? तुम निकलो भाई. It's also nice to see some banter because sometimes I feel like the Pakistan team is too nice. हाँ वाकई. ये नई टीम जो है हम कंट्रोवर्शियल नहीं होते, सही बात है. बट अब्बास लग रहा है बिग सेलिब्रेशन. गुप्तिलर सरफराज तो याद है ना? I'm not talking to you. F off. But beautiful bowling. Abbas once again gets the key wicket. And now I wonder how Zainab feels about the umpire's call now. यार लेकिन वाकई रिजवान वाली गलत थी यार. नहीं रिजवान वाली तो गलत थी definitely. Massive wicket for Pakistan. Massive wicket for Muhammad Abbas. पैरामीटर्स है थोड़ा सा रीएडजस्ट हमें करने चाहिए. The silent assassin. The medium pace messiah, as Ahmed Hassan puts it. 22 for 1. It's massive, massive, massive. 22 for 1 after 11.1. Pakistan finally get the breakthrough. Rory Burns LBW to Abbas. He was और बिल्कुल उसका स्पेल ख़त्म ही शायद होने वाला था और उसको विकेट मिल गया. अब उसको एक एक्स्ट्रा CNG बूस्ट मिलेगा कि भाई मैं थोड़े से 1-2 ओवर कराऊं. But now it will be Joe Root most likely coming in and lunch is probably about how much, अभी काफ़ी दूर है तो चलो 40 मिनट का एक टेस्टिंग सेशन होगा उसके लिए नो डाउट. मैंने कहा अगर 10-20 मिनट रह गए तो और नर्वस होगा. बट नो, ही इज़ गोना हैव टू रियली गेट स्टक इन. यार वो क्लिप बार बार नहीं दिखाओ वसीम भाई की यार, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ. लुक एट दोस कलाइज ब्रो. यार अनबिलीवेबल. बट जो रूट अ वेरी फाइन प्लेयर एंड द कैप्टन अंडर सिवियर प्रेशर. So this is the time he has to stand up and make it count. He has a good record against Pakistan. एक बड़ी double century भी हमें मारी भी. But look at that. I'm happy Pakistan got the wicket, but umpire's call is still shit. Okay. And Zakaria Khalid with some choice words. Root की फटी हुई है. Okay, I'll read that this time, Zakaria. And Assad, our local Liverpool expert, आपने इसका show भी किया था. जी. Saying umpire's call is a good rule. It saves us from what's happening in football with offsides. Without umpire's call, you would be fighting over millimeters. Interesting perspective. बात तो सही. कोई सोल्यूशन नहीं है ना. हल क्या है उसको? व्हाट डू यू डू इफ यू गिव इट ऑल आउट? देन टेस्ट मैचेस विल एंड इन 2.5 days. हर चीज़ आउट देना शुरू कर दोगे. दैट्स द प्रॉब्लम ना कि कोई हल भी नहीं है. दे हैव टू. और प्लस उन्होंने अंपायर की इज्जत भी करनी है. Abbas this time straying on the leg side and it'll be driven. Well fielded, Shaheen.
Unbelievable effort there यार. बंदा full spell करा के आया 5 over के and then diving hard. Sergio getting a little NSFW on the chat saying, rubbing my Yasser Shah signed ball for good luck. Yeah. As long as it's, I don't know which ball he signed, but Left. yeah, okay, all right. 23 for 1. कल हमें कमेंट आया था यार लोग अपने घरों में लगा के सही बात. मैंने तो बात रोक दी अपनी यार. मैंने तो कुछ कहा ही नहीं. आपकी सोच ही खराब है मिस्टर मुसाद अफसल. मुझे मत कुछ कहिए. 23 for 1 after 11.2. 23 for 1 after 11.2. 277 needed for England to win. Apologies. 9 wickets for Pakistan. आबिद अली ये कैसे खड़ा है उसके सामने? जैसे स्कूल बॉय नहीं खड़े होते असेंबली में. But Dom Sibley again battling hard. 11 off 40. Sibbers now facing to Muhammad Abbas. A little in and out there. Didn't know where to play or let it go, but he did. मैं अभी बेहतर हो गया. Raza Ali celebrating that wicket over on YouTube. Rory Burns looks like a MAGA supporter. यार इतना बड़ा आरोप. Hillbilly opener. Imagine what it would be like if Americans. if the Bible Belt started playing cricket. And I'm not talking about Pakistani immigrants in Texas. भाई आप सोचो किस किस्म के एथलीट्स निकलेंगे उधर से. बस ये देखो. Well, flicked away. Good shot from Dom Sibley. Poor delivery from Muhammad Abbas. And that might just go all the way to square leg for 4. Abbas, I think that's his first poor delivery of the day. And Sibley has... Of the test, probably. Exactly, yeah. He's been very effective this morning, Sibley. Because he's cashed in on the 2 poor deliveries. One from Shaheen and one from Abbas. मैं आपको वही बता रहा था. बड़ा खतरनाक चिपकू बैट्समैन है. काफ़ी दफ़ा सीरीज़ प्रीव्यूज़ में भी मैं कह रहा था कि this guy is going to really trouble us because he has a knack of getting stuck in. A fine shot there. It was way down the leg side. And he just clipped it. Not jinxing wrist action and balls. The game is wild here. It is. And Bobby Prince reminding him that AZ was talking about honey and fingers yesterday. Honey and Nutella. There's a lot happening. 27 for 1. 15 on 42 for Sibley. Ooh, and back to his typical line and length is Muhammad Abbas. 11.5 overs gone here. Looks like the wicket is getting slower, Faisal Mahmood. थोड़े सा दम निकल गया पिच में से. So it's definitely going to be a spinner's paradise hopefully. थोड़ी सी अभी धूप भी निकलेगी. थोड़े सूरज आएगा. It's about noon in England. So the sun will bake the pitch even more. Day 4 का pitch है. हम देख रहे थे day 2 पे ही इतने अच्छी खासी break मिल रही थी यासिर शाह को, especially in the 3rd session. So he's definitely going to be in the game and maybe even target a 10 for. Get them all out. 27 for 1, last ball of the 12th over coming up. Once again, right on target and right behind it solidly is Sibley. 15 off 44, 27 for 1 after 12. Hanji. News coming in जी. that Rory Burns was trying to shush Abbas while walking off after being dismissed. यार ये कहाँ से इनके पास ये इतनी nerves आ जाती हैं? वो ये ना mega fan, mega supporter है तो वो ऐसे. And Lavs has sent us a photo of her gorgeous cat. क्या बात है? क्या नाम है बिल्ली का? शाहीन तो नहीं? David Visa ही होगा cat का नाम और बाकी Visa नाम होगा बिल्ली. Name drop your cat, Lavs. Let's see what she's called or he's called. या वैसे are you a pet into pets? क्या आपको शौक है रखने का? आप रख तो सकते हो वैसे. Yeah, Go with the cat हमने देखा था. As a brown Pakistani man, I shed a lot of hair already. अच्छा है. So मैं कहूँ ये conversation किस तरफ जा रही है? I'm not sure if a pet is the best idea. नहीं तो बिल्ली ना रखो कोई hairless type. I think when iguana रख लो. I think when I get a little bit more space, I might get a pet. But let's see. Not happening now. 27 for 1. 12 overs gone. Naseem Shah into the attack. Oh, what a delivery! To Joe Root. Beats the outside edge, and you can see Babar kicking himself in the back. It's just unbelievable how that's missed the outside edge. Joe Root under pressure as well. He's been so out of form. And against Pakistan, these players are always dangerous. Look at the way he's seaming the ball. It was coming in off the hand, but then just held its line and beat Joe Root straight up. और अगर Joe Root का हम खिल्ली उड़ा दें इस सेशन में तो definitely England will be cooked. Lavs is saying I'm not the biggest fan of his name, but my parents chose Oreo, so that's what he goes by. That's a now. nice name, यार. For yeah, and gender neutral नाम है, ठीक है यार. And is it a he or a she? Oh, good defense ball there. Once again from Naseem, यार. 87 miles per hour, good pace, good accuracy. यार pace अपनी जगह लेकिन accuracy के बगैर pace कुछ भी नहीं है. And that's the best thing about Naseem. He's only 17 यार. जैसे हमारे वो बता रहे थे जी मेरा class fellow था. He was 2 years below me. Exactly. This guy is phenomenal. Unbelievable accuracy यार. हमने देखा पहले tear away pacers आते थे. उनकी pace 155 होती थी लेकिन line length कोई नहीं होती थी. And dot getting I love cats and I had 2 cats earlier. Cat dad, shout out.
Zakaria Khalid कह रहे हैं इंग्लैंडी ऐसे ही होते हैं. Burns voted Brexit, says Adil Momin. Well left that this time. big seam movement once again. Naseem Shah is making the ball talk off the pitch and getting brilliant carry to Rizwan. So Joe Root भी एक बड़े secure back foot player है. इनको थोड़ा आगे घसीटें, make him reach for the ball, then we might be in business. And Slip Gordon को भी ready रहना चाहिए. But look at that यार, नसीम शाह की bowling देख के ही बंदा दिल खुश होता है. Beautiful action, beautiful delivery stride, beautiful run up. और माशाल्लाह बच्चा भी बहुत खूबसूरत है, तो even better. Okay, I had to throw that in there. Of course यार. Lav's cat is a male Scottish fold, and Yacht's cat's names are Ginger and Garlic. क्या बात है. Naseem Shah this time coming into the right-hander and playing away straight to point for no Ginger and run. garlic यानी जब दाल चावल बनाने हो तो दोनों ginger garlic paste ज़रूरत होती है, तो वो दोनों साथ ही बैठ के बनाते होंगे उसके साथ. Yeah, well, अच्छा, so we have plenty of cat dads and cat moms. It seems like. Yeah, cat. What about any doggos? Shout out to Gogo the cat, जो हमारे World Cup mascot था. He was there with us on every win. She's quite. I think he's whatever it was grown up. Whatever he was. I saw Gogo last week. अच्छा, तब वो बच्चा था, बच्ची थी. अच्छा, I it was didn't know tiny, that. it was a kitten. Yeah, the cat Gogo on Instagram. Give it a follow. Down the leg side, poor from Naseem, and he's going to get a boundary for that. It's Dom Sibley. There's no square leg in place. And again, folks, Pakistan cannot afford to leak these runs. And Joe Root already 5 off 6. 31 for 1 after 12.5. Naseem अच्छा over करा रहा था, but just trying basically, trying to bowl a magic ball into his stumps, straying down leg side and beautifully clipped by Joe Root through square leg. Lovely shot, यार, class batsman. आप loose ball ऐसे नहीं दे सकते, they're gonna put it away. तो we have to get back on those lines and lengths. थोड़ा patient होना पड़ेगा. पिच में अभी तक वो speed निकल गई, वो carry निकल गया है, वो movement निकल गई है. आपको थोड़ी सी effort करनी पड़ेगी. Automatic आपको wickets नहीं मिलनी on day 4. 31 for 1 after 12.5. Target of 277. Naseem Shah now running in to bowl to Joe Root. Back foot defended away onto the offside for no run. Good ball once again. 31 But today for is 1. the last day of the test match, you reckon, Lazy? यार, hopefully अगर यासिर शाह, if he gets into the groove and he skittles them out quickly, 2-3 quick wickets निकाले. फिर हमने देखा उनकी बैटिंग भी कम है. Chris Wokes is batting at 7, तो मुझे लग रहा है कि definitely scene on हो सकता है. Zainab sending in her setup. देखो DMs check out DMs. Let me see. Have you tagged us, Zainab? Because I don't see it in the notifications. And did you just send it now or? Yeah, I can't see. I can't. हाँ, अगर आप DM करेंगे तो हम retweet कैसे करेंगे? Unless you've posted it on your own. Maybe she just tweeted. I've got to. हाँ, check कर लो. Yeah, please just tag us in it, Zainab, and I'll be able to see it then. हाँ, मैं भी break में, अभी तो मैं phone से थोड़ा दूर हूँ. So change of pace की timeline से definitely. Everybody gets an RT and here comes Yasir Shah on to bowl the big unit, the big daddy, the big kahuna. 40 wickets, 217 wickets in just 40 test matches. Unbelievable record he has. And now Yasir Shah, इसको देखना पड़ेगा कि what kind of response does he get from the pitch. 31 for 1 after 13 overs. A big full toss, pitch to 2 full. And Sibley just tucks it away to mid-wicket for a single. Straight away gets off strike. Yeah. You're listening to changeofpacelive.com/matchday, your home of Pakistani cricket commentary. We're bringing this test match to you ball by ball, and hopefully we're in the midst of a history-making day of test cricket for Pakistan. And some, maybe a push-up celebration too. Muhammad Abbas today has been on a good line and length with 81% of his deliveries so far in the entire CricViz database going back to 2006. No opening spell of this many deliveries has ever been this accurate. Crazy यार. He's literally a real यानी life. मेगरा भी उस database में था. 2006-7 तक तो वो खेल रहा था. आसिफ भी था. Philander भी था. Unbelievable stuff. यार. Off the back foot, played away off to the offside from no run. Yasir Shah is into the attack, I think. Yes, he is. And तो सिबली की गेम अब ये था कि वेस्ट इंडीज़ के पास कोई सीनियर इस टॉप लेवल स्पिनर नहीं था. ओनली हैड रॉस्टन चेस फॉर मोस्ट ऑफ दैट सीरीज़. तो इंग्लैंड का अब एक एग्जामिनेशन इतना सख्त नहीं हो चुका है स्पिन के खिलाफ इस समर में. सो दिस टाइम यासिर शाह विल फील लाइक ही हैज गॉट देम बाय द थ्रोट. Yasir this time tosses it up, defended away by Dom Sibley for no run. Ali Chaudhary joining us. Salam boys, hope you're doing great. So far so good. Ali. So far so Ow. good. The wickets are coming through. So 33 for 1 after 13.3. Sibley facing Yasir Shah.
go full Clipped length away once off the again. pads and should come. थोड़ा through सा for a ओवर single. करेक्ट करा है. आई थिंक he'll find his groove eventually. थोड़ी सी पीछे कर ले, then he's gonna really be in business. But पीछे कराने से बेहतर है कि आप बॉल आगे करा दो. In my opinion, that's always the better strategy. 34 for 1 after 13.4. Target of 277. Oh, playing that on the back foot. That's dangerous from Joe Root. यार कितनी बुरी शॉट इस बंदे ने खेली. तुम कैप्टन हो यार, 270 चेस करे और तुम लेग स्पिनर को चौथे दिन के पिच पे तुम जाके बैक कट कर रहे हो. तुम बेवकूफ़ तो नहीं हो. एंड दैट वाज एग्जैक्टली द वे ही गेव हिज विकेट इन द फर्स्ट इनिंग्स. बट वेरी अनलकी. पाकिस्तान एज लग जाता है. रिजवान हैड गॉबल्ड इट अप. And Rizwan's keeping been very good compared to his counterpart. He's been phenomenal and well left this time by Joe Root. 14 overs gone, 34 for 1. AZ Khwaja, tell me about last night. How do you feel about Juventus being kicked out of the Champions League? यार आपने अगर वो पेनल्टी डिसीजन देखी, उसके बाद ही मैंने हिम्मत हार गया. मैंने कहा दिस इज लाइक sabotage. But you did get 2 goals after that. We did, thanks to Cristiano Ronaldo and his greatness. But yaar, I just don't like our coach. Sorry, I'm not a fan of his. I feel like he cannot motivate the superstar players. They don't respect him. और उसकी management skills उस level के नहीं है. हम जो title भी जीते हैं, मर के जीते हैं. डिबाला और रोनाल्डो ने हमारी टीम You are spoiled for choice though. I mean, you're complaining about a title win. यार इट इज़, जब आप टाइटल विन तो हमें पता था बाय डिफॉल्ट वाज देयर. हम चैंपियंस लीग जीतना चाहते हैं और अब रोनाल्डो भी एज 35 हो गया. कितनी देर खेलेगा? सो वी हैव अ वेरी स्मॉल विंडो. मे बी नेक्स्ट सीजन माइट बी द लास्ट डे ऑफ दैट विंडो कि भाई हम चैंपियंस लीग जीत पाएं. Abbas to continue here, an Abbas Yasser partnership, a Naseem to continue here. अच्छी bowling करा. But interestingly enough, a lot of comments that I was reading from the Juventus fan base yesterday were saying that Sarri and Ronaldo, who are basically the two biggest people at your club right now, arguably, their styles and their personalities are complete opposites, because Sarri is basically a philosopher of football and Ronaldo is more of an action man. Exactly. He doesn't think, he just does. Exactly. लेकिन फिर stats कहते हैं Ronaldo has scored the most ever goals for a Juventus player in one season. फिर he scored like 35. Yeah, of course goals. he's तो फिर बंदा सोच रहा है ना कि do they really clash or do they not? Beautiful what a delivery. ball, Naseem Shah, यार. Unbelievable pace and bounce, and how did that not catch the edge? Even Dom Sibley is like, that was too good for me, buddy. Honestly, Sibley was left smiling almost sheepishly after that delivery, yaar, because he knows that he has no right being here anymore after that absolute. यार आपको याद है कल जो partnership लग गई थी सुबह या lunch के बाद, and Naseem Shah bowled that really good bounce delivery to dismiss Pope. अगर आप पीछे से delivery देखें ना, बहुत ज़बरदस्त. That's an incredible ball. 34 for 1 after 14.2. Naseem now coming in this time, straightening a bit. लेकिन एक बात क्रेडिट देनी चाहिए सिबली को, वो भी दलेर प्लेयर है. He doesn't shy away from the responsibility. उसने कहा मैं बीट हुआ हूँ इस बॉल पे, but next ball he's right there on the front foot once again. We saw him against the West Indies. He was really getting stuck in there. I think ये इसमें डेफिनेटली फ्यूचर है कि इनको पक्का ओपनर मिल गया. एथरटन टाइप जो चिपकू सा है, वड़ू सा है. Nuggety as they like to say. बिल्कुल सही कह रहे हैं. 34 for 1 after 14.3. Joe Root out there, 6 off 10 playing. He split a ridiculous shot of Yasser Shah and is still around to bat the rest of the day. Good defense again. Good bowling, good bat. This is a good contest right now between Sibley and Shah. मुझे लग रहा है कुछ होने वाला है इधर उस तरफ या उस तरफ. Either Sibley is gonna get a few boundaries away or Naseem will get his guy. But अगर आप पीछे से delivery देखें, Ali Chaudhary is quoting me without context. Scandalous. And Naveed Fakhar is saying our Kuwaiti leg spinner Yasser is back, so am I. यार ये leg spinner का groups कितना tight होता है आप देखें, वो सिर्फ आते ही leg spin देखने के लिए. सही बात है यार. 34 for 1. Because it's such a technical art और इतने fascinating art है, इतनी variations भी होती हैं उसमें. Yeah. So you know. This is a bumper now from Naseem Shah getting underneath it. Dom Sibley doing well to do so. 34 for 1. Will you not discuss Real Madrid, Mini Madrid? Yeah, it was यार good. वो बेचारे तो क्या उनका स्क्वाड ही कोई नहीं है. हज़ार्ड ही अकेला. I think Varane made a big howler or something. 2 howlers, 2 mistakes, 2 goals. Rafael Varane, who's actually usually they lost at home, तो फिर उन्होंने इत्तेहाद में जाके क्या कर लेना था बेचारों ने. But again, Varane is one of the best going around. So if he makes mistakes very rarely, so I guess we'll have to let यार he's literally won everything in his career and he's only like 25, 26, including the World Cup. मैं तो कहता हूँ उसकी मोटिवेशन क्या है, तुम क्यों खेल रहे हो, छोड़ दो यार, कुछ और करो लाइफ में. Sibley now defending this away to the offside for no run. मतलब बच्चा 4 चैंपियंस लीग जीत चुका है, 3 तो कंफर्म जीत चुका है, वर्ल्ड कप जीत चुका है,
and before the age of 25 I would be like, okay, I'm money in the bank, I'm cashing in. Asya is asking. वैसे कोई WWE देखते हैं आप? देखते हो अभी भी मुसाद अफजल? I haven't watched it in like 15 years, man. अच्छा अच्छा, It's been a while, yeah. Sibley's Asya is asking Sibley बॉल खेलने से पहले क्या कर रहा है अपने बैट के साथ? He has got that हाँ, ये fidgety. कोई बाहर निकालता है जैसे क्रेन के, वो अपना मुंह नहीं निकालती फिर वापस अंदर लाता है, अजीब सी इसकी ट्रिगर He's मूवमेंट. got that fidgety stance before during the बट ball इट run. वर्क्स फॉर हिम. हम देख रहे हैं हमसे आउट ही नहीं हो रहा वो, कितनी देर से हम लगे हुए हैं. 34 for 1 after 15. Yasir Shah continuing, beautiful ball. Good ये flight, area good है. flight from Yasir as well. बिल्कुल, this is the spot he has to be for the next 85 overs. इधर से आपने हिलना नहीं है, आपने पूरे दिन इधर ही बॉलिंग करानी है. Just drifting in with your arm, middle and leg. You're accustomed to George Dobell or Dobell, whatever he is called, his writing on Cricket Info. You know who he is, right? Yeah, of course. He wrote something yesterday. I want to talk to you about क्या कह रहा था? about Jofra Archer, because we always see this bias, especially about expat or immigrant cricketers जी, in the जी. English fraternity. And he said Stokes bowling yesterday is not a good reflection on Jofra Archer. Why can it not be a bad यार, वैसे reflection on बात- Jimmy Anderson, who's equally poor yesterday? नहीं, लेकिन जोफ्रा की खुद अपनी कोट है ना कि दिस इज़ नॉट द पिच टू बेंड योर बैक ऑन. तो फिर स्टोक्स जो अभी इंजरी से रिकवर कर रहा है, वो बॉलिंग भी नहीं कर सकता था इस मैच में. उसने आके 6-7 ओवर डाले. तो जोफ्रा पे वाकई ये तनकीद थोड़ी बहुत बनती है. अब हर चीज़ तो हम उस एंगल से नहीं Context देख में नहीं सकते देख ना कि भाई वो नॉन वाइट क्रिकेटर का तनकीद कर रहे हैं. This time good again. This time slightly too full from Yasir Shah, driven from Joe Root into the offside for a single. But it is interesting because I start to feel the way the English press and the way even the surroundings around Jofra Archer, you sometimes feel his English career is not going to be too long. He might just end up being a T20 mercenary. वाकई वाइट बॉल क्रिकेटर बन जाए. यूर राइट. स्पेशली जितने टेस्ट मैच क्रिकेट ये लोग खेलते हैं, साल में 12-12 टेस्ट खेलते हैं. He's easily going to be picked up by the PSL, the IPL, 100% यार, CPL. 100%. 15 वो तो चाह रहे हैं कि वो अवेलेबिलिटी दे, because he's a star. Good break for Yasir Shah, just too short there though. And he literally achieved for them what they never could, win a World Cup. उसके बाद उसके लिए क्या pinnacle क्या रह गया? Ashes जीतना. And even if they want to, they can't change that. It took a man from Barbados for England to win a World Cup. 100%. That is a fact. Not taking anything away from Ben Stokes. Good ball once again from And Yasir. Sibley, good defense. He's now been out there for 55 deliveries. 16 overs gone. England 35 for 1, 277. This partnership slightly now growing. थोड़ा सा बिल्डअप हो रहा है, बट जो रूट अभी तक वेल सेटल नहीं है. ठीक है, थोड़ा सा हमें पेशेंट होना पड़ेगा. ऐसी कोई बात नहीं. ज़ैनब इज़हार करेंगे अस्सलाम वालेकुम. पेसियात गटेड टू मिस आउट ऑन COP कमेंट्री. मनहूस KE प्लस PTCL प्लस बारिश. दैट इज़ अ ट्रिपल थ्रेट मैच. बेचारे जो गन थ्रेटन आउट चेंज ऑफ पेस फैंस, बट नो प्रॉब्लम. ऐसी कोई बात नहीं है. ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल इफ़ यू आर हियर राइट नाउ. गोपी मियाँ कवाल कह रहे हैं जोफ्रा really deserves a little criticism, has not been good this match. You're right, but even then पहली इनिंग्स में वो 3 विकेटें ले गया था to quickly shuffle out our tail. However, he's given no wiggle room to struggle. अच्छा, ये आप शेरो शायरी पे आ गए गोपी मियाँ कवाल. Good ball once again, right on off stump at good pace from Naseem Shah. अच्छा स्पेल करा रहा है, अच्छे एक्यूरेट बॉलिंग. वो भी यार सिर्फ अपने 3.1 ओवर्स ओनली गिवन सिंगल 4 रन्स. यार ज़बरदस्त बॉलिंग. Old school WWE viewer, Mr. Arsenal. And Musa Singh, he still watches WWE. Jofra Archer really deserves a little criticism. Has not been good this match. Yeah, fair enough. England 35 for 1 after 16.1 मैच. एक थोड़ा सा होल्डिंग पैटर्न में है. हम अटैक करें और वो ब्रेवली डिफेंड करें, तो beauty of Test मैच cricket, though. Naseem now. This is down the leg side. Good shot from Joe Root, presenting the face of the bat. And this is something that I think Mohammad Rizwan, Azhar Ali. बल्ले की शक्ल दिखा रहा था. Exactly, and we saw with Rizwan and Azhar yesterday, they weren't doing that. Even when they were playing on the leg side, they were closing the face of the bat too हाँ much. बिल्कुल लीडिंग एज. और बार बार it just shows कि वो फॉर्म में नहीं है और कॉन्फिडेंट नहीं है. गेटिंग ऑन द फ्रंट फुट, they're just not feeling themselves. अपने उनके मसल मेमोरी में थोड़े से उनको इश्यूज आ रहे हैं. जहाँ वो एम कर रहे हैं उधर बॉल लग नहीं रहा बैट पे. Sarosh immediately sticking up for some English immigrants, saying Ben Stokes, who is also from New Zealand, so a man from Barbados and a man from New Zealand. Yeah, right on the money there. और जेसन रॉय भी साउथ अफ्रीकन है, तो उसने भी बहुत कैरी किया था बाद में इन द लोअर सेकंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट. और हम भूल रहे हैं इंग्लैंड कुड हैव बीन वेरी इजीली नॉक्ड आउट. दे हैड टू विन 3 मैचेस इन अ रो टू मेक द सेमीफाइनल. Good defense again from Sibley. And Amar Raja saying, भाई जी हालात टाइट हुए पड़ी है. नहीं यार, क्या टेंशन है. 17 ओवर में सिर्फ 36 रन पड़े हैं यार. 2 का रन रेट चल रहा है.
आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हो? यानी इस स्पीड पे इंग्लैंड को 130 ओवर बैटिंग करनी होगी यार. ऐसे आप Asia saying 277 come hai runs yaar. Yaar, Pakistan fans are always so worried. You know what's interesting? If this same situation was West Indies versus England, all Pakistan fans would have been saying that there's no way England are going to win this. But because it's Pakistan, it's always yaar ye bahut mushkil ho gaya hai. But I understand that. I feel the same way to a certain extent. Naseem Shah running in this time. Full edge! यार ये slips आगे करें आप यार. This is the second edge that Naseem has produced and it hasn't carried to slips. थोड़ा आगे आके खड़े हो जाओ यार अगर बॉल कैरी नहीं हो रही यार. आप कीपर से भी पीछे खड़े हुए हो. नहीं, फर्स्ट स्लिप पीछे ही खड़ा होता है, लेकिन वही बात है कि इट्स बेटर यू गेट हिट इन द फेस रादर इन द बॉटम ऑफ योर फिंगर्स यार. नहीं यार थोड़ा आगे आके खड़े हो यार. दिस इज frustrating. Genuine edge था because यार. Naseem has done so well. Naseem has done so well to produce this result. And if you don't have your field positioning right, this is like 90% काम करना जो 10% रहता है वो आप सही नहीं करो. This is, I think it's poor captaincy from Azhar and he really needs to look at it now. यार अब अजहर तो स्लिप कॉर्डन में नहीं है तो उसको ब्लेम करना गलत होगा. स्लिप कॉर्डन में नहीं है पर पोजीशनिंग तो वो सेट करता है. ये कीपर बाबर और असद की रिस्पांसिबिलिटी है यार, हम अपनी प्लेसिंग ठीक करें. Oh, how was that? They're going down the leg side. It's not going to be given. यार वो इतना क्रॉस आया था, रिव्यू ले लो मैं कहता हूँ. Too high as well, I reckon. I don't think it'll be reviewed. ये है भी लंबा चौड़ा बगैर सिंपली. But good bowling, Naseem Shah creating opportunities, creating pressure, and getting the edge, hitting them on the pads. I think it's a matter of time. Let's take a replay यार. कैसी क्या बात थी इस बॉल में? Oh, big inside edge. अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं. अली चौधरी सिंह बॉयज वैसे बस मेरे ख्याल से टेंशन ले ली जाए थोड़ी बहुत. हालात टाइट ही कर रहे हैं यार. इट्स प्रीटी टफ आउट देयर राइट नाउ यार. जब तक आखिरी विकेट नहीं गिरती तो ऑफ कोर्स हम टेंशन लेते ही रहेंगे और उम्मीदें हैं कि यार आज ही सारा काम तमाम कर दो अंग्रेज़ों का. लेकिन दे आर फाइटिंग हार्ड. क्रेडिट टू देम यार, काफ़ी फाइट दिखा रहे हैं. स्पेशली मिस्टर आसिया सिंह कितने बार बचेगा. शिवली लक इज नॉट विद अस टुडे. Good defense again यार. एक तो ये रोकू बैट्समैन कितने जहर लगते हैं, शॉट भी नहीं मारते कि बंदा फील करे कि यार कुछ होने वाला है. Only 5 runs given away by Naseem. Excellent bowling. 36 for 1 after 17. And Yasir Shah has been brought into the attack for a couple of overs. Nothing happening just yet, but something will definitely happen. Look at that brilliant catch by Rizwan to get Joe Root in the first innings. इधर भी वही शॉट खेली उसने. Yeah. तब भी बाज नहीं आया. Amar, what field positioning are you referring to for Sibley by Azhar in the last Yasir over? Tell us exactly which positions. Yeah, Gopi, you don't get chances like that, which is why I was so frustrated about the field positioning. Amar also saying, understand for Root you can have open defensive field, but Sibley is not going to hit you for the big sweep. I don't. Again, you have to strike a balance here because Pakistan don't have 400 runs to bowl to. 277 is difficult, but not unassailable. Good delivery from Yasir, getting some good flight, pitching it up. Another dot delivery. Yasir only giving away 4 runs in his 2.1. So, meanwhile, the edges are being produced, the runs are being dried up. Pakistan are definitely not out of this game, or not even like they're still in the ascendancy, I would say. Good break there from Yasir. काफी डस्ट और उछाल मिल रहा है. And Asia saying Root is itching to play that same shot again. I don't understand. He's a back foot player ना, तो उसकी natural tendency है वो front foot पे ज़्यादा आते हैं. But as a veteran batsman, you've got to do better. सही बात है. Root 8 off 18. England 36 for 1 after 17.2 overs, chasing 277. Yasir Shah into his third over, bowling to Joe Root, the English captain, and he drives it away to the cover for no run. And again, we mentioned this yesterday, and I was going through our cricket on Reddit the other day, and the top comment was exactly what we talked about how we have to appreciate batsmen more when they adapt their ability, when they adapt their style for their team, rather than batsmen that just constantly keep playing their game. बिल्कुल सही बात है. Good shot from Root, this time beating the infield. इसलिए तो स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, केन विलियमसन, दे कंसिडर्ड द फैब फोर. वो किसी भी सरफेस यार आप किसी भी मैच कंडीशन में बात कर रहे हैं. आप जितना भी आप सचिन की बात कर लें, आपको याद होगा वो जिसने एक पूरा दिन, एक पूरी इनिंग खेली थी विदाउट ड्राइव खेलने के बगैर. अब सचिन ड्राइव नहीं खेलता तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप सचिन से बड़े प्लेयर तो नहीं है ना. हाँ सही कह रहे हो. आप आबिद अली को देखें, आप किस तरह आउट हुआ है. बिल्कुल जी, हम अग्रेसिव प्लेयर हैं. आप अग्रेसिव प्लेयर, आप टेस्ट मैच ओपनर हैं यार. आप इतनी तनकीद कर रहे हो. अभी उस बंदे ने 100 मारे हैं यार. 2 क्या यार हो गया? मुझे तनकीद इस बात पे नहीं होती आप आउट हुए हैं. मुझे तनकीद इस बात पे होती है आप आउट हुए किस. हाँ, शॉट सिलेक्शन तो दैट्स समथिंग यू ऑलवेज कंट्रोल. और जब आप गलत शॉट खेलोगे तो ऑफ कोर्स आपको डॉम बेस पे आउट हो रहे हो यार. मतलब वो इज्जत भी होती है यार. 17.5 ओवर्स गॉन.
down the track this time by Sibley, getting to the interesting pitch's delivery. shot. I haven't seen him use That's his feet. smart though, because again, if he doesn't read that, he's in big Exactly. trouble. 18 But, overs gone, 37 for 1. आपको याद होगा रिजवान ने टेस्ट डेब्यू पे हाँ पहली बॉल की खेली हुक थी, शॉट मार के आउट हो शॉट गया फाइनल है। पे आउट हुआ था। उस वक्त मुझे इतना तब चढ़ी थी, मैंने कहा इस बंदे को कभी जिंदगी में टेस्ट मैच And we were battling to save that match, Yeah. यार. I remember watching it. I said, never ever give this man a test match again. But I was wrong because he's definitely अब talented. उसको तो वाइस कैप्टन बना दिया था उसके बाद इन्होंने. No, obviously उस वक्त tempers high होते हैं. But honestly, in test match cricket इस तरह आउट होना, it's सही बात है, आप ridiculous. बिल्कुल सही कह रहे हो इसमें. लाइक यू कंट्रोल, जब आप सेट हो गए हो, अच्छे चौके मारे, जेम्स एंडरसन को और इतने प्यारे यही तरीके से खेल रहे थे. यही प्रॉब्लम मुझे मोहम्मद हफीज से भी रहती थी. I thought हफीज तो यार, Hafeez was actually a fairly talented हफीज तो बस stroke एक maker. वेरी टैलेंटेड यार, कोई शक ही नहीं है इस बात में. But as Naseem Shah continuing here, good drive from Joe Root. Good fielding there as well. Well from done, captain. mid-off. क्या बात Azhar है Ali भाई. doing the hard work. सेटिंग द टोन इन द फील्ड. Yeah, quick single taken. आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारा वर्ल्ड कप 2019 का मैच, जी जी जिस तरह आउट हुए थे मोहम्मद यार, हफीज, वो मैच जीत रहे थे. हफीज ने लिटरली हमें 3 मैच हराए हैं उस वर्ल्ड कप मिड में. विकेट में आपने कैच दे दिया. अगेन दैट्स एरन फिंच के खिलाफ एरन यार. फिंच के खिलाफ, पार्ट टाइमर से भी पार्ट टाइमर, जो पार्ट टाइमर के पार्ट यार वो पूरी वर्ल्ड कप ही उसने ये गंद मारा है. केन विलियमसन के खिलाफ आउट हो गया था उस न्यूजीलैंड वाले मैच में. और अफगानिस्तान के खिलाफ आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली हाउ ही गॉट आउट, Yeah. उधर भी कोई चीप तरीके से ही आउट हुआ होगा. Yeah. उसने बहुत झक मारे इस वर्ल्ड कप में, लेकिन इतने ढीठ और बेशरम है ये, अभी भी खेलना चाहते हैं यार. और इनको लाइफ लाइन मिल गई है कोविड की वजह से, 2021 तक ये खेलते रहेंगे. Yeah. यानी वही है ना, इन्होंने क्रिकेट अपनी जीना मरना बना लिया. ये एज अ देखिए स्पोर्ट नहीं आपने लेते खेलना है, आप खेलें. विद द प्रॉब्लम द इशू यार. अपने घर पे खेलो, पाकिस्तान टीम को तो नहीं आप हॉस्टेज ले लो यार. वो भी दोस्ती है. और जब भी कोई प्रॉब्लम होती जी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा हूँ, कहते हैं नहीं नहीं आप बैठ जाएं, आप खेल लें, और फिर इनको खिला देते हैं. 38 for 1 after 18.1. Naseem Shah bowling to Dom Sibley down the leg side. Let's see some अपने of ही the, यार पहली विकेट नहीं आ रही और आपने गरम कर दिया हफीज का नाम लेके. अमर- ट्रिगर कर अमर दिया. राजा हालांकि सिंह- वो मेरा लाहौर कलंदर टीम का एक वाइस कैप्टन एक किस्म का है. यार But सच तो सच होता है. the लेकिन frustrating thing about Hafiz is because like I said he is a good stroke player. बहुत अच्छा है, मतलब अट्रैक्टिव बैट्समैन है. पिछले आई थिंक 10-15 साल में यूसुफ के बाद उसकी गेम प्ले बहुत ही खूबसूरत है देखने के बाद, बाबर Yeah. से पहले. Zakaria लेकिन Khalid is saying वही है, उसका स्कोर ही नहीं करता था कभी. ऑलवेज फ्लैटेड टू डिसीव, प्रिटी 30s, ग्रिटी 20s, और जब डेल स्टेन जैसा क्लास बॉल आता था उसकी फिर वो पखाना निकल जाता था उधर ही क्रीज पे. Naseem now coming into bowl. Dom Sibley facing. Well left Well outside bowled, of offside, Naseem. and it's 38 for 1 after 18.2. Let's take a look at some of the comments. Amar हाँ, Raja पढ़ो saying, यार. bruv, if no pressure on him, they will settle down because the guys can chew up loads of deliveries. Yeah, good point. Ali Chaudhary with a metaphor of Yasir Shah और मेरी ex की swing एक जैसी है. अब ये आप मुझे समझाएं इस बात का क्या मतलब या है. ना ही समझाए मुझे या ना ही लगता है. समझाएं, आप देख रहे हैं, अगर आप समझाना चाहते हैं समझा दें. You shouldn't let the guy think we are afraid of your big shot. Amar Raja is very persistent about that defensive field against Dom Sibley. Musa saying बेस्ट भी खेलने आया था भाई. डॉम बेस्ट पे आउट हो रहे हो तो क्या मतलब यार, जिस तरह आउट हो रहे हो उसकी भी प्रॉब्लम है. हाँ. Adil Momin is saying we need a wicket before lunch, and Zainab Razvi is quite optimistic as Naseem continues. Good ball, He's saying, good channel. कोई बात नहीं यार. She's saying कोई बात नहीं यार, no tension. England have lost the plot post lunch every day, but the Bavarchi is on Pakistan's side. 5 to 6 wickets to fall inshallah post lunch. सही कह रही हैं. जमाल गोटा मिला देगा आज तो. ओ यार ये What देखो a- इसके अजीब से. Oh, look at that. तब भी से बॉल, वसीम भाई would never do that. He would never misplace the ball. हफीज इन फुल फ्लो, बाबर हटा के. इतना खूबसूरत प्लेयर कोई भी यार हमारे आपको पास याद है नहीं जब ये सुपर स्लिम हो गया था शेन वॉर्न, और फिर मोटा हो गया, ये पता नहीं क्या क्रिश्चियन बेल वाली हरकतें करता था, मोटा पतला. Yeah. 38 for 1 after 18.4 overs. Naseem Shah bowling to Dom Sibley, pairing on 17 of 64. Root 10 of 21. अच्छा बैटल, अच्छा Shot तगड़ा of Sibley, मुकाबला. beautiful drive, and it'll beat the another edge. gully fielder, and it'll go for 4. Was that an edge or was that हाँ placed? एज था यार, मतलब उसने एम कवर ड्राइव की थी और वो गली के पॉइंट पे से चले गई, बट बॉल वाज अ बिट वाइड, सो ही डिड गो चेसिंग आफ्टर इट. लुक एट दैट थिकिश, दैट डेफिनेटली अ थिकिश एज, बट लक नॉट फेवरिंग पाकिस्तान हियर. Pakistan. तो थोड़ी सी एक पार्टनरशिप आहिस्ता आहिस्ता फिर डेवलप हो रही है, लुक गोइंग बिटवीन गली एंड पॉइंट. बट वही बात है, हमने बॉलिंग तो आई डोंट थिंक ओवरऑल 90% हमने बहुत अच्छी बॉलिंग की है आज दिस मॉर्निंग. I think there's been जस्ट नीड टू बी पेशेंट. there's been a loose ball after every 6 or 7 overs, which is Very honestly rarely, very very natural. rarely. 18.5 overs, 42 runs. The run rate's not really too. आई थिंक 19 good. ओवरों में मैक्सिमम कितने 5 चौके मारे इन्होंने या 4 चौके मारे. उनमें से edge भी हैं. एग्जैक्टली.
Sibley 21 off 65. But again, this guy is that nuggety opener that will stick in. Good defense from him this time to the outside. Ooh, good stuff from Naseem. Naseem. Little football action from Naseem there. यार just if how much time is left to lunch? 10 minutes. मैं तो कहता हूँ शदाब को चांस दे दो. He might produce something out of nowhere. और आपको याद होगा शदाब ने आउट भी किया था जो रूट को CT17 उस वाले दिन में, और एक्चुअली उसने वर्ल्ड कप में भी आउट किया था जो रूट को. आपको याद है वो जो कैच हुआ था वहाँ आपका शॉर्ट थर्ड मैन. Yes. So when England was taking the game away from us, so he has the wood over Shadab. I would back him to do something here. But Yasir, how many overs do we have? 3 overs before lunch, I think. I think spin लगी हुई तो 3-4 ओवर ये घसीट ही लेंगे कहीं ना कहीं से. 42 for 1. Yasir Shah into the attack here. 19 overs gone. Pakistan set England a score of 277 to chase. Little recap of the test match. Pakistan did bat first, got 320 plus with courtesy a massive Shan Masood 100, and then successfully bowled out England for around 220, getting a lead of 100 plus. And in the third innings, Pakistan were back to their usual selves. Capitulated for less than 200, but still got a substantial lead. Thanks to Yasir Shah blitz 33 of at the end, definitely. So and then this morning they've got the wicket of Rory Burns after some hard work in that off-stump channel. It's been a grind, इसमें कोई शक नहीं है. And Yasir Shah now tossing it up. Oh! I think that's a little bit too full. थोड़ा full डाल रहा है बॉल. Listen, Joe Root's not looked convincing at all. हाँ बिल्कुल. So there's definitely an opportunity here. और यासिर शाह ने काफ़ी दफ़ा आउट भी किया हुआ टेस्ट मैचेस में. I remember in 2016 he got him playing that ridiculous slog sweep that produced the collapse for England. So he'll be wary of that. Oh, full toss, release shot from Joe Root. You didn't need to do that, Yasir. I think थोड़ा सा premeditated था कि फिर full डालेगा और मैं पैर निकाल के इसको एक sweep मारूंगा. Became a full toss. Needs to be careful here. Again, Joe Root, if he gets going, he's probably the best batsman in this English side. Definitely the best player of spin in this side. इसमें तो कोई शक नहीं है. Good shot there from the captain of England. 46 for 1 after 19.2. Root 40 not out of 23. तो ठीक है, तेज मतलब ज़्यादा स्लो नहीं खेल रहा है सिबली की तरह, अच्छी स्पीड पे खेल रहा है. But Yasir Shah needs to hit his lines. Much better there. Is that pad first? No. It's the bat. No real appeal from Pakistan. 46 for 1. कह रहे पैड पे लगी थी, कहता नहीं दफा हो जा. I'm sure they're conversing in inside edge. Conversing in Pashto. हाँ, I think Joe Root वो भी कहीं लोअर दीर का ही है. Joe Root? हाँ, Joe Root. वो तो कह रहे हो पश्तों में लगे हुए. No, I'm talking about Yasir and Rizwan. अच्छा. Off the back foot. जो रूट को भी जितनी देर वो बैटिंग कर पश्तो सीख गया होगा इतनी. 46 for 1 after 19.4. चिढ़ते हुए again on the back foot there, Joe Root though. नहीं, ये है ही बैक फुट प्लेयर. ये he is not comfortable with. ये है बैक फुट प्लेयर. नहीं, वाकई literally he is a back foot player. ये है ही बैक फुट प्लेयर. गाली नहीं है. Yasir Shah this time. Ooh, on the front foot this time. Joe Root get a single to cover, extra cover. यार, when Yasir Shah was in his prime and when he was in his full groove, ऑटोमेटिक इसकी लाइन और लेंथ परफेक्ट होती थी. दीज डेज इट टेक्स हिम अ बिट ऑफ टाइम टू गेट. तो कभी हमने देखा था डे 1 पे डे 2 पे बहुत शॉर्ट बॉलिंग करा रहा था. फिर हमने देखा थोड़ी ओवर पिच कर रहा है. सो आई गेस मे बी इट्स जस्ट वेयर एंड टेयर और जस्ट ही इज वर्किंग ऑन अ प्लान. Sarosh is saying Warren was dating Elizabeth Hurley, so he had to lose weight. Now she's ditched him, so he's back to his fat self. हाँ वाकई यार. Wow. On the back foot again is this time it's Dom Sibley doing that. 20 overs gone. And it's 47 for 1. I would say the odds are the honors are 50-50. 50-50. अगर एक ही विकेट पे रहते हैं, then I think it's an equally divided section. You're right. And here comes Shady, the star boy, the Islamabad United captain. Yeah, there you go. Amar Raja asking if Shadab should bowl an over before lunch. He's gonna get one now. अच्छा है यार, लगा के चेक करो, इसमें क्या बुराई है. थोड़ा सा हमारे फास्ट बॉलर्स को भी ब्रेक मिल जाएगा. काफ़ी देर 1.5 घंटा वो लगे रहे हैं. Shadab Khan has 14 wickets to his name in 6 test matches, average 34, so definitely he can improve on that. Best of 3 for 30. आज हमें 3 for 30 देते तो शेडी क्या ही बात है. That will be a much needed boost. अच्छा player है. He has a future. He has a leadership future as well for Pakistan. But it's all about him refocusing his priorities. क्या मैं bowler हूँ, क्या मैं batsman हूँ, इन चक्रों में वो आजकल पड़ गया है. I still feel that his strength is his leg spin bowling. बैटिंग इज़ जस्ट अ बोनस. आप करते हो, आप करो, लेकिन अपनी लेग स्पिन नहीं लूज़ करो और उसको ज़्यादा वेराइटीज़ पे ज़्यादा आप अपने ना वैरायटी बॉलर नहीं बनो. ठीक है, गूगली आपका एक बहुत ज़बरदस्त वेपन है, बट यू नीड टू इम्प्रूव द कंसिस्टेंसी ऑफ गूगली कैन नॉट बी योर स्टॉक बॉल इन टेस्ट क्रिकेट.
Good drive. This one straight to the man and cover for no run. Needs to be careful about that, Shadab And Khan. like we've mentioned previously in the test, कि उसको फवाद को as a batsman before him select किया है, Yeah. तो काफ़ी confidence दिया और काफ़ी faith दिया इस management के यार हम तुम एक test cricketer समझते हैं और तुम भी उसको respect करो इस बात को. Ooh, this is a good shot and good delivery. Root going back and playing it to short fine for a single. हो जाएंगे एक और को. See, we always have some commenters and some participants that are very, very cautious and very pessimistic about our अच्छी बात है chances. यार हर बाबर And आजम she's के- saying I'm हर बाबर आजम के लिए एक अजहर अली भी चाहिए होता है. comfortably saying we are going to lose. नहीं यार ऐसे क्या हो गया यार इतनी जल्दी आप हिम्मत हार गई अभी तो पहली सुबह है यार अभी तो हमारी आंखें नहीं खुली सही तरह. आप देखें जब हम आते हैं लंच के बाद थोड़े दही पराठे फोड़ने के बाद हम इनको उड़ा देंगे. हर दिन यही होता है आप देखना हमारे साथ भी यही हुआ था. Shadab tosses this one up and defended well by Dom Sibley for no run. This is Shadab's first over of the डॉम ने innings. नाक में दम कर दिया अब बाकी यार ये तो Yeah. बिल्कुल ही चिपकू आउट ही नहीं हो रहा हमसे. 48 for 1 after 20.3 overs. Getting near that target. Ooh, good ball. That's the length. That's the line. Lovely Shadab. Majid He's is saying, settled in well immediately here. saying, I have a bad feeling. यार I feel like we're watching an Abu Dhabi test. पहले 2-3 sessions सब यही कहते रहेंगे and then inshallah a flurry of wickets will come. नहीं definitely आएगी. It's a hard pitch to get. Believe. Full toss from Shadab. That's poor and it's just guided away to mid wicket for 4, I think. नहीं पहुंच गया. No, ओए they'll हो come जाएगा back रन for आउट हो 3. जाएगा यार. We'll come back for 3 comfortably. But the 50 up for England at long last in the 21st over 20.5 in fact. 51 for 1. Dom Sibley on 24 of 70. Root 16 not out of 28. तो यार क्रेडिट देनी चाहिए इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को. They're battling hard. Yeah, and England पता है it's now or never. And England are batting time, right? They don't really care for the runs because they know if they survive, they're going to win. अभी तो बहुत दूर हैं यार 200 रन 220 रन तो बहुत टाइम रह गया. Little They chat need a between, couple of big partnerships. कहते chat हैं between- सिब्बी की है. Are you from Sibbi? क्या बात है. Okay, that was a PJ dad joke, but It's a चलो very चलता poor है यार. joke. Low hanging भाई fruit there. लंच का टाइम हो गया हम भी थक गए हैं 2 घंटे बकवास Very करके. poor from AZ Khwaja there. Low Whoa. hanging fruit. Tossed up by Shadab. Oh, and dangerously left by Joe Root. Very What a near the ball. off stump. And 21 overs gone. 51 for 1. Very good delivery there at the end. Perfect line, perfect length. He didn't pick if it was a googly or leg break and just spun out. Maybe the Googs would have worked there. यार googly तो था फिर तो Joe Root was on his bike mate. But lovely bowling Shadab. Good encouraging start. एक Yeah. poor ball थी but उसके अलावा 3-4 उसने ज़बरदस्त बॉलें डाली हैं. And again, for as a leg spinner, you're allowed some loose deliveries. Again, more क्या हो गया, meltdowns. क्यों? Meltdowns in the comments continuing. Abdullah Amin, यार आप टेंशन ना लें. लंच के बाद सेशन इंशाल्लाह अपना है. अमर राजा कह रहे हैं भाई इंग्लैंड की असल बैटिंग तो स्टार्ट ही 6 पर होती है. And Zainab is saying यार ये मैच बहुत ही इवेंटफुल रहा है. Like felt like watching 4 different यही matches. that is the beauty of Test cricket ना कि हर 2 घंटे बाद एक दिन दुनिया बदल जाती है. And Nabil on the chat saying we're winning 100%. Of course यार. Off the back foot again from Dom Sibley, this time driven away to extra cover for a single. And Gopi saying, I don't like this Mufta single. Might want to cut that out, yeah, maybe. यार मुफ्ता सिंगल भी है लेकिन मुफ्ता बाउंड्रीज भी है तो अगर आप उसको फील्डर को अंदर बुला ले तो फिर चौके का चांस है. So you know it's a give and take. And this is that test at the Lord's Test in 2016 where Yasir Shah took 10 wickets. Look at that shot Joe Root played against him. Unbelievable stuff. 52 for 1 after 21.1. Amar saying we need at least 3 wickets before England get to 100. यार ये कौन से मैट्रिक है यार 100 for 4 पे कभी भी कर ले वो 4 आउट यार. And this is the last over before lunch. It's driven away into the cover. Another easy single. Gopi Mia Kawal pulling his hair out by now. यार गोपी भी बेचारे बहुत टेंशन ले लेते हैं इस टीम के पीछे. आप अगर ऐसे ही हर मैच इतने जज्बा के साथ देख रहे होंगे फिर आप डेफिनेटली हार्ट पेशेंट हो जाएंगे विद इन योर यूथ इटसेल्फ. बट 53 for 1 after 21.2. सिंपली यार बहुत ही बेहतरीन बैटिंग की. इसको दाद देनी चाहिए. Oh, and a good break there from Yasir. Definitely it gets a lot more turn with his leg spin than his counterpart Shadab Khan. लेकिन ये अंग्रेज भी सही भाई. एंड सिबली इज ओनली 24 years old. ये भी नहीं है कि कोई 28-29 का एक वर्ल्ड सीजन बैट्समैन है तो उनको अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट मिल गया. Ooh, inside edge. It just goes to short leg for no run. Good delivery. अच्छा चिलर. हाँ 53 for 1. We have 2 deliveries left to lunch. You can let us know what kind of music you want to listen to during the break. Suggest some tunes so we can get them loaded up for you. मैच से पहले तो हमने काफ़ी जज्बा जुनून दिल दिल पाकिस्तान लगाया था.
Might not sure if the same mood is still around, but गम और स्टार्ट कर दो तुम जो हमारा मूड चल रहा है चैट में इस वक्त. yeah, might be a little early for Gham Hour. टी तक अगर ये लोग खेलते रहे तो फिर Gham Hour on नहीं है. टी तब भी यार एक सेशन में पूरा मैच बदल सकता है यार, लेकिन इतने थोड़ी प्लेयर थोड़ी है पूरा Yasser this time. Ooh, off the back foot, clipped away onto the leg side. Deep, fine leg will collect. It'll just be a single. क्योंकि इतना कंसंट्रेट करना हर बैट्समैन की बस की बात नहीं होती, जैसे सिबली कर रहा है और जो रूट कर रहा है. बेन स्टोक्स हमें पता है अटैकिंग प्लेयर है, वो इतना सोचता नहीं है शॉट मारने से. फॉरन मिस्टर आसिल का स्ट्रिंग्स लगा दे इजी हैं, स्ट्रिंग्स लगा दे इजी. खुदा के वास्ते यार क्यों और ज़्यादा डिप्रेस करे हमारे चेंज ऑफ पेसर्स को. कोई अपलिफ्टिंग बैंड लगाओ, कोई अच्छी बैंड लगाओ. Maybe play some somewhat super. अल्लाह करसी कह रहे हैं. वो तो फिर टें टें पें पें कुछ ज़्यादा ही होता है. दैट डजंट मैच द मूड. Yeah. थोड़े से थॉटफुल म्यूजिक लगाओ. अल्लाह करसी लगा देते हैं ना. As यार, Ali क्या Chaudhary has suggested. अताउल्लाह के पीछे वो लगा दो, खमाज लगा दो. That's suits the mood of the. थोड़ा सा सुरीला मेलोडिक गाना लगा दो. 22 overs gone. England are 55 for 1, and that'll be lunch on day 4. Chasing 277, Mohammad Abbas, the bowler, to take the wicket of Rory Burns after Pakistan got off to a flyer this morning. Match is in the balance here, 50-50, we would say, on change of pace. That's what Dilviz is saying. I'm not sure about Winwiz. And we'll be back in 40 minutes for the rest of the innings, and until then, we'll leave you with some tunes.
We're back live for an incredibly important session. Pakistan are somewhere thereabouts about winning an elusive test match in Pakistan at Old Trafford, a ground where they haven't won a test match since 2001. You're listening to ENGvPAK your home of Pakistani cricket commentary. The first session of the day, Yasir Shah started off with a blitz, and then Pakistan got the one wicket of Rory Burns. And since then, to be honest, it's been a fair battle between bat and ball. Mohammad Abbas, Yasir Shah, Shaheen Shah Afridi, Naseem Shah have given very little away. But at the same time, the batsmen look pretty resolute, pretty stubborn. And all the techniques, all the fidgetiness, all the nuggetiness that they have has been applied today to make sure that Pakistan don't really rush through this top order like they did in the first innings. Easy Khwaja, how are you feeling? Some of our listeners are quite nervous. यार देखो इतने बड़े रन चेस में फोर्थ इनिंग से एक पार्टनरशिप लगनी है. जैसे वसीम भाई कहते हैं गिरना नहीं है, आपने अपनी एफर्ट्स स्लैकन ऑफ नहीं करनी. जस्ट कीप प्लगिंग अवे, इवेंचुअली द प्रेशर विल टेल. देयर इज नो इशू. रन रेट हमने अभी भी कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होनी है. इट्स जस्ट अ शेड अबव 2, so there is no issue. I think 2.5 का रन रेट है. They're not hurting you with runs just by occupying the crease. तो ऐसे पिच पे आप कितनी देर ऑक्यूपाई कर लोगे? आप वैसे ही कितनी देर ऑक्यूपाई कर लोगे? Joe Root 18 off 31. It will require something very special from England to get to this target. They're 55 for 1 मतलब chasing. it is literally the second highest run chase in Manchester in the history of Old Trafford. 55 for 1 chasing 277. Abbas continues. Good ball straight away on the money outside off. He's अभी हम जो हमने बात की थी जी about him being 80%, over 80% accurate in terms of his line and length. It really is an incredible number when you think of it. And according to CricViz, it's the most accurate a bowler has been since their 2006 database. 55 for 1 after 22.1. Root, the captain of England, out there, 18 off 32. He's been much better than his first inning. Still has that tendency to go on the back foot to the leg spinner, which might just be his downfall. Sibley, 26 off 74. He's battled hard to still be out there. Abbas now going to continue, this time a little bit straighter, driven to mid-on for no run. और मुझे लग रहा है कि विजिबली वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि द स्लिप्स आर स्टैंडिंग अ बिट क्लोजर. सो शायद देव हैड अ वर्ड विद मिसबाह एंड हियर कम्स द लेजेंड हिमसेल्फ विद द कलायोपियोक. देयर वी गो. Straight away starting the session positively for Pakistan with some collides. हमने आते सारी वसीम भाई की खूबसूरत कराइयां देख ली. दैट्स इट, डन डील. हम इसी सेशन में 9 विकेट लेने वाले हैं. मैं आपको लिख के दे रहा हूं. Adil Irfan saying Yasir Shah, and then yelling out Yasir Shah. He's agreeing with your patience, AZ Khwaja. Oh! Has he got him? Has he got him? Massive appeal. Nothing from Abbas. Abbas wasn't convinced. Rizwan thought it was out though. What a ball. यार वसीम भाई की अब उन्होंने खूबसूरत चेहरा ही दिखाया और हमने अगले बॉल एक बड़ी अपील कर दी है. Absolute Jaffa outside off, and really nothing Root could do about that. A play and a miss, just beating the outside edge. Remember, Pakistan have all 3 reviews intact, as do England, but they've opted out of that. The bowler wasn't interested. यार अगर अब अल्ट्रा एज पे एक एज नजर आया ना, फिर तो एक पेंडोरा's box खुल जाएगा. Oh, that is so close. That is beautiful. That is sublime. That is the pinnacle of test match cricket bowling. यार, how good was that from Mohammad Abbas, VVS Abbas? What a bowler. यार, was there something on that? No. Good decision. Decision. But a good start for Abbas. Positive start. आबिद अली भी कहता है यार की हो गया, नहीं लग गया, मैंने पता होना सी फिर. Here we Continuing here, Mohammad Abbas to Joe Root. This time straighter. If you missed that, he would be back in the hut. Not an elite pace express bowler. Doesn't bowl at you don't need that in England, 138, just about 78, 82 miles an hour, and just keeps it around that off stump. जितना मैक्सिमम पिच में अवेलेबल है उसके लिए असिस्टेंस वो इस्तेमाल करते हैं. 55 for 1 after 22.4. Root 18 और out of 35. Shaky start for him after lunch. शायद उसने कोई उल्टी सीधी चीज़ भी शायद खा ली हो, या हमने कोई बहुत ही दानेदार चीज़ खा ली हो लंच में. Like the palm, very दानेदार. Adil Irfan keh rahe hain Naseem Shah and Shaheen can be critical here with the pace. Pitch is crazy. Ball will reverse. Ooh, walking across the line of his stumps. Wow. Joe Root, what a shot. That is convincing. He's the first English batsman to take the game to Mohammad Abbas this match. And that wasn't a poor delivery. Root manufacturing that shot by walking across and glancing it to the leg side for 4. Lekin I think that's positive. Abbas won't mind him playing these kind of variety shots for him. ठीक है, थोड़ी पेस कम है तो आप ऐसा रिस्क ले सकते हो, लेकिन अगर आपने ये बॉल मिस कर दी then you're gonna be RIP. Yep. So Abbas थोड़े से हैरान थे कि यार
ठीक है. Musab is saying, if we do win this, I personally think we're going to win tomorrow morning. I don't see us getting 9 wickets in 2 sessions. What do you guys reckon? I do feel that if England do battle tomorrow morning and Pakistan win, that it'll be a very close game. We're probably looking at England needing less than 30 runs and Pakistan a couple wickets, which is just going to be incredible to watch, but very nervous. अभी तो हम 9 विकेट रहते हैं और हम ऑलरेडी a lot of our commenters and listeners. यार अगर हम कहते हैं कि इंग्लैंड 85-88 ओवर्स आज खेल जाता है, तो आई थिंक they'll be damn close to the target. They should be around at least 220, 230, which is 40 runs away. If this goes to tomorrow, Pakistan need to take at least. मैक्सिमम बेन स्टोक्स रोकने वाला है, उसके अलावा पोप नहीं रोकेगा, वो शॉट मारेगा अपने, और ऑफ कोर्स क्रिस वोक्स और जो बाकी उनका जो बैट्समैन है जॉस बटलर, वो भी रोकने वाले में से नहीं है. आई डोंट सी देम बैटलिंग एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 30-40 ऑल ऑफ देम कि इतना लंबा आप गेम घसीट लो. बट यासिर शाह बीइंग ब्रॉट ऑन स्ट्रेट आफ्टर लंच, नो देयर इज ओनली गोना बी पेस फ्रॉम वन एंड, सो दैट्स इंटरेस्टिंग. Well, considering the amount of break that Yasser was getting with his leg spin before lunch, I don't think that's a crazy decision. I think that's नहीं बिल्कुल सही है, fair to do so. अच्छा है, आप पेसर्स को एक एंड से रोटेट करो और दूसरी तरफ सस्टेन स्पिन अटैक रखो. एक तो वो थकेंगे भी नहीं, आप उनको ज़्यादा देर के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हो. हमको पता है कि अब्बास कैन ईजिली गिव यू 7-8 ओवर स्पेल. शाहीन और नसीम ज़्यादातर 5-5 ओवर ही कराते हैं. So it's a good way to go about things. Yeah, we do need a couple wickets. I do agree with that. Oh, what a delivery that is for Yasir Shah to start off with. How is that missed the top of off, folks? Yeah. Unbelievable. I think that was the googly. कैसे बच गया यार? I think that was the googly. I think it was a leg breaker. It turned in you. It just went on straight. Yeah, just held its line a bit. Yasir doesn't really bowl the googly. What a ball. Hands in heads. It's very surprising how that's missed the top of off so close. What a start that by would the have been. barest of margins, as they like to say. Off the back foot this time, Sibley driving to cover for no run. 59 for 1, England chasing 277. Pakistan bowled 23.2 overs for the wicket of Rory Burns. Yasir Shah. Very close. I quite like Yasir's spirit when he's playing test cricket. He's quite happy even when he's not doing as well as he wants to. And I think that does translate somewhat. बॉल हो चुके यार. ऐसी एटीट्यूड रखनी पड़ती. सम डेज इट विल बी योर डे. आपको ज़्यादा जॉली नहीं होना चाहिए. व्हेन इट्स डाउन, व्हेन इट्स नॉट योर डे, मार पड़ी है तो यू शुडंट बी वेरी डिप्रेस्ड एंड हैव अ नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज. जस्ट यू नो टेक इट सेशन बाय सेशन, डे बाय डे, आवर बाय आवर. कोई बात नहीं. सम डेज कभी बैट्समैन आप पे हावी होंगे, कभी किसी दिन आप हावी होंगे. सो यू शुड ऑलवेज कीप एन इवन कील एंड कीप प्लगिंग अवे. 59, really? 59 for 1. Junior calling for a wicket on the sidelines. Because we are a little behind here. ये जूनियर तभी विकेट मांगता है जब बाबर आजम बैटिंग के लिए तैयार होते. कहते यार जूनियर ने जो ऐसी नजरें लगाई हैं अजहर अली को जब बैटिंग करने आ रहा है, कह रहा है आउट हो जाए, बाबर को देखना है. तुम्हारे बाबर ने कितने रन कर दिए इस मैच में, तुम अजहर को गिराते रहो. सेकंड हाईएस्ट. Because he scored that sixth man in the first innings. 59 for 1, and Yasir Shah will continue. Oh, it's got the outside edge. Big appeal from Yasir. यार रिजवान ने he's got him. He's got the wicket. रिजवान ने क्यों अपील रोक दी अपनी यार? Gee, Pakistan strike early after lunch. England are 59 for 2. Sibley is reviewed immediately. It's all happening, folks, and you're listening to Change of Pace. यार वैसे ये क्या सीन था? I don't think it was bad. I think it's a गलत decision. I think उसने बैट जमीन पे मार दिया. Rizwan's not going to change ultra edge. But oh यार he missed it by a mile यार. जिस तरीके से आउट दिया वैसे. No, Rizwan's smart there. I mean, he doesn't really need to go for that because he missed it by. इतनी डेलाइट है यार वैसे अंपायर को. पता नहीं हमने कौन से तिक्के खिलाए हैं लंच में जो इस तरह की आउट दे रहा है वो. Miles between bat and ball there. ऐसे दे दो उसको, कहो उसको अंपायर्स कॉल है ये भी. हाँ वाकई यार. कोई अल्ट्रा एज पे भी अंपायर्स कॉल लगाओ. But poor decision there from Richard Kettle Bakri. You'll love to see it though. You'll love to see these kind of decisions finally come into Pakistan's favor. Azhar भी smiling to himself कहता यार ये मिल ही जाता सिबली. अच्छा उसने आउट भी कितनी देर बाद दी है. रिजवान ने अपील ही रोक दी. यासिर शाह ने कहा फिर भी मांगते रहते हैं और वो मान गया. अब दो अगर. And if you ask, they will give it. Oh, it's just another. कर क्या रहा है सिबली? अनसेटल हो गया बिल्कुल. Foot from Dom Sibley, dominatrix Sibley. Doesn't need to do that at all. 59 for 1 after 24 after lunch again. Eventful over. Struggling. Look at the way that seam is fizzing. जबरदस्त यार. राशिद शाह साथ थोड़े पेट पूजा. आदिल तो full reverse psychology कह रहे हैं he will not give any more on-field outs after that shocking decision. यार ये भी हो सकता है कि not the case. Look at Asad Shafiq. असद शफीक हमेशा नाराज या शॉक्ड ही लगता है बेचारा.
लगता है अपनी बैटिंग देख ली उसने गलती अली से। चौधरी कह रहे हैं अगर अपनी एस्टैब्लिशमेंट होती तो ये पक्का आउट था। 100% यार। चौधरी ये बैट अब बैट तो नहीं हिला सकती एस्टैब्लिशमेंट आके, बैट तो नहीं मूव कर सकती, लेकिन आप ये चीज LBW में तो हो भी सकता याद रखें, इमरान खान ने, द ग्रेट इमरान खान ने कहा था कि वी नीड Neutral न्यूट्रल अंपायर्स लाइक अ neutral टाइगर। umpires, colored kits। इमरान खान ने क्या क्या नहीं दिया क्रिकेट को। नहीं, कलर किट्स तो कैरी पैकर ने दिए थे वो। नहीं, it was इमरान सजेशन यार कि आप देख लें अच्छा, यार। सजेशन, हाँ शायद। अब खुद तो नहीं बनाएगा वो, टाई एंड डाई तो नहीं करेगा ना खुद जाके। 59 for 1 and even ball boys Oh. cut away this time, it'll beat the gully fielder, should run down to the third man boundary for 4। गंदी बॉल। Root gets a release shot because of Abbas, and Abbas bowling a gandi ball, which doesn't happen often। और interestingly they brought the keeper straight up because of that flick through square leg in the previous over। उन्होंने कहा कि ये थोड़ा फुदक रहा है क्रीज के बाहर देखिए बाहर। रूट ने ऑलरेडी एक चौका लास्ट ओवर में मारा है, and another loosener। You cannot give They're picking Joe up the Root pace. time। If you give Joe Root time, he is also not a 30 strike rate Shan Masood type player। He will get runs quickly। बल्कि वो अभी भी अच्छे स्ट्राइक रेट पे खेल रहा है, 26 of 38। दैट्स लाइक a slow one day innings basically। Yeah, it's a 2005 one day innings। 63 और for पाकिस्तान one। के लिए तो 2019 वन डे इनिंग्स थी, to be quite honest। 63 for 1 after 24.1। Mohammad Abbas much better this time with his Bowling. line, but again Joe Root pretty confident behind the line of that ball। बॉबी प्रिंस पूछ रहे हैं अब्बास यॉर्कर नहीं कराता यार, बेचारा 78 माइल्स पर आवर क्या ही कोई यॉर्कर मारेगा। शायद टेल एंडर उस पर बीट हो जाए, लेकिन ऐसे टॉप क्लास बैट्समैन तो आराम से पिक कर लेंगे। बट यू नेवर नो, एक पक्का टो क्रशर वो भी मार दे तो लग जाए। Shahan is asking for more Shadab overs here। could be possible, but Yasir Shah is your ace, so you definitely have to back him। और बॉलिंग Maybe भी you- अच्छी करा रहे हैं, maybe दो you अपीलें do, निकलवाई हैं। Maybe you do go for spin from both ends, but Abbas been accurate a bit towards the leg side. Joe Root falling over there a little bit, so there might be an opportunity for a leg before wicket। But Ben Stokes padded up। और हेयर बैंड यार, ये हेयर बैंड, this is just not my kind of cricket कि आप हेयर बैंड पहन के खेल रहे हो यार। Comment on the Twitter from जी। some random account, again they don't really have a name। He's saying ये मैच अगर हारे तो प्लेयर्स की क्रिकेट की वजह से नहीं हारेंगे, अपनी गंदी नज़र की वजह से हारेंगे। यार ये भी वाकई यार, evil eye is very, बॉबी का 100 हमने रोका है ना सुबह। is a very real thing। इसमें कोई बात शक को शुबात नहीं है कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। Mohammad Abbas now to Joe Root this Oh, time, did he get pad first? नहीं। No, bringing him up, getting him to play forward। Acha, interesting observation। This is a small nuance, Khwaja। I'm not even sure if it warrants a conversation। That's a no ball by Abbas। यार क्या कर रहा है ये भी। Yeah, but the one thing that I do want to discuss is great batsmen। जी। You've got your Joe Roots and you've got your Babar Azams, you've got the Virat Kohlis, जी। Suchins and the Williamsons and Steve Smith। जी जी। बॉल खेल के कोई बैट्समैन जो है वो बिल्कुल हिलते नहीं है, अपना वही स्टांस रखते हैं। और मैंने स्मिथ को भी देखा, and I'm watching Root today, that after each delivery they literally take a walk and come back to their guard। And again outside off this time। I think much it's better। all about routines कि आप अपने माइंड को रीसेट करते हो कि ठीक है एक बॉल गुजर गई, अगली पे थोड़ा सा मैं कंसंट्रेशन अपने आप को एक रिलीफ दूं, फिर जब मैं स्टांस में आऊँ then I'm switched on again। It's very important to have your routines when you're batting at the crease। 64 for 1 after 24.4। Root has moved on to 26 not out। काफी डेंजरस स्टेज मरहले पे इनिंग्स उसकी चलेगी। मरहला dropping the मरहला bomb। Marhale Hills। And of course Dom Sibley 26 of 80 सही लगा हुआ है। चिपकू फेविकॉल की तरह विकेट पे चिपक गया और हमें थोड़ी सी Is Fevicol a glue? It's adhesive, yes। I thought it was a cough syrup। Yeah, पी के देख लो तुम। फेविकॉल पी के देख लो फिर। 64 for 1, 34.5। It's all happening। यानी इतने जो ऐड आ रहे बचपन से, आप कब सिर्फ समझ रहे थे वो? कौन से ऐड आ रहे हैं, किधर आ रहे यार हैं? फेविकॉल इज सच अ ब्रांड, ओल्ड ब्रांड यार, हद हो गई है। मुसाद अफजल 64 for 1 after 24.5। Mohammad Abbas continuing after lunch। He's probably gonna give us a long spell of अच्छा, 7 or 8। ख्वाजा आप लाहौर से हैं। जी जी जी। और आप लोगों के माशाल्लाह लाहौर वालों की कॉन्फिडेंस काफ़ी होते हैं, सही बात कभी कभार विदाउट वारंट। ओवर कॉन्फिडेंस भी बहुत होता है। अब्बास इज नाउ कंटिन्यूइंग। ओह, और सुना है कि स्काई स्पोर्ट्स की एक डॉक्यूमेंटरी चल रही है। हाँ, उसमें माइकल एथरटन भी मतलब बैटिंग कर रहे हैं, कोई एक्स इंग्लैंड कैप्टन, 100 टेस्ट खेले हुए हैं। कोई लोकल लाहौरी बॉयज के खिलाफ। हाँ, और हाँ, पीछे आवाज़ आ रही है, आराम नाल एनू खेलना नहीं आंदा, खेलना नहीं आंदा। तो भाई सही कह रहे हैं, उसकी कोई 40 की एवरेज भी नहीं होगी। The England Test match captain who's come out to Lahore। अच्छा, apparently वसीम भाई translated। यार, That is outrageous, how dare you। ये bloody अब आगे भी बात पी बॉम्ब ड्रॉप करना। The P bomb। अब तो नहीं आता वो गद्दाफी स्टेडियम इंटरव्यू लेने, कहता किसी और को भेजो भाई।
Nice front foot defense. Yasser is on the ball here, continuing after lunch. लेकिन on a serious note, that's a really top documentary जो उन्होंने बनाई है. I'm looking forward to seeing बहुत it. exposure दिया उन्होंने और PCB ने भी full, बल्कि they should get the rights of it and post it themselves on their YouTube page. अगर PCB को थोड़ी अक्ल हो कि भाई दिखाओ भाई हम कैसे मेज़बान हैं और कैसे host हैं और सब कुछ. Yasser tosses this one up, gets the inside edge. Dom Sibley. Dom Sibley definitely looking the more weak, not weak, but the more unsettled after lunch. सही बात है. The wicket definitely there for the taking after that. शाहान पूछ रहे हैं शेन वॉर्न इतनी टेंशन में क्यों लग रहा है. पता नहीं यार, शायद उसको गैस हो गई. Ask Elizabeth Hurley. It's tossed up this time, misses the no real turn. वो हैवी जुआरी टाइप. I think he does ads for a betting company as well, or poker company. Labs is saying, you think Kareena Kapoor wanted to stick her picture with a cough syrup? Why not that? That's a fair point, Labs. उसके फैंस के गले नहीं खराब हो सकते. 64 for 1. I'm not accustomed to Bollywood music, to be honest. So. यार ऐसे तो मत अब बोलो यार. हमें पता है कि आपने greatest hits of रवीना टंडन अपने MP3 के गाने रखे हुए आपने. I do. अच्छा, anyways, वो सब तो चलता रहेगा. I do prefer Pakistani music though. I really enjoy Pakistani music. And like I'm now slowly becoming like an old school Pakistani nerd, which is quite nice. Played away to the offside for no run. And if this test match does go into day 5, which I hope it doesn't, for Pakistan's sake, we'll play some Pakistani hits, play some EMI, Mehdi Hassan for sure, classics. For sure. Get the Benjamin sisters out there. सही बात है. Beautiful. Full deep dive होनी चाहिए. Yeah. Iqbal Bano, get some tunes flowing. Flicked away, and it just goes past short leg for a quick single. कैच हिट कह रहा था रिजवान. ये किस किस्म का कैच वो एक्सपेक्ट करे. तो यार बॉलर तो आपको कहते हैं ड्राइव पे भी कैच चाहते हैं. 65 for 1 after 26 overs. Sibley and Root on 27 and 26 Tagawa is back respectively. लगे हुए हैं partnership. They're knitting together a partnership after Rory Burns got out to Abbas. A brilliant inducker around the wicket and nailed him LBW. एक अपील ऑलरेडी आज हो चुकी है लंच के बाद, and it was given out amazingly by the umpire, even though Sibley missed it by at least 3 or 4 inches. Adil Irfan saying a little bit more flight needed from Yasser here. And Renu Kata saying, "Yaar, I'm missing the Dilbar song which you used to play in the PSL." यार वो दिलबर और सैड की जो हमने यार वो मजेदार सीन थे यार. कह सकते हैं यार. PSL में तो सही शुगर लगाए थे मैंने इस साल, especially coming in on with Lahore winning and getting to the semi-finals. 65 for 1. Yeah, if you weren't here with us for the PSL, that really was a party and a half on the Change of Pace broadcast. I really enjoyed that season. Unfortunately, we couldn't finish it because of the coronavirus. अच्छा, रिजवान क्या सिबली के लिए पीछे चला गया, so they're not doing that strategy of keeping him up to the stumps. वो ऑलरेडी विनविज के स्टैट्स दिखा रहे थे. दिलविज कह रहे 44. यार ये देखो, अभी एक आधी पार्टनरशिप लगी, 220 रन पड़े और कहते जी इंग्लैंड 50-50 तकरीबन हो गया. दे आर वेरी मैनिपुलेटिव यार. ये वैसे ज्यादती है वैसे. But I also feel like it's 50-50 right now. यार 100 रन होने वाले हैं उनके. यार 65 और 135 रन का फर्क है. 65 को अगर आप राउंड करें तो nearest it'll be played away to the leg side. It'll come back for a single. तो यानी अगर हम 40 को राउंड करते तो 0 पे थे वो. Yes. अच्छा ठीक है. इतनी लंबी राउंडिंग. 50 से पहले जितनी विकेटें हैं वो 0 पे हैं. 50 के बाद जितनी विकेटें हैं वो 100 पे हैं. सही बात है. 66 for 1. But it's a test of patience as well. आपको भी पता होना चाहिए. It's a young captain in terms of his tenure. उसको भी सिर्फ अजहर भी अभी क्या कर रहा है उधर? छोले बेचने आया है वो. बात सुन लेना आपके. अभी भी वो थोड़ा सा inexperienced है to be right in the middle of the battle. और देखे शाहीन शाह भी यंग बॉलर है, नसीम शाह भी यंग है और बाबर आजम भी relatively यंग है अपने टेस्ट करियर में. 66 for 1. उनको भी प्रेशर हैंडल करना होगा. For sure. And again, the performance from Pakistan, besides that one session last night, has been pretty good in this Test match. We've been bossing the game basically. यार ये तो मसला है Test cricket का कि in ये तो खूबसूरती है Test cricket. No, but we don't know how to kill games because if we lose this Test, we're going to lose it because that. यार kill game की बात नहीं. खूबसूरती ये है कि आप 4 दिन dominate कर सकते हो और एक सेक्शन पे पूरा मैच पलट सकता है. Gopi saying nothing missed more than the Asasa song played after Sarfaraz's boundary. Asha. Oh man, we missed that too. But it'll be back for the PSL, I reckon. भाई जब तक वो ड्रिंक्स पिला रहा है हम उसको वही गाना नहीं चलना. जब वो आएगा 11 में फिर हम देखेंगे. आदिल मोमिन तो इतने ऑप्टिमिस्टिक है, वो कह रहे हैं 26 ओवर बाद पूछ रहे हैं कि बॉल रिवर्स कब होगी. भाई हम इंग्लैंड के बॉलर नहीं है जो पता नहीं कहाँ से घसीट के बॉल लेके आ रहे हैं जो रिवर्स यार रगड़ के. हाँ रगड़ के exactly. 66 for 1, 26 point through. 3 overs gone, but no, I don't think it's reversing now at all.
Oh, that's a good delivery by Abbas. Played Some straight to boss. Gully. Good fielding there by Shadam. It came quickly to him. Clive is on the chat and he's having a go at you, AZ. क्या कह रहा है? Immediately saying, "Yeah, Winwiz is a statistical model. How do you think that it's manipulative?" भाई there is an old saying, there are lies, damn lies, and then there's statistics. Yeah. So भाई we I cannot mean, I trust. think there's a lot of clear quantitative methods that go into building something like WinViz, but cricket is a lot more diverse than just numbers. सही बात है. And unfortunately, with every sport, with any sport, there's no mathematical model that can actually factor in these powers that be, as we like to call them in sport. Good use of the crease there from Abbas, going a bit, jumping out to the left and trying to angle that ball into Root's pads. 66 for 1 after 26.5. S is asking, बस इन्होंने नाम अपना सिर्फ S लिखा है. अच्छा, very good. Ball, Shaheen around the wicket. No, Shaheen is not even bowling yet. It's Abbas right now. Round the wicket, लेकिन दोनों righty हैं, तो what's the point of doing that? Maybe Yasir Shah can try going around the wicket and try to bowl it into the rough, maybe catch a leading edge or something. Adil is saying 30 more minutes and the reverse should be in action. The pitch is getting drier and ball is getting rougher. Nabil is saying the stats suck life out of cricket. Wow, that's an interesting take. Under edge. I think there's need to be in cricket coverage and conversation. There needs to be a bit of balance होना चाहिए. A bit of a balance, exactly. Oof, Clive coming in with the killer blow, AZ, saying, I know one statistic, and that's that the Juventus hasn't won the Champions League in 25 years. Oh my goodness! एक तो लिवरपूल वाले कुछ आप से ज्यादा बाहर में एक टाइटल क्या जीत गए, वो भी कोरोना की वजह से. ठीक है, तुम लोगों का कोरोना की वजह से तो नहीं जीते. 30 साल बाद तो ये लोग खुद टाइटल जीते और ऐसे उछल रहे हैं जैसे पता नहीं क्या. 66 for 1. This partnership now worth well यार, over 50. कितना जेल थोपा हुआ है इंग्लैंड के बैट्समैन ने यार. जेल भी थोपा हुआ है, रन भी थोप रहे हैं. 50 से ऊपर पार्टनरशिप हो रही है. How are you so calm? कोई बात नहीं यार, पार्टनरशिप मैं बताता हूँ ना, एक बड़े रन चेस में पार्टनरशिप हमेशा लगती है. इट्स नॉट अ बिग इशू. बस आपको एक थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा. देयर इज नो ये है ना कि हम मारे खा रहे हैं तो फिर बंदा कहता है यार मोमेंटम हम लूज करें. अभी भी Yasir Shah, this is driven from a stomp Sibley and it'll go down to the third man boundary. No cover there. It'll be for a loosener from Yasir. Too much room for the right hander to just free his arms a bit, and obviously Gully was a bit wide-ish. Adil Momin is immediately saying, आदिल मोमिन ऐसे चेंज अप इस चैट में लिख रहे हैं जैसे डोनाल्ड ट्वीट ट्रम्प कर रहा है. पैनिक मोड, सैड, गेट अ विकेट हियर, get that son of a bitch out of here right now. Oh man, यार आपने उन ट्रम्प भाई का इंटरव्यू देखा था? ट्रम्प भाई आपके दादा की उम्र के हैं ट्रम्प भाई. 75 साल का है वो. 70 for 1 after 27.1. ट्रम्प ब्रो. Ooh, good turn there for Yasir. Massive break against. क्या कर दिया जी डोनाल्ड भाई ने? डोनाल्ड that's नियो लाडो. Leonardo da Vinci, 70 for what Da happened? Vinci, Leonardo मुझे basically. Shahan is saying if there's one thing we've learned about supporting Pakistan over the years, it's that stats do not matter with us. Exactly. Well Live said. is asking when panic mode begins. For Adil, it became this morning. Oh, good turn again. But even they're nearing the below 200 run mark in terms of the target. I think within 50 हम कह सकते हैं कि भाई इतना है. But England भी लड़ेगा यार. वो they just won a series against West Indies who bowled really well throughout the series. 24-0 the Texans versus Chiefs, then getting 50 burger on us. ऐसी feels हो रही है. बहुत बुरा हाल हुआ इनका पिछले सुपर बोल NFL सीजन में. जीता हुआ मैच इतनी बुरी तरह हार गए. वही पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया 2003 वर्ल्ड कप वाला मैच हुआ था. S is saying Pakistan can win even from 100 for 1. It's just a matter of a breakthrough. यार बस वही है ना, जब हम रिवर्स स्विंग किंग्स थे तब हम रेगुलरली ये करते थे. Good defense there from Dom Sibley. He's been very resolute. दमादम सिबली तो हमसे आउट ही नहीं हो रहा है यार. Seriously. Dom Sibley, the Sibbers, Sibtastic. 70 for 1 at the end of the 28th over, just one ball to go. इस बॉल पे चौका लग गया तो नहीं यार, क्यों ऐसी बात करे? शुभ शुभ बोलो यार. Tossed up, driven, साथ ही एज मार दिया straight to the gully for no run. At the end, bottom of the 28th, 70 for 1. Root on 26 of 48. Sibley just chugging along. 32 of 94 deliveries faced. यार बंदा लगा थोड़ा ध्यान हटाते हैं मैच से क्योंकि obviously काफी nervous. Oh, little Dhoni, Mahendra Singh Dhoni style keeping from Mahendra Singh Rizwan, you can say. Look at that. But उसने बॉल नहीं मारी, glove मारा I think. अच्छा.
Where does Dhoni rank in the great keepers of all time? Khwaja? I Is he think he is the definitely best, the the greatest best of all time? ODI keeper in the history of the game, no doubt. Not just the success that he's Maybe had as Gilchrist, captain, of but course. just He has literally won every trophy. but just MSD the keeper, how quick his hands are. And हालांकि he never looked that particularly fit. थोड़ा सा he's a गोल pretty मटोल सा bulky था. guy, to be honest. हाँ. Old school cricketer build, to be, हाँ, बिल्कुल. but catching or just stumping spinner के साथ कैचात और स्टंप साथ जो उसके थे बहुत अच्छे थे. really good. And behind the stumps. he is so well loved and respected even in Pakistan. तो आप Of course, सोचो of course. कि हम इतने ज़्यादा उसके पाकिस्तान में जितने फ़ैन हैं उतने ही इंडिया में हैं. Yeah, 70 for 1 after 28 overs. And Mohammad Abbas now continuing. Leading edge! Oi! Oh, it just falls, drops short of point. Shan Masood doing the Yaar. fielding there. Shadab Khan, head on his hands. Pakistan are doing everything right here. And somehow, Joe Root is still out in the middle. यार fortune favors the base. I think ball पहुंची नहीं. Where did it go? Drop short. Well short of point, but that was a big leading edge playing across the line, Virat Kohli style on that fateful day in 2017. Clive वो मैच आपको याद है ना? अब यूवे का मैच याद Stat हम भी दे देते हैं 180 वाला. लिंक भी डाल दो YouTube का. यार. But Abbas getting the ball to just nibble off the surface once again. Yep. Look at very upset there. Is down the leg side this time. यार अच्छा ठीक है पैड पे ही लगी. मैंने कहा it's been tickled down to fine leg for another 4, but no. 72 for 1 after 28.2. A target of 277. Mohammad Abbas. The thing about Mahendra Singh Dhoni, I was actually listening to a Kuldeep Yadav interview. जी. And he was saying, well, he didn't really explicitly say it, but then somebody complimented with some statistics हाँ. about his numbers when Mahendra Singh Dhoni is Achha, keeping and when very he's not. So he actually has a very positive effect on spin bowling when he's keeping to them as well. एक तो वो कीपर भी बहुत अच्छा है to spin और Yeah. ऊपर से एडवाइस भी of course experience यूज करता Master है. strategist. Oh, good good catch ki- there by Shafiq. But, Saved his keeper and saved some buys. yeah, ricocheting off Rizwan's gloves. His fielding has been top notch this game. और काफी इसको अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए इस फैक्टर को कि इसकी स्लिप फील्डिंग पे भी इसके सिलेक्शन में हमेशा फेवर हो जाती है. Actually, Crick Viz put out a statistic about slip fielding percentages. जी. And unfortunately, I think one of the England gents was quite low on that list. But I was going through it and I saw Yunus Khan was quite high. हाँ He यूनुस was खान in के भी top काफी 3, catch top है. 4 in terms of percentage. I think Rahul Dravid, Mark Waugh, Yunus Khan or Yeah. Shane Warne was also a very good slip fielder. 70 for 1. Abbas continuing here, making Ooh. Root come forward to it. Just trying to hit that pad just Pad, yeah. before his Yeah, stride. yeah. Very, very close. क्या कह रहे हैं आदिल भाई? AD, Anthony Davis. Yeah, look at that. एक तो straight away a BC bomb जो मुझे नजर आ रहा है इधर से जब आपने screen Yeah, zoom little की. BC bombs around. Clive is saying AZ is a penalty for all of his sides. यार ऐसे तो नहीं कहते यार. Dhoni, the keeper, worked on his game. When he came to the scene, he was pretty mediocre. Interesting take that. But he worked during his off time, became the best. Well, I mean, that's pretty good. Ghost of Kagawa is very upset about the trajectory of Dhoni's politics. We won't get into that. हाँ यार वाकई even for his fans in Pakistan the Yeah. अजीब uber patriotism जो अजीब सी धोनी की होगी. Look at that. Oh there we go. There it is. And खेड़ना नहीं आंदा. That was the moment. I hope they play it again so we can listen to it. यार वैसे ऐसी बॉल टेबल में कौन डालता है बट हमारे लाहौरी बॉयज भी कौन से कौन हूँ टेबल से बाउंसर करा. यार crazy stuff. Abbas is now going to continue partnership. 48 from 107 deliveries. Played away to point this time for no run. क्या पर कमेंट्स पढ़ो मिस्टर मुसाद. Zainab कह रही है मैंने पहले से ही स्ट्रेस हीटिंग कर ली है. अच्छा And Umair Abdullah is saying a wicket is around the corner within 2 overs. किधर है ये कॉर्नर इतनी देर से नहीं आया. बड़ा लंबा corner है वैसे ये. And Adil is asking for a replacement. Abbas for Shaheen. Azhar captaincy is being tested. And यार आपका Akib also saying that Azhar really needs to come out of his comfort zone. Aggressive bowling needed. Aggression चाहिए. यार आप देखें मैं बार-बार ये आपको बात कह रहा हूँ. जहरीली bowling कराओ. Pakistan's most successful test side was Misbah Haq's UAE team. And अगर आप उनकी format या उनका template देखें, it's all about keeping these channels consistently drawing up the runs and the wickets will come. अगर मुझे अभी कोई इख्तलाफ है इस साइड से वो ये है कि अभी भी मैं ये कहता हूँ कि रन्स थोड़े ज़्यादा दिए जा रहे हैं. नेक्स्ट एल्बम ऑफ जुनून इख्तिलाफ. अभी भी एल्बम्स यार वैसे आप देखें तो पिच में भी कुछ है भी तो नहीं ना यार. क्या करें वो थोड़ी सी बॉल सीम हो रही है इधर उधर वरना देयर वाज नो मेजर स्विंग फॉर शाहीन. Faisal is saying I'm going for a run. This is a bit too tense. Zainab is saying ये खराब स्टोरी लग रही है.
यार And, 70 पे एक है, 170 पे एक थोड़ी है यार, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? yeah. Interestingly enough, वीके भी आ गए, वेलकम वीके टू द Ghost of स्ट्रीम. Kagawa is asking, since we're talking about India, you think Rohit Sharma is a better captain than Virat Kohli? यार कहते तो हैं जो PSL Clive is agreeing about, IPL उनका ऑब्जर्व कहते हैं he's definitely a more strategically equipped captain than Virat Kohli. Ooh, round change the of wicket angle for Yasir Shah coming around the wicket to Dom Sibley, and there's that silly mid-off in places. 70 for 1 England after 29.1 going to overs. test his technique there. Lancashire staff having a lazy afternoon out. What a great job this would be. वाकई यार घास घूस में आप घूमते रहो, जब Ghas बारिश हो तो goose. बैठ जाओ. Tossed up. Ooh, pad up. It's a big appeal if it struck him in front, but No, it's no, outside the line. ऐसा तो नहीं मिलना आउट. Yeah. No, if you're not playing the shot, then I don't know if that should count. But दमादम सिबली फिर यार हमारे नाक में दम कर रहा है. सोचो एशियन पिचेस पे अगर ये आएगा जब 2022 का टूर होगा तो इसने तो बहुत हमें तंग करना है. So we'll have to तो be मट्टी में खिलाओ, पत्थर रख के खिलाओ. Another pad up. Yeah, pad up का Izzy, can you take us to the rule of the LBWs on pad ups? यार इसका ये है, if you don't offer a shot then you can definitely be given leg before, but round the wicket आप आते हो तो it has to pitch in line, hit you in line, वो सब चीज़ें करनी पड़ती हैं. Sure. तो अगर बैट्समैन वो बॉल भी छोड़ा फिर तो वो बैटिंग ही नहीं करने आया, वो तो फिर हॉकी खेलने आया हुआ है. Right. Another 3 pad ups in a row. We love to see it. I told you. No. Yep. Oh, 3 pitches on the test on the ground at Old Trafford. Yeah. ये शरीन मज़ारी क्या कर रही है उनके ग्राउंड स्टाफ में? वेलकम ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो भी उधर बैठी हुई हैं. 70 for 1 after 29.4. अच्छा, दैट्स अ गुड ऑनर यार, अच्छी बात है. Oh, Baba. Oh, there it is. यार ये क्या टेक्निक है बेल बजाने का यार, थोड़ा सा स्टाइल दिखाओ. क्या मिडिल क्लास प्लेयर है यार ये भी बेचारा. बट वैसे अच्छा जॉब है. आप 50 साल की उम्र में निकरों में घूम रहे हो, इससे अच्छा जॉब क्या हो सकता है? Oh, another pad up. 4 pad ups in a row. You can't take a run on that. Sibbers, get back. But I don't. Was that gone for 4? It has. नहीं ऐसे. If you don't offer a shot, then you don't get runs. Right. Runs. 70 for 1 after 30. 2 Labu पॉइंट लाने का Shahna. रन रेट है यार अभी. आप अच्छा अगर वैसे हम हार भी गए तो इस रन रेट पर हम कल ही हारेंगे, तो अब आज की टेंशन ना लें. आज नींद आप पूरी कर लें अपनी. Adil is saying Sibley is now mirroring Labu Shahne. लाबिशाख ने तो यार वो तो Kohli चौके भी मार sulks सकता at long on when India need leadership. Goes to Kagawa with some choice words for Virat Kohli. Yeah, that's what he was doing in 2017. ये एंगल से LBW नहीं मिलेगा. या we've यार वही आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है ना. हर कोई स्टीफन फ्लेमिंग और MS धोनी की तरह आइस किंग तो नहीं होता. Yeah. कुछ इमोशनल कैप्टन्स भी होते हैं जैसे कोहली है और जैसे Sarfraz है. बिल्कुल. VK is calling me out. He's saying Mossad is trying to use Pakistani words, Urdu words, to desperately show that he is Pakistani. नहीं यार पाकिस्तानी है, मैंने पासपोर्ट देखा हुआ है मुसाद का. अनलेस ये रॉ एजेंट है अंडर कवर अभिनंदन या वो दूसरे का क्या नाम है खुलबुशान. यार ऐसे तो ना करो यार. VK is saying Dhoni was a terrible test captain. He would let the game drift. Let's can you make a list top 5 Indian cricketers that are admired in Pakistan from top to bottom? I think most admired would be Rahul Dravid. for sure, इसमें कोई डाउट Right? नहीं है. We don't Huge really fans, care for Sachin. really big fans of Rahul Dravid Yeah. and of course MS Dhoni. Abbas continuing this time a little bit And I down think late. युवराज सिंह की भी काफी फैन युवराज फॉलोइंग के है. भी हैं. हाँ युवराज because that little Punjab connection. हाँ एग्जैक्टली वो थोड़ा है. Yeah. थोड़ा दलेर प्लेयर था. Yeah. सहवाग तो मुझे नहीं लगता लोगों को पसंद है, वो तो चवल ही था I बहुत think they बड़ा. appreciate his batting, but not like इतना कोई वो नहीं है कि मतलब हाँ नहीं वो मीडिया स्टेटमेंट वो छिछोरा उस वक्त तो नहीं स्टेटमेंट था. अब दे रहे हैं. अभी दे रहा तो वही है ना, ट्रोल ही हो गया ना, फिर क्या फायदा हुआ तुम्हारा. Balaji actually cult hero. बालाजी तो कल्ट हीरो है, Cult hero in स्पेशली Pakistan. इन लाहौर साइड जब वो आया Good था point from Nabil and लम्सू Nono. में आया था एक Yeah. क्या नाम जिसका शो भी है कौन. Harbhajan Singh or oh good bounce there from कपिल शर्मा क्रिकेटर थोड़ा. yeah Sidhu maybe my left. हाँ सिद्धू भी स्पेशली जब यूथिया आ गए हमारे यहाँ हुकूमत में तो तब से तो डेफिनेटली फैन हो गया आफ्टर ही केम ओवर इन Gavaskar I'm not sure how much Gavaskar. हाँ बट इमरान खान has always praised Gavaskar a lot because he was the toughest batsman to bowl to. Well, couldn't get again him out. I think there's respect for Sachin but no one is a real fan. मे बी फैंडम भी होगी काफी लोगों की यार, ये तो नहीं कह सकते कि उसका फैन नहीं था. मतलब ये कि to be honest like
I don't know, maybe यार बिकॉज हमारी तरफ यही इंप्रेशन होती थी अपने लिए खेलता है, जब ये 100 मारता है इंडिया हारती है, ये वो बातें। धोनी का जो हमारा इंप्रेशन है ना वो एक धोनी तो यार एक ये कि बस वो आएगा मैच जीत जाएगा, धोनी से तो डरते हैं गेम अवे फ्रॉम यू, या ड्रिवन भाई वेल, फैंस या मैं तो कहता हूँ हमारे प्लेयर्स भी उसको देख के इंटिमिडेट होते थे, डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं he had presence. I don't think Pakistan is really feared Sachin, even though his record against Pakistan is वही pretty हम healthy. कहते थे ना ये स्कोर कर भी ले तो ये मैच हार जाएंगे तो हमें टेंशन नहीं है, बट लुक एट दैट puff of dust off the pitch, 70 for 1, 30.4. Abbas plugging away, another lion-hearted spell after lunch, but England are holding strong. Pitch काफ़ी dry out हो गई, काफ़ी easy हो गई है बैटिंग के लिए. Conditions overhead conditions भी बिल्कुल blue skies, no overcast conditions Kaif at का all. नाम लिया, yeah, Kaif was admired. Why यार He's a good मोहम्मद fielder, कैफ को कौन पूछता really है? good fielder I think. Fielder अच्छा था बस that's Because I think in that era इरफान पठान की तो हमारी जो फ्रेंड है टॉन्क्स, वो तो बहुत बड़ी उसकी मेगा नहीं, फैन थी. और पठान का ये भी था कि वो था कि वो यार वसीम भाई ने ट्रेनिंग दी है उसको, और उसका एक्शन भी जो था वो तो वो भी एक similar था. फेक न्यूज़ थी. अगर आप उसके स्टैट्स निकालो इरफान के अगेंस्ट पाकिस्तान, ही एवरेजेस लाइक 46, बट ही हैड सम गुड मैचेस अगेंस्ट यार वो हैट्रिक बहुत जबरदस्त हैट्रिक थी. Arguably two of Pakistan's best ever batsmen were in those 3 wickets. अच्छा सलमान बट और मोहम्मद यूसुफ यार अभी कलीम सुन रहा होगा कि क्या कहेगा. ट्रिगर हो गया होगा उसको, तो वैसे ही ट्रिगर होने में 1 मिनट नहीं Yunus लगता. Khan and Yusuf 70 for 1 after 30.5. यूनुस और यूसुफ, What a partnership that was. oh yes, A lot of calm in the Pakistani middle order when those two were batting. Naseem continuing, and this is straightening up. Abbas, sorry, continuing. Straight one, another maiden for Mohammad Abbas. England are 70 for 1 after 31 bowling overs. ड्राई वाला अब हम सिचुएशन अपना चुके हैं, फुल रिस्ट्रिक्शन. कोई मसला नहीं है, रनजात आप रोकें तो कुछ ना कुछ हो मतलब जाएगा. बात वही है ना कि पिच में कुछ दम नहीं है कि हम यार उसको इस्तेमाल करके विकेट यार जब हम अबू धाबी वगैरह में मैच जीत सकते हैं, अबू pitch धाबी, में अबू धाबी. कुछ भी नहीं था जी, पिच जी. में, शारजा में, और शारजा की पिच तो और भी फ्लैट होती है. हाँ. तो there's obviously an opportunity here. आप keep the faith. Gawasfer gets along great with Pakistani players, says Ghost of Kagawa. Yeah. और एक वो स्टोरी जो सुनाता मियांदाद की, वो जो एक 6 मारा था होटल में, तेरा रूम नंबर क्या है? Room number. Clive is saying, let's not talk about the hat trick. Why not? I thought it was one of the great Indian cricket moments. हाँ, especially when they got smashed by 100 by Faisal Iqbal. That was truly a legendary. कामी ने भी रन किए थे उस मैच में. कामी ने तो innings of his life खेली थी in that match. Unbelievable नहीं, stuff. but देखो वो hat trick तो hat trick है, कुछ भी. हाँ. Great Nehra story, by the way. He said Afridi and another helped him get tickets for the World Cup semi-final in Mohali. Really? नेहरा भी यार, boy, he's a gem of a person. He is really a nice guy. और I remember जब he even came to a function, a charity function they were doing for earthquakes or floods, और उधर आशीष नेहरा ने special appearance भी की थी in the UK. But this is an interesting story. आप देखिए मोहाली में मैच हो रहा है और Ghost Kagawa is saying कि नेहरा ने कहा है कि Afridi got him tickets for the semi-final. देखो यार. That's nice. And you know that's what it's all about. अभी आप गंगूली और इंजमाम का शो आता है ना कभी-कभार, जो ये लोग टाकरा वगैरह कराते हैं, तो गंगूली खुद कहता है कि जितनी हॉस्पिटैलिटी उसको पाकिस्तान के टूर पे मिली थी, जाहिर है, उतना like the love and affection that he got in Pakistan was unparalleled. He said, and गंगूली कोई well toured बंदा है यार, कोई उसने सिर्फ 2 साल क्रिकेट नहीं खेली. He toured everywhere across the world. बल्कि like English players, especially Andrew Flintoff, didn't like him. एक वक्त Steve Waugh को उसने टॉस में इंतजार करवाया था, तो they thought he was a bit of a arrogant था, prince. I liked him. I like Ganguly. Of course he changed. Because I like the fact that he had that chip on his shoulder. He pushed the boundaries. The attitude, जैसे कहते हैं ना वसीम भाई, Imran changed the psyche of Pakistan. Exactly. Oh, down the track from Sibley, getting to the pitch of Yasser's delivery. थोड़ा सा nervous और touchy हो रहा है कि यार मुझे runs नहीं मिल रहे, और मैं actually I'll have to pad up. So 70 for 1 after 31.4. Sibley on 32 of 100 till 104. Ball That's of saying absolutely hate हो Malik because he only scored versus India. Yeah, true. Except in the big games. Literally, Sania Bhabi भी. Faisal Iqbal's record against India, quite, I think. Another pad up. Sibley's been padding up quite often here. वही है, उसको पता है मैं बल्ला डालूंगा तो इधर एज निकल जाएगा, might as well just play it safe, and that's a good policy. And मैं bowler ही frustrate होगा, batsman तो नहीं. Yeah. Nehra is hilarious. You should watch his breakfast. Yeah, actually, VK, this is exactly what I was coming to, and I'll come to this after this delivery. Last ball of the 32nd over. England 70 for 1. थोड़ा सा हम calm हो गए हैं क्योंकि विकेट अभी तक नहीं आ रही. अपने का थोड़ी बात चेंज करो, कभी कभार ध्यान इधर उधर होता है तो विकेट निकल आती है. आपको पता है विकेटें हमारे स्टूडियो से ही आ रही हैं. 70 for 1 after 31.5. Yasser tosses this up. It's played away to the leg side. Quick single. And Sibley will now... No, they're going to come back for 2 here. Chance for a run out. Oh, that was close. Not bad. Very risky double there from Sibs. But he'll come through. And Root will now face Abbas. यार मैं ये कह रहा था कि if you really want to experience Indian cricket, क्योंकि obviously आजकल हमारी tensions इतनी है
कि you always feel negative about them. But एक show है YouTube पे Breakfast with Champions. जी. और एक तो पहली बात ये I think Gaurav Kapoor is the guy's name. ऐसा ही कुछ नाम है. I'm a big fan of the way he hosts. In fact, I watch a lot of his work so I can emulate him because he's really good about in terms of extracting conversations. और वो विराट कोहली जैसे बंदे को casual feel कराता है. I mean, विराट कोहली से बंदा को बड़ा स्टार नहीं होगा इंडिया में इसमें. Definitely. And so if he can make Virat feel comfortable in conversation, like it's just two friends talking, then he is really special. और उसमें आशीष नेहरा का एपिसोड बहुत ज़बरदस्त है, रोहित शर्मा का एपिसोड बहुत ज़बरदस्त है, विराट कोहली का एपिसोड तो इट्स एक्चुअली क्वाइट इंस्पायरिंग बिकॉज लाइक हिज स्ट्रगल्स एंड फीलिंग एंड द इम्पैक्ट ऑफ हिज लव लाइफ एंड हिज क्रिकेट, इट्स क्वाइट स्पेक्टाकुलर. 5 overs for Naseem Shah so far, 2 maidens, an economy of 2. He's just given away 10 runs. Naseem Shah, so the first bowling change after lunch. अब्बास का स्पेल ठीक है, कोशिश की, बात नहीं बनी, so we're moving on to the express pace of Naseem Shah. Joe Root. Ghost of Kagawa with a sad story. He's like, also in Irfan, I met Irfan Pathan in person at school and he married my crush 6 years later. Irfan Pathan will steal your girl. ये तो सही deep dive हो गई Ghost of Kagawa की love life में. 72 for 1 after 32. Joe Root now facing Naseem Shah. It's a bowling change for Pakistan. And Joe Root's going to have to get used to this increase in pace. He's probably 10 clicks more than Abbas. Release points for Shaheen Abbas and Naseem today. Naseem is slightly shorter. Skiddier bowler, you can say. Yeah. But in terms of his own like height, काफी high arm action है, ऊपर से ही बॉल आता है. Shaheen थोड़ा सा Did you watch the episode with Yuvraj and his wife? I actually have not watched the Yuvraj episode. Maybe I'll हाँ मैंने शोएब अख्तर वाला देखा था यार. शोएब अख्तर का जो एपिसोड है ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस, तो डेफिनेटली लगता है कोई हैंगओवर से ही उठ के आए थे. यार गौरव, oh, cut away, that is dangerous to cut. मारी That was यार. very close. Yeah, Joe Root has this tendency to cut when it's really not on. इसलिए that's why he has a problem converting 50 to 100. वो अजीब सी शॉटें शुरू कर देता है. भाई अपने 100 के लिए आप खेलो, फिर बाद में देखी जाएगी जो आपकी वैरायटी है. वो बॉल उस सीधी बॉल है, उसको आप क्यों बैक कट मार रहे हो यार, समझ से बाहर है. व्हाई इज इट? अब इस पे टॉप एज निकला है. हां, टॉप एज निकल जाए, आउटसाइड एज निकला है, थिन एज टू द कीपर और गोइंग स्ट्रेट टू गली. Naseem now continuing here. No runs off of these first 2 deliveries. He's got 3 fielders on the offside, point, mid-off, and cover. 2 slips in a gully as well. Good ball. So he's going to keep bowling at that off-stump line. But it definitely seems like the pitch has died down. There's no juice in it. So Pakistan will have to work. If the pitch has died down, then Pakistan's measly effort in the 3rd innings becomes even more criminal. Maybe 277 is the second biggest chase in this ground. यार अब ये तो नहीं कह सकते कि स्कोर हमने कम बनाया. I think खुदा ना खास्ता if we lose we cannot blame the batting target. यार bowlers को execute करना चाहिए था. अब 400 भी होते तो पाकिस्तानी बात करी ना कि सारा blame bowlers पे है. नहीं सारा blame नहीं, but they have to at least make themselves. Continuing here this time outside off. But Khwaja, when we talked about pre-match, we talked about with Bazid on our YouTube channel. We talked with Ahmed Hassan on our YouTube channel. मैंने आपको बार-बार ये कहा था कि टेस्ट मैचेस जो हैं वो 20 विकेट लेके जीते जाते हैं. जी बिल्कुल. वो टाइम की गेम नहीं होती. आपके पास ये बॉलिंग है जो 20 विकेट ले सकती है. अब वही इम्तिहान हो रहा है ना इनका इस वक्त कि आप लोग कर सकते हो या नहीं. Because a flash in the pan like in the first innings is doable. 70 ओवर अगर इंग्लैंड में आप आउट करते हो that's pretty abnormal. 70 ओवर की इनिंग्स थी सिर्फ पहली वाली. But usually test innings can swell up to 90, 100 overs, 100 plus. 110, 20. Can your bowling attack sustain that? Like edge! And another genuine edge that falls short of Babar Azam. Pakistan just keep making this mistake of the slip fielders being too deep. I think he played it relatively well. Soft hands, yeah. Genuine edge नहीं था, उसने अपना control कर ली थी. Yeah, थोड़ा सा पीछे ले आया था बैट. Yeah, it wasn't a genuine edge. लेकिन चलो 4 रन तो रोके एटलीस्ट बाबर ने. बस पाकिस्तान को पेशेंट होना पड़ेगा यार, ऐसी कोई बात नहीं है. यू आर स्टिल अहेड इन द गेम, वे अहेड इन द गेम. जस्ट बी पेशेंट, कोई जल्दी नहीं है. इट्स टेस्ट क्रिकेट, इट्स अ वॉर ऑफ एट्रिशन. बट definitely looks like they're standing much closer now. First slip is Bobby. Yeah. With this a bit straighter from Naseem, closing on a wonderful maiden by Naseem. Good comeback into the attack. 6 overs from him, just 10 and runs. I'm really glad to see कि यार कि हमारी discipline और lines और accuracy right from ball 1 in both innings has been spot on. कोई गंदी bowling नहीं की, कोई चौके वाली bowling ज़्यादा नहीं डाली. दोनों innings में हमने उनको control करके रखा है. And we've bowled with much better disciplines than even the like Broderson, वोक्स और जोफ्रा से हमने बहुत बेहतर बॉलिंग की है. सो क्रेडिट टू विकी एंड ऑफ कोर्स फवाद आलम. रानी चेहरा है इस बंदे का वैसे. 72 for 1. परेशान तो सभी हैं यार कि क्यों नहीं आउट हो रहे. इमाम भी
कैमरे में आना चाहता है. उसने भी हेयर बैंड पहना है यार. क्या Target around Mushy 205 and runs Wakar. left for England to chase down. Let me turn the tables on you a bit. You know, let me spin it around a bit. England are bowling to Pakistan right now, chasing 277. Pakistan are 72 for 1. How do you feel? यार आई वुड बी अ नर्वस रैक कि भाई ये एक विकेट गिर गई तो हम तहस नहस हो जाए. हमने कितनी दफ़ा ऐसे देखा है, अजहर और यूनुस की ऐसी कोई पार्टनरशिप लगी होती थी, फिर एकदम से अजहर आउट हो गया एंड दैट्स इट. हमारे पत्ते बिछाए जाते हैं. Yeah, the house of cards, that is Pakistan batting. Left alone by Sibley. Sibley is playing like this for the past 3 overs now against Yasser. Constantly padding up, and maybe Yasser needs to assess the angle that he's coming in from. Look Because at that this is turn. there's no leg before. How does he imagine that यार his- मैं तो कहता हूँ अगर यासिर शाह ने इसी रफ को टारगेट करना है तो फिर यू नो another more turn? यार ये अंपायर को ऐसे ही आउट देना चाहिए. ये अब ये दैट फेमस बॉल दैट वॉर्न बॉल टू स्ट्राउस. लुक एट दैट. Oh, wow, that is insane. स्ट्राउस कर क्या रहा था यार वैसे भाई. यार ये एंड पावर के स्टंप्स कितने आइकॉनिक हैं यार. ये 2005 सीरीज की जो है. Yasser continuing, more turn this time, and But this is a self-defeating policy to be honest. For the to be batsman, you bowling mean? like for the bowler, मतलब आप अपना time ही ज़ाया कर रहे हो इधर. And here's my Athers trying What? to sweep Warney, and he's being clean bowled as well. that's something special. फिर that क्या the सही तो कह रहे थे इन्हें खेलना नहीं आंदा फिर. सही तो कह रहे थे. more rough this time, and Yasser coming around the wicket. Maybe he should. Okay, let's assess the modes of dismissal available to him from It's this angle. only if Sibley कोई cross the line shot खेले, leading edge हो जाए और comes out stump हो जाए. That's the only way you're gonna get a wicket from around the wicket. What about bowled? इतना यासिर शाह कहाँ टर्न करता है बॉल यार. कर ले तो फिर क्या ही बात है. He's continuing here this time. Gets a leading edge, I guess, or not, just parried away to short fine क्या leg. comments आ रहे हैं जरा पढ़ें. Sari's been sacked. Yes. Alhamdulillah, we smashed our boy. Yeah. फारिग कर दिया उसको फौरन ही. Adil saying Rizwan's picking up balls by his feet, so yeah, they definitely need to move the slips in. Clive is echoing that too. Osama Khan saying playing chess is more entertaining than this. Oh, good shot this. Finally a release stroke from Dom Sibley, and there is cover there at mid-wicket. In the ball यार, full toss दे रही है on middle stump and Yeah, nail. This angle is not working. मतलब आपने सिर्फ अगर रन्स ही रोकने थे तो चलो ठीक है, लेकिन विकेट Runs निकालने ain't. की कोई सिचुएशन नहीं बन रही थी from that angle. 74 for 1 after 34 overs. Root on 26. Sibley moving on to 36 of 112 deliveries. Just a breakdown of the match. Pakistan first innings of 326 with Shan Masood with a brilliant innings of 156. Broad with 3 for 54. Then England really couldn't get close. Ollie Pope played really well, but Yasir Shah 4 for 66 after lunch on day 3. Ibad Pasha is our breath of fresh air. He's saying no team has chased 250 plus versus Pakistan in tests since the last 20 years. Pakistan's record while defending 250 plus targets since 2000 is matches won 34, drawn matches 26. Sorry, matches 34, won 26, 8 draws and no losses. I think Yasser are playing on Sibley's ability to keep blocking. Yeah, a little full and a more wider line is the suggestion from No Foul. Good ball, Naseem right on continuing here. off stump, and good pace as well from Naseem Shah. I'd like to see how Sibley does against Naseem Shah. Be interesting. Zainab is saying, how are you guys so calm? मुझे तो दौरे पड़ रहे हैं anxiety से. यार मैं अंदर मतलब चूहे दौड़ रहे हैं मेरे पेट में इस वक्त. मैं क्या बताऊँ आपको. Agreed, Sibley needs to mess up only once. It's a choice adjective there. सही बात है. You just make one mistake and you could be back in the game immediately. Ben Stokes भी हमने देखा है. He's a top player, but मसले कहानी यहाँ खत्म नहीं होती. सिबली के बाद भी बहुत प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर हैं. लेकिन इतनी concentration 112 बॉलें खेलना यार, it's very hard to do on a day 4, day 5. S is saying Yasser should be taken off immediately. Oh, that could be pad first, but I think he got a little bit bad on that. Inside edge लगा था शायद. And final leg will come into the circle to field it. A little bit of a misfield, but it's fine. There was 2 runs for the taking anyways. Those so needed. Leg by the interesting. So it wasn't an inside edge. So just down the leg side. Shaheen Shah, be careful. Yeah. Singh is saying Gaurav started working as a VJ. You come over to the website changeofpacelive.com/matchday. That's where the chat's really happening. You think this is a negative line from Naseem Shah? Some of the commentators saying. नहीं यार, सीधी बॉल करा रहा है, बस थोड़ी सी लेग साइड होगी. बट इंटरेस्टिंग टू सी कि भाई कोई रिवर्स स्विंग इफेक्ट आता है अभी इस गेम में या नहीं. Shaheen Shah can do very well with reverse swing. Naseem It's about Shah. time for that to happen, right? 76 for 1 now. Joey Root to Naseem Shah. Oh, and then a little cutaway this time. Gandhi Beautifully ball, played. yaar.
I'm not sure how terrible that delivery was, to be honest. It's a pretty manufactured shot. नहीं शॉट तो मैन्युफैक्चर है लेकिन ही ट्राइड टू बॉल इट शॉर्ट वो बॉल उठी नहीं. इट वाज रियली स्लो पेस्ड एंड easily back cut through point by Joe Root for a boundary. And 80 now comes up, and that means the target is now less than 200 runs. Nerves. 200 runs यार. Nerves. That's 2 partnerships. कौन करेगा 100 की 2 पार्टनरशिप. यार बेन स्टोक्स है, पोप है, सैमी पोप, और जैसे अहमद हसन कह रहे थे लॉली पोप. वाकई यार definitely need a wicket. शादी को लगाओ बात पाशा कह रहे हैं. These Pakistan teams in comparison to previous teams is better at keeping it tight. बहुत ज़्यादा यार definitely. Naseem now. Good ball once again. But Pakistan do I think need to have a plan B just in case कि भाई क्या हमारा प्लान है, हम कैसे आउट करें. शदाब we checked him before lunch, काफ़ी decent 2 ओवर उसने कराए थे, थोड़े से opportunities create कर रहा था. He was hitting the right lengths as well. तो I think शदाब को भी try करना चाहिए. So England once again battling hard. I think they might make it to drinks without losing a wicket. To credit to them यार कि उनकी drinks साथ में हमने देखा. Jack Leach doing the drinks. और मज़े की बात है yesterday वो भी पहला सेशन इंग्लैंड जीत गया था, फिर ड्रिंक्स हुआ था और फिर ऑली पोप फॉरन आउट हो गया था, और आई थिंक बटलर आउट हो गया था. आई रिमेंबर समथिंग लाइक दैट. I think you're pulling at a lot of straws right now. Good delivery for Naseem, but well played from Joe Root. It's a quick one at 87 miles per hour, flicked away to square leg for a single. एक बात है कि जो रूट ने हर कंडीशंस में हर पेस के बॉलर को खेला हुआ है. Over 90 odd test matches in his 7 or 8 year career, so he's not going to be phased. Root is definitely the complete batsman. Getting him out is not going to be an easy feat. 81 for 1, the last ball of the 35th over coming up. Root on 31, Sibley plugging away on 36. अब यासिर शाह will be bowling to Root, so interesting कि भाई अब क्या स्ट्रेटजी होगी. सिबली को तो हम राउंड द विकेट आके पैरों में जड़ों में ही उसके बॉल मारे हैं तब से. बट लास्ट बॉल टू सिबली unless he gets on strike once again. England battling hard, trying to win this game, making Pakistan earn it. Naseem this time straight, and it's played away to mid wicket for no run. Zainab is saying, yeah, it's so frustrating. I'm sure dressing room and coaches hear the commentary. Why can't they send a message on field to get them to move the slips up? यार वो बात तो ठीक है लेकिन कैरी भी तो इतनी खास नहीं हुई थी. अब हर दिन तो 12 for 3 नहीं होगी ना इंग्लैंड, वो भी एट होम. सो वी हैव टू शो सम पेशेंस, वी हैव टू शो सम ग्रिट, वी हैव टू शो सम पर्सनैलिटी कि भाई हम वी आर हियर टू फाइट, वी आर नॉट गोना गिव इट अप इजीली. हम अपने सर गिरने देंगे, जैसे वसीम भाई कहते हैं गिरना नहीं है, जो भी हो जाए. आदिल मोमिन ने जो है वो दुआ की जिफ लगा दी. अच्छा यार आदिल वही है ना, कभी ट्रम्प भी कभी कहते हैं यस जीसस इज विद अस. Interestingly enough, Khwaja, and this might not be the best of news. Crick WinViz is now in England's favor. यार WinViz तो पागल हो गया. 51% towards England now. कहाँ से यार, अभी 190 रन उन्होंने कुछ करने हैं और वो भी डे 4 and 5 वर्सेस लेजिट वर्ल्ड क्लास लेग स्पिनर. तो आप इतनी जल्दी आप कहाँ से WinViz फिर कहते हो जी ये डेटा मैट्रिक्स और ये वो BS शुरू हो जाती. प्लीज़ यार अभी भी वन इंग्लैंड 150 for 1 देन आई से कि यार मैच था काफ़ी हद से हाथ से निकल गया है. उससे पहले तो बहुत टाइम है अभी भी. रन रेट भी इतना ऊंचा नहीं है, और ओनली गोइंग एट 2 point something, तो इतना कोई ये नहीं कि वो हमें प्रेशराइज करें क्विक रन्स मार के. Cut away this time, and it'll beat the point fielder for 4. A loosener from Yasir Shah, and the runs are starting to flow to a boundary in the last over. What is the point of doing this? Yasir Shah, I don't understand what he's doing to be quite honest. Things are so glum at change of pace right now. यार गम का साथी ग्लम ही हो रहा है इस वक्त. बट गंदी बॉल फ्रॉम यासिर शाह. यार क्या जरूरत थी आपको इतनी विड्थ देने की, और आप ये लाइन कराई क्यों रहे हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड. Yeah, I think Gopi puts it best that it's a defeatist angle. Exactly. Oh, good bounce, and that's probably why that rough area is what he's trying to exploit. But what are the chances the ball is going to kick like that and go over his shoulder and almost catch the edge of his bat? Maybe Wasim Bhai's wrist should make an appearance, might bring a wicket or two. Definitely यार कलाइयाँ दिखा, थोड़ा मूड बेहतर हो जाए, कोई तरह कलाइयाँ दिखा दे वसीम भाई की. आप WinViz फैंस के थोड़े दम में दम आए वाकई. Oh, another lot of turn there again, but padding up to it is Joe Root, 35 off 73. England 85 for 1, chasing 277. Yasir Shah and Naseem Shah. Ooh, look at that ball. Two Shahs of Pakistan bowling in tandem right now. And Mohammad Abdullah शायद कह रहे हैं WinViz कुछ भी कहे, दिलविज अभी भी 100% पाकिस्तानी है. यही हुई ना बात. क्या बात है, ऐसी बिलीफ होनी चाहिए. Abdullah. Get the leading edge, falling onto the offside. अब वो बैट डाल रहे तो यार आप सिली पॉइंट भी दे दो, शॉर्ट लेग अगर आपने दिया ही है.
52% for England. I have serious issues with WinViz as it stands. But of course, we know all things can change very quickly. And Taimur is saying if a wicket does fall right now, England would also fear a collapse like we do. 100%, yeah. And Ghost of Kagawa to काफी kinky हो गए वो कह रहे हैं I'm going to slap some Nutella on my wrist for good omen. Wild sweep from Joe Root and it'll go to deep square leg for a single. Too full there from Yasir Shah. But 86 for 135.5, last ball of the 36th over coming. I think a drinks break might work in the favor of Pakistan कि भाई थोड़ी सी इनकी भी concentration break हो बैट्समैन की, थोड़ा हम भी reassess करें, एंड्रू डंगर लड़वाओ थोड़े से स्निकर्स बार, थोड़ी टोला बार और ट्विक्स बार दो कि थोड़ी एनर्जी आए. शाहीन शाह is yet to bowl after lunch, so maybe he'll be coming in very soon after lunch, probably after the drinks break. Try to look for some reverse swing. Try to pitch the ball up. Well, they need if they get a wicket here before the drinks break. Yes! Massive There you wicket. go! Yasir Shah has got the wicket. Sharp catch by Asad Cheetah Shafiq at slip. And there we go. Damadam Sibley, you're on your bike. Get the hell out of here. This is Pakistan's game to win. 86 for 2. Dom Sibley not able to dominate. This was a flighted delivery and the change of angle working for Yasir Shah, giving the batsman a little bit of room outside off. And he went for the illustrious drive. Got the outside edge. Straight to the Bobby Bacha Babara. Oh, it's Asad Shafiq with a comfortable catch. That trademark celebration of Yasir Shah is out. And England in not all sorts of trouble, but in some trouble now. Talk now, WinViz. और दिखाओ Yeah, WinViz. 36. यार वैसे टॉम 114. सिबली के हिसाब से यार that's a really poor shot. उन्होंने इतनी देर आपको Who तंग gives किया है. a shit? I don't care if he gets hit wicket. He's on his bike. England have lost 2 wickets. Change of pace is back. England are 86 for 2. Yasir Shah with an important wicket. And that target of 277 now looking a little bit apart. Further and further and further. Yeah, the messages might be a little bit ahead. We are streaming the game here because it's not on the television. ये बड़ा मसला है यार कि beIN Sports have the rights for England's home cricket और इधर UAE और you know some issues चल रहे हैं इनके geopolitical issues, so we have to stream beIN that would normally be on the set-top box. So, but we're right here with you, ball by ball, and here comes Benjamin Marcus Maximus Stokes. Look at that tattoo. And immediately WinViz has gone to 57% Pakistan. यार WinViz से बड़ा लोटा सिर्फ PML काफ लीग है, हर जगह अपनी ये साइडें बदलता रहता है यार, शर्म नहीं आती. चौधरी चला रहे हैं WinViz, चौधरी ब्रदर्स जो हैं. Beautiful bowling there from Yasir Shah. Got it right there, threw it up, invited the drive and a sharp catch. Asad Shafiq, well done buddy. Zabardast catch. And Rizwan delighted. सिबली इतनी देर तुम लड़े हो, मरे हो विकेट पे और तुमने फौरन ही इतनी लूज शॉट पे विकेट दे दी. Honestly, similar to Abid Ali in the previous innings. But Khwaja, that's Test cricket for you. Absolutely. Because it requires 100% concentration every single delivery. अब अब्बास को वापस लगाया जाएगा देखिए या मैं आपको maybe- एक बता रहा हूँ, इंशाल्लाह Stokes out हो जाएगा. जी, जी, जी. But at the same time, I should allude to the fact that the delivery that got Stokes last time was a 1 in a million ball. सही बात है ये अब्बास भी जो है जितना भी अच्छा हो जाए ये बार-बार इस तरह की बॉल से नहीं करवाएगा. यार. फिर नसीम ही आउट कर दे, simple as that. Yeah. Now Joe Root, big test for him. The captain, the leader, going from the front. He's on 30 yard as well. 86 for 2, 36 overs gone. A big wicket taken by Pakistan. They've got a breakthrough. They've got the door open a bit now. Naseem now bowling to the English captain, comes through for a quick single. Captain and vice captain on the crease for England. Indeed. Ben Stokes will have to be, he's a bit of a dasher outside that off stump, so he has to be careful कि भाई the ball ज़्यादा ना छेड़े. But Dom Sibley ने तो ball छेड़ी. He didn't get to the pitch of the ball. Thickish edge and a smart catch at slip. Well done, Asad Shafiq. Good job. Good catch for him. Just in the days of work, Nofel. This was epic in hindsight. Now he kept bowling that leg side line and then bored him and changed the angle, asked him to drive and gave his wicket. Oh, maybe बिल्कुल, Nofel बिल्कुल. is onto something. Maybe this सही was the कह रहे हैं plan. नौफल, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं. Nofel है कि Nofel है? नौफल कौन सा नाम है? नौफल नाम होता है. Oh man, I thought he was like maybe he was like European or something. यूरोपियन. My name is Nofel. यार ये फिर आपके अजीब से ये कहाँ की एक्सेंट है, हमें जरा समझाए हमें. ये यूरोप की एक्सेंट है. यूरोप से आया मैं, यूरोप से. 87 for 2 after 36.1. शाहीन नसीम शाह के भी कॉलर ऊपर हो गए, थोड़े टशन आ गए, थोड़े भरम आ गए. बॉय में ऐसे होने भी चाहिए यार. यू नीड सेल्फ बिलीफ. दैट्स द नंबर 1 थिंग you need to succeed in life.
87 for 2. Stokes yet to face a delivery. Here comes Naseem Shah. The delivery band. Stokes does well for his first ball, getting behind the line. Yasser to take 6 for 10 in the match. Says 6 to 10 wickets in the match. Says Zainab Razvi. Yeah, fair enough. 5 to hogi. Definitely he should be on his way to get another big haul in England. He loves bowling against them. Plenty of hats full of wickets against them. Bobby Prince is asking who's watching Quali. What's Quali? Quali? I'm not sure. He's I think a rap artist. ना क्या है वो? K से नाम है. No, KWALI. I hope it doesn't mean like I don't know. Kawali maybe से. यार कवाली. तुमने YouTube तो नहीं लगाया हुआ पीछे जरा चेक कीजिए. कवाली की स्पेलिंग नहीं होती. Ooh, anyway, good fielding there by Gully. Don't give any easy फखर फिर से आ गए क्योंकि यासिर शाह is bowling. नवीद भाई तो फिर है ना फैन, वो खुद देख रिस्ट स्पिनर है तो ऑफ कोर्स दूसरे को भी देखने आएंगे. Score at the end of the day, England 237 for 7. यार इस तरह की बात यार इतनी टेंशन हमारी को नहीं चाहिए. टेंशन नसीम ने विकेट ले ली तो वसीम भाई ने क्रेडिट ले लेना है. I had a talk with him this morning. ऑफ कोर्स वसीम भाई का तो डिफॉल्ट डायलॉग है वो. बेशक दूसरे मुल्क में भी बैठा हो. या आई हैड अ टॉक विद हिम, आई रेकन दैट्स इट. फिर वो बॉलर जाके 3 विकेट ले जाता है, मैच जिता देता है. Always Skitty Reds. ये कोई यूजर नेम है वैसे. ये मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस की. Man, you know it. 87 for this is a Chelsea only zone. Edged through the slip cordon. That'll go for 4. Not a genuine edge. I think he opened the face of the bat a little bit. Did Ben Stokes? Only Skitty's Reds is saying I was worried that Stokes would be fired up because he didn't get any bowling and drop catches, but then he did and he got a couple wickets. So I'm hoping the fire's not there. Yeah, one thing about Ben Stokes, I don't think the fire is ever burnt out. He's one of those players that's just always up to the mark. That's what makes him the best all-rounder in the world. All Might 93 saying need more confidence when Root is out. Yeah. Look at that, 56% of Pakistan now win this. Naseem Shah has been really unlucky throughout the match. Such great bowling and only 1 wicket. Naseem continuing here, this time shouldering arms at it is Ben Stokes. 91 for 2 after 36.5 apologies. Chasing 277. Azhar Ali looks a little perked up too now. Definitely. Some positivity in the ranks. Good signs all around. Naseem Shah looking, would you say he's looking slightly tired? A little bit of fatigue, Khwaja? कौन Naseem? Yeah. यार he looks fine to me. I think अभी भी speed मारा. अभी just bowled 140k to Ben Stokes for his delivery. So बस थोड़ी अगर wicket मिल जाए तो उसका confidence बढ़ जाएगा, you know. Yeah, that would be nice. And he is into his 4th over in this spell. He's bowled 8 overs in total in this innings. England are 91 for 2 now. Naseem this time coming into Ben Stokes. Dot delivery. Good defense from Ben. Getting behind the line of the ball. Just a forward front foot defense. आसिया के नहीं वसीम भाई का डायलॉग ही की टू टेक विकेट है. सही बात है यार. He's such an inspirational figure, such an icon, such a hero, such a legend for all of us. The World Cup man of the match, 414 test wickets, 502 ODI wickets, and of course the brand ambassador for Ariel. Most of all, most importantly of all. That has really been his most significant contribution. भाई कितनी दफ़ा हो आप कभी गए हो घर की शॉपिंग करने तो टाइड पड़ी हुई है, ओमो पड़ी हुई, लेकिन आप एरियल लेते हो बिकॉज ऑफ वसीम भाई. एक्चुअली मैं तो सिर्फ सोप से धोते हैं. मैं पर्सल लेता हूँ. अच्छा पर्सल. अच्छा हाँ, वो तो आपका एक इनसाइड कनेक्शन है. इनसाइड कनेक्शन है क्योंकि अहमद हसन जो है वो हमारे. शाउट आउट टू पर्सल. अगर आपने हमें स्पॉन्सर करना है तो कर लें यार. थोड़ी शर्म आ जानी चाहिए आप लोगों को. 91 for 2 जिधर हमने नुटेला शुड स्पॉन्सर. सही बात है. यहाँ कोई ब्रेसलेट ब्रांड हो जो कलाइयों को दिखाती है. सही बात है यार. ARY वो जब ज्वेलरी होती थी वही हमें कर ले. यार आपको याद है 2005 2006 की जो सीरीजें होती थी. जी जी जी. और रिवर्स स्वीप फ्रॉम Joe Root. An inspired shot from the English captain will get him 4, and that's good to see, even as a Pakistani, because I think that will yield more results for the bowling side. As we've noticed, reverse sweep has become more of an orthodox shot for modern day batsmen. ठीक है भाई, तो यही शॉट मारते रहे, देखते हैं कितनी दफ़ा लग जाएगी. सही बात है. But Naveed Fakhr making a point, the unluckiest player is Fawad. If Shadab was to bowl only 5 overs so far in the test, we could have gone with Fawad as especially. मैं यही हम डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने लिटरली शदाब को उसकी बैटिंग के लिए लिया और फवाद उन्होंने 1-on-1 उसको कंसीडर करके. खराब है ये तो, बहुत खराब डिसीजन है. Because even though he did get 46, another pad up from Joey. Zainab Rizvi कह रही है नहीं चेंज ऑफ पेस का स्पॉन्सर इजी पैसा होना चाहिए. यार मैंने तो उनको टैग भी किया था कि मैं स्पॉन्सर करूं, लेकिन अभी तक उनके रिप्रेजेंटेटिव ने हमें जवाब नहीं दिया. लानत है उस पर वैसे कि क्या हमें कर देना चाहिए था.
95 for 2. Air wide 42. Carat gold bracelet sponsors needed for change of pace 414 to celebrate Wasim by his waist. Cut away this time. A little bit of room for Joe Root, and he's so good that he's not going to miss out. But I think it's Naseem Shah doing the fielding as the cover sweeper. And he'll get another single. Root is getting close to that 50 now. And he gets better. He ages like fine wine. But हमने देखा he has a very big problem with his conversion rate. इसकी तनकीद इसकी यही होती कि ये 50 मारता 100 नहीं मारता. But Pakistan के खिलाफ he has a big daddy double 100. So I think he'll be backing himself to get big runs. यार अब हर बंदे का conversion status जो होता है वो यूनिस खान जैसा नहीं होता. वो तो वर्ड डॉक्यूमेंट को भी सेंचुरी में कन्वर्ट कर दें. उनके पास मौका होता है. Asia making the point to Naveed. Shadab ने 2 विकेटें भी ली हैं. So the poor decision is to not letting him bowl. Fair point. Ooh, yeah. That's a different way to look at it, yeah. And again, the conversation, and it might be premature, is about, because Asad Shafiq did look good for his few runs, it might be the conversation should be Fawad for Asad rather than Fawad for Shadab. Ooh, on the back foot this time, hitting Stokes a little too high. So that'll be a dot delivery. Yasser. Ben Stokes, yahi hai ki he can't play that cover drive. That rough is staring him in the face. Look at that. But it'll be a very big test of his temperament कि भाई ये यासिर शाह को कैसे खेलता है. 1 for 33 in his 12.4 overs. Yasir Shah so far in this innings. And this time, what do you think about the short fine leg that's in place? Short leg. I think leg? Short leg और वो जो leg slip रखी हुई because he might tuck it around the corner, so it could be a sharp catch. He's in play definitely. ज़ैनब साकिब ने यार शेबी की तरह कोई टुमटुमे भी नहीं मारता बॉलिंग के लिए बाकी. तो इनकी गोडे पसली इनकी तोड़ दें 2-3 तो अच्छा है. Ooh, good bowling there, right into the rough, and well played by Ben Stokes as well. Got to the pitch of the ball. आसिया ये भी सजेशन दे रही फवाद फॉर आबिद तो फिर ओपनिंग अजहर से करवाएंगे. नो आबिद cannot be dropped भाई. उसके लास्ट 3 टेस्ट में 200 हैं. हाँ ये बात इस तरह तो नहीं होता ना. I think we really don't need to make too many changes into this team. But yeah, और अगर कोई changes की ज़रूरत भी है तो मिसबा करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है. It really depends on the result of this match because you know how the media is. अगर आप 1 रन से भी जीत जाते हैं ना तो ऐसा होगा कि आपकी सिलेक्शन परफेक्ट थी. अगर आपकी 1 विकेट से हार जाते हैं तो आप कहेंगे यार ये क्या सिलेक्शन थी क्या. This is finest, very fine margin in this game of cricket. Ghost of Kagawa really not happy with the shot that Abid Ali played. He's saying that the accountability should be Asiya ने भाई कह दिया I just want Fawad in the team. वाकई यार. Yeah, I think a lot of us do, and I think it's, for me, the inclusion of Fawad Alam is not just, it's a status, it's a symbol, it's a message that yes, you can toil hard at the domestic level and you might actually reap the rewards rather than just playing the Bangladesh Premier League and still be playing Test for Pakistan. No offense to Shadab Khan, I think he's a great cricketer, but the precedent that sets for first class cricketers in Pakistan is a dangerous one. 96 for 2 after 38.1. Second delivery of the over now coming up. I think it's Babar Azam who's vigorously using his body. ये बात आप कहाँ से कहाँ ले गए? That's Muhammad Abbas to shine the ball. Apologies, not for anything else. ज़ैनब साकिब, have we ever won a test match one-sided? I think recently हमने यूएई में तो न्यूजीलैंड में हमने पहले लगाया था. इनिंग्सों से हराए हमने. वो जो 8 विकेटें ली थी यासिर शाह ने. 6 for 2 against play away 3 offside. नहीं यार यूएई में तो हमने जब वो इंग्लैंड को भी 3-0 मारा था काफी कंफर्टेबली मारा था. 100 रन चाहिए तो उनको अब्दुल रहमान ने उनको 70 पे बुक कर दिया. ज़ैनब रिजवी कहनी 150 रन तक एटलीस्ट 5 आउट होने चाहिए. मैं तो कहता हूँ 6 आउट हो जाएं, 8 आउट हो जाएं, जितने भी हो जाए, बस जो रूट आउट हो जाए उसके बाद आई वुड डेफिनेटली फील कि गेम इज़ विद इन अस, क्योंकि जॉस बटलर भी ख़तरनाक है, काउंटर अटैक करेगा और लॉलीपॉप भी अभी भी बचा हुआ है. So they've given the bit of a platform to the middle order to come through, but it's a light middle order. They're all attacking players. They won't bat time. Naveed requesting for a more aggressive approach. He's saying that there should be bouncers from this. Daleri to set up the bowling honi chahiye. To set up the batsman. Good ball there from Naseem Shah. यार कितना accurate है ये youngster. थोड़ा सा frustrated है यार, frustrated हो रहा है क्योंकि Joe Root is batting really well here, really battling hard for his side. And Pakistan are working hard on that ball, getting it to reverse, getting it to shine one side के भाई कुछ निकले. Adil is just decided to just comment one word comments now like Trump. He's sound comment कर दिया. Sound. Yeah. Well, wicket. Let's see now to Joe Root. Important ball coming up. Important, massive player for England right now. He's got him! What a catch! It slipped from Babar Azam. Naseem Shah, the young firebrand, has done it for Pakistan. Joe Root is walking back. 96 for 3.
कुछ बोले मुसाद आप तो चुप ही करके I'm just amazed at this delivery because this is basically unplayable. Joe Root, the English captain, who's got 42 to his name. Now, this is quite disappointing if you're looking on as an Lovely English fan, catch, because yeah. he was finally in, he was finally getting in form, and Joe Root, and look at Naseem Shah. It's a celebration, and there's a little bit of relief as well. सही बात है. Look at that celebration. Massive wicket for Pakistan, a आपको massive याद wicket होगा, from Naseem आपको- Shah. हाँ, बोले, And बोले. Joe Root goes back 42 off 84. England now reeling. Just at the eve, at the stroke of drinks, we've taken the huge wicket of Joseph Root. And drinks around the house now, Khwaja. Massive wicket. Huge turnaround here for Pakistan And cricket. आपको अगर याद होगा, there was a small brief interview that Naseem Shah gave before the series, that who would be your dream batsman to dismiss in your hat-trick, and Joe Root was one of them. And who are the other two, do you remember? I think Virat Kohli tha, I'm not Right, sure. I think right. somebody else will definitely remember, but Joe Root तो मुझे नाम 100% याद है उसमें था. So he's got Majid the is saying, prized wicket. Khwaja, can we get your customary get out of here, buddy? Get out of here, buddy! 96 for 3. England now are looking at an uphill battle Once here. again getting a start, Joe Root, and not kicking on. अभी अच्छा आसिया का भी comment आया था कि after celebrating for 2 days, it's going to be so difficult to take this loss. I hope she feels better now. And Akib is अच्छा, the pendulum is swung completely the other way, as Akib is saying Winwiz should now make it 100% for Pakistan, no questions asked. यार बेन स्टोक्स बहुत खतरनाक प्लेयर है यार. And Abdullah उससे डर लगता है. Abdullah Amin कह रहे हैं आप लोगों को कहा था टेंशन नहीं लें, लंच के बाद का इंतज़ार है. मैंने अब रात 2 बजे मैकडोनल्ड खाऊंगी. मकडाउन लोड लिखा हुआ है. मैकडोनल्ड. बड़ी बात है, आपने उसको ट्रांसलेट कर लिया अपने माइंड में. मैं तो मैंने कहा मकडाउन लोड क्या हो रहा है. Pope, Ollie Pope had a good innings last लॉली time. पोप यार खतरनाक बैट्समैन है यार वो भी वाकई. And a prized wicket for Naseem Shah. Really, he's toiled hard in this spell. 5 over spell so far. बट देखे हमने इतनी देर इंतजार किया, घंटा 1.5 और पलक झपकते ही 2 विकेटें गिर गई हमारी, you know, उनकी सॉरी अंग्रेजों की. So Ben 9 Stokes and Ollie Pope now batting together. It's, और वो दोनों शॉट खेलेंगे, ये नहीं कि हम सोचें भाई क्या करना है ये वो. देखिए अब कोई बैट्समैन ऐसा नहीं रह गया जो लंबी इनिंग की बात नहीं है, पर जो डिफेंड कर सके. हाँ Like their natural stance, their mindset is going to सही बात be है. keep playing. एंड आई थिंक जो सिचुएशन है इंग्लैंड को भी यही करना चाहिए भाई. हम रोक रोक के तो हम आउट हो जाएंगे. Yeah. शॉटें मारो, शॉटात मारो, कैचेस दो, अपॉर्चुनिटीज दो, चांस दो, तो यही फ़ायदा है. बट ऑल इज स्किडी रेड्स कह रहे हैं इट्स स्टिल ओनली द फैब फोर. बाबर हैज़ जस्ट रिप्लेस्ड रूट. इंटरेस्टिंग. Yeah, and again, Michael Atherton on air and a few of the comments on Twitter also saying that it's difficult to get started on this pitch. आदिल मोमिन ने बड़े संजीदा तरीके से बोल दिया जी, हमें सिर्फ स्टोक्स, पोप, बटलर, वोक्स, ब्रॉड, आर्चर, एंडरसन की इंपॉर्टेंट विकेटें चाहिए. That's it. That's it. Fair enough, Adil. Ads. No, but a good point coming out from a few of the analysts. Look at the celebration from Asad and Babar. यार हमारी स्लिप कैचिंग अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है काफ़ी सॉलिड रही है इस सीरीज़ में सो फार. अब आप ये सोचिए ये क्या ड्रॉप हो जाता. नहीं यार क्यों ऐसे सोचूं यार. नहीं, पर होता रहता है. क्यों आप हमेशा मनूस बातें करते. डोंट इवन पुट दिस आउट देयर इन द यूनिवर्स. Joe Root. But Khwaja, let's talk about Joe Root for a second, because we've seen that on this pitch it's very difficult to get in, and he had done that. He'd spent so much time. सही बात है. 80-90 बॉले वो बॉल ज़ात वो खेल गया था. It really just, but again, अगर आप replay देखें उसका, the delivery is difficult to play. Best of 135 not out from Ollie Pope. He's got an average of 44. Yeah, he's a very underrated player. अच्छा Not a lot being talked about him in the international circuit, but he really could be something special for England. And I wouldn't be surprised that he'd be starting coming up a little bit higher up the order, maybe ahead of Ben Stokes. बेन स्टोक्स हाँ डेफिनेटली इन द फ्यूचर. आई थिंक फिलहाल वो काफ़ी प्लकी अटैकिंग प्लेयर कहते हैं. उसका मेंटालिटी 6 पे सूट करती, 5 और 6 पे. फ्यूचर में डेफिनेटली ही कैन बी लाइक एंकर बैटिंग एट 4 और इवन बैटिंग एट 3, क्योंकि जो रूट को हमें पता है ही डजंट लाइक बैटिंग एट 3. दूसरी बात यह है कि आपको पता है मुझे इतना पसंद है कि that this wicket now and these two and even Chris Woakes and Joss Butler to come, as Naseem Shah will continue to. Ben Stokes driven well to mid off. इतनी जोरदार शॉट. Chance for just आई थिंक उन्होंने देख लिया था अजहर भाई picnicking outside of his crease there. बट वही बात है, देखें ऑली पोप अपनी शॉट नहीं रोकेगा. ही इज नॉट अ ब्लॉकर, ही इज नॉट अ नजर. Delivery for the wicket. What are you going to do that to a batsman? यार आप छोड़ भी नहीं सकते इसको. और वो भी 37 ओवर पुरानी बॉल है. ये नहीं है कि जिम पहले 5 ओवरों में ये करा रहा हूँ. Extra bounce and extra carry and really a big and that celebration was real, just real relief. A very emotional moment for Naseem, who was clearly
dedicating that to probably his beloved mother who passed away last year. A really right big before the wicket test for him. match. Right before that test बिल्कुल. match. 96 सारी for हम पूछ 3. रहे हैं, how worried are we about Stokes? I think we're pretty worried. I'm actually going to speak about that now. Flicked away from Pope right away, and I think he's alluding to what I'm going to talk about now because there's no square leg in place for 4. Khwaja, 39 overs gone. The 100 has come up for England at the loss of 3 wickets. Not the end of the world for them because they just need 177 more, and they still got a good, strong, quick scoring middle order. किस स्टेज left. पे आप फील करोगे कि जी पाकिस्तान ने मैच उनके हाथ से निकाल लिया? यार बटलर, अच्छा मैं इसी बारे में बात करने जा रहा हूँ कि देखें अब आपने जो है ना सिबली बर्न्स रूट को आउट कर दिया. दीज आर योर क्लासिक टेस्ट मैच प्लेयर्स दैट विल डिग इन, दे कैन बैट यू 2-3 days. अब बटलर, वोक्स और ऑली पोप और इवन टू अ सर्टेन एक्सटेंट स्टोक्स, they're not your conventional test match batsmen in the sense कि वो अगर हो सकता है Stokes तो he can play any innings that he wants, but the rest of them they're shot mirror, they're stroke players, they're gonna get runs. So that's a double-edged sword. एक बात तो ये है कि they're gonna give you opportunities. There will be edges out of the rough, there will be edges out of the old ball that might reverse. The other side of it is that if they end up sticking around, if they end up playing 20-30 overs, ये score बहुत कम हो जाएगा. हाँ ये बात. Because they're gonna go at 3.5, 4 and over. They could probably easily add another 80-100 runs. Easily. Ooh, Yasser now big continuing. turn. तो स्टोक्स को ये वाली बॉलें खेलना है यासिर शाह की, इट्स गोना बी अ मैसिव चैलेंज. लेकिन आपने जवाब नहीं दिया कि किस मरहले पे जाके आप फील करेंगे कि पाकिस्तान ये मैच कंट्रोल कर गया और जीत जाएगा. किसकी डिसमिसल पे या किस स्कोर पे या किस? मेरे हिसाब से, और थोड़ा सा आप कहेंगे यार तुम ज़्यादा ही बात कर रहे हो इस लिहाज पे. And I'll come back to it after this delivery. Yasser now tossing it up, getting a lot of turn. Big appeal. Yeah. And it's not been given. What? If that hit his pad, that's stone dead. ये कैसे नहीं दिया? Ben Stokes is cutting a nervous figure right now. It might be going down like. बल्ले पे लगी है. I think बल्ले पे लगी है. Azhar Ali's not interested. मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये पैड फर्स्ट था तो आउट क्यों नहीं दिया? बल्ले पे लगी है उसके बेचारे के. Yeah, I think it might be. Let's take a look. हमने बेचारा कर दिया उसको यार. It's hit the face of the bat. वो भी डर गया था. उसे क्या हुआ मैंने क्या किया? Look at Yasser's appeal. वैसे जो अंपायर ने जो पहले दिया था कॉर्ड बिहाइंड, जिस बुनियाद पे दिया था वही तो ये भी दे सकता है. 100 for 3 and I'm gonna have it only 2 words, dumb appeal. Reverse sweep this time from Ben Stokes. What a shot. मैंने आपको यही बात की है, ये प्लेयर्स जो है ना ये टिकने वाले नहीं है, ये रन्स करेंगे और यही बहुत बड़ा खतरनाक खौफनाक चीज़ है पाकिस्तान के लिए. सही बात है. Now for me I think you need to get for me I'll be very convinced with that Pakistan are going to win the match if we get Stokes, Pope, Wokes and Butler. यानी सारे बैट्समैन उनके. ये क्या जवाब हुआ? यानी you need them to be 7 down to be convinced. तो उनके ब्रॉड तक जाते हैं, आर्चर तक जाते हैं यार. अब बात यार कम ऑन यार, थोड़े तो ब्रेवरी दिखाओ. मैं कहता हूँ जब तक स्टोक्स है तब इनकी मैच में दम है, उसके बाद वेरी वेरी डिफिकल्ट. I would say bring on Shaheen Shah for Stokes now. हाँ नहीं, उसका स्पेल ड्यू है डेफिनेटली. Good flick of the wrist from Ben Stokes to square leg for a single. Again, he's rapidly getting runs. He's 9 off 12. Pope दानिश 4 और off 2. गोपी मियाँ कवाल भी कह रहे हैं till we get Chris, Imran, Kapil, Botham, Wokes, the game won't be over. और गोपी मियाँ कवाल कह रहे हैं स्टोक्स एंड पोप की विकेट हमें चाहिए. और ज़ैनब रिजवी कह रही है I'll be comfortable when all the regular bats plus Mr. Kamina Broad is out. यार बिल्कुल भी यार आप लोगों में सेल्फ बिलीफ नहीं है हमारे पाकिस्तान टीम में यार, गलत बात है. 105 for 3 or 39.4 overs. Yasir Shah now bowling to Lollipop. Stokes has moved on to 9 of 12. Some adventurous shots. He's not planning to stick around. He's going to play his game. He's going to counter-attack the Pakistani bowling. Oh yeah, spinning away from the right-hander this time. The Popester, Popology, Lollipop. As we like to call him on the chat. यार इसका बैट भी काफी खूबसूरत है. I like the That's blue like grip the color and GM, combination. Yeah, it looks very nice. Chelsea blue. यार एक तो चेल्सी. What do you have, bro? Well, यार चेल्सी और यूवेंटस की तो इतनी अच्छी हिस्ट्री है. हमारे कितने चेल्सी फैंस जो हैं वो यूवेंटस को सपोर्ट करते हैं. क्यों? In Italy, I don't know why. Most of सारी के लिए नहीं पुरानी बात है ये. हाँ इटालियन कनेक्शन बहुत है ना, वियाली और डेशाम. So actually like if you आदिल मोहम्मद भी ने भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया. Okay, do you think Broad Archer can win it with 50 needed in today's pressure? No chance. No. उनको बाउंस मारना क्योंकि गर्दन तोड़ देंगे हम. बाउंस भी नहीं, अब्बास जो उनको ऑफ स्टंप पे तंग करेगा. दैट्स व्हाट्स मोस्ट अनर्विंग कि भाई ये जो बॉलर हमें बार-बार हर बॉल खिलाता है वो ज़्यादा हमें बुरा लगता है. Yeah. Faisal is saying he's very he's comfortable now and he's saying that Pakistan will win because these guys might get runs but they'll also lose wickets constantly. And if Stokes manages to survive with Yasir Shah bowling in the rough round the wicket तो फिर तो वाकई यार वो डिजर्व करता है if he can play such an innings in such tough conditions. WinWiz is saying 70% towards Pakistan now, no chance of a draw, 30% to England.
यार ड्रॉ का तो वैसे ही कोई चांस नहीं था. हाँ, दलेरी दिखाओ कोई मैच अपना. ये बात पाशा, ये हुई ना बात. Naseem Shah now coming in. They're persisting with Naseem. I mean, he's still bowling. विकेट लिया ना, तो आई गेस देयर सेइंग वी हैव टू बैक हिम. ये तो है. And he's still bowling at 86. टमटमी पे मारो, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं. Stokes and Pope. उमर अब्दुल्ला थोड़ी शेर व शायरी भी कर रहे हैं. नोप, ओनली पोप. क्या बात है. We have some poets in our midst, as we like to say. Azhar Ali on यार the आप एक verge. काम करें, we'll interact with some of the chatters, some of the chatter boxes, some of the chat. हाँ, और हमने कहा था यार, जो हमारे the चेंज ऑफ commenters. पेस फैंस हैं, जो हमारे लिसनर्स हैं, प्लीज डू tweet us with a picture or like a video or like a short anything or Insta of your setup, of your change of pace setup, how कि you're आपके listening to कैसे us. देख रहे हैं चेंज ऑफ पेस. आर यू लिसनिंग टू इट लाइव, आर यू वाचिंग अलोंगसाइड द टीवी, क्या लैपटॉप पे लगाया हुआ है. वी रियली लाइक टू गेट योर फीडबैक एंड वी वर प्लानिंग टू एक्चुअली मेक अ स्मॉल डेडिकेशन मोन्टाज टू ऑल ऑफ यू गाइज. सो प्लीज डू मैसेज अस. We will post it. We'll retweet it immediately. Yeah. So send it in at change of pace 414 is our Twitter handle. फैसल महमूद कह रहे हैं ऑनेस्टली आई थिंक वी जस्ट नीड स्टोक्स. दानिश कह रहे हैं पोप लुक्स लाइक इयन बेल्स लॉन्ग लॉस्ट चाइल्ड. वाकई वही स्टाइल भी वैसा है, और उसकी रंगत भी उस किस्म की, उसके बाल भी वैसे ब्लॉन्ड रेड हेड टाइप, जो अजीब सा इनका कलर होता है. Naveed with a good comment. I vehemently agree with this. Ooh, what good a shot that shot, is yeah, from good Stoke. Good fielding. fielding. Yasser shot at mid wicket. That came at pace. That came quickly to Daisy. स्टोक्स जरा जोरदार शॉटें मार रहा है यार. Shot out. And Naveed is saying, I hope we don't overuse Naseem. His body is still a work in progress. सही बात है. Yeah. He's in the growing years, from the prime of his life. You're listening to ChangeOfPaceLive.com, your home of Pakistan cricket commentary. And we're bringing you every ball of Pakistan cricket live on this wonderful show, this wonderful community that you all have made possible. Make sure you tell your friends, tell your kids, tell your wives, tell your colleagues. सबको बताएं please. हमारे पास कोई इतना बड़ा marketing budget तो है नहीं. $0.00. So please make it happen. Shermanator 2.0. Who's that? माजिद हुसैन सजेस्ट करें टाइम फॉर अब्बास. एक्चुअली अब्बास ने अभी भी एक लंबा चौड़ा स्पेल कराया था, आई थिंक आफ्टर लंच. So probably it's time for Shaheen. He's only bowled 5 overs in the innings. Yeah. And there's a left-hander strike. He bowls really well to left-handers. Asya, you're asking for the Yorker, and a few people have as well. My take on that is a bit against that, because I always feel the Yorker is a very overused or overhyped delivery, especially in Test match cricket, because उसके full toss बनने के बहुत chances होते हैं. और दूसरी बात ये है क्योंकि आपकी फील्ड उस हिसाब से नहीं सेट होती ना. Exactly. और दूसरी बात ये है कि Yorker is actually a very specialist skill. How was that? Big appeal, Naseem Shah. And I think it's a bit high, I reckon. I think down leg as well भी है. I reckon. Talk to him in the morning, I reckon. But and I think a review. यार review ले लो यार, क्या बुरा है. Review has been taken. Oh, well done. Ooh, how do you? How's the T form? What do you reckon? यार वो जो उसका Jason Holder का T है ना review वाला, forearm और उसके तो बाजू ही इतने बड़े हैं. Not sure how I feel about Azhar Ali's T. थोड़ा वैरायटी टी था ये, लेकिन if it gets you the wicket, I think that's the way all of Pakistan should be doing it. Bit of an off cutter there, very good just bowling going down leg, definitely. It's a poor review, I reckon. यार अंपायर को ही आउट देना चाहिए था यार. Yeah. No, that's and again, this is a game of fine margins when it comes down to maybe tomorrow morning or later tonight. यार वैसे मिडिल लेग लगी, इतनी बुरी अपील भी नहीं थी. यार अगर क्लिपिंग हो जाए तो ठीक है, but I think this is missing by quite some distance here. हाँ, क्लिपिंग हो जाए तो ठीक है, बच बचा हो जाए, फिर कोई नुकसान नहीं होगा. But he definitely didn't hit that. No, I think it's definitely going down leg and it's pitching. यार देखो यार, मिडिल लेग बॉल लगी थी यार. Line, yep, missing. The review has been lost by Pakistan. It's a pretty bad call. कोई बात नहीं यार, नसीम शाह को बैक करना चाहिए, कोई बात नहीं. वैसे भी अभी भी 2 पड़े हैं यार. बैक करना चाहिए, but आपको टेंशन ना को. मैं आपको सिर्फ ये याद दिला रहा हूँ. जैक लीच जी, बेन स्टोक्स, ऑस्ट्रेलिया इन द एशेज. जैक लीच का प्लम एलबीडब्ल्यू अंपायर ने खा लिया, और एल्स ऑस्ट्रेलिया वुड हैव वॉन द टेस्ट मैच. Because they used the review on a ridiculous decision 2 overs before. और अगर आप वो देखें, अब वो Amazon की documentary, तो उसमें भी वो कितनी they rue that mistake. So the review is not something that you take as a luxury. It's now a part of your strategic performance of the game. Pulled away. Has he got it? No, I don't think there's a glove on that. 105 for 3, missed it. 41 overs gone. गोरी करा रहा है बॉय उसको भाई. ये उस किस्म का बैट्समैन नहीं है जिसको आप राइल अप करो. इसको दूर ही, इसको तंग नहीं करो, बेहतर है आपके लिए. But 105 for 3, eventful over there from Naseem Shah, and appeal. A bit of a catch down, like leg side tried as well, but nothing going. And Naseem Shah, I think now is going off for a well-deserved rest. Time for the Eagle, Shaheen Shah Afridi, perhaps from the other end. Yasir Shah will be bowling to Ollie Pope, who's looking adventurous, looking to play some shots as well.
Naveed Fakhar keh so far Azhar Ali's captaincy record big wins and big losses. This is a test of his captaincy skills as well. Yeah, he hasn't had many close games. It's a good point from Naveed. Yeah. Australia में तो चलो it was a baptism of fire. बेचारा शाहीन शाह and नसीम शाह I think एशिया से बाहर पहली दफ़ा इतना दूर गए इंग्लैंड से ज़्यादा. What do you make of that decision to debut Naseem Shah, 17, 16-year-old Naseem Shah in Australia? यार हम देख रहे हैं क्वालिटी तो है उसमें. Yeah, but drop in pitches को एक बच्ची की कमर तोड़वाना गलत है ना. Oh, that kept low. That leg spinner to Ollie Pope, who's 4 off 5 now. England 105 for 3, chasing 277. You're listening to ChangeOfPaceLive.com, your home of Pakistan cricket commentary. Ollie Pope. And remember to send in your photos of your Change of Pace setup, where you're do. listening, how you're listening. Tag us at Change of Pace. Could have been an inside edge bowled, but just bounces past the keeper to slip. Ollie Pope हर बॉल पे शॉट खेला है. He's definitely a nervous starter. ठीक है, natural timer भी है, but he definitely doesn't seem like he's going to stick around. Popester. They're here to make runs. Popology. 105 for 3 now. Yasir Shah has picked up that crucial wicket of Good Dom ball once again. Sibley. Now Yasir Shah is finally hitting that right line and right line, that middle and off line. And the English batsmen, there's clearly a tendency to go onto the back foot to the leg spinner, which is a dangerous They're not picking it prospect. out of his hand basically. Exactly. मसला ये है. और जब आप वो कर रहे होते तो फिर आप front foot पे आ सकते हैं, वरना आपको you're just buying time essentially. Down the track this time from Pope. I don't know he knew much about that, to be honest. There was a bit of a leading edge. That point will go field, and it'll be another single. Majid Hussain कहने this period is calling out for a Fahim Ashraf spell. I think there is no such period in the game of cricket calling for a Fahim Ashraf spell. मुझे लगता है Islamabad the United वाले भी उसको नहीं चाहते. Absolutely gorgeous photo being sent in by Faisal Parla on our Twitter. Nice. He's listening to us while he's running. Wow. And, maybe you're running and so you can't comment in, but Faisal, I'd like to know where this is. This is a beautiful view that you've got. I think he's in the US, I believe. Yeah. Oh, good turn again from Ben Stokes, just falling onto the leg side for no run. 106 for 3 now. 45.5. दानिश कह रहे हैं पोपला will edge one to slip soon. और इबाद पाशा कह रहे हैं शेडी को लगाओ यार. वाकई शदाब is being underutilized और I think हमें स्टोक्स को तंग करना चाहिए दोनों तरफ से स्पिन लगा के. Naveed Fakhar कह रहे हैं I reckon Afridi would have been lethal on this wicket. He was so good with his control in the last few years. काफी पुरानी बात ले गए हैं. Has he got him? Big appeal. Has he got him? Big appeal from the Pakistanis. No interest from the umpire. Richard Kettle Chaiwala. यार अब फिर रिव्यू लेना होगा हमें यार. नहीं असद शफी कह रहे ठंडे हो जाओ, कोई एज नहीं लगा. And Rizwan. Can we go with that? Can we go with Oh, they have taken it, have they? No, I don't think so. That's it's taken. यार अब मैं ख्वाजा में तुम्हें कह रहा हूँ ये अगर ये रिव्यू भी ज़ाया हो गया ना. यार नसीम को उसके खिलाफ मैं कोई लफ्ज नहीं सुनूंगा, समझ आ गई. यार सही थी बॉल यार. It wasn't that bad. बॉल सही थी, वो clearly not out था. लेकिन ये रिजवान पे फिर डिपेंड करता है ना, इतनी बड़ा वो उछला है. अब ये look at that zoom in on Yasir. Batiste. Look at that bounce and turn. Oh, has it grazed his glove? Has it grazed his fingers? Maybe the cows. Ultra edge. This is going to be a crucial moment in the game. मुझे लग रहा है Rizwan has got something in. Look at that. Just like the. यार ये कैसा एंगल है? हाँ. Yes! Massive wicket! Massive wicket for Pakistan. I think Ben Stokes is going back. What a review from the Pashtun wicketkeeper, Mohammad Rizwan, the Razzler. The second wicketkeeper for Karachi Kings and a first choice for Pakistan cricket. That wicket as well as Rizwan's, and it is Yasir Shah's and Asad Shafiq's. What a call on the review. Alam is also in the huddle. बुला लो सबको, सरफराज को भी बुला लो, मिसबा को भी बुला लो. Huge wicket, huge moment in the game. Brilliant. Rizwan will take the catch. And a catch on a second take. Thank God he didn't drop that. And Ben Stokes, you sheepish little. क्या बोलूं मैं अब तुम्हें भी गालियां भी नहीं निकाल सकता. Get back where you came from. Can we hear it? Can we hear it? On your bike, buddy. There it is. 4 wickets down now. England 106 for 4. Caught Rizwan, bowled Yasir. The world's #1 all-rounder is nothing against Pakistan. That's 9 runs across the Test match, Khwaja. बाजिद खान ने कहा था things are gonna happen, England are gonna collapse after lunch, and he was spot on. बाजिद कभी गलत बात करते हैं. एक आप और बाजिद कभी गलत बात करते हैं. हम दोनों कभी 106 for 4, 171 to need. अब क्या विन विज लगाओ, दिल विज लगाओ, गुर्दा विज लगाओ, जो मर्जी विज लगाना है आप. And we still have a long half hour to go. It's going to be testing times for England to survive now.
Another big wicket gone. Their middle order A little has been notch blown for away. Azhar Ali's captaincy to take that review. एक Well गलत done, एक सही yeah. ठीक है. और असद शफीक उसको रोक रहा था लेकिन नहीं रिजवान नहीं में शफीक नहीं नहीं बाद में दिखाया कि अच्छा, शफीक ने अच्छा, कहा कि लें आप रिव्यू. अच्छा. शफीक यार आप किस तरह बात यार, मतलब बड़े आप तो फील्डर उसको ड्रॉप करे थे फवाद के लिए. यार फील्डर तो बड़े मैं तो कहता हूं उसको रिव्यू के लिए खिला लो अगले मैच. फील्डर तो बड़े. But here comes Jossie. माजिद ने कह दिया यासिर wins the all-rounder battle. क्या बात है कितना बड़ा claim. सही बात है. Actually even Shadab's performance has been better than यार his, वाकई देखा जाए Ben Stokes. 33 and 4 I think 6 wickets in the match. पहली नहीं, इनिंग में चार कितने और किए अब थे? 3 हो गई ना. पहली इनिंग में कितने किए थे यार? 4 विकेट थी ना. नहीं उसने रन्स कितने किए थे? Can't remember to be honest. 13 किए थे ऐसा कुछ किए थे. Yeah, it wasn't much. It wasn't much. But now Shaheen Shah Afridi, Again, there's no there's a respite. catch down the leg side as well. Desi Sputnik joining us after a while. But, Welcome bro, welcome. He's one of the OGs, Desi Sputnik. हाँ, of remember? course. मैच CFC और मिस्टर आर्सेनल और देसी स्पटनिक That's तो हमारे डे 1 लास्ट ईयर PSL 1 से लास्ट ईयर कौन सा PSL था पिछले साल PSL 4 से हमारे साथ हैं. So what a moment for them to be here with us with on the verge of a famous victory in Manchester. Yeah. As Shaheen Shah Afridi now bowling in quickly, 171 left, outside off, left alone. But मुझे again, लग रहा है ऑली पोप उस किस्म का छेड़ेगा बहुत. what do you शाहीन make शाह of के this ball. decision, this bowling change? Spot on, yeah. Shaheen Shah, he's only bowled 5 overs in this inning so far. Feeling fresh, feeling heated. Pakistan among the wickets. There's no other bowler in the world I would want to have the ball in his hand after Pakistan are on a roll. Beautiful keeping there. थोड़ी सी पैरी कर ली थी, but a good catch by Rizwan. Yasir Shah, big appeal, and look at that, just got his thumb on his lower hand. Brilliant keeping, yeah. I think देखिए अभी भी इधर से पाकिस्तान के लिए won't be smooth sailing. I think England have one partnership in them still. Mohammad Huzaifa पूछे who will be All driven this time by Pope, and it beats the cover fielder. fielding. Yasir Shah, what a live wire. भाई आपका प्रीमियर लेग स्पिनर है जो एक्स्ट्रा कवर पे ऐसे डाइवात मार रहा है, डाइवे मार रहा है. And he's a chunky guy. He's got a little junk in the trunk. You know what I'm yeah, saying? indeed he is. 107 for 4. लंबा कढ़ाइयाँ चल रही हैं मतलब. Who will be man of the match? अभी से हुज़ैफा पूछ रहे हैं, शान और यासिर. यार देखिए पहली बात ये कि पाकिस्तान ने भी मैच नहीं जीता. दूसरी बात ये कि अगर पाकिस्तान मैच जीता it'll definitely be Yasir. यासिर, not Shan Masood to set up the game. मेरी बात सुने. टेस्ट मैच आप क्यों जीतते हैं? क्योंकि आपने 20 विकेट ली. यार लेकिन बाकी 3 इनिंग में they wouldn't even come close to 300. और अभी आप 33 रन्स निकालें यासिर की इस स्कोर में से. फिर बात करें I think in all facets of the game he really contributed. और अब कवर पे फील्डिंग कर रहे हैं वो. सही बात है. गोल में टोल लेजेंड हमारे जो हैं. लेजेंड है ना पाकिस्तान का यासिर. 100% 200 विकेटें हैं उसकी टेस्ट कोई में. शक ही नहीं है इस बात में. Well left Good alone by ball. Butler. Butler is now going to be serving Pakistan. बस मैं चाहता हूँ एक पक्का इन स्विंग मारे, थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर घूमते हुए फटंक करके आवाज आए, एंड जॉस बटलर्स विकेट गोस फॉर cartwheel and lands in the heart of Joe Root. Yeah. Guys, calm down. The match is still on. Naveed Fakhr, हमारे जो अभी तो आप अफरीदी को ला रहे थे मैच जिताने के लिए 10 मैच करे. टुंटी के जो हमारे कैप्टन थे एक्स टुंडी 107 for 4, 170 runs Babar left licking here. his lips, licking his fingers, his finger licking good when Pakistan are taking wickets. Here we go, 107 for 4. Left alone. Swing on that one. Huge passage of play here for Butler and Pope. And I mentioned to you guys that this is not going to be one of those partnerships where the runs will not flow. If these gentlemen stick around, the runs that England need will be negotiated, will be reduced significantly. So for Pakistan, the opportunities will be present because they're both stroke makers. But if they manage to stick around, plenty of runs will flow. And again, we're telling you, you are listening to changeofpacelive.com/match day. And make sure you tweet us at changeofpace414 with some photos of how you're listening to us, where you're listening to us. Look at that movement. Look at Babar Azam walking across as the drinks are in. Drinks break here at Change of Pace as well. 107 for 4, 42.5 gone. Mohammad Rizwan looking on. Azhar Ali, he's hyped. And what a moment for him it would be if Pakistan managed to close out this game. As a captain, winning in England is always rare, elusive, and it really sets up the series because Pakistan can really, dare I say it, if they get through these wickets, बिल्कुल यार, win the 100%. series. मेरा दिल चाह रहा है विकेट के बाद अपनी लंच के बाद वाली बात याद करवाऊं. आप करवाएं यार, आप करवाएं. Oh, has he got an edge? Ball! Huh? क्या हुआ? Oh, it's a massive appeal. They're running around, and I'm not sure what. शाहीन शाह ने अब तो फुल फ्लाइट में भी चला गया. He's done the Celebra appeal, has Shaheen Shah, and the review's not been taken, hasn't been taken. Khwaja, what's happening here?
यार I'm not sure. No review has been taken. तो शाहीन शाह की celebration ज़ाया करवा दी हमने. यार ऐसे ही celebration तो ऐसी cut Joss in half. Was he thinking there was a bolt? What happened? Ooh, अच्छा, it went I'm off not his sure thigh what pad. Shaheen was doing there. He thought that he might have inside edged it, Yeah. but it was off his. Sarosh thigh is pad. saying Shaheen is here, so I'm back here to hear Khwaja, and Azhar Ali knew where that hit. Adil पट Momin पे कह रहे लगी होती है पटते. Yeah. Maybe Shaheen has picked up on some Punjabi, or maybe Azhar's picked up on some 100%. Pashto. 100%. Adil is saying क्या यार मुसाद शान is man of the match if you win. उसने 155 रन किए हैं off the bat. 56 और एक डक भी तो दे, लेकिन यासिर शाह ने वाकई यार 4 विकेटें उधर पहली It's a close contest. और वो 33 रन अब मुझे लग रहा है कि क्रूशल हो जाएंगे यासिर शाह के, तो डेफिनेटली आई थिंक ही इज इन विद अ बिग शाउट टू बी मैन ऑफ द मैच. मेरा दिल चाह रहा है, हाँ अब्दुल्ला मीन आप 100 दफ़ा याद करवाएं हमें ये बात. अगर पाकिस्तान जीता है तो हम आपकी बात याद भी रखेंगे. ऑफ द बैक फुट प्लेड अवे टू स्क्वायर लेग फॉर अ क्विक सिंगल. Trotting around with these two batsmen, and Khwaja again, I'd like to remind you, these two will not stick around. They're going to get runs at a regular pace. I think I attempted googly there जो हाथ से सही निकली नहीं, just went on down leg side. 108 for 4, Pope on 7 of 12, Butler yet to get off the mark, Yasir Shah 2 for 40. Always Skitty Red saying now, but Sean has an equally good shout. The runs are not there without him. He has a quarter of their runs in the match. Yeah. सही बात है. He set up the game for us, you know. And Umar Abdullah with a very heartwarming comment that I wholeheartedly agree with, saying Rizwan gives me so many positive vibes considering his age. Kya baat ho agar batting mein bhi consistency aa jaye. Driven well by Josh Butler. What a shot that is, and that shows the class, the quality that this wicketkeeper batsman has. देखिए बाउंड्री उन्होंने अंदर की हुई है यार. शॉट तो अच्छी थी यार. बट आप देखें, आप उसका वो नजर आ रहा है कि उन्होंने बाउंड्री थोड़ी अंदर की हुई है. By the way, why is staying at the crease after nicking no longer frowned upon? Because there's a review system in place. So I guess just like how people dive in the penalty box for a little bit of contact, the batsman will not walk after a little bit of contact. अगर आपने review लेना आप ले लें. And it's just मतलब वो कहते हैं ना, it's not our responsibility to walk away. Umpire का काम है हमें out देना. If you're कोई गिलक्रिस्ट थोड़ी है. Exactly. If you're automating and digitalizing this umpiring system, then the batsman will also take वैसे advantage of it. गिलक्रिस्ट के अलावा भी I'm sure our change of pace fans know कि और कौन walk करता था. I think सचिन भी कभी-कभी walk कर देता था. सचिन ने, हाँ मैंने खुद देखा उसको walk करते हुए. कहाँ walk करते हुए देखा? यार बिल्कुल बाहर में. अच्छा बाग में walk कर रहा था. पार्क वगैरह जो भी है. आप उसको स्टॉक तो नहीं कर रहे? कैच शॉट यार. शदाब पहुंच जा. शेडी पहुंच डाइव लगा. शेडी. No, he's got there. Oof, I hope he's okay. That's a really McCullum style dive. Yeah, an effort and a half from him, and it's probably going to hit his rib cage. And he'll be fine. He's a strong boy. Needs to be careful there. Dravid also walked, says Sarosh. Mahela also walked. Mahela, maybe. I don't quite remember a famous instance of Pakistanis that walked. Inzamam walked. इंजमाम तो वो तो रनिंग बिटवीन द विकेट्स में भी वॉक ही करता था, तो उसको तो वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं था इन सब चीज़ों में. इंजमाम नो, आई डोंट थिंक ही वॉक दैट मच. कभी But is it a trait or does it depend on the type of dismissal? Like, okay, Khwaja, let me ask you. Would you walk? No, definitely not. Interesting. Oy, Outside beautiful edge this ball time. there. Slower delivery, just tossed it up and really turned off the middle and just caught the edge of the bat. अगर बहुत ही बड़ा edge है, I'll probably walk. I guess so, yeah. जब ब्रॉड ने वॉक नहीं किया था ना, हाँ, वो तो मैं वॉक करता. वो तो of course यार. वो तो मतलब बहुत ही मतलब कोई बगैरती थी वो तो. But I wouldn't walk on a feather, especially with the review system in place. It's a part of the game now, right? And by the way, वही बात होगी ना, आप selective walker हो, गलत बात है. Selective. And by the way, what I've heard from some people that have played cricket at this level, कि sometimes the batsman actually doesn't know कि वो feather आया या नहीं. हाँ, ये बात है. And especially with the glove as well, क्योंकि वो इतना बड़ा. जी बिल्कुल it happens, all happens in a split second. Yeah. But Gilchrist तो फौरन जैसे ही वही मोड़ के चला गया. That's it. 84% now win Viz. I think that's a bit of a Langer stretch. तो सबसे बड़ा, मेरा मुंह ना खुलवाओ. It'll make me remember that fateful test, that Hobart test in 99, in 2000. Yeah. Shaheen now going to be pitching it up. Ooh, extra bounce and all the Pope. Yeah, in the break, in the lunch break, Khwaja, you were discussing with me about Michael Holding's book and how good it is. I'm telling you how good it is. And
it's actually a chapter in, I think, chapter 2 or 3, when after his test career, he goes on his first tour to Australia. Now, Michael Holding admits, and he comes across as a man that's very confident in himself, comes from a very educated family, by the way, where he says that... I think his parents were sprinters or something. One of them were... they both were into sports, but one of them was a teacher. I think both of them had some sort of academic background, too. And he says that he was never, like, lacking in confidence and a lot of family support. Oh, good delivery from Shaheen, left alone by Pope. And when he went to Australia on his first tour, a strong man like Michael Holding, he said umpiring itni kharab thi. He said that at one point in that first match, in that first test match, when he went to his mark to bowl, he was crying. Itni one-sided umpiring thi. Kafi dil bardasht ho gaya tha bechara. Imagine a man like Michael. I know he was a young boy back then, but with someone as the Michael Holding, hum sochte kitni badi hasti hai cricket ki. Being reduced to tears because of the umpiring standard in Australia. So ये इमरान खान को ये भूलना नहीं चाहिए कि he's the one who introduced these neutral umpires, or at least fought for them. 116 for 4. His contributions to cricket are equally off the field and on the field. And of course that wonderful documentary Fire in Babylon में वो बताता है कि कितनी racism भी हमें face करनी पड़ती थी. कहता है मैंने ज़िंदगी में कभी racism देखी ही नहीं थी अपनी, जब तक मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं गया था, इंग्लैंड नहीं गया था. Then I realized कि यार ऐसे भी क्रिकेट होती है, टेस्ट क्रिकेट इतनी टफ होती है. ये लोग तो बिल्कुल एक जंग वाला माहौल बना दिया जिस तरीके से ये लोग compete कर रहे हैं. And then they had to toughen up real fast and then dominated the world for what, 20 years, 15 years, from 1976 probably to 1994. They probably never lost a series. Shah this time driven again. Look, Pope is driving at every single delivery. Khwaja Ole Skitty Rez is saying, I don't care if batters walk. Honestly, I'd rather they did not. Set a false morality standard like football. You played at a whistle. It's a good point. It's a good point. And Kagawa goes to Kagawa, talking about how Inzamam's two funny run-out incidents and the obstructing the obstructing the field. तो इतना गलत decision था यार वो कितना गलत decision था वो. So no ball there from Shaheen Shah. I think. यार अब आप सोचो इंडियन टीम ने वो अपील भी किया था यार. That's just disgraceful. देखो I think in the heat of the moment वो अपील हो जाती है ना, तो आप अपील वापस ले लो. यार आपने देखा नहीं इमरान खान ने वापस बुला लिया था वो. ये तो मैं कह रहा हूँ श्रीकांत को. तो आप अपील वापस ले लो. Exactly. But whether obstructing the field was against India or England? It was against India. 117 for 4. नहीं एक टेस्ट में भी हुआ था, आपको याद है, टेस्ट में भी obstructing the field out हुआ था वो. उसकी बॉडी पे थ्रो आई थी and he parried it away. वही मैं बता वो टेस्ट में था वो यार, वनडे में था. It was in the 2006 ODI series played in Pakistan. दो इंसिडेंट होंगे फिर. हाँ डेफिनेटली हो सकता है. रमीज भी एक दफ़ा 99 पे obstructing the field. He parried the ball away with his hand यार. रमीज भाई से यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं. यार what about Ramiz Raja the batsman? Khwaja, do you know much about him? यार बहुत कम झलकियां देखी थी. वो बोरिंग सा ही था. पुल वगैरह अच्छी मारता था लेग पे. उसकी numbers are not bad by the way. हाँ his one day numbers are good, लेकिन test numbers were quite awful. 117 for 460 still needed for England. 6 wickets for Pakistan. Catch it! That's another wicket for Pakistan. Ole Pope is gonna have to go back. What a delivery by Shaheen. Getting it to spit like a cobra off the pitch, gets the glove and loops up. Straightforward catch for Shadab. And that's it. You're on your way, buddy. Get out of here. Get on your bike. What a delivery this is from Shaheen. He's spitting unbelievable ball, yeah. Fire in Babylon is continuing here. Fire in Old Trafford. Shaheen Shah. Look at the celebration. Look at the Pakistanis. They're pumped. Shadab is pumped. And the celebration, the trademark star man, that Shaheen Afridi, now emulating from the legend Shahid Afridi. Brilliant bowling here. मैंने कहा था ना पाकिस्तान इंशाल्लाह. It's all happening. Post-lunch disaster for England, striking again. किधर है अब्दुल्ला अमीन? किधर है? Foreign comment आएगा अभी अब्दुल्ला का. 117 for 5, 160 runs left. And the pitch is finally playing some tricks in our favor. यार इतनी देर से हम लगे हुए थे. This is special from Pakistan. And it all honestly began with the strategy from Yasir to go round the wicket. जो हम criticize कर रहे थे. तब से ही पूरा मैच का एक एकदम हालात बदल गए. इसके कमेंट्स आ रहे हैं. क्या बात है यार, जज्बात बदल गए. क्या नहीं बदला. 170. अच्छा मजे की बात है, लोग कहते हैं जी सिचुएशन 360 बदल गई. वही 360 का मतलब है उधर ही आ गए. 117 for 5. What a Khwaja, you have to just, I know sometimes when you're doing commentary, you're so present in the moment, you're so एक बॉल को आप देख रहे होते हैं. सही बात है. Take a step back and just try to let this soak in. Witnessing history right now. मैं इसलिए कहता हूँ हमेशा zoom out करके आप देखें यार. अजहर a young captain, a very young bowling attack. यार क्या उनके कुल मिला के 100 विकेटें नहीं है यार. बिल्कुल सही बात. Destroying England in their home patch. Yeah.
उधर 600 वाला बॉलर है, 500 वाला बॉलर है, 90 माइल पर आवर वाला बॉलर और एक गोल्डन चेन वाला बॉलर है। तो यार और उनके सामने हमने इनकी धज्जियां उड़ा दी हैं। अच्छा अगले दो बैट्समैन जो है वो इंग्लैंड के, उनका दोनों का जो बेस्ट है वो आई थिंक पाकिस्तान के खिलाफ है। क्रिस वोक्स 137 वाज अगेंस्ट पाकिस्तान, नहीं इंडिया के खिलाफ। तो ब्रॉड का तो डेफिनेटली 169 आई बिलीव इट वाज, बट गुड कैच। आई हैव टू से आई रियली एंजॉय शदाब दैट बॉल यार, अगर उसके हाथ पे ना लगते उसके तो दांत पे जाके लगती थी बॉल। ही शुड बी हैप्पी ही इज आउट, doesn't deserve to be out there Ollie। यार अब एक पक्का यॉर्कर मार दे वो लाहौर कलंदर स्टाइल ऑफ स्टंप पे और उड़ा के रख दे। But Ollie Pope, bloody hell man, what am I supposed to do that about that? Joe Root's shaking his head। यार तुमने 80-90 बॉलें खेल के तुम आउट हो गए। ड्रेको किस लिए नाराज हो रहा है? ड्रेको 117 for 5। The comments are rolling in। Easy ख्वाजा कलंदर वक्त दुनिया जज्बात from सुखेल। कौन लोग हैं? क्या टीम है ये? गूगल टैब खोल दिया आपने, अभी पांच सारे टर्म्स एक साथ सर्च कर रहे हो। Majid is saying brilliant line of attack from Shaheen। Azhar mentioned yesterday Afridi is a real thinker on the field। ये भी बड़ी important बात है। आप बार-बार उसकी तारीफ करते हैं और आप यही कहते हैं कि he's so mature for his age। Critical thinking as a fast bowler is so important। Abdullah Amin foreign G Musad का comment आ गया। You are 100% right, Abdullah। By lunch works again is Bawarchi को man of the match। Finally they're putting another slip in place, 3 slips and a gully there for who is it going to be? Chris Wokes on strike। यार what a moment we are जड़ा है चौधरी यॉर्कर ला मेरा वीर, शाबाश शाहीन। There we go, Shaheen Shah Afridi outside off, just shouldering arms to it, the new batsman Chris Wokes। It's also very difficult, it's a very different situation। यार सबसे जबरदस्त बात है all of our main bowlers have taken wickets। कोई एक नहीं कि एक बंदा डिस्ट्रॉय कर रहा है जैसे बॉलिंग में से तो कोई ड्रॉप नहीं हो सकता, बल्कि शदाब ने भी 2 विकेटें ले ली हैं जब उसको 5 ओवर में 2 विकेटें हैं उसकी इस टेस्ट मैच में। और क्या चाहते हैं आप? And it's a big validation for Coach Misbah। Look at that after the lunch break it's literally 97800। ये तो किसी ज़माने में टेलीफोन का नंबर आ गया, ATM पिन कोड है किसी की। But good bowling here, look at that। क्या था टेलीफोन का नंबर? 0900-786001। 7860। That's the England scorecard right now, folks। It's all happening। Pakistan on top, Shaheen Shah Afridi on top। यार किसी ज़माने में my nana used to tell me कि पाकिस्तान ऐसी तेज़ तरीन धमाकेदार बॉलिंग, जलीली बॉलिंग कराता था। And we're seeing it now। यार वैसे आज रात अगर हम इंशाल्लाह जी जागे इंशाल्लाह तो फिर शोएब भाई की बातें सुनने का मज़ा आएगा वैसे। कौन से नए एडजेक्टिव्स देंगे वो? धमाकेदार बॉलिंग is driven away straight to। अच्छा नहीं, जब हम जीत जाते हैं ना, ये तो होना ही था, हमें पता था। हम तो पहले ही कह रहे थे ये करो। मैंने इनको कहा था आप ये कराएंगे वो कराएंगे, आप मैच जीत जाएंगे। बट सरखेल बेस्ट देखो पहले ही गमवार में बैठ के मुझे सरखेल बेस्ट। What's the wind whisper? और जो उधर उनका कोच भी गायब होना शुरू हो गया, हेड कोच क्रिस सिल्वरवुड उधर कोनों में जाके छुप रहा के भाई मेरी तरफ नहीं देखो। वो एक जिफ नहीं है वो जो बंदर हमें साइडवेज ग्लैंस देता है। माजिद तो वायलेंट हो गए, वो कह रहे हैं what would this top victory is for us to hit Broad on the helmet a few times। Oh wow। Reverse sweep, what a shot from Joss Butler। That is an inspired stroke and it's a very risky one as well। Yasser knows it because if he misses that even by an inch, he's dead। that is leg before wicket, but he successfully plays that। A lot of T20 experience behind this man that's coming to use। Joss Butler बहुत खतरनाक बैट्समैन। दो ऐसे इसने शॉटात खेले बड़े जबरदस्त, एक रिवर्स स्वीप और एक ड्राइव। He loves to score against Pakistan, has a couple of ODI centuries against us, especially in the World Cup। Yeah। But we have to get him क्योंकि ये मैच का रुख definitely बदल सकता है किसी भी मिनट। And Naveed Fakhri's got a mature head on his shoulders saying still a lot to play, 440 140 odd required is a funny game, one partnership and you never know with cricket। लेकिन इस स्टेज पे अगर उनके 7th विकेट के लिए वोक्स और बटलर आपका मैच छीन गए फिर देन यू ओनली हैव योरसेल्व्स टू ट्रूली ब्लेम। 123 for 5 हम जिस बात में आके स्कोरिंग नहीं बता रहे, 123 for 5 यासिर शाह बॉलिंग 17th over, need 154 more to win। That's a long way off for the ENGvPAK right now। Gopi Singh, oh shit, Yasser is back to his line from around the wicket now। He's going to explore maybe even because Butler is playing those shots and I think Butler might even decide to step outside and attack him। So look at that huge turn outside the rough, so he's really trying to use that। और कहता है भाई Butler I'll let you do it, भाई तुमने शॉट मारनी तो बनाओ शॉट, other than that I'm not going to give you any opportunity to get on the front foot and attack me once again। Asad Shafiq at slip, he's looked very good। Babar Azam has taken some slip catches। बहुत दफ़ा मैं प्रीवियस टूर्स में हुआ कि हमारी स्लिप कैचिंग इतनी ख़राब रहती थी कि हम मैच का इनिशिएटिव दे देते थे, उनके की बैट्समैन को चांस दे देते थे, but nothing like that so far। Tossed up another big turner from Yasser, straight driven to the man at cover, 123 for 5, 1, 2, 3 for 5।
ज़ैनब रिजवी कह रही है यार अगर नसीम ने मिस्टर कमीना को अच्छा थोड़ा पर मारा हो तो मैं भंगड़ा डाल भी अच्छा वाह. Oh, Very full nice. delivery this time. It's driven away and it's just going to be a single. यार वो टूर तो फिर क्या ही था 2010 छोड़ो यार. अब वो तारीख का हिस्सा बन चुका है. तारीख पे तारीख. तारीख. But here Where's we go. that from? I've seen That's it on from like a movie Twitter. called Damini. It has Sunny Deol as a lawyer. You know धर्मेंद्र उसका बेटा सनी देओल, बॉबी देओल का. I know Sunny Deol. अच्छा वाह. Yeah, but I don't know Bob's. 124 for 5. वो आप हमारे जो बहुत अच्छे दोस्त हैं अब्दुल अहद जावेद, उनसे पूछो बॉबी देओल कौन है. Apparently he's like a cult hero for him or something. yeah? I don't know why. He एक makes meme- some great art by the way. जबरदस्त यार. वो जो उसने Shout out to वॉलपेपर him. बनाया था बाबर का, it's really beautiful. Yeah. I love the shout out aesthete of the Yeah. shout out to our Slip producer, catches, most of them were Sarfraz. dropped off on Yeah. Still about 12 minutes to go before the third session break before tea. So let's try to sneak out another wicket. 124 for 5. Wokes only faced that one delivery. Shaheen Shah Afridi, the Eagle of Lahore, is on to bowl round the wicket to Joss Butler. Ooh, well left. That is Tried smart. to chase that one. That is smart though. Good decision at the end. You're smart. You're beautiful. Shout out to DJ Khaled जो हमारे एक. Oh, here comes the Kalai God himself. बस दिखा दे, Wasim एक bhai. दफा दिखा दे. बस. But he's Wasim holding. bhai दूसरे हाथ में. He's holding अबे the यार. mic with his left, unfortunately. यार अभी वो ट्रांसफर करेंगे, उनको पता है he's the Kalai goat. ओए होए होए. 124 for 5. अब मेरे दिमाग में वाकई वो डीजिंग की वीडियो चल रही है कि चिट्टियां कलेजे. Sarghil, if you can post that Dijink video यार on the उसको chat. रीट्वीट करो यार. What That a was beautiful hilarious. video. 124 for 5 now. Shaheen Shah Afridi Ooh, shaping good bounce, away यार. from Joss उन्होंने Butler. एक पिच पे एक जगह ढूंढ ली जब बॉल बहुत ज्यादा मिसबिहेव कर रहा है. अजीब सी एक्स्ट्रा बाउंस मिल रही यार है. वैसे इंग्लिश क्रिकेटर्स पूरा मतलब एक किचन खोल सकते हैं. आप सोचें, आप कुक है, बटलर शेफ है, था. बाहर आपके पास पोप भी होगा अगर आपको दुआएं चाहिए. तो ये चाहिए blessed food. Exactly. 124 for 5. Look at that ball, यार. That Nasty Pope delivery was a beauty. Usman Samiuddin called it a full-length bouncer. That's an interesting way to वाकई. put it. यार ये Curtly Ambrose was very famous for doing Yeah, that off yeah. a length. As usual, Usman की जो बातें होती हैं वो तो एक अलग ही लेवल की उस्मान भाई होती तो हैं. यार जबरदस्त है. Probably the greatest of all time in terms of cricket writing in I think Pakistan. hands down. Oh, there we go once again. A little. Wasim bhai. क्या बात है, क्या बात है. 4 दिन में गोरे फारिग. Oh! Inside edge. And it might have just hit the glove. Oh, look at Shaheen. Little chat with batsman Khwaja. How do you like that, Yeah, Paddy? और ये क्या कर रहे हो उस शख्स के. मल रहे हैं उसके पीछे. जो है आबिद अली की जो है ना कमर के ऊपर बॉल मली जा रही है. आबिद अली को भी सख्त डंडा दिया जाएगा. I'm sure in the nets by King Khan कि भाई ये तुम कैसी शॉटें मार रहे हो. But look at that nasty bounce off a length once again. देखो आगे से बॉल इतना उछाल मिल रहा है. Ooh, this pitch is becoming dangerous for the batsman. Yeah, look at that. Shah, are you okay? I don't care if you're okay. 125. It doesn't matter. It doesn't matter if you're okay. 125 for 5. Wokes 0 off 1. Butler 16 off 17. And we talk about Khwaja. We talk about the next Pakistani fast bowler to get to 200 wickets, and we might just be looking at him. 100%. Right. कोई doubt ही नहीं है. Shaheen now continuing here. Shots! Driven. Wow, that is confident from Chris Wokes. And that's why he's such a dangerous customer, as cliche as that sounds. A little bit of room, a little bit of width from Shaheen, and he's been punished. And punished aggressively, punished confidently from Wokes. A lack of footwork there, though. अच्छी edgy shot थी लेकिन अच्छी shot थी लेकिन थोड़ी edgy A थी. bit kind of reminded me of Squeeze between Virinder point Sehwag. and gully. हाँ. यार क्यों आपको वीरेंद्र सहवाग मनहूस आदमी याद आता है बार बार यार. मनहूस तो नहीं थे यार. यार मनहूस था. अच्छा काफी मनहूस अच्छा था. batsman. I would say about 80% मनहूस था. यार देखिए 100% पहले मनहूस डिसाइड करें कौन है. वो तो गंभीर है obviously. हाँ 100%. 100% मनहूस. यार वो तो उसके बंदे वो तो वैसे ही he is a caustic person. उसको Yeah. कोई life से Oh, big shot this time. Chris Wokes taking the Wow. attack to Pakistan. He hoiks this one over mid-wicket and it पहुंच should गया be एबी. stopped by Abbas. पहुंच गया. Yeah, यार थ्रो भी नहीं हो रही है Abbas से. It's bowling करा के थ्रो किया उसने. But bowling. रन अप लेके आए थ्रो के लिए. Pick up another couple runs. मैंने आपको ख्वाजा मैं आपको ये कह रहा हूँ बार-बार आप मेरी बात नहीं मान रहे कि ये रन्स करेंगे क्योंकि ये लोग टिकने वाले नहीं है दोनों. सही बात है. And that's the way to go. फायदा नहीं है आपके भाई ये वही है try to survive. ये play burn time churns, सिबली वाला root काम नहीं shoot, होगा. सिबली विबली वाला काम नहीं है. Exactly. Runs are flowing for England. They've come back for 3. Good running there. यार अच्छी फिटनेस है वो उसकी यार. पूरे दिन बॉलिंग भी कराता है और फिर आके यहाँ तो इनका Shot शॉट हाथ भी मारता है. फोड़ो यहाँ पे इनको आउट करो.
132 for 5. The last delivery of the 47th over coming up. Target of 277. They've barely just reached the halfway mark and they're 5 wickets down. With But all I their think their batsmen. last 5 might just be more dangerous. सही बात है. Good shot from Butler. वनडे मोड में चले गए हैं फुल फ्लेज. Yeah. और यही तो मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान को पता नहीं चलेगा ये टारगेट 100 से नीचे. आई थिंक 96 for 2 था स्कोर. 86 for 1 था आई बिलीव. फिर 96 for 2 and 3 हुआ एकदम से. अचानक से सब कुछ ही बदल चुका है. एंड देन पाकिस्तान ऑन अ रोल. लुक एट दैट, हिटिंग दैट हार्ड लेंथ. ऑली पोप काफ़ी कॉन्फिडेंट थे, फ्रंट फुट पे आ रहे थे उछल उछल के, पर एकदम से एक कोबरा बॉल उनको पड़ी है. दैट वाज Reza Ali on Twitter is saying the game has shades of Lords 2016. That's a pretty good game. यार वो तुम हाँ वो थोड़ी सी पार्टनरशिप फंस गई थी बेस्टो की. आई रिमेंबर बेस्टो और कौन था उसके साथ, बैलेंस था. एंड then Yasir Shah with some magic round the wicket, ball balance round his legs. Balance. And then Moeen Ali with a shocking shot, आपको याद होगा. And he just walked down the wicket. Love it, Moeen. Agent Moeen. Brother Moeen, of course, a Liverpool fan, तो वो भी काफ़ी खुश होंगे इस साल. He saw Premier League. और आपने देखा तो स्टीवन जेरार्ड ने एक दफ़ा उनको विश भी किया था कि भाई गुड लक और ये वो. So that was a very याद nice रखें catch. कि इस पे जिस तरह बॉलिंग करवाई है. Ooh, wild गंदी sweep. ball. Poor delivery from Yasir. Oh, अच्छा, But there's अच्छा. a sweeper there. Mohammad Abbas. ओ भाई कर दो रन. Ball is falling. Yes, 2 रन ले लिए इन्होंने इस बॉल पे यार. रनज़े यार. They're coming. They're अब coming. मैच में freely. थोड़ा अब थोड़ी सी This is a nice टेम्पो बढ़ गया. nice counter attack from England. 135 for 5. They only need 142 more. Butler 19 of 19. But they're doing that right before what do you call tea, so that's interesting. 'Cause usually you'd be blocking and waiting No, to I play don't it think out. that's going to work for these two because हाँ. it's they've just not उनके done it instinct enough. नहीं है ऐसे. Another sweep shot. This time squares. It'll go for 4. Poor. This line is not working right now against Butler. He's moved on to 23 off 20. Yeah, this is becoming difficult. यार एक दो चौके पड़े और अब साथ ही हिम्मत हार गए मुसाद अफजल. क्या हो गया यार. Interestingly enough, we have a listener from Lucknow, the beautiful क्या city. क्या बात है मियां. Change of pace. Eager to hear that get on your bike comment 5 more times tonight. And they're supporting Pakistan from Lucknow. क्या बात है यार. Lucknow ने हमें निहारी दी है, उर्दू दी है, इतनी ज़बरदस्त चीज़ें दी हैं. We are in debt to this beautiful city in India. Lots of love. And आप आए chat पे changeofpacelive.com/match. That's really cool यार. Join the chat and join the discourse. It's such a beautiful community we have here. 139 for I 5. think after UAE and Pakistan, the most users we usually get, the listeners, India से ही होते हैं, so they do follow पाकिस्तानी क्रिकेट वेरी पैशनेटली. इवन द PSL जो ज़्यादा उधर कवरेज नहीं होती थी वो हमारे साथ ही देखते थे. फिर कहते हैं यार आप लोगों के साथ हम एंजॉय भी करते हैं, मनोरंजन भी होता है, एंटरटेनमेंट भी होती है. Nick Holt, who is covering cricket for the Telegraph, has said that there's a Pakistan fan outside of the stadium playing Dil Dil Pakistan. Oh, Catch it! It's in the air! Catch And it! it's just going to fall wide of Abid Ali. ओ कहाँ वो घूमेगी भाई, घूमेगी. Again Mohammad Abbas, and they'll come back. अब्बास को ही उधर से हटा दो यार. इतने उस पे जोर पड़ रहा है तब This से. gentleman outside the stadium is playing Dil Dil Pakistan on a saxophone. यार वैसे I can't even imagine somebody doing that. प्रोड्यूसर सरफराज हमारे म्यूजिशियन है, उनसे कहते हैं यार जरा अटेम्प्ट करो सैक्सोफोन पे. वैसे प्रोड्यूसर सरफराज भी कोई बंदा है यार. क्या इंस्ट्रूमेंट नहीं प्ले कर सकते वो. मैं वही कह रहा हूँ कि सैक्स पे भी थोड़ा सैक्स फैला दे. क्या बात है. पाकिस्तान प्ले करके. और सरखेल तुम्हारी एक स्नैप थी वो पुरानी वाली, वो भी ज़रा लगाओ. हमारी चैट में तुमने ट्वीट की थी काफ़ी अर्से पहले, दिल दिल पाकिस्तान वाली, वो भी मज़ेदार. क्या नाम है तुम्हारी एक स्नैप ने तैयार की होंगी विक्ट्री ट्वीट्स. हाँ 100%. 500-600 ड्राफ्ट इसने रखे हैं, बहुत चला गए. Wow, here we go. Continuing here this time, the change of angle. Yasir's sick of giving away runs. Exactly, यार. Make them play on the offside. Make them play with the blade of the bat in that direction rather than turning the bat and playing it through leg. You were trying to buy a wicket आप there. शहीन की बॉलिंग देख के आपको जो जोफ्रा का कमेंट है, जी. This is not a pitch to bend your back on. क्या पता थोड़ा सा अजीब सा नहीं लग रहा. यार जोफ्रा की वही है, थोड़े से एटीट्यूड प्रॉब्लम्स डेफिनेटली है. मे बी ही इज बीइंग अनफेयरली क्रिटिसाइज्ड एट टाइम्स, बट ही डेफिनेटली हैजंट डन जस्टिस टू हिज एबिलिटी. Where there's smoke there's fire वाली बात है. हाँ एग्जैक्टली. 140 for 5. England battling hard. A counter attack here, counter punch here from Wokes and Butler. Pakistan need 5 wickets to win. England need 137 runs to win. We are on the stroke of tea. So England are fighting back hard, looking for runs. Yasir Shah with 2 wickets. And of course Shaheen Shah and Naseem Shah both in the action from the other end. Abbas has been working hard, toiling hard, but no wickets so far. So Joe Root, the England captain, top scoring with 42, but Butler ka ek zabardast counter attack shuru ho gaya. He's on 24 of 22. Shaheen continuing.
with Vokes on 7 of 5. He's also playing some shots against him. So फिर से nervous periods for Pakistan fans and of course England fans, hoping that this can go on for another hour or so. England has no fans. Oh yeah, that's You've got no fans. Played away beautifully by Butler and it'll beat point. अब अजहर की अप्रोच इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि भाई ही वांट्स टू अटैक बट परहैप्स नॉट ओवर अटैक, नॉट गिव अवे फ्रीबीज. तो अपनी मे बी सेट इन एंड आउट फील्ड्स, थोड़ा डीप कवर ले लो, डीप स्क्वेयर ले लो, लेकिन ये भी हो कि कैचिंग पोजीशन में अच्छे बंदे हों, स्लिप्स हों, गली भी हो, और मे बी इवन अ शॉर्ट लेग कि भाई बॉल उठ रही है गुड लेंथ से तो शायद ही कैन ग्लव इट अप वंस अगेन. सो let's also get a quick idea because we've had this listener from Lucknow now. I'd like to know where everybody's listening from demographic wise. Because I know we have a very diverse geography of listeners, so please. I think Gopi is in the US. Drop your Adil is in the locations. US. Mr. Arsenal, I think Pakistan में है, UK में है, I believe. I'm not sure. यार कोई बात नहीं, पाकिस्तान UK में क्या फर्क रह गया है? Good drive, no but run. straight to extra. But tell me, drop a comment or drop a tweet at ChangeOfPace 414. Tell us where you're listening from. Ritvik Balvali is saying Balvali, or I'm not sure if I'm pronouncing this right. He's saying love from India, brothers. Arslan is in Karachi. Ansariam is in Austria. Wow. Yeah. Or Majid in Bradford, England. Chelmsford. Bradford, bruv. Yeah, Pakistani hai. Sarkhil saying I'm in your dil. Sarkhil always and forever. Chelmsford, UK. It's mighty fine. They see Sputnik from Lahore. Edged, yaar. Edged to me, yaar. Uska अच्छा shot था यार. The thickish edge था. Shan Masood giving chase, so they're not gonna give. We got some Trump country folk from Houston, Virginia, Islamabad. I think Virginia in the US has the most Pakistanis per area than any other place in the US. Abdullah is in Karachi for university. He's usually in Riyadh. Riyadh, Zainab as well. My Saudi folks, shout out to Saudi folks. यार कोई यम्बू का बंदा तो बताया यार, मेरा hometown है यम्बू. Shout out to Yambu, Y-Town, best city in best city in Saudi Arabia. Riyadh folks, I'm sorry. 143 for 5, 130 इधर कोई आके कोई हीट नहीं तुम्हें मिलने वाली रियाद के में. कौन से कोई गैंगस्टर्स बैठे हुए हैं जो तुम्हें चैलेंज कर रहे हैं. आपको क्या पता रियाद में क्या क्या नहीं होता. And Shaheen now continuing. England have knocked. Oh, what a shot this is. That is gorgeous. That is remarkable. That is the shot of the day. And this partnership now 30 off 23. This is a massive counter-attack at the end of just a stroke of tea, and I think it's just been taken now. 147 from 5, and Wokes, what a standoffish drive that is. My goodness. वैसे इंग्लैंड सोचते कि हम पहले ही अप्रोच अपना लेते तो शायद कुछ हम कर लेते. Bad Pasha saying Denmark, All Might saying Lahore. क्या बात है यार, all over Europe, all over the US. Pakistan. So a very But Khwaja, what I predicted is unfortunately coming true. And Yambu is beautiful. I did visit it once. Shout out. वो ऐसे ही कह रहे, तुम्हारे दिल रखने के लिए कह रहे. Nobody visits. Zainab You never walk alone in Yambu. Zainab देख रही है. Naveed Fakhr partnership already 30. Scoreboard ticking very quickly. Another 30 minutes or so, this game gets more interesting. Yeah. वाकई रियाद है. क्या बात है. यार लाहौर रियाद है कब से हो गया. Oh, driven away this time. हर बॉल पे वो शॉट मार रहा है यार. Ritvik, where in India are you listening in from? Ritvik, अच्छा, that's it. Shout out to our noisy neighbors. 147 for 5. 130 more. चुप जो है ना वो हम they've easily crossed the halfway mark of England. Need to be careful here to Pakistan. रन्स तो बहुत हैं लेकिन ये पार्टनरशिप अब काफ़ी तंग करने शुरू हो गई. पेशेंस दिखाना पड़ेगा पाकिस्तान को, थोड़ा टेम्परामेंट दिखाना पड़ेगा. मे बी 2 स्लिप्स इन अ गली, दैट्स द स्टैंडर्ड फील्ड सेट. नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. एक तो वो शाहीन वाला मीम, वो सोफे वाला, जब भी मैं देखता हूँ मेक्स मी लाफ. Somebody listening in from Hungary as well. Good ball, what right on the stumps, not giving any room to play those drives. So 87 miles per hour, so he's really bending his back. 147 for 5, 130 more need to win. Wokes on 13 of 10. Butler 25 of 23. So the strike rates have gone up. The intent, the attitude has completely changed. This is a very dangerous partnership for Pakistan. I would say this is actually more dangerous than Root and आपने बल्कि कहा था Wokes और ये Butler तंग करेंगे हमें. कह रहा हूँ कि Roots और जो सिबली की पार्टनरशिप थी ना, वो आपने उस वक्त कहा था कि it's not bothering the scoreboard. But this counter attack was is definitely not doing the same. And maybe Abbas is the way to go. Because Abbas is that man who's economically लेकिन उसकी so bowling strong. hittable भी है ना. अब you can basically overpower his bowling. तो शाहीन को overpower करना आसान नहीं है. कभी-कभार अब्बास को आप देखो, does he look like when you meet him in the streets, if you didn't know who he was, he would not look like a Pakistani fast bowler. बिल्कुल. हमारे
शेब अख्तर को देखिए, वकार, वसीम, अब नए लॉर्ड को भी देख लें अगर, उस्मान शनवारी, इमरान खान, शहीन शाह, आमिर को भी आप देख लें, even though he's skinny, he's tall and 147 for 5. England need 130 more to win. Wokes is 13 off 10. Butler 25 off 23. This is a T20 or one-day masterclass that we're seeing between these two. Need a wicket desperately, Pakistan, as this is violently smashed into the ground through a sweep by Butler, as short fine leg will field it away. And Butler, of course, he's had a lot of success in the IPL as well. So India में ये turning pitches पे he's used to playing in those conditions. How much do you think a turning pitch affects a T20 game? यार आई थिंक फिर काफ़ी मुश्किल कर देता है कि जी, क्योंकि एवरीथिंग इज ऑलरेडी इन यू नो सच काइंड ऑफ. Look at this quick single here. Fine leg, short fine leg रखा हुआ है, फिर भी एक सिंगल उनको मिल गया. This great running. यार मुझे अभी तक याद है, मैं जो अपने सवाल का मैं खुद जवाब दे रहा हूँ. आई थिंक विशाखापट्टनम में पहला T20 था, या पता नहीं किधर, या धर्मशाला में, one of the two stadiums. It was the first ever T20 international. Okay. And between New Zealand and India. अच्छा. और आई थिंक टॉस जीत के, जो भी टॉस जीता, न्यू जीलैंड वर बॉलिंग. 2016 वर्ल्ड कप का जो मैच. नहीं वर्ल्ड कप नहीं था, it was a bilateral. अच्छा, नॉर्मल वर्ल्ड कप से पहले. ओके. एंड न्यूजीलैंड वर बॉलिंग फर्स्ट अगेंस्ट इंडिया, और तबाही फेर दी न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने. अच्छा. और वो थे भी इतने खास नहीं, मतलब सेंटनर वगैरह, ईसोडी ने तबाही फेर दी थी, because there was a rank turner in the wicket. So yeah, it does sometimes. Good drive once again. Wow, we are watching some great batting right now, even though I hate to say it. Wokes has driven this, creamed this to the offside for 4. Yasser now looking a little bit dumbfounded. The Pakistanis are severely under pressure. यार ये 100 से कम टारगेट होने वाला है ख्वाजा. यार बस क्रेडिट देनी पड़ेगी यार, वोक्स बेहतरीन बैटिंग कर रहा है. और आदिल मोमिन भी कह रहे हैं पैनिक मोड का बटन कहाँ है यार. आदिल फौरन अपना पैनिक मोड का बटन नहीं लगा रहा है. लेकिन वाकई यार अच्छी शॉट्स खेल रहा है. और ये क्रिस वोक्स तो अभी ये नाक पे दम कर रहा है यार. ये क्या सीन है इसके साथ, कोई गलत शॉट ही नहीं मार रहा. लुक एट द थर्ड 50 by England has just come up in under 10 or just under 10 overs. Oh, wow. 64 deliveries. Oh, run out chance. Another quick. Yeah, they're putting the fielders on the back foot as well. Wokes, and I think Shaheen Shah is definitely the solution here. He might be the man to go to. और here. मसला ये जोफ्रा कैन बैट. अभी तो बेस ने भी आना है यार, हम भूल गए. बेस भी पीछे बैठा है, तो डेफिनेटली अजहर नीड्स टू गेट अ मूव ऑन, गेट्स नीड अ रीथिंक. बट एक विकेट की बात है यार. बेस भी काफ़ी ऐसा ही किस्म का तंग करने वाला बैट्समैन है. बेस इतनी जल्दी स्ट्राइक नहीं रेट कर सकता. ये जो रनिंग हो रही है और ये जो बाउंड्रीज लग रही है ना, दिस इज क्वाइट स्पेक्टेकुलर टू बी ऑनेस्ट. सही बात है. अभी भी 120-25 रन दूर हैं, तो दिस मैच इज गोना गो राइट डाउन टू द वायर. यासर स्वेप्ट अवे, दैट शुड गो फॉर जस्ट अ डॉट डिलीवरी. और देखें वो fearlessly हर शॉट खेल रहे हैं. वो ये नहीं सोचे कि यार एज जूज लग जाएगा. हमने कहा भाई हम अपनी शॉट मारेंगे जो मर्जी हो. So that's the right approach sometimes. Yeah, you just have to stop thinking about everything and stick to your instincts. Look at this. This is an unbelievable comment, as Suraj86 on Twitter is listening from Kathmandu, Nepal. Wow, nice. यार क्रिकेट कहाँ तक comes to this is यार संदीप भाई आपको पता है यार, हमारे लेजेंड है. Rooting for Pakistan because you guys are the underdogs. Last test I was rooting for the West Indies. I wouldn't say underdogs. Of course, but यार. मतलब they're touring away from home, and you know, behind closed doors, no fan support, being in a biosecure bubble for the past since 29th of June. बेचारे कमरों में बंद हैं, तो obviously देखिए इनकी बैटिंग जो हो रही है ना अभी, ये वोक्स और बैटिंग्स हैं बटलर की. there's also another side to this, that if Pakistan manage a string of or even 2 or 3 quiet overs, the pressure will be automatic. इनको नहीं आती resolute बैटिंग करनी, इनको नहीं आती डिफेंसिव बैटिंग करनी यार. लेकिन मैं एक बात बताऊं मुसाद, अगर स्कोर 200 for 5 हो गया ना, फिर हम शदीद प्रेशर में आ जाएंगे. I don't think Pakistan will win from then. From there. साथ ही तुमने रुख बदल दी. पता है. Oh, there he is, the Lion of Lahore Qalandars, the John of Pakistan. Deep fine leg, deep square leg, mid off और mid on भी पीछे हो गए हैं. It's good, let them play their shots. भाई आप लेकिन आउट कैसे होंगे फिर अगर आप उनको शॉट्स मारने दोगे? हवा में खेले ना शॉट्स. उनको किसने कहा जमीन पे खेले? हाँ ये भी. Shaheen to start here, good delivery to start off immediately. No run off the stump first. to stump अब उसको बॉलिंग करानी होगी. इनको विड्स नहीं दे सकता, वो बल्ला घुमाई जा रहा है. How far are we from tea? I think 15 minutes away from tea. I think it's just about round the corner, not too far away. शायद थोड़े थक भी गए हैं bowlers. Maybe they need a bit of a rest. And maybe we should look at Shadab. He's a good one-day T20 mindset kind of bowler. Yeah. So maybe he could come in with some of those lines. How much influence do you think Misbah-ul-Haq has on bowling changes? I think obviously कुछ वो guidance तो देता होगा. लेकिन अजहर भी बहुत experience. Is he Azhar Ali's puppet master here? नहीं इतना तो नहीं होगा यार. अजहर भी बेचारा 70-80 टेस्ट वेटरन है, तो वो बच्चा तो नहीं है. For sure. Shaheen now continuing inside edge onto the patch. Immediately Khwaja, look at that, he went forward for the drive. Now the likes of Root and Sibley were not doing that to Shaheen. They were more confident in just defending him and seeing him out. And I keep telling you this, that Wokes is not that kind of player.
बिल्कुल. और यार अभी तक मे बी अ हिंट ऑफ रिवर्स देयर एज वेल फॉर शाहीन. इतनी ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिली, बट डेफिनेटली अ वेरी सी सॉ बैटल. बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच हो गया है विद दिस क्विक रैपिड पार्टनरशिप. डेफिनेटली मैच फंस चुका कह है. रही हैं ऐसे कैसे लेट देम प्ले देम शॉट्स, रन ही नहीं बचने, बस आउट करें. वो तो यार कर ही रहे, लेकिन वही केपेबल बैट्समैन है ये दोनों अभी भी. Straight delivery, good shot, good fielding off his own bowling, but देख के it's hit him on the side of the ankle. I hope he's okay. नहीं, आई थिंक बूट पे ही लगा, सो ही सीम्स टू बी फाइन. Yeah. एंकल होता तो काफी खतरनाक सिचुएशन. I'm sorry, I'm saying the confidence level of Stuart Broad, he's not even in his whites yet. I think Dom Best will come in before him, and we saw last time that even what's his face, Archer came ahead of him. And Ritvik is saying he's listening in from Vadodara in Gujarat, but I'm originally Vadodara from Gujarat, and he's originally from Mumbai. My friend Ashwin is listening from Kerala. क्या बात है यार, जबरदस्त. Shout out to the South, represent. रविचंद्रन अश्विन. Ravichandran Ashwin है आपका दोस्त. वो भी हो सकता है, right? Yeah, he is a big cricket nerd, driven well and strong. Shot, yaar. Now this is impressive because getting Shaheen Afridi away onto the offside for 4 is no small feat, and Chris Woakes has done that with relative ease. It's a dangerous sign, an ominous sign for Pakistan. 157 for 5 England. Beautiful batting here from Chris Woakes and Josh Butler, just timing the ball, playing freely, and only 120 runs left. Can England pull off a miracle? Can Is England the game do a being heading taken away from Pakistan? यार डेफिनेटली अगर ये लोग 20 मिनट आधा घंटा और खेले तो पाकिस्तान विल फील कि यार इंग्लैंड इज इन दी असेंडेंसी. विन विज का मैं स्टैट देखना चाहूंगा. लुक एट दैट पार्टनरशिप, दे हैव एडेड 40 रन्स इन जस्ट अंडर 6 ओवर्स. तो लुक एट दैट रन रेट. यार Currently, तो काफी खुश होंगे. currently with the win viz, they're still showing Pakistan as 82%. यार But I think that's a little bit I would lopsided. firmly put it at 50-50, क्योंकि बेस्ट भी अच्छा है यार. थोड़ी विकेट पे प्राइस डालेगा, वो ये नहीं कि आके विकेट दे देगा. शॉट्स भी मार लेता. ही हैज अ टेस्ट 50 अगेंस्ट पाकिस्तान एज वेल. Upish this time from Woakes, and there's a short mid on in place, so in business there for no run. वोक्स यार इसने कसम खाई हुई है, बैट हो बॉल हो कुछ भी हो, जहाँ पाकिस्तान का नाम देखता है ही इज गोना लिफ्ट हिज गेम. एंड वंस अगेन हमारे ही इज अ थॉर्न इन आवर साइड सो टू स्पीक. नसीम शाह वर्किंग फ्यूरियसली ऑन द बॉल, ट्राइंग टू गेट सम रिवर्स गोइंग. बट पाकिस्तान अब थोड़ी बॉडी लैंग्वेज उनकी भी थोड़ी सी नर्वस हो गई, थोड़ी नेगेटिव हो गई है, थोड़े ठंडे पड़ गए आफ्टर वूपिंग एंड येलिंग क्वाइट अ वाइल अगो. अब तो वो 6 ओवर पहले ऐसे लगता है कि that was a day away. The way this test match is going, we're probably in the midst of one of the great games. Absolutely. Between this increasingly prevalent and increasingly closely fought rivalry between Pakistan and England. What a shot! Chris Woakes gets on top of this bouncer, goes all the way. Fielding, wow. zabardast. Abid Ali, wow. Chunky opener there, diving to his left and stopping a certain boundary, saving a couple runs for his and he's team. wearing those leg pads as well for the fielding, and zabardast yaar. Unbelievable dive मारी आबिद अली ने. Look at that. Run, wow. The earth shook. Dwayne Levrock style dive there from Abid Ali. But you really have to say that effort is. दो रन से पाकिस्तान जीतता है. तो मैं तो ये 2 रन आबिद अली के. भाई हम तो कब के मर चुके हो गए हार्ट फेलियर से. हम 2 रन से सिर्फ जीते. Oh my God, I know what it is. But Pakistan definitely need a reboot, a refresh of their strategies. यासिर शाह वो थोड़ी अब वो काम नहीं दे रहा, तो शदाब को आप ट्राई कर लो. इसमें क्या हर्ज है 1-2 ओवर उससे पहले एक्सपेरिमेंट करना है. एनीथिंग कैन हैपन. ही हैज़ दैट गूगली दैट कैन फूल दीज बैट्समैन एज वेल, जो यासिर शाह के पास नहीं है. लेट्स टेक अ लुक एट द कमेंट्स. इंग्लैंड 159 for 5. दलेर फील्डिंग फ्रॉम आबिद असद हैज़ कम इन. आके एजी ख्वाजा थोड़ा सा घबरा लें अब यार. मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ कि यार ये दोनों काफ़ी ज़बरदस्त बैटिंग करें. होपफुली इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 wicket, देन विल बी प्रेशर ऑन इंग्लैंड अगेन. But Yasir Shah on to bowl over the wicket. Off the back foot. This is the first time I've seen. Single दे रहे हैं यार. ये कैसे सिंगल है यार? Come on. 160 up for England. They just need 117 more. यार ये 100 से नीचे टारगेट आ गया तो मैं तो जा रहा हूँ. कहाँ जा रहे हो तुम? मैं नहीं जा, बस जा रहा हूँ मैं. This is gonna be too much squeaky bum for me. But look at the tension. जो रूट तो अभी से अपना इस्तीफा लिख रहे हैं. पता नहीं क्या resignation speech उसके हाथ में. I reckon Ben Stokes is a better batsman than me. 160 वो तो for 5. obviously कोई शक ही नहीं इस बात में यार. जो बंदा 258 मार सकता है साउथ अफ्रीका में. Oof. Come on man, that guy's a pure all-rounder as well. Do you think Ben Stokes would be as great as a cricketer as he is if he was playing for New Zealand? No way. उसको वो एक्सपोजर ही नहीं मिलना था. Right? उसको कभी वो क्लेम ही नहीं मिलनी Right? थी. केन विलियमसन बेचारे को पूछता ही कोई नहीं है कि यार तुम So maybe Jimmy Neesham is just a poor man's Ben Stokes?
He definitely is He's a a pretty very good- pretty very poor man's Ben Stokes. Oh, but he's a decent all-rounder. हाँ, Jimmy player Nish. तो ठीक है. I actually wanted him for Lahore Qalandars in the last PSL क्योंकि he's good at bowling at the death. Well left there by Wokes. It's the first leave we've really seen from it. And again, both of these batsmen still going at a 100+ strike rate. Wokes is 24 off 19. Butler thereabouts, 27 off 28. Not just almost at a run a ball. Yasser continuing. Good line there. और मसला है कि जब वोक्स रोकने पे आता तो he looks very relaxed. ऐसी कोई बात नहीं है. तो बंदा सोचता है यार कि चलो शॉटे मार रहा है. Maybe his defense is not that good. But I don't know. I equally skilled in that department. I think against the fast bowling, I would disagree with that. I don't think he's that confident in his defense, especially against Shaheen. Cut away this time, and how many can he really defend in a row? But आप देखें first innings में भी he batted quite a while at the crease. काफ़ी देर लड़ता रहा है. I think he had 19 of 68 or something until that poor shot he played versus Yasir. 80% towards Pakistan says win whiz. I think that's very optimistic to be quite frank. इतना gap नहीं है जितना वो सोच रहे हैं. यार अब्बास को क्यों नहीं ला रहे? I think अब्बास थोड़ी hittable bowling है ज़ैनब, so maybe that's why. What a shot that is. That is a phenomenal shot. That is the shot of the day so far. Yasir Shah, who's troubled some world-class English batsmen, and Joss Butler is treating him like an IPL mug, and he's just reverse sweeped him for 4 behind square. What a shot. यार I think अब definitely यासिर शाह को अटैक से निकाल के आपको शादाब को मौका देना चाहिए. He is good with the googly. He'll make some different angles, different opportunities. 48 partnership of just 7 overs, 42 balls. मसला ये भी है ख्वाजा, ये फॉर एग्जांपल अभी हमारे ट्विटर पे भी यही आ रहा है कि इफ़ वी लॉस्ट विद स्टोक्स एंड रूट तो ठीक है, बंदा एक्सेप्ट कर लेता है. यहाँ से हारना तो बहुत दुख की बात है. Of course यार, इस पे तो कोई शक नहीं है. As the runs are reducing, the tides are shifting, the pendulum is swinging into England's favor, and Yasir Shah this time brings Wokes onto Butler to his front foot for वसीम भाई तो ऑफ कोर्स वो तो कह सकते हैं क्योंकि वो वसीम भाई हैं, लेकिन ये इधर तो वसीम भाई और वो सब नहीं है. With every boundary that win whiz is more increasing. runs to win for England. 112 तो बिल्कुल ही नहीं. Massive need for a wicket here. Massive chance for a wicket here. And I think the tea break is more needed for Pakistan than England. They wouldn't like their momentum to be broken. Lekin here we go. Is it Shadab who's coming on? Yes, he is. So leg spin from both ends. I like this bowling change to be quite honest. वो at least उनको challenge तो करेगा with some varieties and with some one day experience जो उसको है. यार ये बहुत टेंस हो गया मैं ख्वाजा. मुझे बिल्कुल अब जो है ना मुझे बताऊं कौन सी फील्ड्स आ रही हैं. कौन सी फील्ड आ रही है? मुझे जो है अब पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान वाली फील्ड्स आ रही हैं. तो हम जीत गए थे मैच. आप पे भी इस तरह जीत रहे थे तो मैं तो तुम्हें पता है बैगली से जाने वाला था. 165 for 5. I have to say that even during that match, Khwaja was the one that was confident, that was sticking around. मैं तो उठ के चला गया था. मैं कहा मैं नहीं होती कमेंट्री, अफगानिस्तान से हारने के लिए मैं पैदा नहीं हुआ. वाकई यार. 165 for 5. Oh, leading edge immediately Shadab with some results in the business. Asiya saying change lao, and the change has been dinging. ज़ैनब कह रही है जो सकमल तो हमारी सामा खान ने तो यही कह दी, if it's a draw तो हो ही नहीं सकता. उसलिए तो उसने कहा है को अगर if England win I will post my notes. फिर नहीं बात भाई नहीं देखनी हमने. Shadab tosses this one up. Nice defense from Wokes. Pakistan are just letting Babar get enough so he doesn't Butler get enough so he doesn't get dropped before getting him out. तो बटलर इतना खौफनाक प्लेयर है, वो हमें 100 नहीं मार सकता. He was the one who won them, drew them the test series in the last tour of Pakistan. On the back foot this time, driven away to cover. थोड़ा रन रेट भी कम करें, थोड़ा इनको तंग करें, थोड़ी अपीलें करें, एज निकल आए. ऐसे लग रहा है कि अब बॉल बैट को बीट नहीं कर रहा है. ये बड़ा मसला है. बिल्कुल 165 for 5, 112 more needed. Shadab this one tosses it up, gets a bit of an edge. Short leg is in business. It's Abid Ali under the helmet. थोड़े डिफरेंट तरीके से उसने ये बॉल कराई थी. It was more like a flipper or a top spinner or something. The flipperoni from the front of his hand or something like that. ये देखें वो कुछ वैरायटी पे ये काम कर रहा है. But good fielding by Abid. यार Abid fielding में जोर दिखा रहा है. That's quite यार heartening इस to see. वक्त तो कोई complacency नहीं चलेगी जिस तरह की ये partnership बन गई है. And beats this first slip and it'll go down for a couple runs I think. Shan Masood great fielding, one-handed pick up. Only one run यार. ये एक रन रोका है शान ने. क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी ये complacency होती they would have come back for 2. And Butler now. और सारी strike Wokes ही संभाल रहा है, यानी बटलर सुकून से खड़ा हुआ है, अपना टाइम लगा रहा है क्रीज पे. मिस्टर आर्सन कह रहे हैं रमीज को कमेंट्री पे लाओ. बटलर वोक्स की तारीफ करे. एग्रीकल्चरल वो 3 ही लफ्ज बोलेगा. अनकपल दिस पार्टनरशिप, एग्रीकल्चरल शॉट
और फिर कुछ ऐसे ही कोई तीसरे कूल एज ए क्यूकम्बर, ये 3 ही डायलॉग हैं रमीज भाई के पास. The tweets are coming in कि this is now England's game to lose. वाओ यार, नहीं होता नहीं होता, नहीं होना था लेकिन हो गया, ये वाला हिसाब चल रहा है इस वक्त. Tosses it up. गंदी Short, बॉल यार. Poor from Shadab and it's been punished, but there's a mid wicket at play, so it'll be Thankfully, no yeah. run. अच्छा, ये क्लाइव ने जिंक्स किया हमें. क्लाइव ने ट्विटर पे लिखा था कि हैप्पी टू सी पाकिस्तान डू वेल, अ ट्रीट टू वॉच देम. वी ऑल नो दैट ही नेवर मेंट इट, क्योंकि वो सिर्फ मुंबई इंडियंस और लिवरपूल का फैन है. बट अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड होती फिर हम मान लेते कि जेन्युइन है कि नहीं. बट दिस सेशन, लुक एट दैट, 31 ओवर्स बॉल्ड, 112 रन्स, वेरी गुड रन रेट यार. ये ज़रा यासिर मीर को फोटो भेज दें. बट 4 विकेट्स फॉर पाकिस्तान. यासिर शाह स्टिल लुकिंग रिलैक्स्ड. This is the first over towards the end of the session that came without a boundary. And you're listening to ENGvPAK.com/match day. It's been an absolute privilege covering this impeccably close, this just incredible test match that we are witnessing. The action, we are now, it's just heating up. We're in the mix of it. We're in the cauldron of fire, as we like to say on Change of Pace. And we're going to take a bit of a tea break, get some drinks going, get some थोड़ी सी हम अपनी सांसें भी जो है वो संभालेंगे, क्योंकि there's a lot of tension in the comm box right now. इजी तो काफ़ी कॉम है, मैं तो थोड़ी जो कहते हैं जो सरखेल की वॉइस नोट वाली मेरे हालात हो रहे हैं थोड़े. 167 for 5. England need just a little over 100 runs to win. Pakistan need 5 wickets. Butler and Wokes are running away with it, and Ansari M are saying this is the Lord's Test 2016 all over again. तो यार अंसारी भाई, वो तो हम जीत गए थे, तो इंशाल्लाह ये भी हम जीत ही जाएं. And we'll leave you with some tunes. अगर कोई आपके गाने हैं पसंदीदा जो आप चाहते हैं कि हम सुनाएं, कोई आर्टिस्ट वगैरह, please leave them in the chat and we'll play those now. And if you're listening over on YouTube, you have to come over to changeofpacelive.com/matchday to actually listen to the music, because it will not play on YouTube. And there's a lot of tension right now. We'll leave you with some tunes. हमारे अपने बैट्समैन को
Assalamu alaikum and welcome everyone for the third session, day 4. 110 runs needed to win for England, 167 for 5. Pakistan chasing those final 5 wickets for a magnificent victory at Old Trafford. Mohammad Abbas is coming on to bowl. It's been quite a challenging session. There have been wickets, there have been runs, but this partnership between Chris Woakes and Josh Butler is slowly but steadily 50 partnership of just 49 balls is scoring at a rapid rate. थोड़ा सा मैच अपनी तरफ खींच लिया इंग्लैंड ने. And coach Misbah looking relaxed, not any signs of tension on his face. लेकिन of course everybody's going to be feeling the pinch right now. Mohammad Abbas on to bowl. Josh Butler just taps it down to covers for no run. मुसाद अफजल आप बहुत क्वाइट हो गए हैं जब से टी ब्रेक आई है. बिल्कुल ही आप चुप कर गए हैं. लगता है you're feeling the heat as the Pakistani fielders were when that counter-attack, beautiful counter-attack from Chris Woakes and Josh Butler, they started smashing fours for fun and really took toll on Shaheen Shah Afridi and Yasir Shah as well. तो पाकिस्तान थोड़े से घबराए लग रहे थे, थोड़ी सी उनकी बॉडी लैंग्वेज डिफेंसिव हो गई थी. But it's a new session, they've refreshed themselves, they've regathered themselves, probably come up with some new plans, new strategies. So hopefully all is well that ends well. सिर्फ 5 विकेटें चाहिए. There's not much to come after that. Dom Bess is a handy lower order player. After that it's the tail of Jofra, Broad and Anderson. Abbas here on to bowl to Josh Butler. Good ball back over length, just punched to mid on for no run. Stringing together a few dots will be really important कि थोड़ा सा pressure हम English batsman पे भी डाले. Woakes batting on 26 of 26, Butler 32 of 33. So Musad, what do you think? किस तरफ इस मैच का रुख जा रहा है इस वक्त? Honestly, I'm telling you, I'm going through the same feelings that I went through in that 2019 World Cup between the match between Pakistan and Afghanistan. But uska result to hamari favor mein tha. I'm hoping it's the same, but honestly, these two are really taking the game away. I'm quite nervous. It's squeaky bum time, and it's a pretty defensive field from Azhar Ali from Mohammad Abbas. It's been a dropped catch, I think. नहीं लगा. No, laga nahi. What would have been better for Pakistan, a drop catch or? Obviously, yeah, drop catch. As we can see, our change of pacers on our chat, all feeling the nerves. Yeah, Musab is saying, really wish Amazon Prime did a documentary with Pakistan like they do with Australia. Would be interesting to see what Misbah said to the boys at T. Yeah. Waqai, yeah. And Ansari saying, we have Chima's Twitter feed for that. Him and his stories. Woakes ने top edge out हो जाना यार. आपके दुआएं सारी कबूल हो मिस्टर आर्सेनल. मैं अभी भी आपको ये कह रहा हूँ, मैं ये कहने के लिए तैयार हूँ इस वक्त, और ये बहुत बड़ी बात है ख्वाजा. और अभी हमारे काफ़ी माशाल्लाह लिसनर्स वगैरह आए हुए हैं, सुनने आए हुए हैं. जी. मैं ये कहने के लिए तैयार हूँ कि इस मैच के बदले, इस टेस्ट मैच के बदले, मैं आर्सेनल को एक प्रीमियर लीग देने के लिए तैयार हूँ. आप देने के लिए मैं तैयार हूँ. मैं अगर ये आप FA के चेयरमैन लगे हुए बस एक ये मैच जितवा दें यार, ये मिस्टर आर्सेनल, हमारे अरसलान फरीद, हमारे चीफ डूजी मिलके दुआएं ऐसी करेंगे, बस हमें मैच जिता दें. मैं आपको आर्सेनल को अगले साल प्रीमियर लीग जिता देंगे हम. Are you willing to post yourself wearing an Arsenal shirt? नहीं, ये नहीं, इतना नहीं हो रहा. With the caption Mikel Arteta, इतना नहीं हो रहा. number 1. इतना नहीं हो रहा. वैसे I actually like Arteta. Miss just outside off. Abbas is exploring that corridor of uncertainty. मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि maybe Abbas is the key. आपने भी बिल्कुल ठीक उसको counter किया था कि his pace will allow for shots, but वो बिल्कुल room नहीं देगा batsman. Or maybe this is the kind of pitch where if you put pace on the ball, then it's easier to hit. Maybe. You know. Ashwin Kumar listening in from Kerala. Welcome Ashwin, thank you so much for joining us. Just one wicket though. England are just. I think everybody all around the world who loves cricket loves a good close test match finish. Yeah. No matter where you're from, India, Pakistan. Why is big? One of our OGs is back. Wow. So his partnership is jokes. Yeah, it's true. Good defense, really good defense from Woakes. यार बहुत वैसे जो है ना सर हेल की वॉइस नोट वाली हो रही है. बहुत ज़्यादा. 168 for 5. Abbas holding his ankle. Has he tweaked it a bit? Not looking comfortable. Ooh, interesting. Musab is asking, would you settle for a defeat if it means Chelsea beat Bayern and go through tonight? No. This is more important. Chelsea भाड़ में जाए, Bayern double भाड़ में जाए. इतना भी नहीं है. मतलब it would be pretty remarkable if we did go through tonight, but this test match is more important for me क्योंकि एक तो change of pace. मैं 4 दिन commentary किया है यार इस पे, so that's all important. And yeah, I think just Pakistan cricket is always first. 168 for 5. And interesting to see Shadab Khan has been thrown the ball. Ansari, ये तो अजीब जो बैट शुरू हो गई है. कह रहे हैं मुसार, what would you do for a series with Australia?
सही बात है यार. What would you do? I would let Spurs win the league. Spurs win the league for a series in Australia. यार Spurs तो इन्हीं सालों में जीत ही जाएंगे लीग. Oh यार बस करो. Spurs मर जाएंगे पहले जीतेंगे कुछ नहीं. Oh, good It was ball. defended and Shadab Khan continuing from the other end. Abbas and Shadab in tandem here. England need just 109 to win, and Pakistan need 5 deliveries, 5 lethal moments, 5 catches, 5 bowls, 5 leg befores, 5 run outing. Something has got to give, and Shadab's full toss is not one of them. ये लानत वाली बॉल है यार. ये कोई तरीका से टी के बाद इस तरह की बॉल कोई करा. बात नहीं यार, हाथ से स्लिप हो जाती है कभी कभी बॉल यार. क्रिस वोक्स कौन सा कोई ब्रैडमन का बच्चा है जो निकल के चिक्के मारेगा उसको. मुसाब कह रहे हैं I don't know about Musad, but I'd be willing to sell my soul. Seriously यार, I would be willing to sell mine and intern soul for a series win. वो intern ये bundle offer चल रही है. Bundle offer. Buy one get one free. 169 for 5. It is squeaky bum time, squeaky everything time. Godo which भी squeaks आ रही हैं और कुछ smashing drive from Wokes. He's continuing क्यों where he विट दे left रहे हो off. यार? Ritvik Balvali, he's saying it's been really long since we have seen a decent wicketkeeper for Pakistan. मैं तो ये आर्ग्यू करूँगा कि हमने कभी देखा ही नहीं है decent wicketkeeper. As the numbers show, to be honest, I've only seen a few, and I think Kamran Akmal is actually quite underrated as a Pakistani wicketkeeper. Wow. Yeah. यानी वाकई आपका दिमाग ही फिर गया कि आप ये कह रहे हैं. Tossed up this time on the back foot. Butler dangerous क्यों? in a comfortable couple, I think. No, just a single. I think we should gamble by bringing mid off or mid on into the circle को कि भी दलेरपन दिखाना होगा. आसिया कह रही है दलेरपन दिखाना होगा. दलेरपन. यार हम दलेर नहीं है यार, वरना हम खुद ना टेस्ट मैच खेल रहे होते हैं. हमसे नहीं बर्दाश्त होती है इतनी टेंशन. हमको विकेट चाहिए, हमें इजी विन बाय 380 रन्स टाइप विंस चाहिए. यही कब आप पाकिस्तान फैन है, आपको जिंदगी में कभी ये मिले? एग्जैक्टली यार, यही मसला है. 171 for 5. यार ये अगर 100 से नीचे लीड आ गई मैं जा रहा हूँ. ये तो हो रही है, खड़े खड़े हो जाएगी. Driven again and should be an easy single. It is. Good fielding there from Yasir Shah. And cover poor throw. I think they might be getting an overthrow. डीप फाइन लेग था तो वो भी रोक लेता, बट यार ख्वाजा फिर स्ट्राइक रोटेट हो रही है. इस तरह की हरकतें हुई ना, ये ओवरथ्रो वगैरह वाली, फिर तो कोई हालात नहीं रहेंगे. फिर मैं बस क्या बता. वैसे चलो खुदा ना खासा अगर हम ये मैच हार भी जाते हैं, देन डू यू ब्लेम द बॉलिंग फॉर नॉट गेटिंग द जॉब डन, और इज इट द टारगेट दैट दे गिव? Driven again from Shot, Butler. yaar. Shot. यार ये बहुत अच्छी बैटिंग हो रही है. This is creamed through 2 fielders, piercing the outside field, and it'll go all the way for 4. Butler is taking it to the Pakistanis, and he's winning. He is winning this for England. England are winning this. Pakistan are losing this. बहुत हालात ख़राब हो गए हैं, बहुत टाइट हो गई हर जगह. 176 for 5. Shadab is going at 4+ in his 3 overs, so he's not really getting the job done. 176 for 5. 101 more runs to win. Wokes on 28. Butler is batting beautifully here. इतना pressure. ओवर आप देखें, ये PSL merchants जो हैं, ये क्या फिल्थी बॉलिंग है यार. ये फुल टॉस आप करा रहे हैं, उसको इतना रूम दे रहे हैं, बाजू खुलवा रहे हैं, दिल खुलवा रहे हैं. What is this man? Honestly, वो इतनी मेहनत जो थोड़ा बहुत. और ख्वाजा बाकी जो आपका सवाल था ना, that whose fault this is, एक तो ये कि obviously थोड़ी सी सिलेक्शन पे तनकीद होगी कि भाई शदाब को आपने किस बुनियाद पे खिलाया, क्योंकि सेकंड इनिंग में वो उसने कुछ नहीं किया, बट which was equally important as the first innings, क्योंकि ये स्कोर सेट करना था और टाइम अभी पूरा दिन बाकी है और ये मैच आज ही खत्म हो जाएगा, तो टाइम की तो बात ही नहीं है. तो फवाद would have been better. But second thing, sometimes you अगर ये वोक्स और बटलर कर देते हैं, you take a step back and you realize the opposition just pulled out something wonderful. जो जिस तरह बाकी सारे इंग्लैंड के बैट्समैन, जिसमें रूट्स और स्टोक्स जैसे बड़े बड़े बैट्समैन शामिल हैं, उनसे शाहीन अफरीदी वगैरह नहीं खेला गया. ये तो टुल्ले आके जो है वो शाहीन को चौके मार रहे हैं कवर पे. So you have to sometimes tip your hat to the opposition, which has been good today. लेकिन आपने सारा कुछ ये कह के जवाब नहीं दिया कि आप फिर किसको ब्लेम करोगे अगर ये खुदा ना खास्ता मैच. मैं ब्लेम नहीं करूंगा किसी को, मैं इनको क्रेडिट दूंगा. अच्छा, तो पाकिस्तान ने कुछ गलत नहीं किया फिर? यार क्या गलत किया सिवाय थर्ड इनिंग्स के? बैटिंग ही फेल हुई है ना. नहीं, 277 टारगेट देने के बाद नहीं डिफेंड कर पाए. 277 टारगेट देखें आप, जो एक आप ये तो नहीं कहेंगे जी 320 टारगेट 350 देना चाहिए था. यार मुझे ये नहीं समझ पेंडोरास बॉक्स खुल गया, अब आपको जवाब देना नहीं, क्योंकि जब आपने 100 की लीड ले ली है तो क्यों नहीं आप दे सकते 350 का टारगेट? यार आई एम सेइंग व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ आवर L if we take the L. Miss just
Yeah, I think it's more of a. चलो आप जवाब नहीं दे रहे, हम अपने चेंज ऑफ पेसर से पूछते हैं कि भाई क्या गलती होगी अगर खुदा ना खास्ता. आई डोंट वांट टू थिंक नेगेटिव, बट इफ वी लूज, डू यू ब्लेम दैट द बॉलर्स कुडंट गेट द जॉब डन, और दैट देयर बैटिंग बाय वोक्स एंड बटलर जस्ट टुक द गेम अवे? वहाब रियाज तो फुल चिल माहौल में है, वो तो कहते हैं टेंशन ही कोई नहीं, पता नहीं क्या कर रहा है, किंडल पढ़ रहा है या पता नहीं क्या देख रहा है, टिकटॉक बना रहा है. अच्छा वो तो अपने कमरे में बैठा कह दिया 2 विकेटों की गेम है और बस. भाई माज जो बात करे उससे बड़ा क्रिकेट का दिमाग है तो पाकिस्तान में. Captain of the Karachi Kings, Umar Abbas now coming in, driven well. यार देखिए आप कितनी कॉन्फिडेंस से स्टोक ड्राइव कर रहा है. कोई टेस्ट मैच की बैटिंग ही नहीं लग रही वोक्स की. बटलर 39 ऑफ 39, कोई तरीका होता है यार, कोई इज्जत होती है. Is he taking revenge for that loss in the World Cup? I don't know, maybe it might just be. उमेर कह रहे हैं I will not tip my hat off, we have to win, I don't care. क्या बात है, इतनी stubbornness. If we lose, top order deserve the blame for their failure in the second innings. मुसाब कह रहे हैं it's the top order failure. देखिए मिसबाह उल हक का कहना है, and मिसबाह उल हक I think is a test genius, not a cricketing genius, but at least a test genius. As Abbas now comes in, bowling to Chris Wokes, edged, and it'll go in the vacant point region for a single. Maybe अब easy की तरह हर चीज़ को edge और catch समझ रहा हूँ. जी था, सही कह रहे हो. But one thing that I'll say about Misbah ul Haq's mindset, he always says when you're playing a test match, your first goal is to play the opposition out of the game. तो जो आपका हारने के चांसेस है ना वो आप 0% पे लाओ. उसकी ये टेक्निक है. अगर मिसबाह की टीम का कोच है, अगर आप उस बुनियाद पे खेलना चाहते हैं तो आपका थर्ड इनिंग बैटिंग फेलियर है. इट्स द बैटिंग्स फॉल्ट बिकॉज वी डिड नॉट बैट इंग्लैंड आउट ऑफ द गेम. If we had scored 250 in the third innings with a 100-run lead, we would have batted them out of the game. And now they need 100 damn runs, and they have over a day to do it, and 5 wickets to do it. And हमारे पास टुल्ले जैसे PSL के ऑलराउंडर है करने के लिए. तो यानी आप फिर बैटिंग पे ब्लेम कर रहे हैं. बैटिंग भी दे रहे हैं, but obviously Shadab's selection will be under scrutiny too. 99 now needed, folks. क्या बोल सकते हैं यार? This is a thriller at Old Trafford. How is it a thriller? They're walking this. They're walking this. यार 99 रन कम होते हैं. आप थ्रिलर ने आपने दिमाग में अपने बनाया हुआ थ्रिलर. यही पाकिस्तानी फैंस की जो प्रॉब्लम है कि हो जाएगा. आपके सामने वो 50 80 रन करके पार्टनरशिप हो गई, 70 रन की पार्टनरशिप हो गई. अभी 50 क्रॉस हुई है यार, तुम कहाँ 80 पे ले गए हो? Ashwin कह रहे हैं Shadab as an all-rounder is not happening. Ritvik is saying Shoaib bhai said on Frenemies if Chronicle was called goalkeeper क्योंकि उनको बॉल पकड़ता नहीं था, बस रोकता था. fair enough. यार ऐसे स्लोअर बॉल से वो आउट नहीं होंगे. ये मुझे फील्ड एग्जैक्टली समझ नहीं आ रही. हाउ आर वी प्लानिंग टू टेक अ विकेट ऑन दिस? क्या चाहते हैं? आपने हार मान लिया, अब अगले मैच में अब जो अगले मैच 2 जीतेंगे. बॉलिंग एट 78 miles per hour saying आदिल मोमिन. अब्दुल्ला कह रहे हैं मुसाद भाई रिलैक्स करें. अब्दुल्ला आप ही हमें बता दें यार, आपने पहले इतनी अच्छी प्रेडिक्शन दी थी कि लंच के बाद हम आउट कर लेंगे. अभी भी आप बता दें, मैं मान लूँगा. आप कहेंगे मैं रिलैक्स हो जाऊँगा. 98 runs left. This is a mammoth total. It's a big यार 98 chase. बहुत रन्स होते हैं मुसाद, क्या हो गया यार लाहौर कलंदर्स ये 9 ओवर में 98 कर लेते हैं. हाँ तो ये लाहौर कलंदर्स थोड़ी हैं, तो इंग्लिश चुकंदर्स ही हैं. क्या हो गया? बट ये है कि बटलर को आउट करना अब इमरजेंसी सिचुएशन हो गई. और मुझे लगता है वोक्स से ज़्यादा खौफनाक है. वो ज़्यादा रिलैक्स लग रहा है एट द क्रीज, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट. No, I think Butler is definitely the key man, dude. 40 off 40. 179 for 5. England need 98 to win. Shadab continuing. Oh, delivery from Shadab Khan beating the outside edge. अभी आपने आप PSL टुल्ला बनाया हुआ था, अब आप चिल्ला रहे हो उसने जो बॉल बीट करा दी है. Both are true. बॉल भी अच्छी थी और वो है PSL. जैसे शैनन शाह कहते हैं, both things can be true at once. Can be true. Skip. 179 for 5. 30 off 36. Tossed up, full toss. Yeah, mashallah. फुल टॉस दी गई है टेस्ट मैच में. क्या बॉल डाली है शदाब यार? रोक लो. चलो रोक लिया. गुड फील्डिंग देयर फ्रॉम शाहीन शाह अफरीदी से. यार ये फील्डिंग करवा रहे हैं, उसको बॉलिंग पे लगाओ. या नसीम शाह को लाए, थोड़ा एक्स फैक्टर होगा, थोड़ी एक्स्ट्रा पेस होगी, शॉट मारने के चक्करों में एज निकल जाए. दैट कुड बी अ वेरी गुड चांस. कुछ समझ नहीं. गंदी बॉल यार. ये क्या फुल टॉस तुमने दे दी? मसला ये ख्वाजा, इफ वी गेट अ विकेट हियर वी स्टिल नीड 4 मोर. चलो बेस्ट वेस्ट से तो इतनी उम्मीद नहीं है, उनको तो आउट कर ही लेंगे, लेकिन ये दोनों वेल सेट हैं. Azhar and his prime pacer. 181 for 5. 96 now left for England to get. They're getting there quite comfortably. Pakistan are being batted out of this game, thwarted out of this game, chased out of this game by this duo, this phenomenal duo. And a poor delivery again from Jadab. 2-4 on the leg stump. He'll get a comfortable single. The runs are coming like butter. The runs are coming like a river. शदाब के टैक्टिक इसको लगाने का, even I thought in theory that it would work, but so far he hasn't got enough deliveries in the right areas. 182 for 5. England. Wokes on 33. Butler on 40 of 40.
finally back on strike. Mushtaq Ahmed भी थोड़े से परेशान लग रहे हैं. Back at the length from Shadab again, a poor length, and it's been crushed into the mid-wicket region for a single. All might get in too much tension. Abdullah Amin Ali, अभी अब्बास नसीम में से कोई एक ले जाएगा. नसीम तो बेचारा बॉलिंग पे नहीं आया, अब्बास को ही कुछ करना पड़ेगा और वो भी थोड़ी सी रिलैक्स बॉलिंग लग रही Masab है. is saying, what has Pakistan done to Wokes? Why can't he just leave us alone? Turns into prime callous versus us. सही बात है. और नसीम शाह एज यू कैन सी वार्मिंग अप थे. आई थिंक उसको अब अटैक पे लगा रहे हैं कि I'm अब्बास sorry. Driven this time down the ground. Poor fielding effort from Shadab, but there's a mid-on in place for no run. And sorry, I'm saying complacent third innings batting. Same complacency in this partnership. What is this field यार set? वो Says सब तो Gopi. ठीक है, लेकिन आपने उनको 96 for 3 पे रिड्यूस कर दिया था. 112 for 4 और समथिंग लाइक दैट. 130 for 4 पे 123 for 5. वो 123 पे 5 थे. फिर वो आप 183 तक वो स्कोर ले गए. फिर किसकी गलती है? Batsman की गलती है यार. इतनी बैटिंग कर रहे हैं. क्या कहते हैं? Tossed up from Shadab, driven well from Wokes, straight to the man. Cover. Yasser Shah doing the fielding. 57 overs gone. England just need less than 100. They're 183 for 5, chasing 277. Gopi Kawal is having a backhanded shot to Misbah. He's saying this field looks like a 2015 Misbah luck field. Look at that wind viz now creeping up for England. 36% chance. मैं तो कहूँगा उनका 63% है और पाकिस्तान. मैं भी हैरान हूँ कि इतना पॉजिटिव अभी भी ये पाकिस्तान के फेवर में दे रहे हैं. ये विनवेज तो मुझे लगता है प्योर फ्रॉड है, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट. मिस्टर आर्सेनल कह रहे हैं चलो बॉयज आउट करो, हम क्वालिटी स्ट्रीट्स खाऊं उतनी देर. यार क्वालिटी स्ट्रीट वाकई. If you're listening to Change of Pace live over on the YouTube, please come over to the changeofpacelive.com. उनको लिंक दो ना कि आप इधर आ जाएं. Match day यार, अब आपको लिंक लिख के दो यार, आप अजीब लोग हो. Here comes 183 for Abbas. 5. Muhammad Abbas, the silent assassin, the messiah of medium pace, as is यार driven ये away भी for a सिंगल दे single. दिया है यार. Oh, and I might just get an overthrow for it. नहीं Nope. नहीं. शदाब, अगर आपने कोई स्पेक्टेकुलर रनआउट या कोई कैच नहीं पकड़ना तो आप कुछ चित्तर पड़ेंगे इस गेम के बाद, जिस तरह आपने जो पिछले 3 ओवर में बॉलिंग कराई है. यार ये तो रन आउट करना चाहिए था. एक बॉलिंग आपकी, एक बॉल अच्छी होती है, बाकी 5 जो आप गिफ्ट देते हो उसको पैक करके. 57.184 for 5. Wokes 33 off 40. Butler 42 off 42. Abbas is bowling in. The workload by the Pacers has been shared pretty equally. Shaheen amongst the wickets, Abbas amongst the wickets. Yasser picked up a couple. 93 more needed, yaar. अबे 93 बहुत रन्स होते हैं यार. Let's see what happens here. Commentary box is split. Massive moment in the game. यानी they would need to make another 50 partnership on top of this to feel that we have got the game in the bag. अगर आउट हो जाता और बेस्ट आ जाता तब भी वो कहेंगे यार 40-45 रन है तब हम ठीक है. बट नसीम इज वार्मिंग अप. ही इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. उसने बहुत ही आला बॉल डाली थी टू गेट रिड ऑफ जोसेफ रूट. Nasim's technique to warm up? He always gets a push up in there as well. It's interesting. Massive, important phase of play. Pakistan need a wicket, and Wokes just needs a little bit. यार of ऐसी time. उम्रों पे स्टार बनते हैं. पर टीनेज में ही हमने देखा था वसीम अकरम आए. So टीनेज में important ही now. वकार Muhammad Abbas to Chris Wokes, and it's played away onto the leg side for a quick single. यार ये कौन गुड है? फील्डिंग यासिर. वेल स्टॉप्ड. डिडंट मिस्टर आर्सेनल और अब्दुल्ला जो है वो आउट लिख रहे हैं, आ गया लिख रहे हैं. क्यों लिख रहे हैं आप ये, जब कोई विकेट गिरी नहीं है तो? यार ऐसे मत करो यार. इस तरह ना करें, आपको फिर हम ब्लॉक कर देंगे. इस तरह ना करें. नहीं हम ब्लॉक नहीं करेंगे, लेकिन मैं तो कर दूंगा. मेरे अभी जो मूड चल रहा है ना इस वक्त मेरा, भाई अगर तुम किसी क्या ने फिरौन बने हुए हो कोई चेंज ऑफ पेस के? विकेट के बारे में कोई झूठ बोलेगा मैं ब्लॉक कर दूंगा. 184 for 5. अच्छा अपने आप को तुम रिलैक्स करो. तुम ओवर हो गए हो, ओवर इमोशनल हो गए हो तुम. नहीं करेंगे आप ब्लॉक. आप लिखिए जो लिखना है. आप 3 विकेट. लेकिन अगर हो गया आउट फ्रीडम ऑफ स्पीच, भाई हम जमहूरियत में बिलीव करते हैं भाई. 184 for 5. 93 runs more needed. Pakistan desperate for a wicket. Abbas now coming in. Ball Just a right on the defensive stumps. stroke. ठीक है यार. तो वी नीड the main thing we need is a measure of control over proceedings. के यार मैच हमारे हाथ से नहीं स्लिप हो रहा. हम सिंगल रोक रहे हैं. हम अपनी बॉलिंग प्लान्स के हिसाब से अगर बॉलिंग हो रही हो उसके बाद जब प्रेशर क्रिएट करके Hamster 41 on Twitter saying ये शदाब के 40 रन हमें पूरी सीरीज दलील करवाएंगे. Yeah, that might just be the case. Hamster, that's an interesting name. Hamad नाम है. He's a very old mutual, very good friend. He used to make some brilliant comics back in the day. अच्छा. But अब I think he's a married man. एक कॉमिक हमारी भी बनाई जा रही है शदाब खान की बॉलिंग के साथ. कॉमेडी बन गई. 184 for 5. 93 runs required, but spot on. I would agree with that. यार एक तो इतनी हार्ड पंचे मार रही है क्रिस वोक्स टू कवर. 184 for 5 still though. Need 93 to win. Abbas providing a measure of control over proceedings, but not looking particularly threatening. ये मसला हमें हो रहा है
कि जी Wokes Musab is saying, does anyone remember Pakistan ever winning a game without giving the fans a heart attack? There's no सही बात heart है attack. यार. This is just death. There's no heart attack. And Death, straight away. Musab is saying, Musad sounding like Khwaja during the Lahore Qalandars game. Yeah, I don't know how he's so calm. Maybe it's because he's used to Lahore Qalandars and this is just normal service for him. यार भाई हम सेमीफाइनल गए तुम क्वेटा ग्लैडिएटर किस लिए 184 शोर for कर 5. रहे हो. Nice bouncer. Nice bumper from Abbas to end the over. चलो थोड़े से 184 कम for रन्स 5. बने हैं इस ओवर में फाइनली. The scoring after tea has been slightly quieter. But आप देखिए बटलर अभी तक 100 की स्ट्राइक रेट पे है मनूस. आदिल मोमिन सिंह उसको तो स्ट्राइक ही नहीं आ रही है, वो वोक्स सुकून से सारी बॉलें रोक हाँ. रहा है. तो हमें तो पता भी नहीं लग रहा अगर बटलर की फॉर्म अभी भी लगी हुई है या नहीं. बट हियर कम्स द फायर ब्रांड, द यंग हॉट शॉट नसीम शाह. Pakistan throwing the kitchen sink now at this match. They're pulling out all of their shortstops. As Mr. Arsenal saying, to be honest, stream and chat works here very smoothly. Yeah, thanks. Cheers, yo. यार मसला ये कि वी आर यूज्ड टू सीइंग आवर स्पिनर्स यू नो रनिंग थ्रू द टेल और ये वो सब. What do you think about यूएई Wise? में हम ये देखते रहे हमारे फास्ट बॉलर्स पे बहुत कम वक्त आया कि उन्होंने हमें इस तरीके से मैच जिताया. इनफैक्ट शायद इंग्लैंड में भी तब भी 2016 में भी यासिर शाह ने गैरी बैलेंस और बेस्ट्रो को आउट किया था वो मैच निकालने के लिए. और इनफैक्ट वोक्स को भी उसने आउट किया था. वोक्स भी उधर फंस गया था. आई बिलीव ही एज टू स्लिप. सो वी आर यूज्ड टू सीइंग दैट. कोई फास्ट बॉलर हमें करके दिखाए. दैट्स बीन क्वाइट अ वाइल टू बी सीइंग. मैं तो कह रहा हूँ यार किसी को कंकशन वगैरह करवाओ, वो आपको ले आओ, कोई बाउंस मार दे इनको. 184 for 5, 93 left. Naseem Shah into the attack now. Immediately gets some swing to the outside. The swing and a miss. Nice. अब तो इतना हालात ख़राब हो गए कि player और miss हम celebrate कर रहे हैं. And Butler needs 93. England need 93. Pakistan need 5 deliveries. 5 गेंदा दी गले की है. 184 for 5. अब इतने बुरे हालात हो गए कि मुसाद born and raised in Karachi अब पंजाबी बोलने शुरू हो गए. ये हालात यार हो गए. मैं by heritage I'm Punjabi. Oh wow! Yeah. वैसे You didn't know this? I knew this. Of course I अच्छा. knew this. 184 for 5. God. Pandora's box खोल रहा था यार मैं इधर. 184 for 5. Vokes 33 of 45. Yeah, Azra with some nice wobbly, topply leg spin as Naseem now continuing this time straightening. Good ball. Gets the top of the bat. यार cotton bold ही कर लेते तुम. यार वो क्या जमीन पे ले जाए कॉटन बोर्ड के लिए. 88 miles per hour. अच्छा मैंने तो good बता pace. दिया है. मैंने तो बता दिया है that for this test match victory, I am ready to give Arsenal a Premiership title. हाँ हाँ. आप comments वाले बताएं. The people that are listening in, what are you ready to give for this test match victory? What are you ready to sacrifice in your life for Pakistan to win at Old Trafford? I am willing to vote for Imran Khan in the next election. क्या बात? tweet डालो. 184 for 5. Let's let Rakil know that this has happened so he can tweet it out. Again, Naseem, good pace, good accuracy, 87 miles per hour, 141. So England थोड़ा सा block mode में चले गए. Some sustained bowling here from Naseem Shah. बिल्कुल off stump पे ball and Remember, he this cracked. remember Naseem to Wokes in the last innings. Ghost of Kagawa is saying, I am ready to accept Pep's requirement. He's a big Guardiola hater. यार पेप तो पेप है ना यार. Mr. Ashton, thank you, Masar. हम आपके club 100% ownership भी लेंगे. I am ready for Arsenal to get relegated. Arslan Farid is just... Wow. Arsenal fan ऐसे कह रहा है यार वाकई. Wow, that's a big... That's so far the biggest sacrifice. वाकई यार. On the back वो तो एक साल की जिल्लत है. पता नहीं I वापस will आते भी vote हैं. for Trump. Oh, man. Get that son of a bitch off the field. Look at the speeds of Naseem Shah in this test match. First innings 90.3, but an average of 88 or average of 86, so not a huge drop off. जैसे जोफ्रा कह रहा था उसके तो 95 से 80 पे आ गई. So I think Naseem Shah has held up very well in this game. And to be quite honest. Shah Rukh Khan is saying there's going to be a wicket in the next 10 balls, yaar. यार अल्लाह अल्लाह करे आपकी कोई और मूवी फ्लॉप ना जाए. 184 for 5. As Naseem Shah this time pulled away from Wokes. What a shot, Butler! What a shot that is. There's a vacant area on the leg side, and he'll find it. That's going to be a boundary. England now need less than 2 runs to win. यार ऐसे तो ना करो. ऐसे ही लग रहा है. ऐसे ही लग रहा है. 89 रन्स बहुत रन्स होते हैं यार. क्यों टेंशन लेते हो? टेंशन तब लेंगे जब 60 विदिन 60 हो जाएंगे. और ये अली चौधरी कह रहे हैं ख्वाजा साहब सारी को वापस ले लेंगे इसके लिए. अभी तो हमने निकाला है उसको. आप ले लेंगे वापस? बताएं. नम में जाए आप ले लेंगे वापस? ले लेंगे, ये क्यों मैच ले लेंगे ये यार? मैच दे दें आप आपको वापस सारी हाँ. वापस देंगे. इफ अगर सारी को रख लो ऐसी क्या बात है. Yeah. कोई उससे जानी दुश्मनी थोड़ी है उससे. But Naseem Shah a bit frustrated that Mr. Ashik, I will vote Ramiz Wasim Latif Akhtar as PCB Chiefs. Oof, tawbah. वो वोट वाला काम ही नहीं है वो. Ibad Pasha कह रहे हैं I will allow a Karachi Kings PSL win. My Wow. goodness. Well Good left ball. this time. Where's one collecting well. कुछ तो अच्छा हो रहा है यार. कुछ हर चीज़ की तारीफ करो.
188 for 5, 89 now required. Wokes and Butler have यार वोक्स turned the tables. They've वनडे gone मोड में जब चले जाता full तो Michael बिल्कुल Scott यार। here. The tables have turned. The turntables. 277. 5 विकेट लिए 4 क्यों चाहिए यार? अब उसकी विकेट गिन रहे हो, पाकिस्तान ने मैच जीतना है। अजीब यार। यार बस अब हम तरला मिनता पे आ गए हैं, ये स्टेज आ गया है। इंग्लैंड 188 for 5 willing to swim in Shoaib Akhtar's घुटनों का। यार शोएब का I can't even knee read this comment. cartilage It's so fluid। hilarious and disgusting. यार ये लेकिन स्क्रीनशॉट बन के लगाना बनता है यार। Wild swing, and that they had tendency in दोनों में, इन बगैरतों में. So there's always that ability. 71 run partnership of 86 balls, so they were on 117 for 5 यार। Mr. Rashid again, I will listen to Ali Sethi for 5 seconds max. Oh my god यार। Massive sacrifice. उससे पहले ही आपके ear drums फट चुके होंगे। But Asad Shafiq with the face palm, feeling the pressure, feeling the pinch. But England, Chris Wokes, yaar, what a player to have batting at 7 in your test lineup. He bowls beautifully, and then when he bats according to the situation, yaar, one in a million cricketer. Abbas now continuing to Wokes, this time poor delivery on the leg stump, and it's clipped away on the square leg. यार कोई cheating बीटिंग कर लो, कोई tempering कर लो। कैमरों में आ जाओ, सैंड पेपर ही मार दो यार कहीं ना कहीं। क्या 5 रन की पेनल्टी होगी ना ज्यादा, फिर बॉल रिवर्स स्विंग होगा, आप उड़ा दो उनको। There's the plan. थोड़ी सी टेम्परिंग करें, 5 रन की पेनल्टी खा के आप उड़ा दें इनको। It's the perfect crime. चलो जी बॉल चेक हो रहा है साथ। Asia's The hoop of death. Asia's asking you, Azy, can you give us some tips to be optimistic from here? यार बस देखो यार, I have belief in my Pakistani lads। कर लेंगे यार, कभी बात नहीं, हो जाए। Ali Chaudhary with the इंग्लैंड की भी स्क्विकी बम टाइम आने वाला है, अभी तो ये फ्री रन्स कर रहे हैं। बस 1-2 विकेटें ले लें यार, ये बड़ी नाक वाले। 1-2 यार, 3-4, चलो 5 ही ले लो अब। 1-2 3-4 5। 189 for 5. A pour again from Abbas, straying in his line, and an easy single. यार सिंगल तो चलो हो ही रहे हैं, लेकिन we need the W to get back into Ali this Chaudhary game. with the pun of the day, he's saying, "Woke awam हमेशा जलीली करती है." That's a good one. David Shepherd को umpire लाओ, जोन सा आउट देगा। Seriously यार, we need his Ways is still sticking to his Mancat ways. Fair enough. वाकई यार, Mankad is an option है। आकिब All कह- options are on the आकिब table। कह रहे हैं, I'm willing to watch one IPL match. ओए नहीं यार, नहीं इतनी बड़ी नहीं, आपको कैंसर हो जाएगा, वो देख के नहीं देखना भाई। इस तरह काम नहीं करवाएंगे हम आपसे, ऐसी बात ना करें। As Abbas continues straighter this time. Brilliant shot, that'll be 4. And the runs are again flowing after tea. Wokes will move on to 38 off 48. Azhar Ali scratching the white hair on his beard. And they just need 83 now to win. यार क्रिस वोक्स को क्या हो गया, ये एकदम से क्रिस, पता नहीं क्रिस लुइस बन गया, क्रिस बन गया, क्रिस्टोफर कोलंबस बन गया, क्या हो गया है भाई? आउट हो जाओ, इतनी मेहनत नहीं करो अपनी टीम के लिए, वो नहीं याद रखेंगे, वो फिर तुम्हें बिठा देंगे जोफ्रा बाबा के लिए या सैम करन के लिए। But Azhar Ali now definitely looking concerned with this partnership. It's moved down. साकिब की ट्वीट आई है, he's saying घबराना शुरू करते हैं हम, change of pace. 83 more to win. अभी आप मुझे बताएं, when should we घबराएं? हाँ 60 के नीचे। 60 पे नीचे, ठीक है। 60 पे घबरा लेंगे हम। Good ball and solid defense right behind it. Pakistan need to come up with a plan B, a plan C, a plan L. कोई ना कोई plan तो हमें चाहिए, क्योंकि ये हमसे आउट नहीं हो रहे। There's no movement out there. 194 for 5. मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम हार गए ना, तो मैंने इतना अली सेठी प्ले करना है, ताकि जो भी हमने एक फ़ैन फॉलोइंग बनाई है चेंज ऑफ पेस की, जो काठमांडू में लोग सुन रहे हैं, वर्जीनिया में लोग सुन रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में लोग सुन रहे हैं, वो सारे बंद कर देंगे और हमें कैंसिल कर देंगे। 194 for 5, 83 still needed here for England, but Pakistan are desperate. This partnership is building. उनको जो है पाकिस्तान को कोने से लगाया जा रहा है। Straight delivery. Oh, this is good. That was a good length for Abbas. लेकिन वही है, चौका फिर पड़ गया, प्रेशर फिर रिलीज हो गया, तो यू नो वी आर नॉट मैनेजिंग टू क्रिएट एनी सस्टेन प्रेशर ऑन द बैट्समैन कि यार दे माइट प्ले अ फॉल्स शॉट। वो हर बॉल पे शॉट मार रहे हैं, कभी लग रही है, कभी बीट हो रहे हैं, दे नॉट वरीड। Give you a quick update on WinViz. It's 56% to Pakistan. यार ये पागल हो गया, चरिया हो गया। WinViz it's 30% to Pakistan right now, to be quite honest. 43% for England. But Azhar Ali consulting with the senior management of Asad Shafiq. जब सीनियर मैनेजर ही असद शफीक है आपका, तो फिर आपकी टीम का क्या बनेगा?
यार अब शुरू हो गए हैं फिर से शफीक के खिलाफ बातें करना. यार शफीक ने ऐसा क्या किया जो हम उसके फेवर में बात करें? क्या उसने कैश नहीं लिया? उसने रिव्यू नहीं करवाया आपसे? यार कैच तो रिजवान ने लिया था ना एंड ऑफ द डे. बट यासिर शाह इज नॉट बीइंग थॉट ऑफ एट द मोमेंट. 194 for 5 for England. Naseem Shah is continuing, gone for 28 of his 11 overs for that one wicket. Here we go once again. Naseem to Joss Butler. Good ball once again. Off stump. Naseem has been a lot better than Abbas since T. He's actually been a lot tighter, more controlled, and no boundaries have come off of his bowling. यार बॉलिंग तो वो अच्छी 89 miles per hour. He's cranking it up now. मिसबा देखिए फौरन ऊपर जाके जो है ना वहाँ के कमरे में छुप गए हैं. नहीं यार वो सामने खड़े हुए हैं बैल्कनी में. वो उधर से ही नसीहत दे रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं. कोच मिसबा इज नेवर वांट टू बैक ऑफ फ्रॉम अ फाइट. यार ऐसे Yeah, it's only Captain Misbah that did that. 194 When for did he five. ever do that? यार वनडो में वनडो में यार वनडे वो कोई गेम है यार. जब आपका बेस्ट बैट्समैन मोहम्मद हफीज था, आप वनडे मैच जीतने जा रहे हो. बेस्ट बैट्समैन आप तो गिल्ली डंडा मैच भी नहीं जीत सकते ऐसे. Naseem Shah this time straightening outside of off. They'll come up with a quick single. यार आपने पॉइंट को करीब में क्यों नहीं रखा ख्वाजा? यार वही है, वो यही डर रहे हैं कि चौका पड़ जाएगा तो सिर्फ दे पुट द डीप पॉइंट ऑन इन प्लेस. अजहर लुक्स क्लूलेस. मैं तो कहता हूँ अजहर को थोड़ा जो है ना ब्रेक लेना चाहिए. Tag Misbah in. Tag team triple threat match. 195 for 5. 82 now needed. Wokes 38 off 50. Butler 48 off 50. The L is being prepared. A hot L is being prepared for Pakistan. Club Shay Shay. Club Shake. 195 for 5. Misbah. Sacked in the morning. 195 for 5. Oh, come on. How did that miss the off stump? My goodness. Naseem Shah almost got the off stump, and Rizwan encouraging his fast bowler. थोड़े से क्वाइट पड़ गए थे, but finally Rizwan letting some. Come on, come on. Oy, Let's lift the mood of the commentary box. Let's lift the mood of the crowd. He was going for a big booming cover drive, but it's jagged in. यार इतने बड़े बड़े sacrifices लोग देने के लिए तैयार हैं. तो फिर क्या और क्या यार वो आर्सेनल रेलीगेटेड तो वाकई ह्यूज था यार अरसलान की तरफ से. Some massive contributions. Yeah, the team is so quiet. Need the slips and Rizwan to be more vocal. Yeah, he's just done that now. Naseem straightening this time and a brilliant shot down to third man for 4. यार लानत है वैसे क्या कर सकते हैं. Brilliant back cut here from Chris Wokes. He is single-handedly taking the match away from Pakistan. 42 of 52. Another boundary behind. Honestly, point. मुझे आप ख्वाजा मुझे आपने कितनी क्रिकेट देखी है माशाल्लाह. मुझे आप सिर्फ ये बताएं जी जी. that what you're seeing from Wokes and Butler right now, isn't this one of the great partnerships? It's unbelievable batting. यार 117 for 5 थे when they got together, and now they brought the total out to अब क्या about. कर सकते हैं इसके खिलाफ? सब कुछ तो आप कर रहे हैं. यार कर तो रहे हैं लेकिन 199 for 5 पार्टनरशिप लगनी होती. कैप्टन का काम है to keep them calm, keep them composed, keep them focused on the job at hand. लेकिन the way Wokes and Butler are batting, बिल्कुल पाकिस्तान के nerves हिल गए. It's a young team. Of course Shaheen और Naseem are not very experienced at this level. Majid Kere, I don't drink, but if I did, I'd be at the bar asking the barman for a double of the strongest whiskey and to leave the bottle. वाकई यार सारे किस्म के वाइसेस पे निकल आए. आर्शल कह रहे हैं सलमान अहमद को हेलीकॉप्टर में भेजो थोड़ा जज्बा बढ़ाएं. मुसाब ने तो प्रेडिक्शन दे दी है पाकिस्तान टू विन बाय 34 रन्स. मतलब अगले 30 रन में 5 विकेट जो हैं वो बस. यार look at that. Now England 47% ahead. Winwiz एकदम से बहुत ही कंजर्वेटिव हो गया कि वो पाकिस्तान आई थिंक हमें रिवर्स जिंक्स कर रहा है, हमें प्लस परसेंटेज दे के. I honestly बस वही 10-15 रन के बाद I feel it's England's game to lose because they have Dom Best still to come in, and of course their tail-enders can also definitely bat, and of course Butler can do a Headingley like Stokes did if he can do those big hits, but England might be on the verge of a miracle here if we don't get this thing done. Ahmed saying update the playlist, boys. It's gonna be a sad night. यार बस यार. Naseem Shah, maybe you can do something else. Let's see what he can do here. Pull Catch! away, and it just beats Naseem Shah at mid-wicket. Pakistan, they've been so unlucky in this test match, and that run of bad luck continues there. Yasser's still smiling. I don't know how these guys are still so calm. 200 up for England. 77 runs required. Yaar, believe 77 runs चाहिए. 5 wickets चाहिए. That opportunity just popped in the air. Oh, he was never close enough. उसका तो हाथ भी नहीं पहुंचा बेचारे का. Heavy 5'8" और goal. Nofel is saying, I think we have lost. Shahrukh Khan is saying, यार यासिर शाह को लाओ. Talha is saying, Wokes के बाद Broad ने
चिमड़ जाना है. By the way, वैसे पाकिस्तान have won many thrillers against England. आपको याद होगा in 2012, then in 2015 that last wicket stand आदिल रशीद वाला, then of course 2016 Lords, वो भी एक thriller था, Oval match भी एक thriller था. So it's always been a very good contest between Nofel England has and already Pakistan. thrown in the towel. Said good test match, well played. Yeah, Naseem Shah, oh good bouncer yeah, it there. will be a bitter pill to swallow if we lose after bossing the game for about 3.5 days. कि हम इस स्टेज पे जाके लूज कर जाए. Now Sarfraz is striding out there. Let's go, Captain Fantastic! The Prince of Karachi. This is what Pakistan need right now. They need a little bit of Sarfraz Ahmed. They need a little bit of chirpiness. They need a little positivity. They need a little bit of Karachi running through their bloods, because that's what Karachi is all about. Beating everybody against the odds, and that's what Pakistan need right now, even though the odds are 50-50 as per win with. थोड़ा दरूद शरीफ पढ़ के थोड़ा पानी और पिलाओ वैसे भी उनको वो यार. माशाल्लाह हाफिज़ कुरान है. हाँ. पढ़े उस पे आयतुल कुर्सी पढ़े, उस पे भूखें. आफ्टर पे बॉल करानी है उनको विकेट नहीं देनी तुमने. उस पे जो विकेट ले, स्लिप ले लो, शॉट लेग ले लो, फाइन लेग ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो, सभी ले लो, ये ले लो, विकेट ले लो. 200 for 5. Sarfraz Ahmed, the magician, the Big magic, Daddy Saf. Big Daddy Sarf. अबे Might just यार. what we need. 83 from. Why is this torture? ये partnership क्यों? 83 from 97 क्या? यार कल एक L मिला है, back to back L's consecutive nights is wrong यार. ये नहीं होना चाहिए मेरे साथ. कौन सा L मिलेगा? यूवे जो कल हार गया यार. अब ये L नहीं बर्दाश्त होनी. But look at the management. They're Azhar Ali very is not a concerned. captain material. Hassan Khan has stamped his authority on यार Azhar. साथ ही ये बड़े-बड़े बयानात शुरू हो गए हैं. Ashwin Kumar, Naseem and Shah need to be left loose on the tearaway spells ASAP. That's what's happening with Naseem. यार बस क्या कर सकते हैं यार. Sarfraz needs to spit some fire bars here. Yeah, that's. ये डॉक्टर ड्रे है, सरफराज है, कौन है ये? But here comes Abbas Come back on the Abbas. ball. England 200 for 5. Come on, Abbas, give us something. Give us something here, mate. Catch! Yeah! Short of mid-off. Short of mid-off again. 200 for 5. Shadab Khan and Azhar Ali with hands on their heads. अच्छा टी के बाद चांसेस आ रहे हैं पर ख्वाजा. कहाँ चांस आ रहे हैं यार? अच्छा अब मैं उल्टा हो गया. हाँ ये 1-2 ओवर में चांस आए हैं. दैट आई एग्री. 77 तो यार वाकई बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये दोनों खेल रहे हैं मुझे लग रहा है कि इस सेशन में ही काम तमाम कर जाएंगे हमारा, अगर हमने इनको आउट नहीं किया फ़ौरन. बट अब्बास स्टिल हिटिंग दैट लेंथ, स्टिल bowling that tight line. Oof, let's see what Abbas can do here this time. Straightening and it's clipped away. Good fielding there from Yasir. अब एक स्लिप कम कर दी और एक मिड विकेट पे आ गया, सो ठीक है. पॉजिटिव. लेकिन अभी भी हमने डीप पॉइंट रखा हुआ है. मिड ऑन इन द सर्कल. मिड विकेट निकल गया. अगर स्लिप में से बॉल चलेगी फिर क्या होगा? वैसे ही बॉल अब्बास की कैरी नहीं हो रही. ज़ैनब कह रही है मुझे माइग्रेन हो रहा है. शाहरुख खान कह रहे हैं कोई नहीं भाइयों, आगे अभी 2 मैचेस हैं. तलहा कह रहे हैं इज देयर एनी रिवर्स स्विंग? आई हैवंट सीन एनी. बिल्कुल भी नहीं. रिवर्स तो यही हुई, यही तो मसला है कि रिवर्स स्विंग हुई Mahal नहीं. कह रही है I cannot breathe. Askia is going after Azhar Ali. And Musab is being very aggressive with his words. Slower Dab ball. down to gully. It's a bit of an off spinner there by Abbas. 66 miles per hour. But Azhar Ali definitely looking very tense. Yasir Shah इधर उधर देख रहे हैं कि यार क्या हो रहा है. There was a half chance in the previous over with that mistimed pull by Joss Butler. Just out of reach of Yasir Shah. Shaheen Shah also warming up. He is our ace bowler. He is our ace in the hole. Is this going to be as bad as Sydney? नहीं यार क्या सिडनी टू, वो तो बहुत ही एक ट्रॉमेटिक लॉस थी. ये तो वेल फॉट और दाद देनी चाहिए, क्रेडिट देनी चाहिए. अगर इंग्लैंड अगर जीता, दिस हैज बीन फ्लिप्ड अवे टू डीप स्क्वायर लेग. दैट इज गोइंग टू बी अनदर सिंगल. Wokes is just going along nicely, 44 of 57. Butler on strike now, nearing a 50. I think he's definitely justified his spot in the side. मैं आपको एक बात बताऊं जी जी कि अभी पाकिस्तान को 1 विकेट नहीं चाहिए, हाँ 2 चाहिए. अच्छा. और फिर 3 चाहिए, फिर 4 चाहिए और 5 चाहिए. Because right after this, डॉम बेस्ट भी बड़ा बेगैरत प्लेयर है. बिल्कुल. We need 2 wickets in quick succession. यार कोई दिलेरी दिखाओ, कोई 2 and 1 for 5. और भाड़ में गई यासिर की 10 विकेटें. इंटर्न ने तो कह दिया यासिर की 10 हो जाएंगी, बट आई ऑनेस्टली डोंट सी दैट कमिंग जस्ट येट. There's no chances. That both batsmen are very comfortable. We need a brain fart from either one. As 201 for 5, this is defended well. Ball once again. Very stout, very resolute in defense. जॉस बटलर का तो बैट ऐसा लगता है पता नहीं कोई दरवाज़ा लेके आ गया. ये बैट नहीं है, ये किसी को ओक का दरवाज़ा है. The way he's batting, 76 more runs needed to win for England. 201 for 5. Azhar Ali looking tense. That body language not looking good. काफ़ी सोच विचार में लगे हुए कि यार क्रिकेट में कैसे निकालूं. बट
Josh Butler looking rock 201 solid. for 5. England just need 76 more runs to see themselves to victory. Sees himself, I'm Jose Mourinho. Jose Mourinho. 76 run required. नहीं Clipped यार, away गंदी onto the leg ball. side. And I think Abbas needs to be taken off. यार अभी आप कह रहे हो वो चांसेस क्रिएट करे, अब कह रहे हैं उसको निकाल नहीं दो. बस मैं थक गया हूँ, हटाओ उसको. 75 more runs to win, 5 wickets in hand for England. Match is very कोई यार much आप in the स्लेजिंग balance. वेजिंग कर दो, किसको धक्का दे दो, कुछ कर दो. धक्का दे दो, धक्का देने से क्या हो जाएगा वो. मैं I think Izzy, your advice has been the best so far. हाँ, ये देखें आप यार, ये best partnership of the game for England so far. 85 runs यार. यार लेकिन पिच भी बहुत ज़्यादा फ्लैट हो गया है, टू बी क्वाइट तो फिर कल आपने क्यों नहीं रन किए? आप स्वीप खेलते हुए डॉम बेस पे आउट हो रहे हैं. तो मैं आपसे यही पूछा था कि आप बॉलिंग को क्रेडिट, मतलब बॉलिंग को डिसक्रेडिट करोगे या आप उनकी इंग्लैंड की बैटिंग को कहोगे या हमारे बैट्समैन को कहोगे क्योंकि उन्होंने गंद किया. यार एक वेरिएबल तो नहीं होता. आई थिंक द मोस्ट आउटस्टैंडिंग वेरिएबल वुड बी दिस पार्टनरशिप. हाँ, आई मीन आप देखिए किसी और बैट्समैन ने इस तरह की जो है वो सही बात है. बैटिंग नहीं की. सो बटलर रूट और सिबली तो बिल्कुल बैट ही नहीं उठा रहे थे, बट हियर कम्स नसीम शाह बैक इनटू द अटैक राउंड द विकेट टू जॉस बटलर, pulls it, hard pull, but it's going to go to deep square for just a single. So has he got his 50? No, he's on 49. Yes. 75 He has, more he runs has. to win. Yes, that is a valuable, a priceless Test 50 for Josh Butler. We're getting to that 60 run mark that you wanted. His 17th Test 50 in 45 matches. What an innings! Completely took the game away. Strike rate of 90. My goodness. यही मसला है यार कि एकदम he just flipped a switch. Of course, this is his home ground. He plays for Lancashire in domestic county हम cricket क्या as करें well. अगर उन्हें खेलते हैं लैंकेशर के लिए? हाँ? हम क्या करें लैंकेशर के लिए खेलते तो हैं? यार इसलिए तो वो अच्छा खेल रहा है इस पिच पे. चौथे दिन पे आके ऐसे चौके मार रहा तो है इसलिए अच्छा जैसे खेल रहा है ब्रैडमैन का क्योंकि प्यो है ये. तो दैट्स व्हाई वी आर इन अ बिट ऑफ स्ट्राइफ. नसीम शाह नीड्स टू प्रोड्यूस सम मैजिक फ्रॉम समवेयर एंड इट्स अ टफ टाइम यार. यंग बॉलिंग अटैक है, बेचारे नसीम और शाहीन नॉट एक्सपीरियंस्ड, so they won't know much about how Maybe to deal. they should bowl some beamers. Cut away, beautiful shot over the infield, and it'll go over the boundary rope for another boundary. ये क्या बॉल है नसीम यार. 70 now needed. Made room, did Chris Wokes, and he's also nearing his 50. This partnership getting closer to 100. And you can see कि पीछे background में Michael Atherton की भी जान में जान आई है. हाँ, अब वो लाहौरी टेप बॉल बॉलर्स को कहोगा हाँ अब बॉल होन 10. But a good shot there from Wokes, short and wide, and just boshed it over covers. Easy boundary, gandhi ball, and now Azhar Ali has some serious problems on his hand. कि भाई मैं इनको कैसे out करूँ? Do I go to back Should to we start spin? playing the Gum Hour playlist? Hmm? Should we start playing? I think उसको लोड कर लें, लोड कर लें. पर 10 रन और चाहिए अभी प्ले करने से पहले. देखते हैं यार. विक्ट्री प्लेलिस्ट तो हमने कभी बनाई नहीं, आप गम और वाली रेडी कर देते हो हर दफ़ा. ये तो It's गलत बात है. Pakistan cricket. What do you expect? Yeah. 70 now needed. 48 off 58 for Wokes. Butler 50 off 55. यार बड़ा वैसे जो है ना. And we need to remind our listeners that this would be the second highest run chase ever at Old Trafford. Do we they win. need to remind them? मतलब मैं context दे रहा हूँ कि यार it wasn't that easy to win the game if they win. Big if. So let's see how it goes. Naseem Shah, that's another slip in place, going over the wicket now. Enough with this round the wicket funny business. Oh no! It I just thought he evades edged the it, to be quite fielder honest, at but look cover. at that shot. Another- A densely covered drive from Chris Wokes, and that is his 50. A brilliant innings from Chris Wokes. 52 off 59, 211 for 5, 66 I think more honestly runs to Pakistan win. should call drinks or should bring some gloves or whatever. So अभी तो किया था, सरफराज को भेजा था हमने. speak to Misbah, speak to someone. कुछ करें यार, इस तरह नहीं हो सकता. आप तो हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठ गए हैं बिल्कुल ही. No field positions, and Azhar Ali is looking lackluster in the field. Yaar, I don't think he has any answer to what is going on. It's just sensational batting from England. Bilkul, the body language is absolutely down. He's feeling the pressure. He's feeling the pinch. हमने कहा था जी जाएंगे. Come on, boys. We have to remind everyone they came together at 117 for 5. And it's almost a 100-run partnership, if not already 211, 96-run partnership हो चुकी है यार. But ये होता है हमेशा एक रन चेस में एक partnership लगती है. But this one might be the final nail in the coffin for Pakistan. Oh, left alone, and it's a good attempt from Rizwan to keep it for going to 5 buys, but he's done Brilliant okay. bowling यार. अभी भी on a day 4 pitch getting that lift. Rizwan को क्या हुआ? Has he injured himself? No, he seems to be fine. Oh, Sarfraz for a concussion substitution, and there it is. You can boss them some यार off एक तो spin. हमारे individual Sarfraz has some off spin as well, man. इंडिविजुअल एजेंडे नहीं खत्म होते हमारे के जी. कौन से सरफराज agenda? टीम में घुस मैंने जाए. आपको कहा है कि उसको ना खिलाओ.
experience a technical issue just like Pakistan are. यार हमारा टेक्निकल इशू है या हमारे कोई लॉजिकल इशू है पता नहीं, लेकिन द गेम इज स्लोली बट श्योरली. Shout out to Sarosh on Twitter for recalling this comment about somebody commenting earlier कि इंग्लैंड की बैटिंग ही 5 से शुरू होती है. यार वाकई यार ये बड़ा कोई खौफनाक बात की थी जिसने भी की थी, लानत और उस आपको पे. नहीं करनी चाहिए थी ये Sorry. बात. तलहा वान कह रहे हैं वोक्स को साइमंड्स बना दिया. सीरियसली यार ऐसी ही फीलिंग आ रही है. वाइज बेग कह रहे हैं कि शान मसूद को ले आओ बॉलिंग पे. मिस्टर आर्सन कह रहे हैं सरफराज को Imagine, rocket imagine बिठा how, कर how मार imagine how we've how the mighty have fallen that we need Sean Masood to now come on the bowl, यार. which hasn't really happened yet. But plenty of questions still being asked. Pakistan's trying to figure out कि हम करें तो फिर क्या करें. 65 more runs to win, 212 for 5. Both batsmen gone past 50. Both batsmen well set, well organized. 100 partnership is just around the corner. लेकिन बस यार 212 for 5. थोड़ा सा mental 65 strength more हमें runs दिखानी. needed. Shaheen also pulling up gingerly कि वही What a rough day of Test cricket. It started off so brilliantly. I don't want to see this 50. I don't care for this 50. और यार आते सारे उसने चौके मारने शुरू किए हैं. He didn't take a breath for even a minute. You know, जबरदस्त shots मारे. Look at that sweep, hard sweep, those cover drives. Look at that reverse flip as well. Yeah. It's just really hammering them. Beautiful extra cover drive And against Khwaja Shadab as earlier, well. maybe this is what we need, because earlier I was talking about some Yambu representation on the chat, and we just got tweeted in from Humaid Khan, who's listening in from Canada, who's a fellow Yambu boy, so shout out to him. The magical city, Khwaja, maybe you can spin some magic right now. यार Maybe that's what we need. अच्छा लोग already faulting Azhar Ali's captaincy. यार what has he done wrong, to be quite honest. This batting has been sublime, but honestly, after tea, I thought the field placing was a bit यार complacent. जो शाहीन ने वो बॉल कराई थी पोप को, उसके बाद तो हमने लग रहा था इट्स अ मैटर ऑफ टाइम के. Yeah. बात ये कि दिस पिच डिडंट डिटीरियोरेट, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट. और यासिर शाह ने भी उस स्टैंडर्ड पे बॉलिंग आज नहीं कराई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे. बट सरफराज वंस अगेन इनटू द फील्ड एंड गाइडिंग, providing his two cents with his experience of captaining Pakistan. Partnership of 96 of 109. Has Sarfraz 109, captained how many Pakistan? overs is that? 108 divided by 6 कितने होते हैं? 13 ओवर यार. 13 ओवरों में उन्होंने It's 96. better than a one-day average. वही मैं आपको बता रहा हूँ कि वो इतना तेज खेल रहे हैं इस पिच पे, जहाँ रन रेट 2.5 रहा है पूरे दिन, तो फिर आप क्या कह सकते हो. And I don't know how they've done it, to be honest, because they've made room against Shaheen. अपने नसीम को भी they've lifted him over the covers. They've अब्बास taken को on भी उन्होंने Yasir अच्छी Shah. तरह टैकल किया है, और यासिर को भी उन्होंने अटैक किया है. Yasir Shah, Yasir Messi Shah might have something up his sleeve, needs something up his sleeve. This might be the last roll of the dice for Pakistan. How How was that? Come on, just give it. It's outside leg, but you gotta give it. No, he's not giving it. 213 यार लेकिन आप राउंड द for विकेट 5. क्यों आ रहे हो? Don't you back yourself to perhaps get him out over the wicket? It's gonna be difficult. और इतनी हार्ड स्वीप्स मार रहा है, मुझे नहीं लगता कि आपका ज़्यादा चांस है. You are expecting him to play a really poor shot. But Again, Yasir Shah with this line. What is the point of this line? It negates the LBW. There's hardly going to be a chance to get you bowled. There's not enough time for you to set him up. 214 for 5. Now Chris Wokes on strike. यार honestly मुझे लगता है Chris Wokes might just be the man of the match of this game if he takes England home. Still अभी भी 63 रन्स बहुत होते आपको हैं. लगता है क्या मतलब लगता है ये होगा ये हमारे साथ? 214 for 5. And we're seeing a very similar Pakistan Test match story happen again in front of our eyes. It's ripping through our souls and मजे our की hearts. बातें बनेंगी कि किसने कहा था 2 स्पिनर्स खिलाओ आपने 6 बैट्समैन. Yeah. सारी रिविजनिज्म शुरू हो Yeah, जाएगी. yeah. 214 for 5. Up until now, everything was perfect, right? 63 needed. And that's about Test cricket. You can lose it in a session or two. And frankly, Pakistan have only lost 2 sessions. Maybe this one after tea and the one yesterday. Good ball once again, but solid as a rock is Chris Wokes getting behind the line, looking completely untroubled. But so far, Yasir's been on the money. It's in this over at least. अब देखते हैं उनकी इसकी जो Yeah, loose- he was bowling a bit too full in the morning. I think he didn't utilize the rough as well as he could have. But let's see. Oh, this is much perfect better ball from once Yasir. again. Come इधर on, ही आपको Yasir. रहना पड़ेगा. Turn यासिर it, का boy. ये है कि जब when the pressure is really on, he really manages to laser focus उसका हो जाता है, and he really starts hitting those lengths and lines really well. Yeah. But all happening at Old Trafford, a thriller of a test match here. 214 for 5 are England. Tossed up by Yasir Shah this time. Forward foot defense for no run. Again, drying up the runs against these two, even at this stage, it will be a win for Pakistan, because we've talked about it, and I told you earlier in the afternoon, Khwaja, Ji, ji. that both of these batsmen are not the kind to stick around. If you
Give them the opportunity to score runs. They'll be very happy. But if you can stifle them, they will give you your wicket. Ooh, well bowled once again. And so far, Woke's looking good in terms of his defense. मुसाब ने एक मिनी मीम बनाया हुआ है. England requires 7 runs to win easy. यार मुसाब 7 runs भी बहुत होते हैं. यार मैं 60 कह रहा हूँ, 7 नहीं कह रहा. But let's see यार. अब आप क्या बोलोगे यार, वो बंदा एक्स्ट्रा कवर ड्राइव्स मारे जिस पिच पे जहाँ से बॉल नहीं टच हो रही है ओपनर से, तो इट्स वेरी हार्ड टू कंप्लेन यार. So Khwaja, his you've individual you've asked a lot of questions of me and the commenters. And जी जी what about you? Who do you put the blame on? यार Put your money where your mouth is. honestly अब यार when we were 117 for 5 I think we were all 123 for 5. नहीं 117 की से स्टार्ट हुई थी. अच्छा अच्छा. तो यार अब उन 100 पार्टनरशिप मार के नीचे से आगे क्या बंदा बोले. श्योर वी कुड हैव मेड 350 380 बट we know that's another For hypothetical. me, I have to keep going back to what Thomas said. Oh, so I sorry, think what- this pitch hasn't deteriorated on day 4 as we expected. वो तो बिल्कुल flat pitch बन गया. ना बॉल स्विंग हो रही है, ना स्पिन इतनी खास हो रही है. But Shaheen Shah Afridi is also back. Yasser and Shaheen combining once Lahore Qalandar's teammates, now Pakistan teammates. Can they get a wicket? Can they break this partnership? Can Shaheen make something happen? He was getting some unusual bounce from He's around the probably wicket. your best bet, and you still remember that delivery. This is probably one of our last throws of the dice, to be quite frank. Throw the kitchen sink. Nice drive. Look at that, so confident. इतने जोर से यार ठाठा ड्राइवे मार रहा है. तो अजहर अली भी बेचारा, more pressure on him, didn't make runs in this test. Asad Shafiq didn't make runs in this test, threw his wicket away when he was well set. उसके बाद रिजवान ने भी कुछ खास नहीं किया. Shadab made a plucky 45, got a couple of wickets, so he's going to be above fault. But do we make changes in the batting lineup? कैप्टन तो चलो नहीं निकलता. आबिद अली ने जो इतनी ख़राब शॉट खेली थी when he Majid is was well saying he set. feels sick as a parrot. And we're still doing well to laugh. Trust me, I'm not laughing right now. Clipped away onto the leg side, and they'll comfortably come back for a single. And मसला ये कि emphasis on comfortably. अगर हम हार गए then it'll be a very demoralizing loss for Southampton में उठना. Making a comeback will be really difficult. Zainab is saying, can we do a Chennai again, or should I book a therapist? यार चेन्नई में वसीम अकरम और सकलैन मुश्ताक और वकार यूनुस थे आपके पास. इधर तो बेचारे बच्चे चूचे से हैं हमारे शाहीन और नसीम, who bowled their heart out. They bowled like really courageously. लेकिन end of the day बात वही है. They lack Labs experience. is saying letting England dominate, call it neo-colonialism. Nice deep cut there from Labs. 215 for 5. यार उसकी बिल्ली के लिए जीत लो. Oreo भी देख रही है आज. Full delivery, dug out well. Yes. And Assad, who's sitting right next to me, is dropping some Arsenal bombs. He's like, this feels like an Arsenal side, content to lose. यार एक तो ये आर्सेनल, ये तो लिवरपूल का फैन है, ये किस लिए आर्सेनल की ले रहा है बेचारों की. That's punching down. नवीद is saying, हाँ भाई लड़कों क्या माहौल है. यार क्या माहौल है, क्या बताया तुम्हें नवीद. इधर हमारी जो है वो बरकस बन चुका है हमारा. 215 for 5. 62 needed. Wokes and Butler have taken this game firmly away from Pakistan, and it seems like there's no way out. And Maho saying बस अब मैं थक गई हूँ. And Sahil is saying cricket ज़्यादा काफिर थी. वाह यार वो क्लिप भी रेडी रख लो जस्ट. That's gonna be the clip of the day, I feel. और स्पेशली इन काफिरों की इजादे जो खेल रहे हैं इस वक्त. यार इस तरह. ब्लडी एंग्रेज, ये किस रोले में हमें लगा दिया. हम भी फुटबॉल खेलते 2 घंटे में फारिग नहीं जी, हमने 5 दिन वाला गेम खेलना है. 215 for 5, 64.4. In comes Shaheen Shah Afridi. A lot of hopes on this young man as it's clipped away onto the leg side. For ये गए तुम्हारे comfortable hopes single. of this young man. नहीं, but that's just one poor delivery to end the over once again. England hanging in. नहीं, एक बॉल रहती है. Sorry, अभी 64.5. Over It's so rare for Pakistan to be presented with the opportunity to win a test match in England. बिल्कुल यार. And I know it's so hard to pick a villain right now, but I keep going back to what Misbah-ul-Haq's strategy is. And his strategy is always to bat or keep the opposition out of the game. And Khwaja, it would have only been done if we had 100 यार, extra you had runs. them 117 for 5, Musad. You have to remember that. Shaheen continuing तब here. तो लग रहा था 200 भी नहीं कर पाएंगे. हमने कहा ये मिनटों में फारे गए हैं. तो फिर उसके बाद एक 100 रन पार्टनरशिप अगर वो दे गए हैं तो यार उनको भी थोड़ी क्रेडिट दे दो. 99 रन पार्टनरशिप इन फैक्ट इट इज़ राइट नाउ. 61 मोर नीडेड टू विन. वोक्स अभी 60 नहीं हुआ वैसे. क्या आपने कहा था 60 पे पैनिक करेंगे. शाहीन अभी 60 नहीं हुआ. 1 for 40.
Butler 53 of 61, Wokes 54 not out of 68. This pitch has really gone docile, has gone pretty flat. जो rough था outside the left hand It's is like batting on a dosa. I think कोई PJ मारा है, dad joke मारा है. 216 for 5. So 61 more needed. I was about to say 161 more needed. अच्छा. Oh yeah, sure, buddy. मिस्टर आर्सेनल कह रहे हैं उम्मीद मीटर एट 16.1% KPH. और अच्छा आप चले गोस्ट ऑफ खगावा ने रिप्लाई दिया स्टिल फास्टर देन निशांत शर्मा. यार वो बेचारा भी अब काफी रिस्पेक्टेबल है. His comeback has been good and now you know what would be the most annoying thing? What? कि जी ये हो जाए सारा 62 विन ये वो दिन खत्म हो जाए और फिर वो कहते हैं जी स्टंप्स कल लाओ विद 12 रन्स टू विन और फिर हम जलील होके आए और देखें कि भाई मैं तो नहीं आऊंगा. 216 for 5, 61 needed. something needs to happen for Pakistan. Yeah. They need some. This is one of those times where you need like a brilliant catch or a run out. Just drinks, I think. मिसबा भाई तो बेचारे. And the break might help Pakistan. It throws the batsman off sometimes. अब ड्रिंक्स ब्रेक में तो अब जेडी और कोक ही निकलेगी और कोई ड्रिंक्स नहीं निकलेंगे. यूनुस खान कहाँ गायब हो गया? पहले पूरे दिन हमें नजर आ रहा था. यार वो आपको बॉलिंग भी सिखाए. यार कुछ तो सिखा दो. बैटिंग तो उसने सिखाई नहीं. यार बैटिंग तो हमने अच्छी की थी. 216 for 5. बस नोट्स लिखते जा रहे जिस तरह. यार आई जस्ट डोंट वांट पीपल टू गिव दिस स्टूपिड रिविजनिज्म के भाई 277 कम था. Let me stop being sarcastic and frail for a second and actually say that Pakistan have actually played remarkably well in this test match. पहली इनिंग में भी अच्छे रन किए, दूसरी इनिंग में इंग्लैंड को बहुत अच्छे स्कोर पे आउट कर दिया. The only failure was that session yesterday and you can say that it was a batting failure for some of the people, but other than that you have to understand from the other end, from England, you have some 4 world-class bowlers. Yeah, Jimmy Anderson, Stuart Broad, Chris Wokes, and Archer. They're not mugs. सही बात है. Some of them are quick, some of them are accurate. So, you know, you have to pay a little homage to the opposition as well. And Pakistan had England on the ropes this afternoon, but they've bounced back incredibly well through Chris Wokes and Johnny Bairstow. लेकिन मैं ये इस बात पे हैरान हूँ कि यार ये पिच एकदम डेड कैसे हो गई कि वो ऐसी अब कवर ड्राइव्स मार रहा है. मे बी उन्होंने कोई टी के दौरान रोलर मलाया है. मुझे लगता है वाकई यार सेकंड न्यू बॉल अवेलेबल इन 15 ओवर्स. दैट्स गोना बी अनदर ट्विस्ट इन द टेल. हाउ टू से 10 रन चाहिए होंगे 15 ओवर के बाद जो अब रेट पे चल रहे हैं वो. ये बात लेकिन वो भी काफ़ी रोक रहे हैं. अब इतना ज़्यादा तेज़ नहीं खेल रहे. बट हाँ जब तक न्यू बॉल आएगा तो वैसे ही 10-20 रन रह जाएंगे. I'm telling you Pakistan need 2 wickets in their back in this game. Right now they're out of this game. I think they need some sandpaper and some थोड़ी variety miscellaneous चीज़ें हमें मलनी होगी बॉल पे क्योंकि पिच पे तो हमें कोई असिस्टेंस नहीं मिल रही. और यासिर शाह ने भी कहना पड़ेगा यार he's been disappointing. He didn't deliver as we expected in the 4th innings of the test. Who? Yasir Shah. Yeah, he's gone for like 2 for 80, 2 for 70. तो यार that's not good enough in the 4th innings defending a big score. But शरीन मज़ारी अभी भी बैठी हुई है ग्राउंड स्टाफ के साथ. So अच्छी बात है. हौसले बुलंद हो रहे हमारे कि जी ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर आई हुई हमारी ह्यूमन राइट्स के देखने के लिए. 2 for 75 in 21 overs. यार दैट्स क्वाइट एक्सपेंसिव. यू गोइंग एट 3 overs plus. यार ऐसे तो मत करो यार. दिस इज़ नॉट होबार्ट 99. दैट वाज इवन मोर ट्रॉमेटिक. उसमें तो स्ट्रेट अप चीटिंग हुई थी पाकिस्तान के साथ व्हेन लैंगर डिडंट वॉक. तो let me play once again after a drinks break. आपको याद होगा जॉस बटलर भी ड्रिंक्स ब्रेक के बाद फौरन आउट हो गया था. So maybe another miracle is in the process. Wokes on strike or batting on. Let's go. Yasir tosses this one up in the air and just evades cover for no run. Just a solitary slip in place. There's a point. A short extra cover. It's the captain himself. But Michael Holding on air saying that with all the technology available, Pakistan should know to target Wokes' body. See if they do that here. Will cut away well from Wokes. It clears the infield and it'll get another single. और वैसे देखा जाए तो बटलर ने पहली इनिंग्स में भी बहुत अच्छी बैटिंग की थी. There was a suddenly he just missed a straight one that went off his pad and clean bowled him. But and again, Khwaja, I'm looking at Chris Wokes' wagon wheel here, and Chris, like almost the majority of his runs have come through that cover region, and so that means the field placing has been quite poor from Pakistan. And just square of the wicket, he's got 11. So majority of the runs have come to that offside, not really bowling to his body. यार अब आपको एक्स्ट्रा कवर ड्राइव्स मार रहा है डे 4 के पिच पे तो भाई उसकी क्लास ये है. दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट शॉट इन द गेम एंड ही इज प्लेइंग दैट विद ईज एंड क्रैशिंग द बॉल थ्रू द एक्स्ट्रा कवर रीजन.
वो तो usually that's the point where your slips come in. True. And your your cover fielder comes in. तो यार we can't really complain about these small things. 60 now needed, as Khwaja said. This was the panic button, yaar. and they've passed the panic button point now. They now just need 59. 218 for 5. Wokes 55 off 70. 59 runs भी बहुत होते हैं But यार. यार क्या हो गया? But definitely a lot of concern on the Pakistani faces. This is the 100 partnership has come up. But to be honest, 59 for 5 is doable. 100% 100% doable है यार. वो भी 100% pressure doable. लेंगे. लेकिन वही है, you need to break this pair. Good break there from Yasser. खेलो यार ना इसको खेलो. Wokes थोड़ा edge दो, फिर देखते हैं क्या होता है. 218 for 5. Wokes 55 off 71. Butler 54 off 63. Yasser 2 for 77. Everybody stay calm. The gif on the chat. Oh, come on. That's not a single, guys. He probably read that googly and just bunted it to mid on where the fielder was a bit 219 wide. for 5. Yeah, I just want to play a clip from Wasim bhai. थोड़ा सा हमारे हौसले बुलंद हो जाए. play करो, ठीक play है? करो. कि थोड़ा हम अब सब सुने, and maybe that's what the skies need लगाओ right लगाओ now. लगाओ. एक बात इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि गिरना नहीं, पार्टनरशिप उनकी लगनी है, गिरना नहीं. बेशक 50 रन रह जाए, हम 50 पे उनके साथ आउट कर सकते हैं. हमारे आउट हुए बहुत इम्पोर्टेंट है. ओके बॉयज, कम ऑन, एक बात. And you heard the man. You heard Wasim. मैं वही आपको बार-बार कहता था, गिरना नहीं है. गिरना नहीं है. And apparently जो है वो. This was during that Chennai Test match, in fact, that famous victory Pakistan had in 1999, with Sachin making a fabulous 137 or 38. The problem is कि our captain right now kind of looks gira हुआ. यार वो 209. चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी एंग्जाइटी तो होती Let's है go यार. with Freedy. This time played beautifully from Chris Wokes down to third man, and he just pick up a single coming back for 2. आओ ना दो के लिए. खुशबू लगा के वो भी. Wow, But, okay. 57. 220 for 5, just 57 more needed. What a partnership this has been. One of the great partnerships in the history of Test cricket. सही बात है यार. So seriously, it's not a joke to chasing 277. You're 117 for 5. Zainab Then you ki- stride out Yeah. and then just start smashing it from ball 1. You added 100 runs in like 14-15 overs यार. Gopi कह रहे Mazari will go to the UN to submit a human rights violation against Chris Wokes. वाकई यार, एक बंदा एक मुल्क के खिलाफ इतने कर रहा है, ये तो हिटलर वर्सेस रशिया वाली बात हो गई. Zainab is saying यार कौन कैप्टन होगा वो बाद में देख लेंगे, बस अभी मुआवजे की दुआएं करो. Yeah, maybe. Short cover in place. Again, 57 for 5 is place. doable. Here we go, Shaheen Afridi. Ooh. Walking across his stumps there, Hint Josh of Butler. reverse there maybe for Shaheen Shah, just ducking out a bit. Zainab is already calling up her therapist. यार हमें भी जरा उसका नंबर फॉरवर्ड कर दें, हमें भी शायद. Nofel is saying how many false shots did these two play? Honestly, I can't think कुछ of भी many. नहीं यार, हर चीज़ मिडल कर रहे हैं. वही मैं कह रहा हूँ, barely Abbas beat them once or twice. उसके अलावा this pitch has gone completely dodo dead basically. Yeah, and iconic words from Wasim. Yep, big time. Girna nahi hai, folks. Let's keep going here. And Maho immediately says, okay, so we're losing. That was the 45th over of the innings when he got Pope out. Shaheen continuing here this time. On the back foot, defends well. और तब की बात है और अब की बात है 220 for 5 हो गए. तो पता नहीं क्या हुआ इस पिच को, एकदम ही इसकी माँ मर गई है, पता नहीं क्या हुआ इसको, बिल्कुल ही डेड हो गया. But 220 for 5, Wokes on 57 or 73, Butler 54, not out of 65. Shaheen Shah, it's been a struggle for him. He's not been getting any movement or any reverse swing. पता नहीं reverse swing क्यों नहीं हुई पाकिस्तानियों की बॉल, पता नहीं, they didn't manage the ball. मैं अभी भी आपके जो है उस पे बिल्कुल कायम हूँ कि आप टेम्परिंग करें, 5 रन खाएं और continue down the leg side. Big appeal should be given. नहीं कहाँ से given. But thankfully चौका नहीं हुआ, just a couple of runs to define leg. 2-2-2 for 5. This is the double Nelson on the board for England. 55 runs more to win. This match is well and truly swayed towards England. It'll be a surprise, to be quite honest, if they lose it from here. The way Wokes and Butler are batting, Best भी है और Broad भी batting form में है, Jofra भी batting कर लेता है. So I think England should feel that they're in the box Do you right think now. Azhar's captaincy has been terrible? A lot of people on Twitter are saying it's been horrible. यार कैप्टनसी की क्या बात है जब वो आउट ही नहीं हो रहे, आपसे क्या किसको कह रहे हैं easily the worst captaincy performance since Yusuf since 09 in 09. यार it's just stupid things to say. यार आप उनको क्रेडिट दो, उन्होंने जो बैटिंग की है. देखो वो कहाँ से, वो हर बॉल तो वो मिडल कर रहा है वो बटलर ना, बॉल 1 सेंटी उधर हो रही है 1 सेंटी उधर हो रही है, बंदा क्या करे.
एक पप्पी इधर है एक पप्पी उधर वाला सीन चल रहा है फिलहाल. Waqas Ahmed on Twitter saying Azhar's put in a field that makes you think that England are 300 runs ahead in the game. Sydney 2010 यार level एक तो ये blunders. फिर आ जाते हैं जो फील्ड सेटिंग मर्चेंट्स जो आ जाते हैं जो तो तुम्हें उससे ज़्यादा पता है कौन सी बॉल जा रही है स्लिप में या उड़ के जा रही है. एंड नाउ विन विज ने अपनी सच्ची दिखा दी. देखो जिसने अपनी काली शक्ल दिखा दी है. इंग्लैंड 67% टू विन एंड पाकिस्तान a measly 32. Oh, look at that ball. 2-2-2 for 5 as England need 55 more runs. Shout out to Richie Beno. And Joe Root once again escaping from embarrassment, escaping from humiliation. यार इस बंदे की कितनी कोई किस्मत है. जब भी इस कोई टेंशन में होता है कोई तीसरा चौथा इसका टीममेट इसको आगे बचा लेता है. He's coasting in this team. But Pakistan are a bit flat, don't you think? यार वही मैंने बताया था ना थोड़ी इनएक्सपीरियंस्ड आउटफिट है. थोड़े यंग बॉलर्स है यंग बैट्समैन है तो थोड़ा सा वो प्रेशर ले जाते हैं. This is going to be one of England's greatest ever chases. It's going to be right. Might be 1 2 3 4 5 6 7 it'll be the 8th highest chase I guess. Oh, good defense there from Wokes. देखो वो बिल्कुल स्ट्रेट पे बॉल गिरी है. इट्स नॉट टर्निंग एट ऑल एंड इट्स अ डे 4 एंड ऑफ डे 4 पिच है तो किसको आप ब्लेम करोगे यार बैट्समैनों को. 222 for 5, 55 more needed here. Tossed up again, driven to mid on for no और run. ये तो ना कि हमने कैचेस छोड़े हैं या हमने एजेस पे अपील नहीं की या LBW शाउट्स बहुत इधर उधर हो गए. ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. इट्स जस्ट बीन प्योर बैटिंग. इट्स क्लास फ्रॉम बटलर एंड वोक्स. सो यू नो sometimes you just have to raise your hand and say कि भाई Tossed up from Yasser. edged यार. Beats the first slip and it goes down to third man for probably 4 runs. नहीं आबिद पहुंच दे दो जाएगा. फेंक दो बाउंड्री के ऊपर. वैसे और क्या होना है हमारे साथ आज. And 53 now needed. So let's maybe fast forward a bit assuming we lose this game. Musad, what are your plans for the second test at Southampton? क्या करना चाहिए हमें? It's going to start very soon on Thursday. Honestly, Khwaja, let me be very, very blatant with you about this. जी. That I cannot even think that far. I don't know because it's been a tremendous test match, and may I say it's been great covering this with you. But it's been if this result doesn't go Cricket in is our the favor, real winner. No, nobody cares about that. I won't be able Raise to, the bat series. I'm tempted. Hashtag Hashtag Pakistani lives matter. 224 for 5. all APM all Pakistanis matter. Tossed up this time, driven a bit on. But I'll tell you what, I'm not gonna be thinking about cricket tonight if we lose. तो किसके बारे में आप सोच रहे होंगे? I don't know. Maybe I'll have some coke. No JD, just some coke. अच्छा कोकेन या कोक. I don't know, man. Maybe I'll watch 2012 Champions League highlights. और यार अल्लाह माफ फिर वो तो इतना डब्बा मैच था वो कोई यार इतना उसके जबरदस्त highlights भी मैच था. कोई नहीं It's a देख सकता. story in itself. ख्वाजा अब ये इस तरह की बातें नहीं इस वक्त करो. Already यार इतना फजूल मैच था प्लीज. driven away to long off for the neutral, not for the Chelsea fan. ये लो एक तो तुम अपने ग्रेटेस्ट हिट्स साथ ही रीलोड कर लो बट तुम कमेंट्स पढ़ो यार. तुम अपना खुद डाउन होके बैठे क्या हो यार कमेंट्स में पढ़ो यार वो क्या कह रहे हैं लोग. थेरेपी बुक करवा रहे हैं अपनी. तो ठीक है ना यार गम का साथी गम ही होता है यार. Let the keeper bowl. Nothing is working. What are their opinions? What is the और fault? भी रात को वो भी मैच का मुजरिम कौन है कि जी अगर भाई पाकिस्तान मैच आ का जाता मुजरिम क्या है यार. सरखेल कह रहे हैं ब्रिंग बैक सरफराज और कैप्टनसी. क्या कैप्टनसी? उससे भी कुछ नहीं होता. ओ अब ये हालात आ गए. मैं सरफराज को बुरा कह रहा हूँ. नोफेल कह रहे हैं बट गुड फन ऑन दिस चैट एंड कमेंट्री दो. या चीयर्स मेट. यार वो फन तो अपनी जगह है ही है. इंशाल्लाह हम आपके साथ ही हैं पूरी सीरीज़. लेकिन आप ये बताएं कि पाकिस्तान का अब थिंक टैंक क्या सोचे. कोच मिसबा, कोच यूनस, कोच वकार, कोच मुशी अब क्या करें बॉयज़ को उठाने के लिए कि भाई कोई बात नहीं एक टेस्ट हार गए. This is a good comment. Mossad will be thinking about the Sergei Gnabry hat trick. गनाबरी वो कोई हैट्रिक थी. Unbelievable stuff. 225 for 5. Shaheen Shah Afridi coming round the wicket. Come on, Shaheen, give us something. Give us a beamer. Give us a bumper. Give us a Yorker. And no, it's a comfortable drive to cover for no run. यार अब देखो कैसे ठाठा शॉटें मारा है यार. It's just And sorry, I'm with a pretty. I think one thing we can say maybe कि शॉर्ट बॉल बाउंसर पे उसको ज़्यादा टेस्ट नहीं किया. वो शायद आप कह सकते यार हो उसके कि जिस्म पे मारो. उसके मतलब शरीर पे मारो उसके. शरीर पे मारो. And sorry, I'm saying emotions aside, Pakistan have also been very unlucky this match. So many edges falling in gaps, plays and misses. But यार लेकिन आपके that's test match cricket. 156 वाले बैट्समैन को 3 चांस मिले हैं तो ये तो नहीं कह सकते आप ऐसे बात कर. इट ऑल लेवल्स आउट इन द एंड. प्लस आपके पास DRS है तो आप ये तो नहीं कह सकते Mohammed रिव्यू नहीं ले सकते थे. He's continuing here, cut away well. There's no point. It's he's in deep and it might go all the way for 4. Good fielding. Good fielding there. Shan Masood is the man. Doesn't really let too many go. 2 runs taken.
And now England just need 50 more runs to win this test match. अब वो भी थोड़ा सा प्रेशर लेंगे यार. क्या प्रेशर लेंगे भाई उनके पास? अब लेंगे ना यार. वो भी अब अपने माइंड में कह रहे हैं कि we're so close, we don't want to stuff this up. And Mohamed Abdullah Shahid is saying at least now Musad doesn't have to worry about that Arsenal title. Yeah, fair enough. यार They look at getting Lord Fahim to be back next match. यार मुझे क्यों लग रहा है कि वाकई यही होने वाला है कि जी बॉलर थक गए तो हम एक और बॉलर डाल रहे हैं. Adil is saying Shane Warne and Ian Ward on the commentary. They never get us a wicket. क्या? Shane Warne and Ian Ward क्या कह रहे हैं? on the commentary. And they're saying because they're on, we won't get a wicket. Assad is saying when you need a hero, you need Mohammad Amir. तो यार तो उसने खुद टेस्ट मैच क्रिकेट खेलनी बंद किया. हम क्या करें उसको बांध के खिलाएं. Mr. also saying वो यार यहाँ बहुत चेल्सी वाले हैं. Chief Doozy, where are ya? Pressure स्टोक्स के तो आंखों में आंसू आ गए इनिंग्स देख के. इतनी खुशी वाले रिएक्शन. Zainab is saying okay, I'm already deciding which sad songs to listen to. हाँ आज दिल दुखा है by Atif Aslam. Oh wow, that's a great track. यार Great track. हाँ अपने रिकमेंडेशंस दे दें कि भाई ऑन द यार एक तो टॉप हमारा ट्रैक है दिल जलाने की बात by Ali Sethi. The cover of Farida Ali Khanum's Sethi, yeah, 227 for 5. Beautiful drive, good fielding from Yasser. Get a run out chance. यार No man, it ricocheted off of his body and come for a single. Oh man. प्लीज़ अपने हमें टैग्स दें कि भाई कौन से गाने हमें सुनने चाहिए या आप सुनना चाहेंगे तो स्लाइटली अपलिफ्ट द मूड और फर्दर गो इनटू द डार्कनेस ऑफ डिप्रेशन. आसिया तो शुरू से इतनी डिप्रेस है मतलब इनको तो मैं क्या बताऊं. Maybe you should watch the 2017 Champions Trophy highlights or something. अब साज की ट्वीट होगी ब्रिंगिंग आउट द डीवीडी ऑफ 1992. मैं आपको गारंटी देता हूं कि कितने साल हो गए उसको एक ही चुस मार रहा है यार बार 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 बार. 49 needed Shaheen a pretty good Yorker, good intent. Come on Shaheen, keep that tail up buddy. बल्कि मैं अपने वो ट्वीट निकाल दूं जब मैंने वो स्क्रीनशॉट लिया था ट्विटर सर्च पे उसकी कोई 1500 ट्वीट थी एक ही बोंगी बार बार मारने की. यार हद हो गई है. Khwaja, we need Usman Khwaja, not you in the commentary box. Wow. Usman Khwaja. Uzi. वो तो बेचारा आजकल खुद सिलेक्ट नहीं होता है. 68 over ball is not even reversing. And sorry, I'm carrying. यार वही मैं सोच रहा हूँ कि इज इट द पिच और हैवंट वी टेकन केयर ऑफ द बॉल. उस बॉल के बारे में कंप्लेन ही कर देते, शिकायत ही कर देते. बॉल पे ही पैर रख के कह दो जी शेप खराब हो गया उसका. But 49 runs needed, 228 for 5. Vokes on 63, Butler on 56. Vokes has actually gone past him, unbelievable. Oh, good defense from Butler, but he's really not done anything wrong with this यार innings. एक तो ये डिफेंस वालों ने जीना हराम किया हुआ है, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे इधर हो. Whoa! Deep cuts from AZ Khwaja. Where's the Vigo? दुबई तक पहुंच जाएगी Vigo. प्लीज ध्यान से बात करें. 228 for 5, 49 needed. 111 पार्टनरशिप यार, unbelievable. As Zainab Izhar saying, मेरा लाहौर कलंदर्स वाला कमेंट इग्नोर कर दिया गया ख्वाजा साहब ने. नहीं पढ़े ना यार, अब स्क्रॉल अप करें. मैं एक्चुअली What was मुसाद अफजल हमारे ये सब लाहौर कलंदर्स फैंस की नहुसत है यार. मेरी क्या इसमें गलती है यार, हद हो गया. tough one to digest. आपके कराची किंग ने एमी 5 पे आउट हो गया, फिर उसने क्यों नहीं स्कोर किए. Oh man. बटलर वो आउट डिलेड वाकई. I'll be down the leg side. नहीं अब मैं आपको गारंटी देता हूँ, लिख के देता हूँ, जो भी होगा ना इस मैच में आपने रात को ना जाके YouTube पे पीटीवी स्पोर्ट्स का पोस्ट मैच एनालिसिस आपने सर्च करना है कि शोएब अख्तर जो भी आप सर्च लाएंगे और कहेंगे मुझे तो पता है ये होना है, यही पता था यही होना है, ये लड़के ऐसे ही हैं, दिलेरी कोई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. Drop short of second slip. Yasir Shah produces the chance and it just falls short. यार man at second slip. उसके पैर पे नहीं लगा. LBW भी चेक कर सकते हो. सब चेक करो यार. यार hit his gloves and didn't carry यार. फिर बाबर पीछे खड़ा हुआ है यार. Oh, close. Finest of margins, as Ian Smith By would the say. barest of margins. As Ian Smith would say, my goodness, yaar. Cut away. Appeal. नहीं No, लगा ही nothing. नहीं. No, guys. वैसे सोचो अगर स्मिथी, क्या नाम है उसका, फुल नेम क्या है उसका, Ian Smith. इयन स्मिथ, अगर पंजाबी होता तो फिर असल दिल के अगर अल्फाज बोलता तो क्या तो तेरी I can't imagine. Mr. Also saying sad result incoming. Musan play the legend Amr Zaki. ओ यार वाकई रेस्ट इन पीस लेजेंड. Oh, यार quick single taken. Man, what is mid wicket doing? Come on, get there quicker, captain. यार मिड विकेट से वो क्या उड़ के जाएगा, वो कैप्टन प्लेनेट है, वो उधर उड़ के जाएगा. By your powers combined. डॉक्टर नवान ने आज का पोस्ट मैच रिव्यू लेवल का होगा. वो निकाल देगा जी, बैकडोर से आया था मेरी बैकडोर. अब छोड़ो यार.
यार ध्यान से, अब हमारी आपको पता है काफ़ी diverse audience है. हाँ exactly. Zainab Razvi Singh also going to Google tragic Faiz Ahmed Faiz poetry. यार वाकई यार ये तो बहुत डीप डाइव हो जाएगा और वाकई दिल बैठ जाएगा कि अगले मैच के लिए उठेगा ही नहीं. बट हौसले बुलंद रखो यार, कोई बात नहीं. फाइट दिया, इट्स जस्ट देयर एक्सेलेंस. आई डोंट ब्लेम एनी ऑफ आवर bowlers. I don't blame the captain. I just blame these bloody Engrays for taking the game away from us. And Assad is very upset at the smiles on the pitch, the smiles between the Pakistani players. It's annoying that. अब वो क्या उधर बैठ के चूड़ियाँ तोड़ के बैठ जाएं उधर, वो क्या करें वो यार. इट्स जस्ट अ गेम. मसला ये है कि हम भी जो एशियन फैंस है क्रिकेट के, वी टेक क्रिकेट एज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ. हम बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेते हैं. वी डोंट जस्ट टेक इट एज अ गेम, एज अ स्पोर्ट. आप देखो ऑजीज हों या कीवीज हों. ख्वाजा आपने तो जेडी और कोक टका देनी आज रात को. अच्छा ठीक तो है. हम बेचारे जो सोबर लोग हैं वो क्या करेंगे? हमारे लिए तो यही हमारा नशा है. यार आप बैठ के उधर वो मार्कर नहीं होते, हाईलाइट मार्कर, उनको सूंघना शुरू कर दे, ये हो सकता है. 230 for 5. सस्ता नशा वही है मेरे पास आपके Let me लिए. tell you something, Khwaja, though. जी जी जी. And if we win, you can clip this. हाँ जी 47 for 5 is still possible. 100% यार. Yeah, अभी तो एक हमारा कैच छूटा है, क्या हो गया. 230 for 5. But 2 for 83, Yasir Shah in the 4th innings on day 4 of a test match. You'd expect him to do much more than that, yaar. This pitch's character has totally changed. Very strange. हमने यार देखा था डे 2 पे इतनी बॉल ब्रेक हो रही है, लेकिन आज तो बिल्कुल ही मर गया भाई pitch. आपको याद होगा टी से पहले डॉम बेस्ट के ओवर में बॉल ऐसे ब्रेक हो रही थी जिस तरह पता नहीं कौन सा समझ से बाहर है यार कि ये इस पिच को हुआ क्या है. मुझे तो लगता है कोई थर्ड पार्टी ने आके इधर आके कुछ काम खराब किया. Danny Loves Socks, Misdirection Overflow on Twitter says, I hate clean the kitchen while listening to Change of Pace. Yeah. What? I hate cleaned. Do you know what hate cleaning is? अच्छा अच्छा hate When you're cleaning, upset हाँ. and you clean. यार बस यार कोई बात नहीं. 230 for 5. England Vokes on 64 of 88. Alright, tell us about Butler some of the 57 not out. छोड़ दो यार मैच में क्या रखा है. नहीं नहीं यार क्रिकेट ऐसे में मत. क्या रखा है? अभी क्रिकेट इजाद 47 रन बहुत रन होते हैं. क्रिकेट इजाद है काफिर दी. 230 for 5. Driven well. Cover. Stop by the skipper. Finally कुछ अच्छा भी किया इसने. और it was Bobby of course. Yes, Bobby जमीन पे भी मल दे Bobby थोड़ी. की थाई जमीन पे देख मल लो दे यार. बॉबी. ओए होए. थोड़ी जो स्पाइक्स लगा दे इस पे. ओह गलती से मेरा पैर लग गया. 47 runs required. और जो हमारी लक के एज निकला अगर मैच के एज पे कैच छोड़ दे. Time since last boundaries. छोटी-छोटी खुशियां. 46 CCK. balls. Yeah. Hashtag CCK. छोटी-छोटी खुशियां. 47 needed. Well left from Just a solitary slip in place for Butler. यार ये तो बिल्कुल ही दुश्मन देशद्रोही वाला काम हो गया यार Ghost of हमारे साथ. Kagawa says AZ is already dead inside. वाकई यार. After Oh that. my god. no ball. No यार ball. क्या बात है शहीन. That's some Lahore Qalandars antics. अच्छा अब सब लाहौरी हो गए हैं. अब कराची किंग हो गए और क्वेटा ग्लैडिएटर हो गए. अब पाकिस्तानी नहीं हो गए सारे. बिखर जा तुम साथ ही. वो कहते हैं ना यार अब्दुल्ला अमीन आपको दाद दे रहे हैं कि इतने हारते वक्त भी वो आप कहते हैं ना इतने सक्सेस हैज मेनी lively- फादर्स, फेलियर इज एन ऑर्फन. बम्बल बम्बल तो ऐसे. Shadab getting 8 overs in total. What does that tell us? Misbah is favoring Islamabad. Conspiracy theorist यार Naveed उसने Fakhr. बॉलिंग ही नहीं अच्छी कराई वरना उससे उम्मीद रख सकते Yeah. थे. He wasn't up to the scratch. Mohammad Abdullah is saying give Shan Azhar and Shafiq bowling. ये क्या बात है यार, ये अलग ट्रियो है हमारा. शान को ही दे दो शायद गोल्डन आर्म. He was actually bowling in the inter squad games. Yeah. He even took a wicket I believe. तो Can anyone post that Star Plus curtain से गला दबाने वाली meme? Don't know what that is. कौन सा वाला? हाँ, वो एक भी एक वो वाली भी है जो वो मासी लैपटॉप धो रही होती है. यार अब ये देखें, क्लाइव कह रहे हैं अगर मिसबा वाज एक्चुअली फेवरिंग इस्लामाबाद, फहीम वुड बी ओपनिंग द बॉलिंग. देखिए फेवर जो है ना इतने ओपनली नहीं हो सकता. ओपनली थोड़ी होते हैं, सटल होते हैं. इतनी बगैरती नहीं होती कि ये बीसीसीआई नहीं है जो ऐसे कर लेती है. शहीन अफरीदी आप बैठे हैं, फहीम अशरफ इज आवर ओपनिंग बॉलर नाउ. Oh, and Yunus Khan looks like he's come back from a tough session. नवीद कह रहे हैं यूनुस खान used to be a decent seamer. हाँ, he was, he did. Yeah. सही कह रहा है. Shaheen continuing here, good defense. I remember him bowling for a while as captain in अच्छा Sri रन्स Lanka. कम नहीं हो रहे अभी, रन्स अटक गए हैं. मैं कह रहा हूँ 10 रन तक चांस है पाकिस्तान में बस. यार 10 रन तक तो मुश्किल ही है. आई थिंक 30 के अंडर 30 हो जाए फिर तो आप यू कैन गिव अप द गेम. फिर तो आप डेविड लॉयड को गोली सब मार जो दो. है वो याया हुसैनी के मनहूस कमेंट की वजह से. यार वो तो ऑफ कोर्स अंडरस्टूड है. ये जो जियो माफिया ने बकवास की थी कि जी सरफराज को आप पानी पिला रहे हो, ये वो अजीब घटिया बातें उन्होंने जो की थी. And Clive is asking if Azhar Ali picked a hat trick for Somerset. Yeah, he did.
I think it was 2 years. यार वो काउंटी बैट्समैन क्या ही लेग स्पिन खेलते हैं. Good Yorker, man, from Shaheen Afridi. Honestly, Shaheen is still putting his all into this. यार एक आ जाए 95 माइल पर आवर कहीं से आ जाए. अब यही बात है कि without being able to properly shine the ball, there has been no reverse swing on display in this test. I don't understand why we couldn't get any shape, any movement on the ball. और जो इंग्लैंड की हुई थी, then we can safely say कि उन्होंने कोई हरामजादगी की थी कि उसको बॉल इतना रिवर्स हो रहा था उस वक्त. इसमें कोई शक नहीं. I think we can say that right out there. Plain and simple. Umair is throwing in the towel for the entire series here. यार ऐसे तो ना हो यार. कुछ भी हो सकता है. He's saying नहीं आना था ये game, could have won the series from here. Really heartbroken. ये बात भी सही है, but it's gonna be tough to win the series, but we can still tie it यार. तब भी बहुत बड़ी achievement होगी. But it's still not over. They're still fighting. Gopi Mia Gawal the saying very rain Pereira needed. इतनी लंबी बारिश करवाएंगे सही. अब कल का पूरा दिन बाकी है अभी. वाकई यार 46. I say you take it to the end of the day. Send somebody in because they're living right in this hotel. हाँ. Send somebody in the middle of the night to dig up the pitch. अच्छा पे. Go Shiv Sena on them. इससे बेहतर नहीं कि आप जाके किसी को जाके वो गला घोट दे. That's much easier. इसका तो ये तो violent हो गया ना. Clipped off the pads of Wokes. He'll pick up another 2 runs quite comfortably. Joss Butler, apologies, was the batsman. They'll move on to 59. And England will just need 44 more to win this quite comfortably. They're doing it at a canter now. I don't think it's really bothering them. नहीं आपने खुद बताया था ना boundary hasn't been hit for the last like. वो तो मैं अपनी वही कह रहा हूँ ना CC करने के लिए छोटी-छोटी खुशियाँ करने के लिए कर रहा था. Nice little abbreviation. क्या what? Abbreviation. Abbreviations. 233 for 5. England need 44 more to win. It was a mammoth run chase, the second highest on this ground. Chris Wokes, what a performance from him. He's taken wickets in both innings and now he's showed up with the bat big time. He just loves performing against Pakistan. I'd just love to know his stats after this test. He must have at least 70 wickets against us, plus the runs he keeps making. Runs. Truly, he's been a man of the match in this test. But Yasir Shah on to bowl once again with 2 slips. भाई निकाल ले यार एक बोल्डी मार दे कुछ मार दे. 233 for 5. Yasir Shah 2 for 83. He's bowled 25 overs. Had a long slog, but going at 3+ runs per over, didn't really exert pressure. Runs kabhi roke nahi usne, and just couldn't get the wickets as we needed. Driving well into the offside for a quick single. और वो भी देखा जाए तो सिबली ने एक बहुत ही ख़राब शॉट खेली थी तो चलो आउट हो गया था. एंड प्लस आउट ऑफ द रफ दैट बॉल जस्ट जंप्ड आउट ऑफ नोवेयर. और ये फिर लैंकशायर के आगे इन्होंने कुछ किया होगा रात को. हाँ मुझे लग रहा है इन्होंने कोई फ़नी बिजनेस डेफिनेटली किया था. इन्होंने जाके ओह देयर इज़ दैट ब्लोक जो लगा हुआ है. वेयर इज़ द सैक्सोफोन गाय. ये बेचारा तो तब से कर रहा है. ये पाकिस्तानी तो किसी भी एंगल से नहीं लगता लेकिन ही माइट बी फ्रॉम मे बी. Keep playing the drums, the war drums for Pakistan's defeat. यार ऐसे तो ना. 234 for 5. Maybe 30-43 रन्स बहुत होते हैं यार. यार. बस कर दो यार किस तरह की बातें कर रहे हो. Give it, come on, you gotta give it. You gotta give it. Put the finger up, you piece of shit. तो ले लो ना रिव्यू अगर लगा है. You've got to take it as a rally with the TT money. Come on boys. यार ख्वाजा ये आउट हो गया तो चांस है ना. मैं तो कब से कह रहा हूँ चांस है यार. Open up the floodgates. Butler knows. मैं इसकी शक्ल में बता रहा हूँ ये झूठा मक्कार इंसान जो है. I'm telling you this is a wicket. This is an OU with a side of tea. I don't think it is. Come on, but please let's give us see. a snicko. Dear Lord Jesus, give us a snicko. Give it to us, please. Sweet baby Jesus. Sweet baby Jesus. Please, whatever you want. मैं कहता हूँ आर्सेनल को दे दो प्रीमियरशिप. मैं कहता हूँ स्पर्स को दे दो एक चैंपियंस लीग. मैं कहता हूँ यार नहीं 2012 वाली. नहीं यार. No edge. No edge. There's nothing. लानत है. यार what a disaster. What heartbreak for Pakistan. यार कैसे ये अल्ट्रा एज की उन्होंने तार ही खींच दी है यार. वो देखो कोई वेव नहीं आ रही. That's true by the way. That's true. उन्होंने डीप प्लग कर दिया. मोहाली हो गया ये फिर से. There's not enough space for like no vibrations. क्या कोई सांस भी नहीं ले रहा. किसी ने पाद भी नहीं मारी हुआ. क्या हुआ. क्यों कोई वाइब्रेशन नहीं आई. कोई वेव नहीं आई. What is going on? I think ये Pandora's box खुल गया है भाई. They might have just unplugged the DRS. Let's not do that. God. But good convincing, good acting from Rizwan. Oh come on, man! I didn't hit it. You piece of shit. Whoa. Oh, catch it! मुंह पे मार इसके बीमर. 234 for 5. Go full up the Romano. वो जो उसने मारे थे. Only one review remaining for Pakistan. Desperate appeal. But Ultra 8 said, "Now, mate, it ain't happening tonight." So Pakistan once again staring
at a certain defeat unless miracles happen. But this is Pakistan. Why is We he do saying make cheating miracles हो रही है? happen. Here we go once again, Yasir Shah. Oh Lovely yeah, get some ball. break in there. You see here, But no, not enough. You see, Not enough. अब हम पाकिस्तान से आदि पाकिस्तान हो गए हैं. Your Naveed is saying captaincy has been poor. Whatever you say. यार व्हाट डज दैट इवन मीन? आप हमें क्लीशे स्टेटमेंट्स नहीं देना, आप एक्सप्लेन भी करें, कुछ भी कह दो. जैसे शोएब अख्तर, यही होना था, मुझे पता था, यही होना था. Tossed up from Yasser. Reverse sweep. No, there's nobody at point. अब फील्ड प्ले से क्या हुआ? एक्स्ट्रा कवर ड्राइव मारा, आप डीप एक्स्ट्रा कवर तो नहीं रखते ना आप. 9 स्लिपों के साथ हाँ, 9 स्लिप पे होनी चाहिए थे और 15 शॉर्ट लेग होने चाहिए थे. वो बहुत से स्ट्रेट के चौके मारते रहो यार, कप्तानी खराब है This ना. is बॉल actually, स्विंग हो I'm रही है. sorry saying this is actually a really good spell of bowling in the last 20 minutes. हाँ, थोड़ा हमने स्कोर तो रोक लिया है क्योंकि आई थिंक वो भी थोड़ा सेटल डाउन हो गए. Adil Momin is Because they've asking done for the bulk of the saliva. scoring. यार उन्होंने भी लगाया था saliva. वेस्ट इंडीज के खिलाफ कह रहे थे it's mouth sweat. यार ऐसा कुछ हम ही कर लें, कुछ और लगा दो. Spurs winning. Yeah, fair enough. Talha, I agree. 9 स्लिपात होते अभी. वैसे आप चेल्सी और बायर्न का मैच देखेंगे आज रात? और ये लानत है. अगर ये हम जीत गए ना तो मैं देख लूंगा थोड़ा. वरना I can't deal with more shit today. Look at that big googs that really kicked, wow, off a length. But गर्दन पे लगता ना तो नॉकआउट होता थोड़ा ये. Get violent on these. मजे की बात है, both of these batsmen might not even reach 100. तो वो बस ऐसे ही एक 50 होगी रैंडम जो किसी को याद नहीं रहेगी. मुझे याद रहेगी जिंदगी में. हमें तो याद रहेगी, हम तो कभी भी कोई हार ना जीत भूलते हैं. Shadab Khan only 4 overs. Clive is saying Pakistan couldn't have done anything different on the field. This is just a very good partnership. Exactly, spot on. अब क्लाइव की बात है, हमें agree करनी पड़ी, but he is absolutely spot on. सही कह रहा है क्लाइव यार. Clive की बात भी टॉस की तरह होती है 50-50%. 236 for 5. लेकिन शदाब, does he play the next test? That is my question for you, point blank. मैं तो कहता हूँ इतने लोगों को कटाओ. Are you honestly willing to drop Asad Shafiq for Fawad Alam? सच बोलें. No. यानी आप झूठ बोल रहे थे तब से कि उसको मैंने कभी नहीं कहा ड्रॉप करो. मैंने कहा यार कितना बड़ा झूठा है. नहीं सुनो, मैंने कहा the conversation should start. Conversation should start का क्या मतलब है? या तो हाँ या तो ना. Sir, discourse is the prime example. जहन्नुम में जाए discourse, तुम क्लियर जवाब दो. Discourse is I am asking you a yes or no question. Do you want to drop Asad Shafiq for Fawad Alam? Sound the alarm. No. Okay, no. तो फवाद नहीं खेल रहा है सीरीज पे. No, शदाब को ड्रॉप करो. शदाब को क्यों ड्रॉप करूं? उसने रन्स किए हैं, उसने विकेटें लिए हैं, उसने कैचात भी लिए हैं. He did everything. यार उसने 46 किए, उसने कोई 400 रन नहीं करके तो किया. उसने तुम्हारे कैप्टन से तो ज्यादा किए, असद शफीक से तो ज्यादा किए. तो आपको किसको ड्रॉप करना है? असद को भी ड्रॉप करना है, असद को भी ड्रॉप करना मैं है. इसलिए आपसे पूछ रहा हूं खेलेगा क्या, कौन? इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या चेंजेस करनी है आपने. मसला ख्वाजा बताऊं क्या है? क्या है? It's a rock and a hard place. नो इट्स नॉट यार. बहुत है. आप तो कोई जाती दुश्मनी तो किसी से नहीं है. हाँ. शदाब वैसे ही आपकी वैसे थोड़ी बहुत तो है. ठीक है. I love Shadab. He's such a great cricketer. मतलब बड़ा फिट बंदा है. But the point is, फिट बंदा है. ओके ठीक है. the point that I'm trying to say, हाँ. इसके अगर शदाब नहीं खेलता ना, हाँ. और फहीम भी नहीं खेलता, अल्लाह खैर करे. फहीम तो यार स्क्वाड में ही Oh, नहीं. give it out, give it out. OUT, come on. यार ये आउट नहीं होते, उसको आउटसाइड द लाइन भी अब लगा. ये रिव्यू नहीं करना, ये रिव्यू नहीं करना. अब क्यों नहीं करें? अब और क्या रह गया? एक ही रिव्यू रहता है यार, वो बचा के रखो. पाकिस्तान I'm telling you, Khwaja, in the past 5 or 6 overs, the chances are coming. थोड़े बहुत ही आ रहे हैं यार, इतने खास नहीं है. ओ ले गया यार. ठीक है, अब अगर वो नहीं लेता लोग कहते हैं आपने क्यों नहीं लिया. मे बी इट्स अंपायर्स कॉल, मे बी इट्स बैट. 236 for 5. असद तुम बोल सकते हो, वी कैन हियर यू, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. अच्छा 236 for 5. ये तब से नहीं खा लगा हुआ है, तुम्हारा जूनियर हंस रहा है तब से बैठ के. एंड हियर वी गो. इज इट यार, ही स्मैश्ड इट ऑन टू हिज बैट यार. Oh no, wait, is it bad first? Yuvraj Singh 2017. अब एज निकला है. अब तो ऐसे अल्ट्रा एज निकल रहे हैं, क्या बात है. नहीं है. So it is pad first. Here we go. Is Shady in the business? यार देखो कितनी बाहर खड़ा है वो. It's gonna be umpire's call. No, but it's impact in line, I think. I think it's impact in line. यार मिसिंग यार. Yeah, but the review lost. Why? मिसिंग है. उसने आउट ही दिया था. I mean नॉट आउट दिया था. Yeah, but one of them is umpire's call. But it's not hitting the wicket either ना. अगर वो भी umpire's call होती फिर बच जाते. अब ये कोई नहीं, अब देखना ये तो कोई भी आउट नहीं देंगे. ये हिट विकेट भी आउट नहीं देंगे अब. ये क्लीन बोल्ड भी आउट नहीं देंगे. कहेंगे नो बॉल था, ऊपर से आवाज आई है. But 236 for 5. Pakistan have lost all their reviews. Shadab on to bowl. Hard drive down the ground but mid on in place.
41 more needed. England have all 3 reviews. तो ये भी एक हैंड हो जाएगा हमारे साथ कि भाई उन्होंने रिव्यू ले लिया. ओवरटर्न हो सकते हैं. शदाब in his fifth over gone for 19 runs, not been that effective. Oh, come on, Pat first. No. 236 for 5, 41 needed. Well, I mean, maybe we should take a moment out for thanking all of you to sticking by us with this test match. You know, it's been a Absolutely, great yeah. game of cricket at the end of the day. Change of Pace Live, your home of Pakistan cricket commentary, and hope you can join us whenever we're on next. 236 for 5, 41 now needed for England, just 41. 119 this partnership of 170 deliveries. अभी भी यार लोग कैप्टनसी को क्रिटिसाइज करे. I honestly don't see why. Naveed is also saying that. He's saying he's being proactive, bringing the fielders long off and long on in, but it's a few minutes too late. Obi-Wan Kenobi saying great work guys. Yeah, cheers guys. It really has been a pleasure covering this game. Like day one se leke Shan ki century and blitz of wickets, and yesterday it really has been a pleasure covering the test cricket with you. Ooh. 236 for 5. Yasir Shah continuing here. Second new ball available in 6 overs, and weirdly enough it might actually be in play. देखो अगर आप 6 ओवर में 1 रन देते हैं तो फिर आपका चांस है. बॉबी प्रिंस कह रहे हैं मारो मुझे. Swept away down to third man for a single. Quite comfortable that. See if anybody's on the YouTubes. YouTube. 40 runs now required. .237 for 5. Where do Pakistan go from here? What is going to happen in the next test matches? Asad Khan saying fantastic work guys, great commentary, cheers guys. Bhai agle match mein aana hai Fawad ne. I hope so, but I don't know for who, either Asad or Shadab. But the problem is Asad's actually not batted too badly, and neither has Shadab, so where does he really fit? Cut away. This is beautiful batting from Wong. Such confidence. This is Khwaja, you have to really put this in context considering all the senior members of this English batting side faltered against this same bowling attack, but these two gentlemen really pulled it out of their asses. 239 for 5, 38 needed. Some profanities will come through. Obviously, I'm quite frustrated with his performance or lack thereof it. Yasser 2 for 88, another poor outing for him. And driven well from Chris Wokes. There's a Do man we at play cover for Yasir? Singer. चलो अब तो उसने 6 विकेट ली, अब तो उसको खिलाना ही पड़ेगा. But और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना आपके पास, मतलब और कोई स्पिनर ही नहीं है. I think honestly they might think about bringing in Fawad Alam as a 6th batsman. कि भाई हमारे थोड़ा सा शेकी है मिडल ऑर्डर. रिजवान और असद पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि भाई हम फवाद को खिला रहे हैं. जो हमने बल्क ऑफ द बॉलिंग हमने ऑफ कोर्स उससे ही कराई है. Yasser continue this time upish to the leg side for a single. Naveed also recommending Kashif Bhatti, or at least asking about him. यार काशिफ भट्टी wrist finger spinner on these pitches, I think it's going to be a tough task. अगर यासिर शाह एज अ रिस्ट स्पिनर उसको ब्रेक नहीं मिल रही, शदाब को भी इतनी खास कोई टर्न नहीं मिली, but expecting Kashif Bhatti to do a miracle, I don't think that's quite viable, to be quite honest. Me saying wait for Karachi media to go crazy when you drop Asad for Fawad. यार you know what, there's no such thing as ये काफ़ी जो है ना यार ये मत कहो यार. नॉन कराची मीडिया वाले भी काफ़ी बकवास कर रहे हैं. Such as माजिद भट्टी किधर के हैं यार? he's based in, I don't care where he's based in, he's not from there. ख्वाजा ये तो अजीब बात है, मतलब अब तुम्हें किसने कहा है कि वो कराची का नहीं है? यार it's so obvious that he's What do you not. mean it's so obvious? Anyways, अब उसका 241 विकी for निकालो 5. जरा उसका जल्दी से. पता लगे born in भैंस कॉलोनी or some other place. गोली मार, ऐसे तो आपकी जगहों के नाम है गोली मार और भैंस कॉलोनी. ये कौन सा शहर है ये? यार ये रोशनियों का शहर है, आपको पता ही नहीं है. If you haven't experienced it, catch! Somebody catch it! Somebody come around to it! No, it falls short again. सारी लक भी इन मनहूसों के पास गई आज वैसे. यार टॉप एज, ही डिड नॉट टाइम दैट. आबिद अली तुम किधर गए हुए थे? चिलगोजे खाने गए हुए थे यार, थोड़ा करीब खड़े हो यार. I've heard that chilgose are getting real expensive these days. It's always expensive. और लेकिन गर्मियों में नहीं खाने चाहिए, नक्सीरें आ जाती हैं लोगों की. Okay. Oh, bloody hell, man. You know who Shane Warne's supporting. Shaney. We will always hate the Angrez as an Aussie. Hate the Palms. 242 for 5, 35 needed here. Chris Wokes, Butler. अच्छा अभी भी मतलब कुछ थोड़ी परेशानी होती है कुछ, मतलब अगर आप तो सोचें अगर ये दो पाकिस्तानी बैट्समैन होते, हम ऐसी पार्टनरशिप कभी खेल ही नहीं सकते.
what a defensive. सवाल ही नहीं पैदा होता. मैं आपको यही कह रहा था जब उन्होंने वो सेशन अपनी तरफ कर लिया था. Do you think there's a lot less on the line for English cricketers? That's why. नहीं यार, वो टेम्परामेंट की बात है कि वो जो टीम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात है. We are not this kind of. Just Driven. like they can never win a game out of nowhere with a reverse swing spell. Just like वैसे Pakistani can never bat chase under pressure. हमसे होता ही नहीं. It's not in our cricketing DNA to do that. 34 now needed. England 243 for 5. Remarkable chase. Like just like Aussies, they never lose a damn run chase. वो हमेशा ही पूरा करते हैं. अच्छा वो 436 भूल गए आप. यार वो तो चलो हो ही जाता है, कोई बात नहीं. Leading edge, Shadab falling short to it. Rizwan yells catch it, but it's not gonna work. It's nothing has worked for Pakistan today after that first 5 wickets that they took. कितने खुश थे यार हम. बस यार वो लम्हे याद रखो बस. Inside edge onto the pads and no run there. Shadab, honestly, I don't know Shadab. It's such a decisive topic because he got that 46, changed the pace of that innings. But is he good enough as a fifth bowler? और दूसरी बात ये होती है ख्वाजा कि I really believe in bowling in test cricket क्योंकि 20 विकेटें चाहिए आपको. अब वही प्रॉब्लम आ रहा है ना कि हमसे फोर्थ इनिंग्स में क्यों नहीं है हमसे ये आउट हुए. हम ये तो नहीं कह सकते भी 380 हम टारगेट देते तो कर लेते. 5 तो हमने 117 पे आउट कर लिए थे. इस हिसाब से तो 380 भी कर लेंगे. Exactly. कोई चांस नहीं दे रहे वो. बल्कि वो कोसे होंगे कि यार हम स्कोर इतना नहीं है What कि a हम 100 picture कर this लें. is on your screens right now. Azhar Ali and Asad Shafiq in conversation. The two failed veterans of Pakistan cricket. As Pakistan's percentage here now just 14%. अब विनविज ने अपने असल चेहरा दिखाया अपना. यासिर भी 2 for 90 यार. वेरी पुअर एफर्ट टू बी क्वाइट ऑनेस्ट. 34 needed. कोई यार यासिर शाह पे कोई सवाल उठ सकते हैं या नहीं? अभी खेलना ही पड़ेगा इसको. यार सवाल उस पे उठते हैं जिसके कोई जवाब हो. 243. ये कैसा जवाब दिया आपने? यार आप बताएं. आपने पंडोर आपने रिवर्स स्वीप मार दी मुझ पे. रिवर्सल मार दिया मुझ पे. Oh, good delivery. Okay, you want to question Yasser? Fine. The answer to that question is no, he's not good enough. Who you gonna bring in? Bring in a batsman. तुमने 9 बैट्समैन खिलाने हैं, 2 बॉलर खिलाने हैं. बैटिंग तो नहीं हुई ना. ये तो हैंड हुआ हमारे साथ. वो तो शान मसूद एक मिरेकल इनिंग खेल I'm गया. telling you again and again, you need 20 wickets to win a test match. ये बात भी सही है. Once again fishing at one, breaking across the face of his bat but not edging it. 243 for 5. England just need 34 to win. अब जाके कुछ हरकतें हो रही हैं पिच से. पहले हो जाती घंटे 1.5-2 घंटे 3 घंटे पहले हो जाती तो क्या ही बात थी. 12 पे 3 थे तो 34 for 5 भी हो सकता है. यार मैं तो अभी भी कह रहा हूँ हो सकता है, लेकिन करे तो सही. Tossed up, driven. यार ओके कवर ड्राइव देखो कैसे मार रहा है. Should be a couple runs. No, just a single. नहीं, Let's just a see. single. मतलब I cannot fault any of the bowlers. They gave their 100% but they just haven't had the. Man of the match is going to be Chris Wokes, of course. I Bobby think इसमें Prince. तो कोई शक नहीं है यार. अनबिलीवेबल. बल्कि जॉस बटलर का भी शाउट आउट हो सके क्योंकि उसने कुछ कैचेस भी लिए. Honestly, Clive has a good point here about Zafar Gohar. He needs to be brought into the conversation because he had a good Qaid-e-Azam trophy. No, he had a good Qaid-e-Azam trophy. Not just because he plays for Islamabad and Clive has a clear bias. यार लेकिन वही आप कह रहे हो कि यार you know a finger spinner is gonna do more than a wrist spinner. That logic doesn't work overseas. अब इंग्लैंड में कौन सा स्पिनर ला रहे हो जो आके उनको उड़ा देगा? That's not the way you should be winning. Oh come on, reverse sweep straight to the man at cover, no Good run. fielding Azhar. वो इतने दलेरी से ऐसी शॉटें खेल रहा है, मतलब रिवर्स स्वीप मारा है fearlessly. तो यार फिर बंदा क्या बोले? That's just a flat wicket. बिल्कुल ही जूस निकल गया उसमें से. यासिर शाह का भी जूस निकल गया. Oh, good bowling from Yasser. Can we just call it a day and say that this test match is going to be lost because of bad luck? I wouldn't say bad luck. I'd say great skill on the part of the Angrez. Because they were not in the game until these two came. You know, वो जो रूट ने जो भी खेला, सिबली ने जो भी खेला, they had all wasted that effort by throwing their wickets away. इन दोनों ने लंबा खेला है, faced a lot of deliveries, and they've made rapid runs. I believe they added. This is the thing, Khwaja, and I'm so disappointed to be this correct because I had this conversation with you earlier in the day. जी कि भाई ये out नहीं होंगे ना, तो इन्होंने मतलब they're not going to stick around. हाँ, उन्होंने स्कोर पूरा कर देना. सही कह रहे हो आप. 244 for 5. Dom यार Best. अजहर की कैप्टनसी, अजहर ने क्या गलत किया? आप मुझे एक्सप्लेन कर दें प्लीज़. अच्छी खालिस नॉर्मल इंग्लिश या /उर्दू या पश्तो में भी आप लिख दें, मैं समझ जाऊंगा. लेकिन क्या हुआ? उसने क्या गलत किया? ओह यार
falling short of the bowler, cotton ball Second new chance. ball available in 3.5 overs, 30 runs to get. Another twist in the tail. वो Chennai पता लगे 99 शाइन हो एक ओवर में आके उनको उड़ा दे. यार, वो और भी वो भी सकता है यार. interestingly वो बल्ला नहीं उठा रहे, so maybe they might want to get a move on, or they're just expecting quick runs from the new ball. Yeah, why aren't they going after it? I think they're backing themselves to actually smack the new ball कि भाई हम कुछ गलत करेंगे, but you never know. Something might happen. ऊपर से यासिर भी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं. आप जरा प्लीज एक्सप्लेन करें कि अजहर को आप तनकीद कर रहे हो कि क्या कप्तानी में उसने criticism गलत is किया welcome, यार. but let us know what part of this captaincy you didn't like. जी or स्लिप पीछे खड़ा है, ये कप्तान की गलती है, वो तो कीपर की गलती होती है. smashed. गुड फील्डिंग Wonderful fielding. शामसूर. अच्छा, वैसे आप कह सकते हैं कि the fielding has been good this test match. यार हाँ हिट एंड मिस रही है, बट ओवरऑल हाँ अच्छी एफर्ट कर रहे हैं अब वो. यार अब्बास की गलतियां तो उन्होंने निकाली यहाँ पे. हाँ नहीं वाकई नहीं. वैसे हमारे फील्डिंग कोच है कौन? अच्छा वो है ना वो ग्रैंट कैडबरी, क्या नाम है उसका, ऐसे कुछ नाम, ब्रैडबर्न. अच्छा हाँ वो तो अकेडमी में लग गया. कौन है हमारा बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच? This has been cut away to deep cover for a single once again. So another new dynamic coming into the game. The new ball is just 3 overs away. शदाब खान भी थोड़े से बेबस लग रहे हैं. काफ़ी जोर लगाया फील्ड में, but nothing quite happening. No big turn. No devil in the pitch, as they say. But when he does pitch it up, there's a lot of explosion of dust though. बिल्कुल. बट आई थिंक बैट्समैन भी दोनों वेल सेट हो गए हैं, तो स्टूवर्ट ब्रॉड तो अब कहते चलो यार अब मैं किट में आ ही जाता हूँ. 6 आउट भी होते तो बंदा कहता चांस है. That's 6. What a shot that is from Joss Butler. His inner T20 batsman is now flowing, and Shadab Khan gives him room, gives him space, gives him length, and he cashes in. 26 more runs to win. A straight up long hop garbage ball from Shadab, and would that ball sink his selection for the second I think that's test? it. That's the final nail in Pakistan's coffin for this test match. Sound the alarm. Are Pakistan going to sound the alarm? That is the question that needs to be asked. 250 for 5. और सोने पे सुहागा हमारा ही फील्डर जाके स्टैंड में जाके बॉल ला रहा है यार. What a partnership this has been. This has been a partnership for the ages. Almost 140 runs added for the 6th wicket. यासिर शाह तो बिल्कुल ही लेट गया, कहता है बस मेरी बस हो गई है. गोपी मियाँ कवाल बिल्कुल is hitting the nail on the head. Leg spinners have both not bowled consistent enough. Inside edge onto the leg side. No pressure, way too many mufta half trackers and full tosses. ये बात भी सही है, लेकिन अब पिच भी उनको हेल्प भी तो नहीं कर रहा ना यार, कुछ मिल भी नहीं रहा ऑन द पिच. शिट फील्ड प्लेसमेंट. क्या फील्ड प्लेसमेंट वो करे यार, कितने वो स्लिप लगा ले और कितने वो ये कर ले. बॉल स्लिप में गई नहीं, जो गई थी वो बिल्कुल आराम से बैठ गई. आप बॉटम लाइन इस पिच में कोई दम नहीं था. वो जो नसीम शाह की एक्स्ट्रा पेस थी, इट टुक द हैंडल ऑफ द बैट, दैट्स व्हाई दैट बॉल कैरी टू स्लिप. वरना बॉल जा ही नहीं रही. दिस पिच has just become really docile and really flat on the fourth day, which was not expected at all. कि भाई इतनी जल्दी पिच बैठ जाएगी और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा फ्रॉम द सरफेस. रिवर्स स्विंग का तो सवाल ही नहीं पैदा हो. हमने 60-70 ओवर बॉलिंग करा रही है, शाइन कर रहे हैं, तब से कोई स्विंग नहीं मिली. अब्बास को भी कोई मूवमेंट नहीं मिली. सो आई थिंक वी जस्ट हैव टू क्रेडिट दैट Wokes and Butler came together at the right time. Hard running, hard hitting. They played some excellent shots and they just took the game away from Pakistan. कभी कभी हमें opposition को भी credit देना चाहिए. Azhar Ali looking very upset. Of course, this would be a tough loss to take. This was one that was right there for the taking, but it was snatched away. We've snatched defeat away from victory, but some hard lessons will be learned. This is the beauty and the harsh reality of Test cricket. Let's see if they can improve for Southampton. But what is there to improve, Khawaja? In terms of how यार बैटिंग तो of course हमें बहुत बेहतर करनी but चाहिए थी. reinforcements तो नहीं है ना आपके पास. जी Reinforcements तो नहीं है आपके पास. यार बैटिंग में तो एक रीइंफोर्समेंट है, बॉलिंग में हाँ थोड़ा मसला हमें आएगा. So I think they might think about. By the way, the other side of Fawad's non-selection or selection हाँ is that when he finally gets selected, हाँ he's gonna have absolutely no room for failure. ये बात भी सही है. बिल्कुल गलत जो है उसके साथ. Reverse sweep this time and onto deep. तो point फिर for मे बी वी single. शुड सेव Oh, हिम फॉर another एन two, एशियन टूर. यार. कोई बात नहीं यार, नसीम बच्चा है हमारा यार. क्या 1 रन देने से वो जो 150 की पार्टनरशिप उन्होंने की उसका क्या, वो नसीम की थोड़ी गलती है. 21 for 5. I've seen it happen. नहीं यार अब आई थिंक बाजी हाथ से निकल गई है. अब तो स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे बगैरत भी आगे मार लेगा. लेट्स सी व्हाट आवर चेंज ऑफ पेसेस आर सेइंग. अच्छा अगर आप ये बताएंगे व्हेन वाज द लास्ट मेडन यार, काफी देर से हम देख रहे हैं. अच्छा मुझे ये बताएं कि इंग्लैंड को 10 रन चाहिए हाँ और 2 विकेटें बाकी हैं. Would you take that right now? क्या England need 10 to win हाँ and they have 2 wickets in hand.
हाँ Would you take that situation right now? 100% we'll win that game यार, क्या बात कर रहे हो? Of course we would win. 21 needed. अब ये ना करें कि वो 2 wickets in hand वो बस वोक्स और बटलर की. यार अब वो तो 8 किस तरह होगा फिर वो? Anyways, both on 17 बेचारों के 100 भी नहीं होंगे यार. Unlucky. Oh, that is out. That is out. He is gone. There goes the twist in the tail. That is what we needed. भाई out हो भाई. Butler क्यों times I think it's impact outside the line. नहीं नहीं यार पागल हो गया. It's straight away. It's What's out. the point? This is the worst wicket ever. क्यों? What's the point of this wicket? यार अभी भी आप मैच बदल सकते हो यार. क्या हो गया? लेग स्पिन वो थोड़ी उधर कुंबले के बच्चे बैठे हैं जो लेग स्पिन खेल लेते हैं. What's the worst? This is the worst wicket ever. What a poor shot by This- Josh Butler. Out है. What's the point of this wicket? ये हमें फिर से वही shit hope देने वाली wicket है. I'm not celebrating this wicket. शे होप को आपने शिट होप बना दिया. कितनी गलत बात है उसकी भी यार. test You're a series racist. उसकी भी ऐसे टेस्ट सीरीज ऐसी गई है उसकी भी. यार अब इधर एज ना निकाल देना. मैंने वाकई तुम्हारा टीवी बाहर फेंक देना अगर ऐसा कुछ हुआ. बट नो, दैट्स गोना बी स्टोन डेड होपफुली. और अंपायर्स कॉल एट द वेरी I think it's spinning away. नहीं आउट है यार. सीधा लगा है उसको. मुझे नहीं पता, मैं नहीं चाहता ये आउट हो. मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मर्जी चलेगी. इधर तुम फिरौन हो. तुम इधर स्टालिन बैठे हुए. मेरी मर्जी. आउट होगा फिर उम्मीद आएगी फिर से ये लोग. तो उम्मीद रखो यार. 20 रन हम ऐसे टेस्ट मैच जीते हुए इन द पास्ट. यार अगर मिसिंग हुआ तो खुदा की कसम इंटर्न मैंने तुम्हारा गला घोट देना है. ये देखो कोई पेंडोरास बॉक्स ये खुल वीडियो रहा बन रही है. है. ये ये टोनी वीडियो- ब्लेयर का फोन जा रहा है ये उधर. वीडियो कि बन इसको रही नहीं है, देना. ये वो वीडियो कह रहा है बन- जॉस बटलर मेरा फेवरेट प्लेयर है. ये वीडियो बन रही है. ये टेम्परिंग हो रही है. आईसीसी टेम्परिंग कर रहा है ये इधर. वीडियो ही बन रही है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ. वीडियो ये अभी लग रहे हैं ये बॉल से इधर इधर हो रही है. सरखेल बैस इसकी तो फटी पड़ी वो बाहर ही नहीं आ इतनी रहा. टाइम लगता है कभी? ख्वाजा मुझे सच बताओ, इतना टाइम लगता है बॉल ट्रैकिंग? मैं तो कह रहा हूँ उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया था उधर. बॉल अल्ट्रा ट्रैकिंग है एज कि यार. मतलब जीआईएस सिस्टम बना रहे हैं आप मैनचेस्टर का? 100%. अब तुम मानते हो ना कि हमारे खिलाफ साजिश हुई है. है। ये 150 रन की पार्टनरशिप की. फाइनली एंड हियर वी गो. ही इज मिस्ड इट. व्हाट इज दिस बुलशिट. चलो आउट हो गया. चलो निकलो आउट हो गया. Out हो ठीक है. I don't care what the rule इतनी is. पट्टियां आ गई हैं. 15 किस्म येलो पली गई है. क्या कस्टर्ड जेली बना दी इन्होंने स्क्रीन की. हरामजादे. आउट है यार. दफा हो इधर से बेगैरत. एंड वंस अगेन पाकिस्तान is back in the game. On your bike, buddy. Get out of here. 21 runs to win, but hats off. Ritvik to is an saying unbelievable innings. Someone hypnotized Butler to think this is an ODI. Singh is saying, why don't you guys read comments? We do. We just read them over on our website, changeofpacelive.com/match day. यार मैंने कहा था उधर आप लिख दो उनके लिए कि आप यार उधर मैं आ अच्छा जाओ. लिख के दे देता हूँ, सबर करो. क्यों आप पेंडोरस बॉक्स में लगा हुआ ना. आप लिखो उतनी देर. 75. A beautiful innings here from Josh Butler. Took the game away single-handedly. Well, not single-handedly, along with Chris Wokes from Pakistan, getting a standing ovation from his mates. और सरखेल बेस क्या कर रहा है उधर? क्यों नहीं गया वो बाहर अभी तक? Why is he still? I think they're gonna send Jofra. So, AZ Khwaja, because you want me to be a little hopeful, 4 wickets for Pakistan, 21 for England. If this happens, where does it rank in the great test victories for Pakistan? यार बस दुआ करो कि हम जीत जाएं. इतना आगे मत सोचो. Come on, give it to me. Give me a little. सरफराज और Humor फवाद me a little. उधर मिनी कोचेस बने हुए हैं. देखो सारी उनको बातें समझा रहे हैं. देखो तुमने ऑफिस नंबर ऑफ बॉल लानी है, फिर रिवर्स करनी है, फिर उसे कैच पकड़ना है, फिर तुमने स्लिप लेना है, फिर लॉन्ग कवर लेना Zainab ne है. kaha the tail will not be able to survive the new ball. बट व्हाई इज बेस्ट नॉट कमिंग आउट देयर? आई थिंक वी शुडंट टेक द न्यू बॉल. फिर एज के चौके निकल जाते हैं. ये टाइम ज़ाया कर रहे हैं. किस चीज़ के लिए ज़ाया कर रहे हैं? मगरिब की अजान के लिए ज़ाया कर रहे हैं. उन्होंने क्या रोजे रखे हुए हैं? Oh my goodness. आई थिंक इट्स अ ड्रिंक्स ब्रेक. अच्छा ड्रिंक्स ब्रेक होगी साथ. चलो यार मैं भी जरा पानी पिया हूँ, वैसे ही मेरी काफ़ी हाँ, हार्ट पी लो टाइट यार. है. थोड़ा जो शानदार और जमाल गोटा भी पी लो. सब कुछ पी लो. नुमान कह रहे हैं मुसाद भाई बेट लगा लें. देखो भाई सीन सट्टा क्या लगाऊं आप मुझे बताएं क्या चाहिए? अगर नुमान आप भी आर्सेनल फैन है, मैं आपको अपनी एक चैंपियंस लीग बेट लगा देता हूँ. ले लें आप 256 for 6. अगर पाकिस्तान जीत गया, तुमने एक चेल्सी शर्ट और लाइव तुमने उस पे आग लगा के यार रखी ये है. क्या फजूल बात है यार. अजीब बात है. भाई वो 300 आर्सेनल की शर्ट आती है, उसको मैं आग लगा दूं. यार तुम्हारे लिए पाकिस्तान की जीत प्यारी है या 300 दिन की शर्ट प्यारी है? वो आर्सेनल की रेलीगेशन कबूल करने को तैयार था अरसलान फरीद. यार तो मैं भी उनको एक प्रीमियरशिप देने के लिए तैयार था. तुम्हारे पास बड़ी कोई 500 पड़ी हुई है. 2-3 ही तो हैं तुम लोगों के पास. एंड इंटरेस्टिंगली दे हैव सेंट स्टुअर्ट ब्रॉड. वेरी 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 इंटरेस्टिंग.
वो चाहते हैं कि ये चवल ही आके हमें ब्रॉड को इतने बाउंसर मारो, इतने बाउंसर मारो, इतने बाउंसर मारो कि इस बंदे को रात को नींद ना, ये रात को जब सोए ना तो इसके सर में दर्द हो, सो जा बेटा सो जा वरना बाउंसर आ जाएगा। एग्जैक्टली इसको वेरन एरन का बाप जो है ना इसको याद आए, इसको मार के सूअर बना दो इसको। मिस्टर एरन उसको ख्वाबों में नजर आए, बट ऑफ कोर्स यार शाउट आउट टू वेरन एरन। 256 वो for भी 6. कोई फेक हाइप थी उसको खिलाने Yeah, की। he was quite quick though, wasn't he? आई डोंट रिमेंबर 140 प्लस तो था यार वो। हाँ लेकिन वही है, बस वो जबरदस्ती का फास्ट बॉलर था, वो नेचुरल एथलीट नहीं था बिल्कुल भी। ब्रॉड अटैक करेगा, ब्रॉड को हम अटैक करेंगे, अभी इसको हम जरा देखने दो यार। बट इट्स क्वाइट सिली बिकॉज ऑब्वियसली यासिर शाह राउंड द विकेट आएगा और रफ में बॉलिंग कराएगा, तो आप बेस्ट को भेजो, आपको क्या जरूरत थी एक लेफ्टी बैट्समैन भेजने की। दिस इज़ नॉट डूइंग एनी फेवर्स टू ब्रॉड, बट अपेरेंटली उसकी फॉर्म लगी हुई है बैटिंग में, हमारे लिए तो डेफिनेटली अच्छा है, बट दिस मैच इज़ गोना गेट ट्रिकी एंड इंटरेस्टिंग वंस अगेन। ये शान मसूद पहन रहा है, आई थिंक दोनों तरफ सिली भी होगा और शॉर्ट लेग भी होगा, सो दिस जस्ट ब्रिंग्स यासिर शाह इनटू द गेम टू वेयर। अच्छा आबिद अली पहन रहा था, माय बैड। So 256 for 6, 21 needed. Pakistan need 4 deliveries. 4 विकेटें। 3 में कितना चलेगा? डबल विकेट, बेसबॉल चल रही है, 3 विकेट। You're out. Here 21 comes needed. Yasir Shah to Stuart Broad. Swept away and that'll pick up at least 2. नहीं ठीक है, अच्छा है ब्रॉड ही स्ट्राइक रखे, हमारा ही फायदा है, विकेट मिलने का चांस है। बट हु डज Mr. Azhar Ali give the ball to? Will he give it to Naseem Shah or will he give it to Shaheen Shah? Maybe he comes on himself, bowl some leg spin. यार तो फिर शदाब का उधर क्या काम है, वो क्या वेला घूम रहे, recognized leg spinner। 257 for 6, a valiant innings of 75 from Jos Butler has taken England on the brink, but still 20 more runs to win. अभी भी कुछ भी हो सकता है, this is Pakistan we're talking about, कुछ भी हो सकता है अभी भी मैच, they will feel that they're still in the game. It's nervous, squeaky bum time all over the place in the England camp as well as the Pakistani Shadab. Do you think the England camp is nervous? Definitely, यार, it's never over till it's over, especially जब आपकी tail I शुरू think हो गई अगर है। वर्क्स आउट हो जाए ना इस वक्त फिर तो obviously लाइन पे मतलब फिर तो बहुत ही वक्त लग जाएगा बेचारों को। एंड वंस इंटरेस्टिंगली अजहर ने इधर भी लेग स्पिन लगा दी है, शदाब इज बॉलिंग from the other end to Stuart Broad, left अच्छा एक साइड पूरी खाली है उसके लिए। Now what if the thing is Shadab might bowl a loosener because he has that tendency. His accuracy is going to be so crucial here, so important. 71 off 106 Look at for that Adidas bat, यार काफी it's quite खूबसूरत looks लग रहा nice. है, I was looks just going to nice. say look good looking The piece decals. of wood. Nice full ball. ये आप देखें पूरा dust storm जो है शुरू होता है every time he pitches it up. मसला ये कि कोई लेफ्ट हैंड बैट्समैन ही नहीं आया है ना लेफ्ट हैंड बैट्समैन। बट Shadab Khan is also a leg slip, a fly leg slip kind of fielder in place. That'll be 4. That is an emphatic shot from वाकई ब्रॉड की फॉर्म लगी हुई है फिर यार, the way he picked the मुझे नहीं gap. समझ आता इस बंदे को शॉर्ट बॉल नहीं खेलनी आती, आप शॉर्ट बॉल क्यों नहीं लगा रहे उसको? यार अभी तो स्पिनर लगा हुआ है ना यार, क्यों लगा हुआ है? क्यों लगा हुआ है स्पिनर? यार उसने अच्छी शॉट मारी यार, कभी कुछ उनका भी कबूल कर लो कि उन्होंने कुछ सही किया है, बट यार आबिद अली अपने सर से ही ब्लॉक कर लेता अगर कुछ करना था। ज़ैनुद्दीन ज़िडान वाला हेडर मारता 2006 वाला वर्ल्ड कप फाइनल वाला जो मतराजी को उसने मारा था, बट टॉप शॉट देयर फ्रॉम स्टीवी ब्रॉड प्लेइंग विद द स्पिन। अब शदाब का क्या स्ट्रेटजी होगी? एक 6 रन प्राइसलेस रन हमने दे दिए। Give us something. Toss it up. 261 for 6, England's Shadab. Oh, okay, big appeal? No appeal. हम अपील कर भी नहीं सकते, अब रिव्यूज़ हमारे ख़त्म हो गए हैं, हम अपना टी भी नहीं मार सकते जो अजहर अली कर रहे थे। उसका टी की भी फॉर्म कितनी ख़राब है यार बस रिव्यूज़, लेकिन 1-2 तो हमने आई थिंक रिवर्स करवाए थे। और फुल यार ये वैसे horrible कोई है ball. बात ख्वाजा मुझे खुद बताओ, टेस्ट मैच है 16 रन चाहिए, वो फुल टॉस करा रहा है। तो यार एंड ऑफ द मैच स्पिनर को तो नहीं लगाते ना, इतना प्रेशर होता है, कभी भी बड़ी हिट लग सकती तो है। फुल टॉस करा दो प्रेशर में, फुल टॉस करा। यार वो कोशिश कर रहा है बेचारा, यार ट्राइड द गूग्स बट इट डिडंट कम आउट प्रॉपर्ली। तो आपने अभी तक जवाब नहीं दिया कि आप शदाब को खिला रहे हो या फवाद आलम को खिला रहे हो। असद तो चलो खेल रहा है, अजहर भी खेल रहा है, व्हाट अबाउट दीज टू?
यार ख्वाजा बहुत मुश्किल सवाल है ये, बिकॉज आई एम टेलिंग यू यू नीड 5 बॉलर्स. 4 बॉलर पे बहुत प्रेशर पड़ जाता है. उसमें से दो तो लिटरली आपके बच्चे हैं, शहीन और नसीम. उनको आप 30-30 ओवर रोज करवा सकते हैं फास्ट बॉलिंग सही बात है, की. सही उनकी बात पहली इनिंग में पार्टनरशिप लग जाए तो क्या हालात हो जाएंगे. तो फिर इन्होंने स्क्वाड में फ़हीम अशरफ को क्यों नहीं लिया हुआ? मे बी फहीम विल प्ले नेक्स्ट इनिंग. वो तो स्क्वाड में ही नहीं आया, टेस्ट स्क्वाड में ही नहीं है. नहीं ही इज आई थिंक. टेस्ट स्क्वाड में है आई थिंक. हाँ, 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 आज फहीम है. 16 की शॉर्ट लिस्ट में नहीं था आई थिंक. हाँ यस. 262 for 6. 15 more needed. Toss this up. Ooh, circumspect there from Good Mokes. ball. And this is of course the esteemed Fahim Stokes trophy that they're playing for. हमें ये नहीं भूलना चाहिए. But 15 runs to win. Pakistan battling till the bitter बम्बल की end. आवाज में भी जो है ना आप देखें कितनी खुशी आ गई है. यार बम्बल के तो मुंह में अब मैं क्या बोलूँ आपको, छोड़ो यार. एमी माहौल ख़राब हो जाएगा. 15 runs needed. 262 for 6. शद्दाब bowling to Chris Wokes. ये अभी तक खड़ा हुआ है यार. हम तो भूल ही गए कि Chris Wokes भी जिंदा है. Tossed up this time. Good Driven ball. well. No run. Now Yasir Shah versus Broad. This will be interesting. उसको तो वो shot definitely. Do you still want to नहीं continue मारेगा. with Yasir? हाँ यार अभी तो विकेट लिया. अभी तो हाफ चांस उसकी वजह से तो क्रिएट हुआ है. So if you're not gonna bowl Shadab, what is the point using practically 4 bowlers? Anyway, that is what I'm It's saying. the backup. It's the backup. I'll tell you why. Because if you're going through a test match, अभी तो आपको विकेटें काफी regularly मिल रही थी ना first innings में. If you're on a dead wicket on the first innings or the second innings and England get going in a long partnership, you're not going to be able to rely on the fast bowlers from one end. You might need 2 spinners or at least 5 bowlers. They have to share the workload. अगर आपको एक इनिंग में 150 ओवर कराने पड़ते हैं. क्रैकहेड कह रहे हैं अश्विन इज वाचिंग द मैच नाउ वी नो व्हाई वी आर लूजिंग. वो इंटरनेशनल लानत भेज रहा है हमारे उसका श्राप हमारे बॉलर्स पे आ गए. बट नो आई एम जस्ट किडिंग. ही इज अ फैन ऑफ क्रिकेट, ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट. वो सारी क्रिकेट देखता है. अभी तक मैंने काफ़ी वेरिड ओपिनियंस आ रहे. कोई कह रहा है फवाद खिला, कोई कह रहा है शदाब ठीक है. और नहीं ख्वाजा मैं यही आपसे पूछ रहा हूँ मैं. And I'll ask the guys on the comments the same thing. In Test cricket, sometimes the bowling side has to bowl 150 to 200 overs. सही बात When you have 4 bowlers, how's that going to work? Swept well, and it's just going to be a single. No. What happened? अच्छा आबिद को लगी बॉल. अच्छा ठीक है. आबिद. Oh, Abid, use your head, bro. Use your head. यार बेचारा. I mean, literally use your head. That's what he did. Ooh, saved his leg. That's actually good technique to, you know, थोड़ा सा झुक ज़्यादा सकता था. हाँ पैड भी पहने हुए हैं और वैसे भी यार डेंजरस होता है लेकिन फिर भी. और Stokes cannot take the tension. The England camp are definitely feeling it. 262 for 6 and big appeal, no appeal. यार बल्ले के मिडिल पे लगा. किस बात पे अपील करे वो? जो लोग सुन रहे हैं उनको थोड़ा पॉजिटिव करते हैं. 262 for 6. Positive cricket. 262 for 6. 15 needed. Broad 6 off 7. Wokes 71. Yasir Shah still Wokes is going to grinning be man of away. the match, of course. I think so, yeah. For this hand, he definitely has to be. Shah bowls, sweeps from Broad, and it might be straight to the man. Shan Masood. Masood देख के भाई. Oh, there could be run. नहीं वो बेट कर रहा है तुम्हें भाई. ट्रोल है वो बहुत बड़ा. स्टुअर्ट ब्रॉड आप देख के फेंको. 14 runs needed to win. मैं चाहता हूँ कि अगर हम हारे भी ना तो एटलीस्ट ब्रॉड को सर पे 2-3 मारें. आखिरी बॉल बस इसको एक स्लो बीमर दे दो, उसके सर को बाउंस लग के 4 बाइज हो जाए. Seriously, I want Shaheen on and I want him to be murdered. I want. Oh, speaking of murder, There here it comes is. Shaheen. Come on, Shaheen, get in there. ये New क्या? ball. ये कैसे देख रहा है भाई? It's not a cherry, it's a cricket ball भाई. जरा इसको ना एक दो बाइट मार दे फ्री दे जरा. यार वाकई अफरीदी को ही दे देते. 263 चक्की मार देता है एक दो. 6. Oh, come on. यार ये वाकई कोई 2 घंटे बाद ही पहली दफ़ा क्रिस वोक्स बीट हुआ है. फिर आप कहते हो यार कप्तानी ख़राब थी. लुक एट द पिच यार. व्हाट अ पिच. The pitch has been a bitch. Whoa. Let's just call it that. Apologies for the profanity. 263 for 6, 14 left to go. Chris Wokes, 71 runs, been a phenomenal knock. Oye hoye kya break हुई है यासिर की ball. ओए होए यस यासिर भाई. Shrap from Labs and Bobby Prince saying remind me of that Miyada dub video. Yaar wo video. Gopi bhaiya Kawal, is it the pitch or has Yasir been poor? A bit of both. Zainab is asking for a maiden before the new ball. No, the run has already been giving. Majid is criticizing my language. यार वैसे ये न्यू बॉल लेंगे. Does that even make sense at this stage? Not sure. Full toss on leg stump. Full toss on leg stump. चलो यार और रोबोट. माजिद मुझे कहेंगे कि मेरी लैंग्वेज खराब है, इनकी बॉलिंग नहीं खराब. यार वो रोबोट थोड़ी है यार. अब कभी कभी हो जाता है.
यार कभी कभार हो जाए मसला नहीं है, जब 15 रन चाहिए डिफेंड करने के लिए उस वक्त ना करें. तो फिर तब ideally you shouldn't have your leg spinner bowling, huh? Oh, here he comes. All right, make it, bring it in. One naya gained. New gained. NG. The new game. New game has been taken. The new game. So let's open up some new यार ये क्या वैसे It's all falling apart, folks. एक हमारा क्या सीसी के NG. छोटी छोटी खुशियाँ NG हमारा new gain available. Yeah, I mean they've taken it actually. NGA new gain available. Okay. And Shaheen Shah Afridi, the Lion of Lahore, coming on to bowl with the new ball. Maybe he can give one final Look at that Naveed fucker coming with one some. final miracle from Shaheen. Come on, boy, you can do it. I believe in you. I'll always believe you. Shadab cannot be dropped. Asad Shafiq under scrutiny for the next game. Yeah. Akib is saying. यार फिर बात तो वही होगी ना, बैटिंग उतनी ही रह गई. Exactly. Akib is saying need Khwaja's calmness in life. यार बस यार क्या. And Naveed की जो बात है ना, Musad, I still remember you bowling some doostras in university. यार क्या दिन थे वो भी. It was a good time. Naveed की टीम में मैं खेलता था. Naveed, Qasim, me, and we had a bunch of these. We had a bunch of the noisy neighbors on the other team that we used to beat regularly. उनके पास भी कोई bowling नहीं. चलो आप स्कोर अपडेट कर दो शाबाश. 264 for 6, 13 to go, and down the leg side to start with the Lahore Columbus. लेग स्टंप भी उड़ जाती तो क्या ही बात थी. क्या बात रहती. Majid Hussain saying, Musad, you are in serious state of delirium. Fair enough. I admit that. यार अब हम 4 दिन से लेकिन 8 नवीद ने घंटे. कहा कि Musad had better control than Yasir. वाओ. आप बताएं अब आप. नवीद कौन है रैंडम? और मैं ये नवीद वही हमारे कोईती क्रिकेटर. अच्छा. हमारा ऐसी बात अच्छा नहीं है. नवीद, ओके आई गॉट इट. Yeah. और Apparently यासिर शाह तो ग्राउंड में ही नहीं है. ये क्या बात हुई यार. मे बी हाँ तो न्यू बॉल वाला काम हो गया, सो दे आर नॉट गोना गिव इट टू हिम. Yeah. Oh, it might bounce extra for him actually. आई थिंक वो बॉलिंग नहीं कराएगा अब. Shaheen now continuing. Ooh. यार कोई मुंह पे मारो, कोई बाउंस से मारो. Oh my goodness. 264 for 630. You know what I like though? Pakistan is still throwing the kitchen sink at this. जी बिल्कुल एफर्ट तो कर रहे हैं. और एक ग्रे निकल्स ही आई हमारे गले पड़ गया क्रिस वोक्स. खूबसूरत बैट और ग्लव्स वाला. They've taken the new gained. वैसे बॉल को क्या कहते हैं उर्दू में? गेंद ही कहते हैं. और कुछ है? अब क्या चाहिए आपको? गेंद काफी नहीं है. 264. गेंदे. 264 for 6, 13 runs required here for a test match victory. Oh, inside edge onto the pads. ऐसे ख्वाजा एक रूल अमेंडमेंट मैं करना चाहता हूँ अगले 10 ओवर के लिए. अच्छा कि इनसाइड एज onto the pads अगर विकेट पे हिट हो रहा है. अगर हिट हो रहा है. अगर हिट रहा है. It should be given like before. ये कौन सा रूल है यार? That's fair, right? No, that's not fair. The legs are stopping the ball from hitting the wicket. हिट रहा है. यार वकार यूनिट से भी सवाल जवाब होंगे कि आपकी बॉलिंग यूनिट क्यों नहीं विकेट ले पाई. अब वसीम भाई को बुलाओ ना, हम दिखाएं अपनी My God. 13 required, folks. 72. Well Good left. bounce. Good bounce Good once carry, again good carry. there for Stuart. Sorry, मैं Stuart Broad कह रहा हूँ. For बिलाल Shaheen Shah Afridi. आपका बिल्कुल कमेंट पढ़ा नहीं जा रहा. आप स्पेलिंग वगैरह इधर उधर भी है कुछ समझ यार वैसे हद है ख्वाजा. नो बॉल दे दी इस बंदे ने. यार इट्स फुल टाइम कंस्पिरेसी है यार. Better. 265 for 6, 12 required. यार ये किस तरह की नो बॉल है यार. ये तो इतनी बड़ी नो बॉल. बेचारा इतना जोर लगा रहा, थक गया है ना यार. Somebody's gonna call news of the world now right away. यार अजहर अली ऐसे नहीं गिरते यार. आप कैप्टन हो, कोई बात नहीं, रिलैक्स रहो. नो वरीज. Continuing here. Oh, driven. And What a there's shot. Man at point. That's one. Couple runs taken. नहीं भाई, easy 2 है. 10 required now. अच्छा अभी अब्बास ने भी तो आना है न्यू बॉल के साथ यार. समथिंग कैन हैपन. वो 3-4 बॉलें सीधी डेड स्ट्रेट LBW मिल भी सकते हैं यार. अभी भी हो सकता है. ये वाकई अच्छा मीम है. पिच विल सपोर्ट. वो वाकई यार व्हाई डिड दिस हैपन. इस पिच की मुझे एक इंक्वायरी चाहिए. FIA को बुलाओ, नैब को बुलाओ, सबको बुलाओ. इतना खस्सी पिच क्यों उन्होंने दिया? मैं चौथे दिन रिपोर्ट है. ख्वाजा रिपोर्ट होनी चाहिए. 3 balls of the century, hat trick coming up Zainab. फिर भी उनको सिर्फ 10 रन चाहिए होंगे.
Let's see what happens here. Straight Yaar. drive. Wonderful straight drive. Wow, what a shot that is from Chris Woke. That epitomizes this innings from Chris. It has really been one of the top level innings that you'll ever see. ये देखो the from a test steroids खा रहा है batsman. जो रूट यार. What a shot, a beautiful punch down the ground, and that is probably what the game is done. Only a mere 6 runs to win. हम आपको याद दिलाएं, England were 117 for 5 क्यों याद when दिलाएं हम ख्वाजा? Joss इस तरह Butler and Chris Wokes got together, and a mammoth partnership of 150 odd maybe यार Majid is asking that just took the game away from Yeah. Pakistan. what positives can we take? There's actually quite a few of them. यार we bossed the game for 3.5 days यार. Yeah. बस वही है, एक सेशन 2 सेशन में उनकी तरफ हो गए, and that's just you know shows Line the of quality of heart. England. कि भी आज काफी pulled away from Wokes and he's doing this quite comfortably now. 5 Unbelievable required. knock यार. This is probably the innings of his career, the innings of his life, and Yunus Khan भी उधर बैठे हुए हैं, still as a shadow, still as a statue. अभी भी बेचारे नोट्स बना रहे हैं कि भाई अगले मैच में हम क्या कर सकते हैं. Honestly, I don't think Pakistan could have done much more. The pitch just didn't support them. They couldn't create opportunities. And Joe Root की भी जान में जान आई. Captain Misbah, I mean Coach Misbah looking perplexed कि यार ये कैसे मैच हमारे हाथ से निकल गया है. But कोई बात नहीं यार. We bossed the game for 4 days. No problem if we couldn't get the victory. It augurs well for the 2 tests in Southampton. I think बस this फवाद unit. आलम अब हेलमेट देने आ गए हैं. I think he's on the field चलो as well. जी इधर ही अब रो पिटने शुरू हो गए होंगे हमारे सारे केसीसी माफिया जर्नलिस्ट जो हैं, भट्टी साहब और याहिया कैंची और ऐसे जो सारे छोड़ो चबल यार बैठे इनको, क्या हमने क्या कह सकते हैं हैं. यार. यासिर शाह may well be bowling the penultimate. This is a pretty devastating loss though, Khaja. It's not that devastating यार. क्या Like हो गया? it's अभी heart- सीरीज अलाइव है यार. It's heartbreaking. आपको मैं याद दिलाऊं, हम we were 2-1 down in 2016 and we came back to draw the series. ऐसी क्या बात है यार. It's just heartbreaking. यार it feels like an opportunity lost. काफ़ी चीज़ें हम कर सकते थे but कोई बात नहीं. Yasser now to continue here. Cut away well, easily done. Another easy, maybe 2. No, It just a shows you the brutality and the cold-bloodedness of that is Test cricket. यार you can be controlling the game from ख्वाजा ball 1 तुम्हारी to जो ball इस वक्त- 800. इस वक्त जो pragmatism है ना तुम्हारी, it's pissing me off. मैं because- pragmatism की बात नहीं कर रहा. अब आप किस बात पे आप कंप्लेन करोगे? अब वो दूसरी तरफ एक innings of his life दोनों खेल गए तो बंदा क्या बोले? किसी बॉलर ने गन तो नहीं मुझे मारा. ये बताएं, मार्कस नॉर्थ से लेके क्रिस वोक्स तक सारों को यार क्रिस वोक्स बॉलर नहीं है. हैं? हमने उसको अपने इंटरनेशनल ड्राफ्ट में सिलेक्ट किया था यार. हद हो गई है. अजीब बात है यार. वोक्सी यार अपना बॉय है वोक्सी. चेंज ऑफ पेस का नमक खा के ये करते हैं ये लोग. वाकई यार नमक हराम वो अलग बात है कि चलो वो देशद्रोही नहीं साबित हुआ. हमने कोशिश तो की ना उसको अपनी तरफ खींचने के लिए. बट लेट्स जस्ट गिव अ शाउट आउट. एक आप अपनी स्पीच देना हमारे चेंज ऑफ पेसर्स के बारे में. आने वाली है यार, और कुछ बचा ही नहीं ज़िंदगी में स्पीचेस के अलावा. अजहर अली पे यार गैर जिम्मेदाराना तनकीद हो रही है. आई डोंट थिंक देयर इज मच ही कुड हैव डन to be quite honest. 273 for 6 and Yasser 1 hit away. 1 hit away. ये तो भी खुशी से बोल रहे हो 1 hit away. अजीब बात है, ये वर्ल्ड कप का ये लो यार पड़ गई. Oh come on, how was that? How was that? He's got him. तुम अपने 5 ले लो. Another wicket down, another twist in the tail. 4 for 3. It's happened before. यार हो सकता है It's यार. happened before. It's happening again. It's coming home. हाँ पूरा ओवर भी पड़ा. सही कह रहे हैं यार. And missed a straight one. Tried to sweep it. That is stone dead. अब वैसी भी आएगा. अच्छा अगर एक और विकेट गिरती है तो फिर क्या करेंगे आप? फिर तो उनकी तो टोटल भी बंदूक हो जाएगी अगर ये Rod होगा. is gone, folks. It's squeaky bum time. By the barest of margins. वो वाला सीन हो जाएगा इनके साथ. मैं कहता इंग्लैंड के साथ भी होना चाहिए यार. हाँ वैसे होना चाहिए. मुझे तो लगता है अगर हम इस सिचुएशन से मैच जीत गए तो कोच मिसबा आके नंगा नाचेंगे उधर ग्राउंड में. टेक इट. मुझे जैसे गंगूली वाली बात. But I Azhar like Ali the still passion. believes. Come on, Azhar. Get Captain behind Azhar you. still believes. You know, I've loved Azhar from the day he debuted. From the day he was born. सही कह रहे हैं आप. Yeah. Come on, Azhar. Make me proud. Make me a proud fan today, buddy. 4 रन चाहिए यार. Stuart Broad लांती. Oh bloody hell, man! Come on, Can't you Broad, finish get the any runs fucking here, mate? game? 273 और for सरखेल आ गया बैटिंग करने के लिए यार. Dom Sarkhel Bess is in. दमादम सिबली तो है अभी उसकी Sibley जी नहीं. बंद हो चुकी है ऑलरेडी. Nice. उसके GBTS हो चुकी है. अब जो समझता है वो समझता है. Okay. 273 for 7. Did you just, if you know, Urdu? Do you know?
Ooh, और average. इसका भी बेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ है यार यानी वो बता रहा सारे है, दुनिया के बदतरीन बैट्समैन जो है वो हमारे खिलाफ चलते हैं. इसी अब ये चौका मार जाएगा और इसी शॉट पे बेस्ट ना अगला टेस्ट खेल जाएगा When has this happened before? Never. यार So आई a bunch थिंक of वेस्ट you on इंडीज the हैव डन chest, दिस काइंड ऑफ मिरेकल इन द 273 for 80s 7, 4 required यार. पाकिस्तान क्रिकेट एक और मिरेकल दे दो यार. एक और यार. मिरेकल दे दो यासिर. एक और यार one सोचोगे टाई हो जाए one last push for Pakistan cricket. Can you say it? सोचोगे Can you say it? टाई हो जाए Can you say it? क्या? Pakistan cricket. पाकिस्तान Yeah, come on. Get behind the lads. Get behind Yasir. और Get अभी तो ओवर behind शुरू Azhar. हुआ है यार 4 बॉलें पड़ी हैं दैट्स ओनली नीड Well, 3 no, यार 3-4 mid विकेटें. Tossed up. Big appeal though, straight up the middle of the back. हिट द मिडिल ऑफ हिज बैट यार वैसे सरखेल बेस्ट की भी अच्छी खासी ना थोड़ी स्लेजिंग वेजिंग करो, उसको बोलो यार, उसको थोड़ी गालियां शालियां निकालो, थोड़ा तंग करो. आबिद अली, the nicest guy in all of world सबसे cricket. शरीफ आदमी हमारी टीम में आपसे तो बैटिंग नहीं होती. Tossed up this time. Oh! Big appeal, नहीं, come नहीं, on. नहीं, नहीं. दो यार. नहीं है यार ऊंचा लगा है तुम अजीब अंपायर बने हुए हो, ऊंचा लगा है. दो उसको. तुम अजहर अली ये सारे रिव्यू तुमने तो यार उनके पास 3 रिव्यू हैं वो तो क्लीन बोल्ड पे भी अब रिव्यू लेंगे भाई रिव्यू पे कोई मसला नहीं है, अंपायर्स कॉल हो लेट्स जाती टेक अ है. लुक एट दैट I think this was Plum LBW. Yeah, Plum, look at it. यार इतना बैट लगा थोड़ा यार silly point यार द व्हील्स आर कमिंग ऑफ Yep, they're truly. Hey! Tried to dodge it, but just bunted it to second slip. मैं कहता हूँ एक यार, ग्लेन अब- मैक्सवेल BBL सीजन 5 वाला सीन हो जाए जिसमें बस ये बॉल छोड़ दे सीधी. आपको याद हो वो लीफ. यार शिट अब बॉक्स आ जाएगा स्ट्राइक पर फिर तो वैसे ही मैं कहता बाजी हूँ निकल बॉक्स को जाएगी बीमर मारो, शान मसूद को अगला ओवर दे दे. मीडियम पेस यार ताकि एंड में लिखा जाए कि ही गॉट द विनिंग रन्स हिट ऑफ हिम कितनी अफसोस की बात होगी नो गुड बॉलिंग यासिर. अल्लू इन्ने में आया है 273 for 7, 4 required. श्रीलंकन मोड में चले जाओ यार वैसे उस बंदे की जो अपील है, हाँ। रोशन डिकवाला, क्या नीरोशान डिकवाला। सॉरी नीरोशान डिकवाला, क्या अपील है उसकी. वो ये सोच रहा है मैं इसलिए कह तो रहा हूँ, उसने मैं पूरी कह थोड़ी बाबर यूएन की मीटिंग पूरा कैबिनेट मीटिंग बुला ली है सिक्योरिटी काउंसिल पाकिस्तान का जो है वो. ओह इट्स द लायन ऑफ लाहौर. ज्यादती है यार के उसको चौका पड़े यार। आपसे अगर आकिब जावेद क्या कहेंगे अगर ये 3 विकेट ले जाए, अभी 3 बॉल हो गए. यार मैं तो आकिब जावेद के मैं छोड़ नहीं छोड़ दे. Oh my goodness, it's all happening. उफ यार CCK as Khwaja says, छोटी खुशियाँ. Yeah. CCK है, जोफ्रा। GD है, नहीं एनजीए नई गेंद available. 1 for 57 ख्वाजा द for ग्रीफ Shaheen. काउंसलर यार, ख्वाजा has been very calm. अभी तक याद है वो जो हम अफगानिस्तान के खिलाफ जो हमारी बेइज्जती हो रही थी, वो still calm. यार वो मैच तो बहुत ही क्रेजी था And Chris Wokes now Catch! edged and it's gone through the Yeah. slip before. What a victory this is for England cricket. What an innings this is by spectacular all-rounder Chris Wokes, where Ben Stokes failed and Joe Root couldn't get any runs. It was this man who stepped up against a versatile Pakistani attack. 2 spinners, 3 young pacemen, and Chris Wokes ends up taking them home. England win by 3 wickets. क्या कह सकते हैं यार, it's just been an amazing counter-attacking innings from him and his partner in Joss Butler. यार मुझसे तो कम ही बोला जा रहा है. Azhar Ali again cutting a sorry picture. Yasir Shah tapping Wokes on his back because that's really all Pakistan can do. You can blame the captaincy, you can blame the bowlers. Let's take a moment to tip your hat to Wokes and Butler because it's because of them England have crossed the line. But I also want to take a moment out because this has been our first ever test match on Change of Pace, and it has been honestly an incredible experience covering with you guys. It's been so much fun, some absolutely wonderful moments. The second innings wickets, the Yasir blitz this morning, the 5 wickets earlier today, even the sadness of it all. It was actually quite fun towards the end, and maybe, just maybe, Pakistan cricket will be back. And then that final edge went through a vacant slip cordon, unfortunately. What a celebration. You can see how much test cricket means. But to all the Change of Pace listeners, to all the Change of Pace commenters, it's been such a privilege. Thank you so much for choosing us as an outlet for your cricketing experience. Thank you so much for commentary. And again, Pakistan Cricket Zindabad. We've had some low points in the past, but I'm 100% sure. Look at this team has done a lot of things right in the past 3.5 days, and I have no doubt
come Thursday, we'll come bouncing back very strongly. Keep your heads up high. Keep your hopes up. From Change of Pace Live, this is Musad Afzal alongside Izzy Khwaja signing off for the first test of what has been a humdinger of a game. We'll be back sooner than you think. Apna khayal rakhein. Pakistan cricket ko apni duaon mein rakhein. And we'll see what happens.